First of all, thank you everyone to join this class. This is Cisco SD-WAN Viptela class, and in this particular course we'll learn that how with help of SDN, software defined network, we can do the automation in terms of wide area network. Okay, so if I ask you that what is SDN, can anyone tell me what is SDN? What is SDN? What is software defined network? Anyone? Okay, it is like kind of replacing MPLS network. Okay, replacement of MPLS. So economy-wise, cost effective compared to MPLS. SD-WAN is cost effective compared to MPLS. Okay, I'm asking that what is software defined network? What does it mean? Replacement of MPLS, we can say that okay, with help of SDN we can replace the MPLS. But what is SDN? WAN network with internet connectivity. Okay. Software defined network. So we have this network keyword here. Initially, who was defining the network? Now here I am telling the software is defining the network. So initially who was defining the network? We manually, hardware. We are doing some manual thing, hardware. Okay. Anyways, the definition of SDN is decoupling. So you can decouple the control plane and the data plane. That means your data plane is somewhere and your control plane is somewhere. Okay, if you see any of the Cisco routers, say for example 2800, you'll find inside this router you have management plane, you have control plane, you have data plane. So all the planes you have inside this router means all the intelligence, management, control, data plane, everything you have inside this router. So what does it mean by management plane, control plane and data plane? Can you tell me? Yeah, management plane is nothing but to access the device, and We can whereas do control plane, SSH, Telnet, maybe yes, SNMP, like that we can do. Okay. yes, In and control plane, whereas control plane is to update the routing information, like okay. routing policies. Whereas data OSPF, plane is traffic, BGP, data traffic. STP, all these things we can do. And here we can do the data forwarding. Okay, great. So what is the strategy inside the SD-WAN solution? That you have devices. Suppose if I have 3 branch and I have 3 devices, all these branch devices has their management plane, control plane and data plane. Obviously, say management, control and data plane. Say management, control and data plane. What I can do inside SD-WAN technology, that I can take all these management and control plane and I can push somewhere. So I have some sort of software. In that software, I can use management plane, I can use control plane. And the same strategy we have inside the Cisco SD-WAN Viptela. I'll tell you that what is the name of management plane. It is nothing but vManage software. What is the name of control plane? It is nothing but vSmart software.
And we have one other controller as well that is termed as a vBond. It is used as an orchestrator. So we'll see that how these controller works. And in the data plane, we have something called vEdge. That doesn't mean that we don't have local control. They have the control plane, but that is very minimum. It's a very small control they have. We'll see that. But at the moment, you can see that we can decouple. So uh, with help of say some sort of software, we can take out the intelligence. We can host that intelligence anywhere outside the box, and these devices, they are working as a data plane devices. Now, if I do this particular strategy, what is the benefit? What's the benefit of doing this? Unnecessarily, isn't we increasing the complex? Initially, everything, this particular device was taking decision. Now, we have separate control, we have separate data. So suppose I have separate control plane and data plane. Say for example, I have control plane somewhere, I have data plane somewhere. Now from control plane to data plane, I need some sort of tunnel, some sort of secure tunnel, because this will give the instruction now and this will do the data forwarding. Correct? So suppose if I decouple the control plane and the data plane, what will be the benefits? Yeah, I'll come to this orchestrator. In the upcoming slide, we'll discuss about orchestrator plane vBond. But what I am asking that the definition of SDN is what? The definition of SDN is to decouple the data and the control plane, correct? Now, if I decouple the control and data plane, what is the benefit? Hardware is free, that's correct. So one of the benefit is hardware is free. What does it mean, hardware is free? Yeah, you can tell whatever you think, whatever you feel. It's not any hard and fast rule that whatever comes in your mind you can just reply. Fast data sending. Okay, so you are telling that hardware free and the data processing will be fast. Okay, any other thing if I decouple? Okay, RAM processing is less. So hardware processing fast, hardware free. Wow. RAM is fast. Okay, that's great. We'll see that what are the advantages we have if we use such type of a strategy. But if you think in global perspective, if you think about a big type of network infrastructure, so what is happening? Yeah, that's correct. In big deployment, what is happening that not only you have to arrange the data, but you have to arrange the control plane as well, because initially both are the same, both are in the same box. Now in this case, management is 100% correct. Management become very easy. So suppose you have to deploy one of the branch. In that branch, what you can do, you can simply send this particular box. You have to plug in the cable, and within fraction of minutes your device will become up and running. That is called as a ZTP, zero touch provisioning, because your data plane is somewhere and your control plane is somewhere. So what minimum you have to do,
that you have to create the communication between the data plane and the control plane. So first time connectivity you have to do. Once you do the first time connectivity, then it will start working. There is no other problem in this. So yeah, we have so many benefits if we are doing the decoupling of the data and the control plane, and we'll see in the upcoming slides. So let's see that what are the benefits we have while we are doing the SDN solution. So before checking that, what are the disadvantages we have with respect to traditional WAN? You can see here that we have disadvantages that in the old or the traditional WAN, everything is disjointed. So suppose if you have some VPN, for VPN you have some router, and it's very difficult inside the old infrastructure to manage the VPN. It's very difficult. You may have different forms of VPN that you have to manage, correct? So we have disjoint type of solution in the old infrastructure, and it's very difficult to manage. That is one of the problem in the old network. Then insufficient bandwidth. This is also huge, because suppose if we have taken 2 or 3 ISP connection, it's very difficult for those ISP connection to do the load balancing in terms of traffic. So at a moment, suppose one of the ISP is functional, that will be functional. Otherwise, what maximum you can do, you can use some SLA tracking, or you can do some IP tracking, and you can send the data traffic to the different ISPs. But still, it's very difficult to track the different type of ISP or track the different type of bandwidth that you have in the premises. Rather, if you use SD-WAN solution, you can use all these ISPs. So suppose I have ISP1 and ISP2, and this is my branch. Now, in terms of say application, say you have application related to, yes, that's correct, bandwidth issue. It's difficult to divert the traffic, or it's too manual to divert the traffic. But in the SD-WAN framework, it's actually very easy. You can easily divert the traffic from one ISP to the other ISP. Everything will be automatic. Okay, so these things are there. These things are always there in the SD-WAN solution. Then limited application aware. Now, this point, due to this point only, Cisco has, or other vendors has created the ACI infrastructure. So what Cisco is telling, that initially the network was there, the network infrastructure was there, and on the top of that network infrastructure, we used to run the applications. But now what is happening, that whatever application you have for the businesses, keeping that application in the mind, we are designing the network. So now we have, say, application driven network. Initially, over the network, we are writing the applications. Now we are keeping the application in the mind and we are designing the network. So that is the paradigm shift from the old network to the new network, that you are focusing on the application. Now once you focus on the applications, that means you're writing the new application, and those applications should be supported with help of your network infrastructure. Okay, so some questions. What is the question? Bandwidth issue. Traffic will be diverted only if link is down, or it can do if packet drops. Yeah, it can do if you have any SLA breach. So it's not only that your link is down and traffic is diverted. Even you can define certain say SLA limit for different traffic. So let me write here.
Suppose I have traffic class HTTP. I have traffic class say VoIP. I have traffic class say bulk. So what is happening with respect to these classes? We are defining some SLA. So what does it mean by this SLA that we are defining? It simply means that suppose you have MPLS, you have internet. Now for HTTP traffic, you are defining the SLA, suppose in terms of jitter, loss and latency. If this SLA will not meet, it will automatically divert it to internet. Or suppose if your traffic is preferring internet, it will automatically divert it to MPLS. But they will never drop the traffic. So traffic drop is not there until unless whatever you have primary, secondary and tertiary ISP, the traffic will not dropped. Rather they will go or they will shift the link, and suppose if you don't have bandwidth, then obviously the traffic will drop. But they will try to uh, change the SLA criteria, or they will try to change the link or bandwidth as much they can do. If there is no bandwidth, obviously the traffic will drop. Okay. Then in the traditional network, we have issue with the fragmented security. So for VPN, we are using different router. We don't have any service chaining or the service insertion. So we have firewall, we have IPS, IDS, we have some other hardware type of security parameters. We have other certificate management security. So everything is in chunks. We don't have unified fabric. So we don't have any single fabric. Inside that we can give all the security policies. So that is also there. What question? Where will we store the application? Where it's need to be stored is in any storage with. Okay. So Naresh is asking that where we are storing the application. Let me clarify one thing. Say you have your campus area network. Just want to clear this thing. It's very important. You have your campus area network. You can think this as a branch where you have users. So your users may be mobile user, or they are going to office, or some other. Means you have laptop, desktop, any handheld devices, PDAs, whatever. So the input means the request is coming like this, and you may know that we have 3-tier architecture. Web means user, they are accessing the web. Then that web is served inside the application, and then it is stored inside the database. Now this is the campus area network I am talking. This is the branch. Likewise, you may have so many branches. Then you have something called ISP. So you may have ISP1, ISP2, ISP3, and these ISP, they should be connected with data center. So you may have data center 1, data center 2. Inside this data center, you can use ACI fabric or NSX or any type of say data center virtualization technique, whatever you have, or any of the Nexus virtualization you can use. Now inside this data center, you have your storage area network. You have your SAN, correct? So my request is coming from here, but it is storing here inside the storage area network. Now what is the role of SD-WAN? Where the SD-WAN fits?
SD-WAN is fitting here. Means SD-WAN is providing you the transport automation. For what? For the applications. Where these applications are running? These applications are running at the branches, or these requests are coming from the branches. They are using SD-WAN, and where it is storing or reaching, where is your servers? So here is also your servers are here. The request is coming to the server, they are responding to the user, but again they are storing inside the storage, whatever SAN you have inside the DC. So inside DC you have server, inside DC you have your storage, but where is your client? From where you are getting the request? From the branches. And in between you can use these ISPs. They are providing you the transport. So auto, failover, load balancing, whatever, everything we are getting. Okay? Are you clear on this particular part? What is the ISP role here? ISP is providing you the transport. That means, Mhm. so any changes are required in ISP also, just like a simple connection, what MPLS connection is having now. Can you do any change in the ISP side? Will they allow you to do any change? No, that's the reason I'm telling. We can't do, no? This is only from the client side, right? Yes, so not only client, but the data center as well. So if you see Okay. that what is the topology, what is the infrastructure we are supporting, here you can see. Okay, this Okay, I SD-WAN, mean, this SD-WAN solution is for enterprise network. okay. Okay, Okay. and it's not Yeah. only for the corporate, but it's for all the traffic. So you will not use internet only for the corporate traffic. You may have your voice, you may have your guest, you may have your other traffic as well, your internet as well. So here in this diagram you can see that you have data center on the top. So I have DC and DR where I have my servers and the storage, and then I have my branches. So where is my SD-WAN solution fits? My SD-WAN solution is this yellow circle. That means I have my V edge or my branch device. That branch device is using as a edge device. So you can see here that this edge device is going to this MPLS PE. So you can think your device as a CE, customer edge. So I have my devices as my customer edge. Now this PE is going inside P, provider edge. Here also, this is my CE. This is going here. Now here you can see that this is my CE plus PE. Means this is directly going to the ISP. So here I have my provider edge. Here this is my P, customer edge or provider edge, both. So either you can directly terminate to the ISP, or you can terminate to some other device that will be terminated to ISP. Both options are there. But here is your fabric, Viptela fabric, and say any request from where it will come. It will come from branch. So from here user is sending request. Now this request either can use MPLS or it can go via internet, but it has to reach to the server that is hosted behind. So from here the request will process, but here I have storage area network as well. That is in the traditional network also we have. So we have the automation, we have the SD-WAN solution in this portion. This portion will be some ACI, some NSX.
This particular portion in the bottom, this is your campus area network. Here you can do DNA or SD access. Okay, but here That means you have your SD-WAN. Yeah. what I understood here. Okay, Mhm. in the DC side, they are using to the ACI concept, right? For the Mhm. all the In the LAN. SD-WAN kind of in the LAN side, right? In the I- WAN side, ACI again yeah. is different and your Yeah, SD-WAN okay, is okay, different. yes, yes, correct. Means whenever user is sending the traffic from the branch in, right? Earlier in the MPLS selling, either you will go ISP1 or ISP2, right? Depends on the policy, correct? Yes, So correct. while using the SD-WAN, what happened? Those what we have done manually, right? All these things are going in automatic, correct? That's In correct. case the packet drops or link down, it will be automatically divert on the secondary link. That means here we are saving the time, correct? Correct. But Correct. remaining process are the same as it is, right? So one question is here: whenever you are connecting a new device for SD-WAN, right? That means that device having only the data plane and control plane. All these things are separate, which will be installed in your data center, right? Yes. So For you have for the option. money, So you have option. yes. Either you can install in the data center, so your control plane may be in the Mm, data center or it may be hosted at Cisco. So correct. you don't Okay. need any type of software installation in your Mm, premises. It can be okay, hosted right. control plane in the Mm, cloud or mm, it can be your mm. infrastructure. Okay. So earlier we managed these devices by the Tloc server or IS, right? So now how can you manage the devices? That Same means thing. we have to Same same thing. thing, right? Yeah. Same. Yeah. Mm-hmm. Everything will be the same. Okay. That means it is using the two step, right? For the control plane, it is going to the DC and coming again for the data plane, also going to DC and coming back, right? That Before will taking check. the decision. That will check that how it is working. Okay. 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 Great. Mhm. So here also you are using the same model router or some specific devices are there for that, like 40 gate routers or something. Say 40 gate or 40 net SD-WAN is different. We are using Cisco Viptela SD-WAN solution. So at the Okay, this moment, is the device name, right? yes. So at the moment, you Okay. can see here the VHV manage vSmart vBond. So at the moment, there are so many vendors, and all the vendors they have their own SD-WAN. Like Juniper, they have their own. VMware, they have their own. SD-WAN, Fortinet, they have their own SD-WAN. Silver Peak is there. Nuaz is there. So there are so many. Now all these controllers are software, but this vEdge, this can be software, this can be hardware. We have option. But these controllers we manage vSmart vBond, they are purely software. Okay, cloud integration. So these are the challenges with the traditional wide area network. It's very difficult to scale either horizontally or vertically. The cost will be very high. The operational complexity will be there because you have different engineer to manage different things. So all these things are there. I'll give you one good example. Suppose later on a day, if management tell you to upgrade the image at your 4,000 branches, and suppose if you have 10K devices, how you will do? You don't have other option in Cisco. Either we have option, but generally we are not using Cisco Prime or other infrastructure to push that image to all the devices at a time. But here what you can do, from one place you can push all the images to all the V edges in your say 4,000 branches. So that will save your time. Even we have some other options as well to save the time. Yes, Prime through we can push it. That's correct, but everyone is not using Prime. So here by default this is
that you can push all this configuration and the images from a centralized place. Yeah, SolarWind also you can do it. But again, you can see that is the disjointed solution. Means you are using some third-party tool inside the fabric. Here inside the fabric you have all these options. So inside single solution you can push the images, you can change the routing information, you can create the VPNs automatically, you can manage all the reports and everything, you can integrate with the cloud, and you can do some other stuffs as well. So here inside the Viptela fabric or Viptela solution, we have all those things in a single shot, in a single fabric. Otherwise, for everything you need some other tools. For image management, suppose you need other tool. For policy management, you need other tool. For reporting and analytics, you need other tool. For other options, for other securities, for VPN, you are needing some other tool. So you need some other tools, but here everything is unified inside single solution. Correct? And this is the agenda that we are going to follow. So first of all, we'll learn about the solution. Then we have to perform a lab task, that how we can bring up the data and the control plane. And then we have some very basic labs like device dashboard, vManage dashboard, some basic template features. So till this point, you can mark this as a basic. And then from policy onwards, we have some advanced stuffs, like how the routing happens, how we can create the policies, how we can do the troubleshooting, and those stuffs. Okay, and it will take so much time to complete this course. I don't know how much time it will take, but it will take time. Okay, so let me show you that how you can use the lab, and then we will close the class for today. So today we are going to discuss about the SD-WAN Viptela devices. We have control plane devices and we have data plane devices. Inside control plane, you can see here on your screen, we have management plane devices such as vManage. Then we have orchestrator plane device such as vBond. It is coming twice here. So we have vBond, and then we have control plane device such as vSmart. That means in the control plane you will find vManage. So you have vManage, then you have vSmart. Please mute from your side if you are not asking anything. vBond. What is the use of vManage? Management plane we have to control through vManage. Okay, great. Plane we have to manage with vSmart. Okay. And our data plane we have to manage for vEdge through. Yes. And what about for the vBond? vBond is used as a orchestrator. So vBond has various work. The most important work that it is doing the authentication in between, say, vSmart, vManage, and vEdge. So it is working on behalf of control plane and data plane. The first time the devices will be registered to vBond, and then it is passing the information to vSmart vManage plus the vSmart vManage information to vEdge. So it is used as a authenticator plus it is used as a orchestrator. Then finally we have vEdge devices who is working inside the data plane for the actual data movement. Okay, we'll see all these things one by one. So let's discuss few points about all these things one by one. You can see here, if we talk about vManage is
the management plane you have inside Viptela fabric. That means with help of vmanage, you can manage all the Viptela devices. Yes, we have vmanage dashboard, and from that dashboard, we can manage all the components inside the SD-WAN fabric. So that's why we have centralized management. We can add this particular plane with third-party API, and with help of API calls also we can do all sort of management, and we can do everything with respect of API. So whatever we can do with help of CLI, like certificate management, configuration, device management, everything we can do with help of API. That means with dashboard or REST API, we can do configuration, we can do monitoring, we can do management, everything we can do. Now, whenever we are talking about, say, vSmart, vManage, vBond, all of these control plane devices, they are 100% software. That means you can install all the software over bare metal, over, say, hypervisor ESXi or KVM, or any type of hypervisor. You can install these vManage devices because they are purely software. Now the second controller we have is the vSmart controller. With help of vSmart controller, you can see there that vSmart controller is nothing but the intelligence behind the fabric, and with help of vSmart controller, you can provide routing intelligence, encryption and key management intelligence, say for VPN. Then you can do centralized policy management, means from vSmart you can push the policy to n number of VH. Then we can do some sort of service chaining. That means we can redirect the traffic towards, say, any type of firewall, VPN gateways, or say load balancer, or say any type of VAS devices. So whatever services you have inside your fabric, you can redirect the traffic with help of, say, vSmart policy. Then we can do the traffic engineering as well. All these things we'll see in the lab section. We have separate lab for all these things. So for routing, for service chaining, traffic engineering, we have labs. We'll see that. Again, this is also software that you can install over any of the ESXi. Means you need hypervisor. On the top of that, you can install this particular vSmart software. Then finally, we have vEdge. Now in vEdge, we have option. Either we have the hardware type of vEdge or we have software type of vEdge. Now when we are talking about the hardware type of vEdge, so you may have, say, 100 series, 1000 series vEdge, you have 2000 series vEdge, you have 5000 series vEdge, say in terms of hardware. In terms of software, you have vEdge Cloud. Sometimes they are telling this as a, say, vEdge. Sometimes these devices, these software based devices, they are termed as a cEdge. So vEdge and cEdge, cloud based vEdge and hardware vEdge we have. If you want to know more about this particular vEdge, then obviously you can refer the site. Let me show you that from where you can get the data sheet of all these vEdges. Okay, so what you can do, that you can go to this particular URL, and here you can click to the dashboard. This will not work. Anyways, you can go to this URL and you can click here to vEdge routers. If you click to vEdge router, then you will get the list of, say, cloud based or 100 or 1000 or 2000 or 5000. Okay, and here we have the list of, say, components, installation, maintenance, troubleshooting. Let me show you some of the summary of these devices, but for more detail you can refer the site. Now if we are talking about 1000,
V Edge 1000, V stand for Viptela, not virtual. So if we are talking about the V Edge 1000, then you can see it's very much similar to the Cisco hardware, where we have 8 SFP port. We have the LED status. So here on the top you can see the LED status. We have the LED status for Ethernet port. We have USB 3.0 expansion slots. We have management interface. We have serial or console interface. So what is new here? You can see here we have the management interface. Further, we learn in this particular Viptela fabric that everything, all the interfaces are inside the VPN. So inside VPN, first you have to go inside the VPN and then you have to go inside the interface. We have dedicated VPN, say we have VPN 0 for transport. We have VPN 512 for management, say MGMT. So obviously this interface will come inside VPN 512, and then we have service VPN, say from VPN 1 to VPN 511. These are the service VPNs. We'll see more about all these VPNs in the upcoming sections. Then obviously you have the console port, you have the serial, SD card slots, all these things you have. Again, the new thing you have here is the introduction of TPM chip. You can see here we have the TPM chip for anti-counterfeit and secure authentication. TPM chip is nothing but trusted platform module. With help of this trusted platform module, you can store the RSA keys. Later we will see that while we are bringing up the control plane. So first of all, you have to bring up the control plane where you have the vmanage, vsmart and vbond, and then you will bring up the data plane where you have the vEdge. So at that time, all the keys will be stored inside the TPM chip. Okay, that means whenever Viptela, they are shipping these devices, they are shipping with these TPM chips where you can install or you can store the certificates. Okay, so likewise, if you check the V2000 hardware, you will find that not only it has 8 1 gig SFP, but it has 2 10 gig SFP plus as well. That means if you want some more throughput, you can use V2000 or maybe V5000. Apart from that, rest everything will be okay. Here you have the dual power supply, redundant fan, and plus you have the TPM chip. So hardware wise, very much similar to the Cisco devices, because after some point of time, these are the Cisco engineers who form their new company, say Viptela. Then they have developed the SD-WAN, and after some point of time, again Cisco has acquired this company. So most of the thing you will find related to or very much similar to Cisco only, and even the commands are very much similar that what we have inside the Cisco devices. Now that is not covered in this particular slide or in this particular section, that inside the branch devices. So not only they are supporting the V-Edge routers now, but they are supporting the Cisco ISR and ASR as well. So if you check the new innovation inside the SD-WAN solution, you'll find that in the branch side, in the hardware side, they are supporting these devices nowadays. That is the ASR 1K, ISR 4K, even the ISR virtual as well. And you can check the hardware and the software metrics. So suppose if you are using the ISR, say for example here ISR 4221, so inside the ISR iOS XE, because these devices they are using iOS XE. So inside these you have to use minimum 16.9, and from the vManage side you have to use 18.3 minimum. Now we have 18.34 as well.
So if you are using these combination, then only your IOSXE as a branch devices or as a branch routers, they will join the fabric. Okay, so please check this, and here you can see the release notes and all those things. Okay, all right, we'll move. So not only we have the high end bus, but we have the low end device as well. Suppose if you have a small branch, you don't want 1 gig or 10 gig of throughput, you have 100 MB throughput devices as well. Plus we have couple of wireless devices as well. Okay, who is supporting say LTE, they have built-in LTE with mini SIM. They have modern Syra wireless. They have carrier like AT&T. They are supporting carrier for AT&T, NTT Docomo, etc. Alright, so these are the hardware things that we have discussed. If you guys have So, anything, yeah, you can ask. Ratnesh ji, so the 100,000 or these devices are using the branch side, correct? Yeah, branch plus the data We center we can use. branch, okay, branch plus data center both. Yeah. So data center, obviously we want to use some 1,000 or 2,000 or 5,000, depends upon the size of data center. If it is a small company, a small data center, then why you will use 5,000, correct? Correct. Okay. Now we'll discuss about this particular diagram, because again this is very important and logical diagram. Here again we will find that we have various features related to the solution. And what are those features? So here you can see in the bottom, this portion, it is like robust and secure infrastructure. So once you are bringing the control plane, once you have the data plane, once they form the Viptela fabric, so everything will be inside the Viptela fabric. Once you do all sort of say hard work, then what you are achieving? So you are achieving first of all independent of transport, means irrespective of MPLS, internet, 4G, LTE, your traffic. So your say traffic, they don't know actually these things, because on the top of everything we have IPsec running. So my traffic, say it is going inside one IPsec tunnel. Traffic means data traffic. So it is going inside the IPsec tunnel, and they are leaving outside of IPsec tunnel from one branch to other branch. While we are talking about the control plane traffic, so for control plane traffic we have different tunnel, that is the DTLS or TLS. So they are reaching about the say controllers from the V edge, and then they are coming back. I will see that more on this, that from branch to branch we have IPsec tunnel, from branch to control plane we have DTLS or TLS tunnel. We'll see that, but this is independent of transport. That is the first goal of any SD-WAN solution, independent of transport. Then zero touch provisioning we have. So later in our lab section we'll discuss about ZTP and what are the requisite to do ZTP. That means simply you plug your V edge to the interface, and this V edge will upgrade the image, upgrade the configuration, it will join the Viptela fabric, and your data plane start working. So not only data, but data and control plane with zero touch provisioning. You don't need to do any sort of configuration, simply you have to connect the cable, that's it. Then third, you can see at the moment you bring up the control plane and the data plane, your fully secure fabric, so your IPsec as well as your DTLS will bring up. At the moment you do the configuration, at the moment you bring up the fabric. Then the fourth very important point here,
that by default we have segments. So they are supporting segment routing as well. Otherwise it's very tedious inside any of the network, inside any of the infrastructure to do the segmentation. What does it mean? So we know that everything will be inside VPN. So your transport or your control traffic will be inside VPN 0. Your management traffic will be inside VPN 512. This is my management plane. Then we have service VPN. So service VPN from VPN 1 to VPN 511. And these say service VPN. So if I draw the diagram, say in this section, I have one VH, for example. And for the sake of simplicity, I have only one transport, say MPLS for the moment. So obviously this interface will be inside VPN 0. Suppose this is gig 0/0. So I am getting my control from this interface, correct? But this VH can be connected with say other router, some third-party router, maybe Juniper, Cisco, IVA. This can be connected to LAN. So whatever prefixes you are learning from the third-party vendor, from the other LAN, so this interface is say gig 0/1, this interface say gig 0/2. They can be inside VPN 10, they can be inside VPN 20. Okay, so you can see here that suppose if the traffic will go from one branch to other branch. So I have one other V edge here in the DC. This is in the branch, and DC also I have one VPN, say VPN 10. Now my traffic from this particular, so it will come from say VPN 10. It will go inside, means it will use the tunnel of VPN 0 IPsec, and then it will reach to the other side VPN. And here also suppose this is gig 0/0 inside say VPN 0. Now later we'll discuss that VPN 0, we are telling that VPN 0 is used only to do the control connection, but you'll find that on the top of VPN 0 we have IPsec tunnel for the data traffic, and we have say TLS tunnel for control traffic. Both things are there on the top of VPN 0. So traffic will move inside the IPsec tunnel, inside the segmented VPN, say from one side VPN 0, for example from VPN 1 to VPN 1, and from VPN 2 to VPN 2, like that. Suppose if you want to move the traffic from VPN 1 to VPN 2, you have to do some sort of route leaking. So by default, different VPNs are not communicating. Say suppose if they are in the same VH router, is still cross VPN communication will not happen. You have to do some sort of route leaking, or you have to create some sort of extra net policy that we'll see. It's very much like by default VLAN 10 and VLAN 20 will not communicate. You need to do some sort of SVI, or you have to do some router on a stick. Likewise, these VPNs are not doing the cross communication inside the same VPN across all the devices. So VPN 1 across all the devices they will communicate, but different VPN can't communicate. So that's the point number 4, that they are supporting the segment routing. So you can see here that the point number 1 is independent of transport. Whatever transport they have in the underlay, they don't care, because on the top of that they have IPsec as an overlay. Then they are supporting the ZTP, zero touch provisioning. They bring up or they secure the tunnel with respect to say IPsec or DTLS. They are supporting the segment routing. So this is a 1, 2, 3, 4. Now the point number 5, that once you bring up, you want to ask anything? Please ask.
Ratnesh ji, so as per my understand, in the branch to branch, तो जो ब्रांच टू ब्रांच जब कम्युनिकेशन करते हैं तो VPN 1 2 3 that type of thing, and it is all thing is a communication with only IPsec through, means IPsec tunnel is one, but in the device branch side is a lot of VPN we have to create for the transportation management purpose like this one, correct? Yes, yeah, 100% correct. So when we'll do the actual device configuration, जब हम लोग actual device configuration करेंगे तो उस टाइम में हम लोग और क्लियरिटी आएगी. अभी वी आर जस्ट चेकिंग द फीचर्स कि क्या क्या फीचर है इसके अंदर, लेकिन जब एक्चुअल में डिवाइस कॉन्फ़िगर करेंगे तो विल सी दिस थिंग्स. ओके. तो लेकिन वो कम्युनिकेशन तो एक ही IPsec थ्रू एक टनल ही थ्रू करेगा, करेक्ट? हाँ, बिकॉज एक ही जो टनल है वो आईएसपी से कनेक्टेड है, मीन्स एक ही इंटरफेस आईएसपी से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली उसी के थ्रू जाएगा. इसी एक you can think this as a big VPN zero pipe. Inside this big VPN zero pipe you have all the other VPNs, but we'll see more on this. Okay. Okay. Okay, so for your interview, if you go in interview, then they can ask you that what are the top SD-WAN features. Then you can say that this is independent of transport. It is supporting ZTP zero touch provisioning. The tunnels will be automatically formed, means it will auto secure the tunnel. You don't need to do any sort of configuration with respect to IPsec, that is the data tunnel, and DTLS from control plane to the data plane and vice versa. Then they are supporting the segment routing, otherwise it's very big headache to do the segment type of routing. Then we'll see the 5 and 6 as well. So let me clear the screen. 1 2 3 4. See, number 5 feature they have that the data VPNs will be automatically bring up, and by default they are supporting full mesh configuration. So suppose if you have VS devices, so suppose one VS device at data center 1, other as say data center 2, other as branch 1 and branch 2. So what they will do, they will form the full mesh type of VPN connectivity like this. So suppose if you have 4 devices, that means your total number of tunnel is 4 into 3 by 2. That means 6 tunnel they will form. 6 IPsec tunnel they will form by default. We'll see all these things. Now you have option with help of VA Smart policy. You can make them hub and a spoke, or you can make them hub, or you can make them partially a mesh. So all these things you can do with help of VA Smart. Again, that you have the centralized management for routing and for other intelligence. Those things you can do. So this is the step number, or this is the feature number 5. The 6th number feature that we have, that we can do the service insertion. What does it mean? What you can do, suppose you have DC1, you have DC2, you have branch 1. Now suppose if you have firewall here I have my firewall, and you want to communicate from branch 1 to DC2 and you want to exit out. What you can do with help of service insertion feature, you can redirect the traffic towards the firewall, then it will go to DC2 and then it will go out. Okay, so this service insertion, or you can say some sort of traffic engineering, is there with help of vSmart policy, with help of global policy. We'll see that, but these features will be there inside, say, step number 1, that is the robust and the secure infrastructure. This is with respect to the infrastructure. Then application aware network. This is again the feature number 2 for the SD-WAN, or inside the SD-WAN solution, that now you're making the network with respect to applications. That means the network that will support the application. So what we have app visibility and policies. So not only the local app, even we can track the cloud hosted app as well. So both the things are there.
in your data center you have the applications running. You can check the visibility, you can generate the reports like that. But whatever apps or features they are hosted over cloud, such as say Office 365 or say Azure, your hosting app over Azure or AWS or Salesforce, etc. So n number of apps over cloud also you can track that feature you have. Then you have this WAN control path. This is again one huge topic, why the companies they are moving towards this SD-WAN, that your traffic can either take internet or can either take MPLS or LTE. So you have this WAN path control, and you have the feature of auto load balancing with respect to SLA criteria or parameters as well. So this feature is also there. Sorry. Then we have the feature whatever we have in the traditional Cisco world, that we can provide the QoS and we can change the security keys or parameters as well. Okay, so these things will be there. So this was there in the Cisco as well. Here the way that you are providing all these things will be different, but security QoS also there. We can do mirroring, port mirroring, we can do ACL, we can do some route policy. We'll see all these things. We can create prefix list, ACL, all these things we can do. Then finally, in the top hierarchy, we have the monitoring and the visibility, and we can do automation, orchestration, and the operations with help of third-party API or with help of vManage. So all those options will be there. So now you can see that feature-wise in the underlay, we have the features related to the independent of transport, ZTP, fully secure fabric, segment routing. We have different use cases for VPNs as well with help of the vSmart policies, service insertion. Then in the, you can think this as a vSmart policies. With respect to vSmart policies, we have app visibility. Again, this will come under reporting. But we have the app visibility and the policies. Policy means vSmart. Then we have WAN path control. Control again means vSmart policy. Then we can have local or the central policy. We can put from the vSmart as well, the security parameters. Then finally, for the orchestration, we have vBond and we have vManage for the monitoring and visibility plus the API integration. So all these things are possible inside the Viptela fabric. Once you bring up the fabric, then you will get this type of logical diagram. So where from one branch to other branch, I can have IPsec tunnel. So from here to here, I have IPsec tunnel, and from branch to the controller, we have DTLS or TLS. We'll see about this. And all the controllers, they also have the connectivity, that is again the full mesh. Controllers, they are always forming either TLS or DTLS. Only from one branch router to other branch router, from one branch router to other data center. So from here to here, here to here, here to here, here to here, we have IPsec tunnels. But from branch to controller, we have different tunnel. We have the REST API, vManage, controller, vBond, and all these things. Yeah. Any query you can ask? Yes, yes, recording is on. He is sitting here. Okay, so Ishwar, they are looking for you. Actually, he's sitting behind me. I'm using some headphone. Okay, just a minute. Okay, he's replying over WhatsApp. Okay, so three things are there already for us. One is the
installation over ESXi or KVM. Then these virtual machine, they are installed. After installation, they have some basic things. I will see that. So these 1, 2, 3 is there, means installation is there. So what we have to do in this lab, first of all, we have to create minimum configuration, and that's very dangerous thing, that what is the minimum configuration to deploy vmanage, vbond, vsmart. So whenever we are talking about minimum configuration, that means the show running. So at that time, what are the things you have? So in Cisco routers, if you check show run, then you will find what type of output. You will find that some host name, then the image version, then some AAA configuration, then some say OSPF configuration, then some QoS configuration, like that. Okay, but here in Viptela Fabric, the configurations are well structured. It's not that anything is coming after anything. Well structured means that first of all you have system-wide configuration. So once you have system-wide configuration, like inside system-wide configuration, what is the host name, what is the system IP, what is the vbond IP, we'll see that. There are few mandatory things that we have to put inside system-wide configuration. Then the second component is VPN-wide configuration. So either it's a VPN 0, VPN 1, VPN 512, all those configurations will come. And finally you have policy wide configuration. So basically we have only these three things: system wide configuration, VPN wide configuration, policy wide configuration. Now if we go one by one, suppose if I go inside system wide configuration, inside system wide configuration, inside system wide configuration we have to do configuration for, say, system IP. You'll see that obviously it will start with host name. Then we have to tell what is the organization name. Then we have to tell what is the vbond location. So vbond location IP. And then finally you have to tell that which site, what is the site ID of this particular branch. System IP is just like loopback address. So let me write here. So what are the things we have? Say starting with host name. So host name, like any device host name is there. So it's no brainer. Then we have system IP. Now system IP is very important. This is the IP over the box. So suppose this is my V edge. On the V edge you can think this as a loopback 0 IP as well, this particular system IP. So this IP is the IP over the box, and the use of this particular IP, that whenever we are creating some sort of, say, a DTLS connection or Tloc communication, at that time the system IP will be used. The system IP will be used inside the DTLS connection to establish a DTLS connection between a VEdge router and the control plane. The second important thing about the system IP, yes, that this system IP is one of the component inside Tloc. We'll see that. What is Tloc? What does it mean by Tloc extender? We will verify that. So branch to branch communication not coming for the system IP. Branch to branch communication is coming with IP address, not with the system IP. But still, for branch to branch communication, we have Tloc. We have Tloc, means local Tloc and the remote Tloc. And inside Tloc, one component is system IP. But whenever you have branch to branch communication, that means you have remote and the local IP addresses, because for site to site VPN you need local and the remote IP.
correct? So that you'll find Tloc, and Tloc is 3 tuple. We'll see that one component is system IP, color, and encapsulation. Okay. Why someone is asking proof? You are here. Okay. Okay, no worries. So we'll move and we'll see the third component. Then what we have vBond location IP. Now all these devices, they have to reach where? They have to reach to, or they have to create communications with vManage and vSmart. vBond communication or connection will be teared down after some point. They are creating some permanent tunnel, say DTLS or TLS, with other controllers. Now, first time whenever any of the device is bringing up into the fabric, first of all they are communicating with the vBond, because vBond is working as an authenticator. Then vBond will pass the serial number and the chassis ID to vManage vSmart, and vBond will pass the IP addresses. Generally it is passing the IP address of vManage to vEdge. So this particular vBond, he is telling about the vManage to vEdges. He is telling about the serial number and chassis ID to vManage to do the authentication. So once it passes the information, then these devices, they are forming the permanent tunnel. So this is temporary tunnel. So this tunnel is temporary tunnel. This will be tear down after bring up. But if you see your control connection, you'll find permanent tunnel with vManage and vSmart. That's the use of vBond IP. Means you should have reachable vBond IP. Yeah. So Ratnesh, it means first is connected to vBond 3 is given to all information to vManage and vSmart. After that he getting to all required information basic. Then after he is down, this vBond to vSmart or vManage connection. Yes. So first vBond is doing authentication, and their vBond is passing these information, one to vSmart, one to vEdge, and then they are forming the permanent tunnel. We'll see that we have these things in our slide. So we'll see that this complete communication. So after that we have org name. Org name is nothing but the name of the organization, and it is used for the certification process. So for all the component, all the devices across the Viptela fabric, all devices should have the same org name, because they should have the same type of certification or same type of certificate. Inside that certificate you have the same org name. Then finally we have site ID. Now the site ID is also important because it's a location ID for a device. So suppose one of your branch, its site ID is 2005. So with help of site ID you can easily identify that which device is if suppose something is coming from this particular site, the site ID is same. So again I have other branch, say its site ID is 2000, so you can identify the devices that these devices are coming from these sites. So you can say that this is a group of the vEdge, or maybe vBond, or not vBond, vEdge, vManage, and vSmart. Some sort of identification is there, site ID. Alright, we'll see all these things once we complete our lab. Any question you can ask? Yeah, who will provide the certificate? We'll see. We have semantic server or some third-party vendor certificates. We'll see that in the upcoming slides. I have complete slides for certificate. You can see that. So we'll check. Certificate provided by Semantic. Okay. So what is there in the minimum configuration?
In minimum configuration, we have host name, system IP, site ID, vbond location, and org name. These 5 things. So we'll do that for all these devices. Then we have to do this CSR. In our example, we have local root server, but you will get certificate from Symantec, and this process we'll see in the upcoming classes, because this will take some 1 hour to explain that how they are receiving the certificates. So today our agenda is to complete up to this point where we can bring up the control plane. So for that, let me open the. So today we are completing only half of the slide. Tomorrow we'll see, means next class we'll see then more of the things. But yeah, let's do the lab, because that's really big lab. I have started this lab. You can see now I have 5 hours 55 minutes left. Let's see. I have some work now. I'm busy till 15th of December, and then I'm going out. So some problem I have. Otherwise, I generally love to discuss about SD-WAN. Once I am pausing the recording, I think I'm not able to hear. Okay, I start the recording once again. Let's do this lab, and we'll talk offline. Yep. So when you start this particular lab, then obviously you will get all these things in this lab itself. Now you have to go next. Here you can see that you have the lab topology, deploy vmanage, deploy vbond, deploy vsmart. And once you deploy them, first of all you have to do some sort of steps are there. We need to follow those steps. Then only everything will come up. So here we are. I have so many tabs open. I just wanted to close few of them. Yep. So let's do one by one. First of all, I'm going to deploy the vmanage, vbond, and vsmart. We'll do the baseline configuration, and I request you guys to complete this lab. This is the overall output. So once we do the baseline of the configuration, then we'll find this particular topology will completed. In this particular example, we have 3 controllers: vbond, vmanage, vsmart, and we have 4 vh. Name is something like vh1, dc1, vh2, dc. Like in dc1 I have 1 vh, dc2 1 vh, branch 1 vh, branch 2 1 vh. It's like that. Okay, so let's go next. So in our so in our topology, the branch VH branch 1 VH branch 1 means it is a branch side VH, correct? Yes, yeah. So logically you'll find that, say DC 1 VH, you'll find some different site ID, DC2 VH some different site ID, then branch 1 different site ID, different site ID. So everywhere you'll find that because this is a different branch, so site ID is different. So that is unique system ID. System IP is different, site ID is different, correct? System IP is a IP address, and site ID is a number. So site ID is also unique. Yes, yeah, it is unique, yeah. So for all the sites, so in here our topology wise means it is a data center 1, data center 2, yeah, and branch 1, branch 2. yes, yeah. So once you complete this lab, so everything will be up and running. Okay, and these are the IP addresses for the VPN 0 for the transport. So before starting that, I am going to discuss one very important point here. So while we are doing the baseline system configuration, or we are doing the mandatory configuration for system, why do we have 5 important things, correct? Say host name, system IP, site ID,
org name and vbond IP, correct? Then we have to do VPN 0 configuration, and it's very interesting in Viptela fabric that in Cisco how you can go to configuration. You type conft, you can go to global configuration mode, correct? Now from here in Cisco you can type interface gig 00 and then you will go to the interface mode. That is not the case here in the Viptela. So once you are there in the conft, then you have to type VPN 0 or 1 2 whatever. Then you will go inside VPN mode, and then from here you have to go inside interface. That's one major difference here in the Viptela configuration. The first thing. The second thing, that we have some purpose made VPN starting from VPN 0 1 2 up to VPN 512. Now this VPN 0 is used as a transport VPN. From VPN 1 to 511 they are used as a service VPN, and then this VPN 512 is for management VPN. Now this transport VPN means now the interfaces inside VPN 0 you are connecting over the either MPLS or internet, so over the ISP. So these interfaces that you are seeing here, these are under VPN 0, but this VPN, this may be under VPN 10 20 whatever. Okay, so these VPNs are under VPN 0, these VPNs are under VPN 0 because they are using they are used for the transportation, and this transport VPN only have a connection, have a control connection with the controllers. They have temporary connection or temporary tunnel with vbond, but they have permanent tunnel with vsmart and vmanage. Okay, so with help of this minimum configuration, let's do the lab. So we are going to deploy the vmanage. Click launch. You'll get this. Now if I scroll down, you can see here the minimum configuration that I told you: host name, system IP, site IP, org name, and the vbond IP. So what's the host name? The vmanage one. So what you have to do here, you go to conft like in Cisco, then you can go to system. Now I am under system, global system mode. Here I can give say host name, say vmanage 1. Here I can give the organization name. So organization name I have just copied, so let me paste here as it is the org name. Then I can give the say system IP, say 172.27.0.12 or 11. Let's see what's the system IP. So 5. Then I can give the vbond IP, that is 2.2.6.2. So 1 2 3 4. Then I can give the site ID. So what's the site ID? Maybe 1002. Yeah, 1002. Now once you do all these configuration, you can check this configuration that you have done. Can we give the DNS name? Can we give the DNS name in the organization name? Say this organization name is used inside the certificate. So DNS is again, I do not write your company name. So here you can give say the name, say company name ABC XYZ whatever, but when we are talking about DNS we are giving inside VPN 0. Okay, VPN 0. If you go inside say VPN 0, here you can give DNS, whatever DNS name. Say if I am inside system, do I have option for DNS? You can see I don't have option for DNS. What options I have? So you can give AAA
archive, clock, description, GPS location, hostname, logging, NTP, orgname, port hop. So these are the options you have. Radius server, SP organization name. Now this you can give SP organization name. Tunnel, TACACS. So all these basic things, system-wide things we have. We'll discuss this. We have independent slides for that. We'll see that. So what we have done. Yes, yeah. So likewise, yes, 100% correct. So suppose if you are in the Cisco premises, your org name is like Cisco 123. So whatever company is there, in the org name, obviously the company name will come because they have to take license. This certification process is purely based on license. So suppose if you don't have license, your control data plane will not come up. Okay, so all the companies, first of all, they have to take license, then they are getting the unique certificate in terms of org name. Okay, show configuration. If we do, here you can see that these are the configuration. Now we can validate this configuration and then we can commit, like in Juniper we are using. Okay. Now this is writing the configuration. So now my configuration has compiled. Now if I do, I can go top. If I do show configuration, nothing is there because this configuration is already done. So what is the real meaning of this validate? Either you can validate or you can do commit check. So before writing any configuration, you can check that you have given the correct things or not. It will do the baseline check. Suppose if I give system IP as a 300.222, something illogical, it will fail. So later we will see that the usefulness of this validation. If we create different policies with some same common things, then it will throw an error. Alright, so After commit he save configuration. after committing, Commit command he save the configuration. save the configuration. Okay, so you are telling to save the configuration. For that we can Yes. do right, like No. So what is meaning of this use of the command? okay. So if you work on Juniper, so you may know that what is happening with the commit, but you have uncommitted changes. So what you have done, that you have show run. Let me draw here. Just a minute. Yeah. So what is happening, that you have one running configuration over RAM, and then while pushing the configuration, so suppose you have added few lines. Now these are some uncommitted changes. Now before commit, before pushing that configuration to your RAM where you have the actual configuration, you can validate this. After validation, once you commit, then it will come here and it will come to the existing code, means it will attach with the existing code. Otherwise it will be as used as an uncommitted change. That means what will happen, let me show you. So if I go to system, GPS location, let me give the correct GPS location, latitude 444. I think now it will take. Let me check the format. Okay, minus 40. I think it is okay. Longitude, say 55. Done. Now you validate this first. Suppose I am validating, validation check. Now if I do not commit, I exit, it will ask you uncommitted change found, commit them or not. Yes, no, cancel. So suppose if you type no, that means there is no GPS command, there is nothing related to GPS, so now it is not coming in the running configuration, correct? But if I do that compilation,
if I go to system and suppose if I commit this, so the command is there, commit and quit. Now if I check the show run now, you can see this GPS command, correct? Alright, so likewise we can, yes, yeah, it will push inside the running configuration if you commit. If you do not commit, it will not take that command. Okay, so likewise we can configure the VPN 0 as well, but whenever you are doing the configuration, say for vmanage, on the top you can see we have two configuration. One is system wide and other one is a VPN 0 configuration. So let's do the VPN 0 and VPN 512 configuration as well. No problem, sir. So what I am doing inside VPN 0, one wrong interface was there, I removed that. I put ETH0 interface inside VPN 512. It will take IP from the DHCP because we have public DHCP server. So that's why it will refresh the connection. So that means if you go and check show interface description, you'll find that now inside VPN 0 I have correct interface. That is down because I need to configure, but the ETH0 they have took the public IP from DHCP, because if you see the configuration for VPN 512, you can see it is taking IP address from DHCP. Likewise, let's do the configuration for VPN 0. So VPN 0, where I have ETH interface, I am giving IP 22272. It's a tunnel interface. It is allowing all the services, and if you check the notes, you'll find that if you are working in the VXLAN environment, then you can enable the MTU as a 400. In our case, we can leave it. If we want, we can have DHCP helper. Will see. If we have multi-hop away, then only we are using that, correct? So now you can see that what I have done so far. Show interface description will give you the IP address. Yep. So VPN 0, we have one IP address, that is 2272. This is up and running. This is the tunnel interface. So if I check the VPN 0 configuration, this is the configuration that we have done. It's a tunnel interface. Okay. And then we have a static route pointing towards the gateway. So that means gateway should be reachable. I can do 227.1, that is my gateway, and I am able to ping. That's the basic configuration that we are doing at the moment. So what we have done so far, we have done the baseline configuration for the system, then VPN 0. Inside VPN 0 we have ETH1, where we have put the IP 2272, and then we created one static route pointing towards 2271. You can see here default route, yeah. And then we have one VPN 512, which is taking the IP address from DHCP. So only this configuration we have done. Okay, same like you will find that while doing the configuration for vBond, I'll give IP 2262. Again their gateway will be 6.1. The VPN 512 will see that all these things. And for vSmart we have 2252. For vBond we have 2262. For vmanage we are using 2272.
So this is vSmart, this is vBond IP, this is vmanage. Now if you check the system wide configuration here, so if I do show run, you can see here the vBond IP is 2262. So all the devices, they have to give the vBond IP as well, except the vBond itself. So vBond is a vBond, you don't need to give the vBond and then IP. Suppose if you are giving the vBond and then the IP, you have to use one term called local. So this will tell this device that hey, you are the vBond, because actually this is the vBond. So let's do this configuration for vBond. Yes, yeah. This. Okay, and here we have to use this word local. Okay, that because this is the vBond. So once you done this, then you can go to deploy vSmart. Now vSmart, likewise vmanage, you have to do the configuration. So first of all, you have system wide 5 things, like what is the host name, system IP, site ID, org name, and the vBond location. So you have to put that, and then you have to do the configuration for VPN 0. But before that, you have to assign a IP address that will be over the management interface. So once I do that, then it will restart the session and it will get IP address from DHCP. Finally, we'll do the configuration for VPN 0 as a tunnel interface. IP is 2252 and it is pointing towards the gateway, that is 2251. So we have a static route toward the gateway. Let's paste this configuration as well. Okay, so we'll wait for a minute. We'll finally verify all the configuration that we have done, and let me quickly verify vBond one more time. The vBond, I haven't done the configuration for the VPN 0, so no problem. I'll do that for vBond. Now we are very much done. It hasn't copied. Let me do the copy paste one more time. Oh, it's actually down. Okay. Okay, then we can check. So vSmart, even vSmart, we haven't done the configuration for the interface. We'll see that. We'll verify all those configuration and then we are good to proceed. So let's wait. Let me complete the vSmart first. Basically, we have done very simple thing. We have done the system wide configuration, and then over VPN 0 we are doing the tunnel type of configuration. Paste. Okay, so we'll see here, show interface description. That is very important. VPN 0 has this IP, system has this IP, DHCP has this IP, that is VPN 512. Show run or show interface description. So gig 00 has this IP, system has this IP, and then DHCP has this IP. Let me refresh this. We manage. Show interface description.
So ETH0 has this IP and all have this IP. Now if you have to verify, what you can do, you can ping first of all your gateway, then you can ping to vBond gateway. This is vBond IP. Then you can ping to 5.1, that is the vSmart, and then you can ping to 5.2, that is the vSmart IP. So we have the full end-to-end reachability. And if you go here to verify controllers connectivity, then you'll find that you have to do the ping test. CDP enable, you're asking. CDP never will not come, but we have show control connection. So once all the controllers are up, they will find where are the controllers. So in that output you will get the location of all the controllers like this. So once it is up and running, you will find the IP addresses for all the controllers in the fabric. It's very much similar, like we can check what other devices are on in the fabric. So far it's okay. Any doubt? Okay. So let's move and complete the next stage, that is the overlay connection. Now some Linux skill will come into the picture. You are going to open the vManage dashboard, and here in the configuration section you'll find you have the certificate option. So now we need to add the certificate. First of all we'll add the, yes, but I okay, that I don't know, bro. Maybe you're not getting full screen. Okay. Mhm. Okay. Okay. Anyways, let's move. So now we have to add the devices. So what we can do, we can go to vManage dashboard and we can add the devices. Once you add, say, vBond and vSmart, we'll add the devices like this. After that we have to do some certifications. The next step, you can see we have 1 2 3 4 5 6 steps. This is a complete certification process. So we'll see that how we can do the certificates or certifications. Okay, so this is the way that we'll do it, but we have one other server called CA. We need to launch that, and then we have some Linux type of things that we'll see. So first of all, let's open the vManage dashboard, where I have to add the devices, and first of all I have to generate some sort of CSR certificates. So let's do that. I'm going to open the vManage dashboard here. So I can type, say, https, and the vManage, it is taking twice the HTTP. So let's
remove this thing first. Yep. Advanced, and then add the exceptions. Username and password will be admin. So now you are seeing that Cisco vManage dashboard, and in the dashboard lab we have one separate lab for dashboard. We'll come to know about all these components. So on the top you can see the status of the controller, your V edges, then the control plane status, the health status, transport status, inventory. So all those stuffs you can see. We have one separate lab for that, so in that lab we'll see. Here in the sidebar you have the dashboard, monitor, configuration, tools, maintenance, administration, and vanalytic. So I am very much concerned about this particular configuration and the devices. So let me go and click to configuration and then devices, because I want to add two controller. Say on the top you have VH list, you have controller list, so you can go click to controller and then you can add vbond. So vbond IP is 2262, you have to give it username and password admin. Here you can check mark this generate CSR, so it will generate the CSR and it will add that device. Likewise I have to add one more device, that is the vsmart, that IP is 2252, username password admin. Here I have option to generate DTLS, TLS. I am generating DTLS. CSR means? CSR is certificate signing request, that will be used to generate permanent certificate. Now we have generated the CSR, say for vbond and vsmart. So if I go to the configuration and certificate, then you will find that we have generated some certificate. So let's see, click here to controllers, and you can see that for vbond we have generated CSR, for for vsmart we have generated CSR, but for vmanage I don't have CSR. So I can click here to the more button and I can click here to generate CSR. This is the CSR. Now for all these three components we have the CSR generated, correct? Now this CSR will use for the other process, that is the certification process. So for that I have one server, CA server, this is my local root server, from where I am going to generate some of the certificates. Where I will put that CSR? I will put those CSR in the CSR folder inside the Linux server, and I will store like vi vmanage CSR. So let me show you that how you can do it. First of all, say you can do sudo user super user something, then I can go to the folder called CSR. So now I am in the folder home Ubuntu root CSR. Here I am going to put vmanage.csr file. What we do in this server? Okay, I'll explain. So what we have done so far, that let me draw here. Okay, so some latency is there in my pen and some sort of network issue. First of all, what we have done, theoretically you can say that we have done the system-wide configuration, correct? Once we have done this system-wide configuration, then what we have done, the step number 2, We have to configure IP address. We manage
So logically then we have done the VPN 0 configuration and VPN 512 configuration. So say system wide configuration, then VPN wide configuration, correct? These two things. Then we have done some static routing. So we have done some static. Okay. Now the fourth step what we have done, we have added the devices. So addition of devices over controller. Controller means we manage. Yeah. Then we have generated the CSR for all the devices like vBond, vManage, vSmart. Correct? Now what we have to do, we have one other server called root server, CA server. Now with this root server, I have to first of all these CSR. So I will copy the CSR here in this root server CSR folder. With help of this CSR, I am going to generate .pem file, that is the permanent file. Now these permanent file I will install on all these devices. Plus I need one public key as well. So that public key plus these permanent files I am going to install for all the devices. So the certification part is with the help of CA server I need to authenticate all my controllers. So for example vSmart. So first of all we have added the vSmart inside the dashboard. So this is my vManage dashboard. Now we have the CSR. So we'll copy all the CSR. CSR will be copied to the root server. With help of that we'll generate permanent certificate. Because all these devices should have the certificate signing, should have the certificate installed in their database, otherwise they will not bring up the fabric. So we need permanent certificate. Now this certification process is something that these devices, so suppose for example only vSmart, he should know what is the public key of CA, and the CA should know how to generate the permanent key from the CSR of all those devices. Okay, then finally when you are installing the certificate over vManage, say for vManage, vSmart, vBond, then only your control plane will come up. So it's a two-way process, means CA will authenticate the controller, controller will authenticate the CA, and then finally you have to install the certificate. Okay, any doubt in this? Yeah, so first of all, we have to install the CSR certificate in vManage or vBond. After that, all three certificates we have to copy in our folder, and we create two.pm file. So first of all CSR, from this CSR we'll create the permanent file. Parallelly we'll copy the public key to all the controllers, and then finally we'll install these .pem files to vManage. So these are steps we have to do. Okay, once you do that then you will understand this, because this is one lengthy process we have to do. It will easily take some good amount of time. Okay, so let me show you that how you can generate the permanent file from the CSR. But first of all let's copy all these CSR. So for that you can go here, you can view the CSR. Where is my vManage? So you have to copy here in the
root. What you can do, you type insert, so it will come to the insert mode. Then you can do shift insert, that whatever you copy it will copy here. Escape colon write and quit. Then I can do say vbond.csr. Now I will go to the controller, the same process I am repeating here. Now I'll click to the vbond, view CSR, copy that, go to the root, shift insert. So it is not copying the full file because I is not there, so I'll quit. I'll not write it, I will simply quit it, otherwise it will throw an error. So this time I'll change the name of the vbond, I'll make vbond1, and I need to type I, otherwise it will not go to the insert mode, otherwise they will truncate the I from the certificate. Shift insert, now it's the full. And likewise I can generate say vsmart.csr. It's already it is generated, we are simply doing the copy. Control A, Control C, I for insert, shift insert. We'll see. Okay, so now we have say ls minus la, the certificate for vbond, vmanage, vsmart. As simply we are copying the CSR, that's it. We haven't done any other thing rather than copying and pasting the CSR. So you have all the CSR. Then now in this step we are going to generate the permanent key. Okay, so I'll show you that how you can generate the permanent key. Now you can move to the other folder, that is the root folder, and with help of this command, so what does it mean by this command? Let me show you, let me explain. Again, this is not the part of SD-WAN, the part of Linux. So you are using OpenSSL root certificate, that is the CA certificate, config OpenSSL. Up to here we have the command. Now in the input we are taking the CSR from the CSR folder. In the output I am generating new certificate folder. Inside new certificate folder I am putting this permanent file, that is the vsmart.pem. You have to type yes. You can see here all the identities of the certificates is generating now. So now I have one permanent certificate. Likewise I can generate the permanent certificate say for vbond as well. Remember, in our case we have changed the name of the vbond. In our case I'll make this as a vbond1. Here I will make vbond1. Simply do yes, yes, and the final one. So let me do the final as well. Shift insert here, and this is the okay. Now if you go to the CSR folder and if you do ls minus la, you can see all, sorry, not CSR, you have to go to new cert folder. So let me go back. If I go to new cert folder, if I do ls minus la, then we have these permanent files. Now what does it mean by permanent file? Let me scroll up. So this is the certificate you have generated from where? From the CSR. This is the complete certificate. Correct? Okay guys, so we have to stop here, and you please do this lab up to at least this point. Then in the next class we'll start this lab from 0 and we'll complete up to this point, register VH. I have one class now, right now. So yeah, that is the old batch. It is going to completed in 2 weeks.
after 2 weeks I will be free 100%. We can do 3-4 hours, no problem. Just only this 15-20 days na, I have suddenly 3 batches has formed, so what I can do. So that's why I was telling na. No, seriously, means if you don't believe this, I am sleeping only 3-4 hours. Isbarji is also here. He is coming here. Yeah. Yes, yeah, please tell. नेक्स्ट क्लास हम लोग सैटरडे संडे कर लेंगे, वीकेंड है ना. नेक्स्ट मंथ से मैं पूरा फ्री हूँ, आप जितना देर चाहे पढ़ सकते हैं, मेरे पास कोई बैच नहीं है दिस. बट एनीवेज आप सीख रहे हैं ना धीरे धीरे से. बट अभी आपको पता चला होगा कि वी मैनेज क्या है, वी स्मार्ट क्या है, क्या क्या. तो वही बेसिक का ही रहता है. बेसिक अगर आपको आ गया ना तो एडवांस चीज़ तो आप कर लोगे. कैसे सेटअप है, क्या है कंपोनेंट, क्या वी स्मार्ट है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन. शुरू के 10-12 क्लास जो रहता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्ड अप क्लासेस. उसके बाद तो फिर आपको कॉन्फ़िगर. हाँ, मैं वो आपको पूरा डिटेल, आप अपना स्क्रीन शेयर करना, मैं डिटेल आपको बता दूंगा एकदम. 100% आएगा समझ में, सब कुछ आएगा. कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताऊंगा जो अभी वो लोग यूज़ नहीं करते या उनको हेल्प लगेगी. जैसे वी मैनेज का बैकअप कैसे लें. वी मैनेज इटसेल्फ ए डेटाबेस सर्वर, उसका बैकअप कैसे लें, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं पता है. फिर 18.3 भी है अभी हम लोग के पास, जिसमें ISR भी डाल सकते हैं. फिर वी एनालिटिक्स कैसे देखें. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें किया जा सकता है जो लोग अभी नहीं करते. मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, बिलीव मी, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा तो किसी इंटरव्यू में पूछ दिया ना तो आप उससे पूछ सकते हो कुछ कुछ सवाल. वो बोलेगा भाई कहाँ पढ़ा है बंदे ने. सीरियसली मैं बहुत बहुत मैंने इसके डेप्थ में गया हूँ. यस यस, जो इंटरव्यू के लिए जो टॉप क्वेश्चन है ना वो तो मैं पक्का, वो आपको ऐसे भी आ जाएगा जैसे जैसे क्लास कर रहे हैं ना, तो वो आपको आ जाएगा. तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसने काम कर रखा है. वो यही देखना चाहता है ना कि इसको, हाँ, इसको आता है कि नहीं. ठीक है ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं. मैं इसको अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग को, ठीक है. हेलो, क्या बोले. हाँ ठीक है कोई नहीं. हाँ ठीक है ओके. ठीक है कोई नहीं कोई नहीं. मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग. ठीक है, चलो ओके, बाय बाय. चलो हैप्पी संडे, बाय बाय. So what we have studied last time, today we have to done one lab. It's very important lab. This is the system Bringup Lab, and I have given this as a task. So have you completed this lab? Otherwise, I'll I'll go and complete this. So what are the steps we have here to do? First of all, we need to install these devices over the ESXi. That is done already for us. Then what is the second step we have after installation? After installation we have to do some minimum configuration, correct? Yes. So in that minimum configuration, what are the things we are requiring? System configuration, VPN configuration, and static route. Yeah, great, 100% correct. So either my controllers are hosted over cloud or they are in premises. We may have both these options. So in both the cases, what we need inter-controller reachability, because at the moment we are going to implement the controllers. That means we are going to implement the control plane.
So for that we need certain tasks to be done. Okay, my pen is not working, no problem. So what you need, that inside this box, first of all you have to spin up your softwares over ESXi. So then you have your softwares like this. Then you need system wide configuration first of all. Then you need, say, a VPN 0 configuration, because VPN 0 is your transport VPN, correct? And finally you need some sort of static route to reach to the controllers. Okay. So once you've done these baseline configurations, then only you can go and move to the next stage. What are the next stage? That these things we will see, that we have to do some sort of certificate registration among all these controllers. So first of all we'll bring up all the control plane, and then we are going to bring up the data plane. In the data plane as well you need to do all these things. You need to have, say, IP reachability first of all, then say verify that each edge router is able to connect or communicate with the controller, that is the reachability. Then again the second phase is that we have to do some CA signing or CSR or certificate signing. We'll see that all these steps. Once we complete this lab, after that we'll go ahead and see all these theories. Okay, but first of all let's do this lab. So what I have done, I have already started this lab. Let me go to the URL. Here you can see I have started this lab, and we have still something 5 hours left, 5 hours, 6 hours left. So let's do this step by step. First of all I'm going to launch the vmanage. Let's launch this. Last time we have done the configuration, correct? So what I'll do, I'll simply copy paste. I hope you know all these things. System, inside that we have 5 mandatory things like host name, system IP, site ID, org name we want, and then finally like a Linux system we can do commit and control. Correct. In these 5 lines, Permanent file, yeah, up to permanent file we have to done it last time for the certificate. no problem. I will do from 0 today as well. So no worries. It will take hardly 5 minutes to do. Then inside this particular Viptela fabric, we have other say interesting VPNs. So you may have, say, VPN 0, other VPNs like VPN 1, 2. So all these VPNs should be defined. So at least you need to define VPN 0, where you have your actual transport, and then you have to define, say, VPN 512. Sorry, let me. Yeah. So we have some VPN, and it's very interesting in upcoming sections when we start developing our Viptela fabric, where we have to push the policy. So at that time we'll come to know that all these VPNs are actually very important, and the service type of VPNs are also very important. So with help of service type of VPNs, what we are able to reach, we'll see that. So we have something called, say, VPN 0. This is for transport. This is for tracking and sending the control information.
Then we have something say VPN. Yeah, this is something like, Rasmus, I have a question. yes, please. Sorry for No problem. means any VPN we have to create VPN 1, 2, 3 up to VPN 5, 1, 11 under to VPN 0, correct? Or it is a separate we have to create. So Same VPN configuration we have to put up. 0, then we are going inside the interface. So say interface ETH 0 or ETH 1, whatever. But first of all, inside VPN, then interface. It is okay. Okay. So means VPN 512 is different and VPN 0 is different. Correct. Yes. All the VPNs you can think as a VRF. All the VRFs are different. Okay. Okay. So we'll see that in upcoming classes that what is the significance of this non-VPN 0 or non-VPN 512. These are the service VPNs, and we are assuming my actual data traffic is residing inside the service VPNs. Okay. Then what we can do here, we can here you can see that ETH0, we are putting ETH0 inside VPN 512, and then say ETH1 inside VPN 0, and then we can create the static route. So let me do this as well. I'll do the copy paste for this. It's a very straightforward configuration. Once you do this IP DHCP client for management interface, your vmanage will take new IP address. So that's why you have the disconnect, and once it will get the new IP, then we'll go ahead and then we'll provide the Ethernet 1 interface IP address plus the static route. Two of the major automobile company, Naresh, one is BMW and other is Ford. They are going to deploy SD access or DNA. BMW is our client, and Ford, one of my student, he is supporting that Ford from US. In their network they have DNA, they have SD-WAN, they have ACI, all these new infrastructure they have. Okay, so let's go ahead, go back, and I got one request from Riyadh. So 12th of January I'm going to start new batch. Okay, you're not able to hear me? Yes. Now it's okay? Yeah. Now. Okay, sorry for that. Let's go back and what we are doing. Now we have to launch, configure this vBond. So here you can see the 5 important thing, and plus because this is the vBond itself, so we are using the local keyword here. Now here one interview question for you, that although I am doing the configuration for vBond, but it is showing vEdge. Why? Any answer for this? And the other question is that the interfaces, so far we have seen ETH0, ETH1, but now here we have interface gig E, means that it can support say up to 1 gigabit of speed. So why these changes here in vBond? No idea. Okay. The reason behind this, that the operating system for vEdge and vBond are the same. So if you want to convert a vEdge to vBond, you have to use that keyword, that is local. So in this statement, suppose if this is a vEdge, if you use vBond 2262 and then local keyword,
that means your V edge will convert to V bond. So there is no separate operating system for V bond, V edge, both are the same, but you have to convert V edge to V bond. That's the reason. Second thing, I ask about the gig interface. So you will find mostly inside the V edge, if you are using the V edge, then you have the gig interface. So here suppose I am configuring this vSmart. vSmart and vManage are what? Generally they are 100% operating system, and they don't need say 1 gig speed. Why? Because they are, by the end of day, they are sending only the control instruction. So for control packets you don't need 10 gig interface or 100 1000 gig, or I can say 1000 Mbps or 10 gig speed. You can understand the 1 gig or 10 gig, 1000 or 100,000 of speeds like that. So for that you don't need those that much speed. That's the reason. Okay, alright. So let's quickly do the configuration for controllers. Once we do the configuration for all these controllers, that means after that we should have inter-controller reachability, because these are the very basic things that we are doing at the moment. So once you do this, let me go and ping 2.2. say 6.2. This is my vBond IP, it is pinging. Then I'll ping the vmanage 7.2, say count 6, it is pinging. So now I have inter controller reachability. What I will do, that I will install all these controllers over the vmanage dashboard. Correct? So once you reach up to these steps, you have to ping. No problem, you can ping. Okay. Then what I'll do, I'll open the vmanage. Inside vmanage, I will add all these controllers one by one. Okay. I think up to this point we have done. Once I add, then I have to generate the CSR. CSR generation also I will do, no problem. Then I have a root server. So we reach up to this point, no problem. So let me do quickly all those things, and then we'll sign this request from the root server, CS server. Let's see. Admin, always you have username and password, admin. Alright, so we are opening the dashboard first time, and now you can see inside this particular dashboard that the controllers counters will be 0, VH counters will be 0. Only you will find one counter here, say for vmanage, because this is the local host. Otherwise rest everything is 00. What I can do here, I can go to say configuration and then the devices here, and I have to add two controllers. I have to add say vbond and vsmart. So I'll go inside devices. Here you can see I click controllers. We have this option add controllers. Let me add vbond, say generate CSR, that is also required. Once it is done, then I will add the other controller, that is the vsmart, that is 2252,
The protocol I am using DTLS, that is SSL over UDP. Then finally I'll go to certificates, because for vManage we don't have any CSR. So for vManage also we need CSR. So here also I'll generate the CSR. Close. So now you can see all these three controllers, we have the CSR, no problem. Now I will open the CA server, because what are the steps we have to do? Sudo su superuser. We have to play around with the CSR, and from this CSR I have to generate permanent certificate, and then we have to do the cross authentication. We'll see how we can do. We have all the steps. So I am inside the CSR folder. It's a very simple Linux command that you are inside home, Ubuntu, root and CSR folder. Just a minute, let me close my mailbox. Right, so what we'll do here, we'll say vmanage CSR. I'll put all the CSR one by one to my root. It will do automatically. You don't need all these certificate signing request. It's automatic, but behind the scene this process is happening. Everything is automatic. You don't need to do all these things. So what you need to do, we'll see. We need to do some CLI things from the vManage or vEdge, that we'll see. That you have to do. Otherwise these things will happen automatically. Alright, so we'll go back and here. So I have my CSR. I can click to more. I can check that. And you'll see what's the last value, that is a 2TW. Just wanted to know that the values are correct. So here I can do say vmanage. Let me check the name as well. Okay, so vmanage.csr. You have to type I for insert, shift insert, escape, colon, write and quit. So we have put vi, say vmanage, then we'll do the same thing for vbond. Here it is. I can go view a CSR. I'll come here to the root server, I for insert, shift insert, escape, done. Then we have third CSR, that is for vsmart. Copy this as well. LA. So we will go back. We'll type say vsmart.csr. I for insert, shift insert, escape, write and quit, WQ. Now we can check our CSR files we have. Now from these CSR files I am going to generate the permanent file. How we can do? So we can use this OpenSSL command. Here you can see that input is CSR and output is .pem. So I am going to generate the permanent file, and these are the actual certificates, and then we are going to use this as well. So I'll go cd one step back, because this is where from the root. Alright, so you have to do here paste, and whatever questions it will ask, you type yes, say yes, yes.
there's some sort of certificate enrollment. Okay, so we'll go back and we'll do the same thing for vBond and vManage as well. And finally we'll do it for vManage. So now we have the permanent certificates. Let's see one of the certificate and then we will proceed. Now what I can do, I can go to cd new certs where is my destination, and here I can type say ls-la. These are my new certificates. If I type say cat vmanage.pim, let me scroll up so you can see this certificate. Yeah, it's not coming up. Yeah, give this some moment. I want to show you this certificate from beginning. My screen is hanging. Okay, no problem. We'll see. Let give this some time. We'll see that. Okay, so what's the next step? That whatever permanent certificate you have installed or you have generated over root CA, you have to request for that. So we'll see that how we can request. But before that, here you can see I have one public key, and this public key I am going to install over all the devices everywhere. Once I install these, then I have to do some request. So we'll see that inside say vmanage vsmart v1, I'm going to install this public key, and then I'm going to do some sort of request here, request root chain install home admin root CA. So what does it mean? Let's see what I try to do here. So I have one public key. This public key there I'm copying from root CA, where I'm going to put this. Say I'm going to put inside, sorry for that, inside vmanage. If you type vshell, will come to the Linux prompt for all the devices. Either it is a vmanage or it's a vbond, vsmart or vh. If you want to go to Linux shell, you have to tell vshell. You are in the Linux mode. Then from here I have to go say home admin and then say root CA. I'm going inside root CA folder. Why? Because I want to paste the public key. It also will do WQ, but what you have to do, you have to install this. How you can install this? With the command request root cert chain install. So we'll use this command request root cert chain install, and then you have to give the path home admin root CA. It should be successful. Now what you are doing, this is the certification process. So I have say CA. First of all, I have one dashboard. This is vmanage dashboard. Inside that I am installing 3 devices. vmanage already there, vsmart and vbond. All these devices, they have their CSRs, certificate signing request CSR. With these CSR value, what I have done, I have one CA. I have taken this CSR as an input, and then I have generated certificates. That is the permanent file .pem. So that is the one thing, that from this CSR, this root CA has generated the permanent
file, but from this root CA public key, say public key, I am you can say that we are doing say two-way authentication or something. So these public keys I am installing inside all my controllers. So VM, say vmanage, vsmart, vbond, everywhere I am installing. So this phase we are doing. Once we'll do this particular phase, say step number 1, then step number 2, we'll install all those certificates inside vmanage. We'll see that. Then our all the steps will complete. So no worries. Let's continue our process. Let me go back to this particular key I already copied. So let me go to vbond. Here also I'll type vshell vi home admin root ca, then I for insert, shift insert, escape q, exit, request root cert install, root certificate chain install, say home admin root ca. This is also successful. Finally, we have vsmart, type v, go to vshell, say vi, or it's that path home admin root ca, I shift insert, escape, wq, exit, request for root cert chain install, home admin and then root ca. So home admin root ca. This is also successful. So successfully we have installed the public key from my CA to all my controllers. That's great. Then we'll go to the next, that load private key. So we have done public thing, public key. Now I'm going to load the private keys. Where are my private keys? They are inside the new cert folder. So I'll do with vmanage, then I'll do for vbond and then vsmart. How you have to load? Let's see. And here also we'll see that do we have any order to follow. So we'll do it for the vmanage first. After a few minutes, okay, then do for the vsmart and the vbond. So let's do this. This is the final step we have now. So what I have to do, I have to install the certificate that we have generated for vmanage here inside this dashboard. So how you can install? You have to click here. Just click here, and then on the top you can see install certificate. You have to go there, and then you have to put the file that you have generated. So this is my vmanage file. I need to copy this file. Okay, great. Anyhow, I'm not able to scroll, so let me reconnect once. My okay, now it is here. So sudo su cd new cert. Do we have cd new? First of all, I have to go to that folder. What was that folder? Even we can check like this as well. Say we'll check ls minus la. So what folders I have here? I have, wow, I don't have any folder. Let's see. Root, I have to go inside the root actually, and then so cd, if I go to root ls minus la,
Now you can see I have new cert folder where I have all these permanent file. So I'll do say cat vmanage.pim, and let me scroll up. So I'll copy from here, you can see certificate, and I'll go down and I'll paste up to here, correct. Right click, copy, I'll go to the install. So here it's very important to identify this. It is going to the scheduling task. Let me go back to the certificate task, to the controller. So here you can identify in the bottom, add device, generate CSR, upload certificate, update vBond. All these steps has done for my vmanage. Now I will do the same thing for vsmart, correct. But for vsmart we'll take the certificate related to obviously vsmart.pim. So let me scroll up where I have the vsmart file. So here it is, the vsmart. So same procedure in the vSmart, vBond and vmanage, correct? No, correct. It's not 100% correct. Copy paste process is same, but here if you can see the vsmart in the bottom, how many steps you have? 1, 2, 3, 4, correct. 1, 2, 3, 4. But here on And even vmanage also you have 1, 2, 3, 4, but in vbond you can see only 3. What it is, let's see. Let me complete this and we'll discuss. So click to the vsmart and install the certificate. It will go to the scheduler. This is the scheduler task that you can go click here to this particular. This is the scheduler or job. You'll get the same thing, same place you will reach. It should also be successful. Now if I go again back to configuration and certificate, you can see that for vsmart as well. Now you can see the difference. For vsmart still some steps are left, but for vmanage everything is done. We'll see this why it is. Let's do complete vbond. So I'll go back and oh, what is this? Something wrong here. End certificate. What is happening here? Okay, no problem. We'll see, say vi vbond. Oh, not vi, correct. Skip. We have to do cat vbond. I don't know what I have done for vsmart. I think I have taken cat only, but it has been recorded in this video. So once the recording will converted, we can check that if I done anything wrong. Anyways, let's go back. Let's come here to vbond. Yes, we can roll back anytime. We'll see if it is not successful, we'll roll back. At the moment I am doing anything, you can see on the top the counters are increasing. You're say 12 to 13, it become 13. Okay, and if you go here, you can check the alerts. You'll get all the alerts, that what critical, non-critical things. You can reference the alerts. You can check that. Okay. So we'll go to the our certification phase. Now if you see here,
sync. We have some error. What error we have? Let's see. Sync, that is correct. So now we can see that in the bottom the vManage is done. The vBond still have some issue. Wow. The vSmart still have some issues. This should be completed. Here it should be completed. Here it should be completed. Otherwise it will not work. Okay. So let's refresh this one more time. See, on the top, or what error we are getting, it is telling that you have 2 invalid certificate. Let's click here. So for vBond and vSmart we have invalid certificate. Why? Because it is telling that these certificates has already been expired. That means we can't see here in the counters. Okay, so that's the error. No problem, we'll regenerate it. We should complete this process, otherwise it will not come up in the dashboard. So let's do the regeneration of the certificates. First of all, I'll go to say cat vsmart. I'll try to do the same process one more time. Let's see, we have done some error and we'll try to resolve that. Now this time if I copy paste, let's see that it will take or not. Inside certificate, so here certificate is yes, correct, yeah. Install certificate. We can see the time period as well. So it is from 2018 to 2024. This is your subject name. So your C, canonical name, your O, maybe org name, organization and unit, CN, like that. It means whatever things are there in the certificate, we have all those things. Let's click here, install, and wait. So here we can check the logs as well. What it is telling: install certificate on device with the serial number of this, started by user, certificate installed for this serial number, no new update had been sent, successfully sync VH list for vSmart this. So here, although I'm getting the successful message, let's go back to the vSmart. Click to now I can see this vSmart is complete. You can see initially it was not completed, correct? Now it is completed, and here you can see that 1000 it has took. This is the certificate serial, this is the certificate serial. So now it is showing that it is correct. If I go to my, let me refresh, still it is not coming up here in the, it should come 1 and 1, no problem. We'll go and do the same thing for vBond as well. Yes, so let's scroll up. This is my vBond. Let me copy this so I can paste. Sorry, here. Let's go back to the certificate controllers. You have to click here to vBond and then install certificate. Install. We can see the messages. So this is the serial number, like 39BC6E is started from user IP address this. And let's see. So serial number, pushing serial list to vBond, started processing serial number list vBond. This is also showing successful. We'll go back to the certificates. I will come here,
we'll click to the vBond. This is also completed. Now you can see the serial number, site ID, system IP, everything they have took. Correct? Now if I go to the dashboard, it is showing here, but it is showing down due to some reason. It's okay. Control plane is up. Rest everything is up. Total authorized. Now you can see I don't have any invalid certificate. Correct? Initially it was 2. Now it's 0. Here you can see that the alerts has been reached to 15. That we can check. Yep. So here in the show that we manage, vSmart is showing arrow is down, but in the behind is control plane is up. It's not actually up. It has added to the vManage dashboard, but if this is down, it means this is unreachable. The simple meaning of this, you can see here unreachable. vBond is unreachable, and here you can see there is no control information. vSmart, this is also, we'll see, unreachable, and here I don't have any control information. It happens sometime. It will show you up, maybe after 5-10 minutes it will come up, so no problem. It's a problem with the lab. So in real scenario also it is came to taking to 5 to 10 minutes for the up. It will not take this much time. You don't have this much of manual thing in the real scenario. In the real scenario, you'll find your control planes are up only because you have to add only vEdge. So I don't think so you will install the control planes. It will be there always, control plane. But yeah, you have to, if you are doing this first time, you have to add in the dashboard like this. What is that user I'm using? Sometimes this too has some problem. You can use 3. No problem. Anyways, tomorrow also we have class. So what I'll do tomorrow, that I'll do up to this point. Whenever we start the lab, I'll complete up to this point. So Okay. we can, let's see. So once you, yeah. So they should be showing like this, and then we have to deploy the vEdges. So tomorrow we'll do that deployment of vEdge. Let's go back to our theory and let's complete at least 5-6 slides. And let me give this some time. Maybe it will come up. The process and its steps are correct. It's a problem with the dashboard. Alright, no problem. We'll see that. Let's go back. So, whenever you are going to bring up the control plane, you can see that inside. Sorry for the disturbing. जो error आया था पहले हमको मींस ऊपर ये डाउन है और नीचे कंट्रोल अप दिख रहा है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ और है क्या? जैसे हमारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक है या और कोई मिस्टेक है, क्योंकि नीचे तो हमको जो चार पॉइंट जो थे तीनों तीन में वो अब आ रहे थे सब कुछ. ओके, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो इंटरनली हमने जब चेक किया था तो सब कुछ ओके था, बराबर. मींस तीनों तीन में चार पॉइंट ग्रीन आ गया था, बराबर, कंट्रोलर में. हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो नीचे 4 पॉइंट है अपना, ये अपलोड सर्टिफिकेशन, अपलोडर की बॉन्ड, अपडेट की बॉन्ड, ऐसे तीनों तीन में करेक्ट है. ये एकदम करेक्ट आना चाहिए. It should be 100% correct. अभी करेक्ट है अपना तीनों दिन में करेक्ट है, फिर भी हमको मेन डैशबोर्ड पे वो डाउन दिख रहा है. तो और वेरीफाई करने के लिए कुछ हमारा क्या मिस्टेक है और कुछ स्टेप है क्या वेरीफिकेशन के लिए? इस लेवल पे तो वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये बोल रहा है कि दिस इज अनरीचेबल
means it is unreachable from my vmanage to all these controllers. Simply verification ये कर सकते हैं कि ping reachability check कर सकते हैं, these devices are reachable or not. 227.t say VPN 10 VPN 0 sorry. So from vsmart से vmanage वो reachable है, और फिर यहाँ से 6.2 यही कर सकते हैं, बस reachability होनी चाहिए, that's it. Rest everything is okay. Sometimes you'll face this issue, it happens. It's like 50-50. Whenever we are doing this lab na, 50% time it is not coming up, 50% time it is coming up. So maybe if I do next time it will come up. So that's why what I have done, I have recorded this thing. So मेरे पास already recording है इसकी, जब मैंने last batch लिया था. The same steps I have done and these are coming up. Actually 2 recording मैंने ऐसे करके रखा है. Oh, मैं आपको share कर सकता हूँ. The same steps I followed and they are coming up. Sometimes it may happen. It's okay. No problem. You can do practice. Maybe third time. Last class video also. I already shared in the shared folder. Karun is writing that he haven't got that. The same folder you will find all the videos. एक शेयर फोल्डर पे मैं ओके मैं लिंक पिंग कर दूंगा है ना, क्लास के बाद व्हाट्सएप पे डाल दूंगा फिर से. ऑलराइट, सो विल चेक दी थ्योरी नाउ. Any question, any doubt? Again, we have plenty of time, don't worry. So here you can see this slide. What we have done, let's discuss. Just a minute. Yeah. Okay, so when you are bringing up the control plane, at that time what we are doing, so first of all you should have reachability. So if we start with the system configuration and then VPN 0 configuration, it should have reachability. Once they have reachability, then these control plane, they have to do one very important thing, that is CSR things. And anyone can tell me what process we have followed. Which process? CSR to in the CA we have to create one certification, and after the CA create the same certification we have to copy to vmanage, vsmart and vbond. Yes, correct. So we have CA and say for sake of simplicity vmanage. Okay. Yes. So public key we copied from here to here, and from this CSR, whatever CSR we have, from this we have generated certificate, that is the PIM, permanent file, correct? So this also know about this and this also know about this. Like that we have installed the CSR process. So once you do the CSR process, here you can see that they are doing a strong authentication, like public key infrastructure aka PKI certificate, 2048 bit keys. They are highly secure, they can form DTLS or TLS. Whitelist model. Whitelist model means what? So everything should be authenticated with respect to vBond, and if you see the process you'll find that vBond is authenticating vsmart and vmanage. Why? Because vBond already know about the serial number of vmanage and vsmart.
So they are doing this in terms of whitelist model, means already you have one list and you are authenticating that list. Now when we are talking about the control plane, at that time what are the steps that happening? The steps that happening here, that first of all the certif Sorry for this. Mhm. So it is by default is the use of this. Can you go to last Previous, okay. slide? Mhm. So it is by default it is used for the PKI certification use Yes, for user PKI. authentication. PKI, yeah. Public key infrastructure. It is by default, correct? Yes, it's a by default. Automatic it will do. Okay, so we'll see that process in depth. So certificates are exchanged and mutually authentication take place. Mutual authentication take place. You can see mutual authentication will do certificates exchange. Okay, then we want validate vSmart. It's a very important statement. We want validate vSmart controllers and we manage certificate serial number against the authorized list. So they have white list. They will validate the serial number of say vmanage and vsmart who we want. Then vsmart controller and vmanage validate vbond orchestrated certificate org name. Now it's very important. Now you can see the importance of org name. Now this vmanage and this vsmart, they are validating the org name of vbond. Org name of vbond. Although the vbond is validating the serial number of both the controllers, vsmart and vmanage. DTLS TLS secure connection established. Once they do this authentication, like sister ID locally, system ID locally. Okay, so once they do this authentication, they form DTLS or TLS. We know this thing that system ID will see that system ID has other significance, but here for certificate we have significance of org name, organizational name, and I think you are telling this serial number as a site ID. I think if you are correlating system IP is again different thing. System IP should be there to bring up or to maintain the DTLS connection. Yeah, site ID you can refer, but still these certificates they should have some serial number. Okay, and according to serial number they are working, and that serial number may be equivalent to site ID. So this may be site ID as well, but they have unique serial number. According to that they are matching. And the serial numbers actually are very complex string. It's a very big string. Site ID generally 4-digit ID. Okay, anyways, let's move. So what we have done simply that vbond is authenticating the serial number of what vmanage and vsmart. Likewise, our vmanage and vsmart, they are checking the org name of vbond, and then they will form the DTLS or TLS connection. Correct? So no problem on that. Till this point, I think the audio has some issue. I'll wait. Why this audio issue is there, I don't know. Oh, no internet.
Hello? 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 Sorry, ऑडियो चली गई थी. Okay, so no problem. I told you, na, I came to my hometown, so you can expect some bad quality of internet. Anyways, so what we are discussing here, that V-bond, I'm using Airtel 4G. In Bihar 4G is Airtel is okay. Other network are not that okay. So Geo is not that great here. Airtel is okay in my area, Patliputra area. Okay, so no problem. Only tomorrow. After that, I'm again going back. Next weekend we have classes from Bangalore. Okay. So what we are discussing, that from VBond, we are doing authentication with respect to, say, serial number of vManage and vSmart. Likewise, from vSmart, we are checking the org name of VBond, and then they are forming the DTLS or TLS, permanent tunnel. Yeah. So let me. Yes, permanent tunnel. Yeah. Okay, so once we have this, then we'll come and move to the second phase, that is how the VH devices are doing. This thing we'll check tomorrow, because tomorrow we have to complete that lab. So once we complete the lab, then I'll go move a little bit more on that. We'll see all these things. At least up to here, tomorrow I'm going to complete. So once you complete this lab, now you have better picture about SD-WAN. That means you have bring up your lab, and then we have to start a study about the feature of SD-WAN. Means how it can do the load balancing, how it can do the service insertion, traffic flow, traffic engineering, all these things we can see on the top of all these things. So initially, setup is our over for the next class. Yes, so we have different labs. So next time if we have to do any lab, automatically everything will be there. But this is the way our process to bring up the fabric. Okay. We'll see that in we have so many different labs. Someone is very small, someone is very lengthy, very big. It's very big type of infrastructure. Even we have one lab, one setup. No, it will take approx 5 to 6 hours to just to understand that lab.
means so many things are there like OMP, Tloc, QoS settings, OSPF, redistributions. These things are there in the lab. We'll see that. Okay, we have big labs coming up. So this is a screenshot. अच्छा, इस पे शायद अटैचमेंट नहीं भेज सकते हैं, बट सिर्फ मैसेज कर सकते हैं. बट फाइल का ऑप्शन होना चाहिए. हाँ, फाइल ऑप्शन तो है, भेज सकते हैं. आई थिंक लेट मी चेक. फाइल ऑप्शन है कि नहीं. आई डोंट थिंक सो. नहीं है फाइल ऑप्शन. स्क्रीनशॉट नहीं, आप व्हाट्सएप पे भेज दो. व्हाट्सएप. अच्छा. हाँ, आप ड्राइव पे डालो. ड्राइव. ओके. कुछ एरर आया है क्या? अच्छा, आपकी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ. आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ फिर. ओके. अभी तक तो नहीं आया है. आया. ओके, जस्ट अ मिनट. सो डायग्राम को रोटेट करना पड़ेगा. पॉक. ये सब आप आराम से कर लो, वैसे जो भी डायग्राम भेज रहे हैं ना. ओके. सो किधर क्या है कुछ पता भी चले. वी मैनेज वी बॉन्ड. सब VPN 0 तो उसके लिए रहेगा, मैनेजमेंट के लिए. मैं फर्स्ट वाला डायग्राम देख रहा हूँ. फायरवॉल एक्चुअली ये सब है ना DMG जोन में डालते हैं जनरली प्रोडक्शन में. तो DMG जोन में डाल दिया इसको. हम लोग भी देखेंगे, हमको पढ़ना है आगे कि कहाँ पे डाल दे, क्या रिकमेंडेशन है सारे कंट्रोलर्स का. उसके बाद NAC है, उसके बाद फिर फायरवॉल है, उसके बाद SD-WAN, VPN 0, VPN 1. VPN 0 मतलब कंट्रोल ट्रैफिक. आप देखिए जो रेड वाला है ना, सारा कंट्रोल ट्रैफिक है. और VPN 1 को ग्रीन से लिया होगा. और भी बहुत सारे रूटर्स हैं. बीच में जो ब्लू कलर के हैं वो सब क्या है, वो रूटर्स हैं क्या? VPN राउटर है. वाओ. सो ओके. एनीवेज. ओके. ऑलरेडी हम लोग का जो VH है वो तो VPN करता ही है, फिर VPN राउटर क्यों लगा पता नहीं. एनीवेज, उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, चार जो राउटर है ना, तो जो भी ट्रैफिक आता है ना ब्रांच से, वो एक राउटर पे नहीं करता. चार राउटर पे इंडिविजुअली ट्रैफिक जाता है. अच्छा. तो एक लिंक पे लोड नहीं रहता है वैसे. ओके. तो ये ट्रैफिक के लिए लोड बैलेंसिंग क्या मतलब, ये सब जाके फिर SD-WAN में जाए. उसका WAN राउटर SP1. अगर 6000 ब्रांच है, 8000 ब्रांच है, तो सब में 2000 ब्रांच कनेक्ट रहेगी एज अ लोड. ओके. तो ये तो मतलब काफ़ी बेसिक, मतलब बोल रहे ना टॉप व्यू टाइप का डायग्राम है. इसमें तो कुछ पता नहीं चलेगा कैसे क्या हो रहा है. बट इसमें ये है कि VPN 0 से कंट्रोल मिल रहा है, और सर्विस VPN पे क्या कनेक्ट किया है वो भी नहीं पता चल रहा. सर्विस VPN पे कोई कंट्रोल ट्रैफिक नहीं आता, जो मतलब VPN 1 है. हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि इट्स गोइंग टू LAN. तो ठीक है, वो LAN में जाएगा. दैट्स ओके. VPN 1 जो है LAN में जा रहा है. VPN 1 से जाएगा, तो VPN 1 से भी लगता है कि फायरवॉल पे जाएगा और फिर वहां से LAN में जाएगा. हाँ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है देखने में. इसमें हाँ, तो जो भी नॉन VPN 0 और VPN 512 को छोड़ के जो भी VPN लेंगे ना, उसको हम लोग
लैन में यूज़ कर सकते हैं या दूसरे राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो एक तरह का सर्विस वीपीएन होता है। वो डेटा के लिए होता है जनरली, वो डेटा के लिए रहेगा। बाकी वीपीएन 0 से भी डेटा भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि उससे नहीं भेज सकते, बट वो कंट्रोल के लिए रहता है। ओके, सो हब एंड ब्रांच, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है डायग्राम। इस तरह का हम लोग के पास है सेटअप। हम लोग का जो लैब है ना, उसमें आपको मिलेगा फायरवॉल, डीएमजी स्विच, वीपीएन राउटर। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वही वही डायग्राम है ना, इसको ऐसे देता है एमपीएलएस। दो, हाँ, एक इंटरनेट से जा रहा है, सही है, और एक जो है वो आपका जा रहा है एमपीएलएस से। तो एक जो ब्रांच देखेंगे ना, ब्रांच मॉडेम लगा है, इंटरनेट लगा है, और एमपीएलएस का मॉडेम लगा है, इंटरनेट लगा है। नीचे में वी है जो ब्लू कलर का, फिर ब्रांच का लैन है। मतलब बहुत बेसिक ब्रांच है। मतलब ये टाइप 1 इसको बोलते हैं कि एक एज राउटर से दो आईएसपी निक जा रहे हैं। ठीक है, वो ऊपर में गया, ऊपर में आपका एमपीएलएस का पीई है, पीई से फिर वो जा रहा होगा एमपीएलएस पी में, सॉरी पीई से जाएगा सी में, और फिर ऊपर से जाएगा वो एज राउटर्स में। ये ठीक है डायग्राम, इट्स ओके। हम लोग का देखिए हम लोग का भी है सेटअप। वो तो एडीएसएल और ये जो भी है एवीपीएन डजेंट मैटर, कुछ भी रहे, एज लॉन्ग एज यू हैव कनेक्टिविटी यू आर गुड। से हम लोग का डायग्राम ऐसा। तो हम लोग का जो डायग्राम है इसमें मार्क करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ये डेटा सेंटर 1 है, ये हम लोग का सी एज ए वी एज है, ये पीई है। एक कनेक्शन गया एमपीएलएस में, दूसरा राउटर गया इंटरनेट में। ये ब्रांच है, से इस तरह का ब्रांच है हम लोग के एग्जाम्पल में। एक जा रहा है एमपीएलएस में, एक जा रहा है इंटरनेट में। ठीक है, इट्स ओके। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपका नेटवर्क भी समझ में आ जाएगा। ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड नेटवर्क। ठीक है ना, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सिंपल ही है सब कुछ। यही कि एक कंट्रोलर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। हम्म। ये डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर DC1 DC2, बीच में DCI इंटरकनेक्शन है, डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर बैकहॉल। देन नीचे में दो ब्रांच है, ब्रांच 1 ब्रांच 2। इसमें अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन है, फायरवॉल भी हम लोगों के पास। सो लेट्स सी, ए से फायरवॉल भी लगा है सेटअप में। देखेंगे ना, धीरे धीरे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, स्टॉप करें क्लास को। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट। ठीक है, तो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने लैब को। हाँ, 5:30। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू देन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक्स, बाय। The first three steps are something that is already there with us, means the images, they are already installed over ESXi. So those are the step 1, 2, 3. Now after that, so one thing, do you have the OVA file? Like yes, if I try to put into my computer or something? yes, I'll share. In the lab number 2, I'll share that OVA configuration, everything will get. Like, you know, from because I have to do, I believe the equipment has been ordered. So I'm going to get those ones maybe next month, some the middle of December. So the VHS, I believe at this moment, I have a work, what do you call, work order, which has all the models and stuff. So I will. These things you can test in coming maybe 6 to 7 classes. After 6 to 7 classes, when we were inside lab number 2, at that time I'll share all the images, and you can copy those images and you can install over ESXi. You can
check these things. Once you install that, then you have to do the minimum configuration, say again the system-wide configuration, VPN and some baseline configuration. Then you have to create a static route, and then finally we need to generate these CSR. Now in our lab it's very manual, that we are manually adding the public, private key, CSR, all these things, but when you get the actual device it's actually very easy. You have to go and click and that's it. It will install all those certificates. So with your vEdge, you will get instruction that how you can install the certificate for the vEdge. So they will tell you, okay, you can go to semantic site. From there, you upload the serial number and the chassis ID, click, and it will install. It's very easy in the production network. But in our lab setup, it is like we have all the steps that is happening behind the scene as well. In the actual network, you do not have access to the CA server, but in Right. our environment, we have the CA servers. Okay. So once we do all these things, then we'll install that certificate inside the vManage dashboard, and inside that vManage dashboard, we should see those controllers and those vEdges if we install the vEdges as well. So today we'll check that. Now, what is the process happening behind the scene? And it's very important that we know that these controllers, they are forming some sort of DTLS connection or TLS connection. But from the control to data plane, we have a tunnel. Tunnel name is the tunnel is also say DTLS or TLS from control plane to data plane. But again, within data plane, they are forming the IPsec. We'll see that all these things. They have very high level of say PKI and the encryption bit, that is 256. Now what is the process? Let's see that what's the process, how they are doing all these things. At the moment we know that vBond is working as an authenticator or orchestrator. Certificates are exchanged and mutual authentication take place. How? vBond. So, that's the key role of vBond. So vBond validate vSmart controller and vManage certificate serial number against the authorized whitelist. So it has some list of the controllers, and the vBond is checking the certificate serial number. Today I'll show you where you can find the certificate serial number. So they are checking the serial number of vManage and vSmart. That is the one part. The second part, vSmart and vManage validate the vBond certificate org name. Now these devices, they are validating the org name of vBond, and that's important. So now vBond is checking the serial number, they are checking the org name, and then they form the DTLS secure connection. After that, they are establishing the secure connection. Now when we are talking about the vEdge device, that is one question comes up here is, what's the sequence if you are installing the new data center and new SD-WAN? So the first device you want to bring up will be vManage, I believe, right? Yes. And then will be vBond or vSmart? Then vSmart, then vBond. So certificate portion, like if you want to bring up your IPsec tunnel through certificate, so at that point, don't you need vBond earlier than vSmart? Yeah, so we are talking about the control plane. So the step is that first of all we'll bringing up the control plane, and then we are bringing up the data plane. So already my control plane is established. So when we are bringing our data plane for IPsec, then obviously it will authenticate with vBond and the other steps. But we'll see that in the nodes itself, we have very important nodes here. We'll see that nodes, because I'll find that the data plane, they are forming temporary tunnel.
temp tunnel with vbond, and this tunnel will be broken down, and then they form permanent tunnel with vsmart and vmanage. So we'll see that the order we'll see here. So how they are happening. Now when it is coming to vEdge, the private and public keys are generated on vEdge router. Okay, we'll see that. Certificate generation happens. Certificate is signed by avnet. Okay, that is the CA. In our case, we have CA server. Certificate is loaded inside the TPM Lite chip on vEdge router. That is also okay. vEdge router has a root CA trust chain, semantic root CA. We have that CA, no problem. Now we have some 8 to 10 steps. We'll see that one by one. The authentication between the vEdge and vbond. Now my vEdge knows about the certificate. Now what will happen? Certificate are exchanged mutually. Mutual authentication takes place between vbond and vEdge over the encrypted tunnel. Okay. vbond validate vEdge router serial number and chassis ID against the whitelist. So it will validate the serial number and the chassis ID of the vEdge. Okay. vEdge router. Yeah. So vbond validates the vEdge router serial number and chassis ID against authorized vEdge whitelist. Yeah. So who maintains the whitelist? vbond maintains the whitelist, right? Yes, vbond actually it is connected with the vbond, global vbond, because it has one public IP and Okay. it knows all those serial numbers in its database. So I believe those were through Cisco Cloud or something? Yes, yeah. Okay. They are connected with, we'll see that we have that vbond.cisco.vbond, like that. We have that. We'll see that. Okay. Okay. Then the vEdge router validate certificate org name against locally configured one. So obviously what it will do, this vEdge router, they will check the org of the vbond. So the same thing happened in earlier case as well. In earlier case as well, the vbond was checking the serial number of vmanage and vsmart, and this particular vmanage and say vsmart, they are checking the org name of vbond. The same thing, my vEdge is checking the org name of vbond. So serial number. So there are two things: serial number, and when we are talking about the vEdge, so at that time we have chassis number as well, but we have serial number and we have org. So other devices, they are checking the org name of vbond. vbond is checking the serial number or serial number plus chassis ID of the either vmanage, vsmart or vEdge. So this process happens. Okay, once this process happens, provisional DTLS TLS tunnel is established between vbond and vEdge. vbond returns, now it's important here, vbond returns to vEdge a list of vsmart and vmanage. Now it's the responsibility of this particular vbond that it will tell about the vmanage and vsmart. That is the one way. Other way, the vbond notify vsmart vmanage of vEdge router public address, plus it is telling about vEdge public IP address. Why it is doing this? So this vEdge knows about vsmart vmanage. This vmanage knows about all the vEdges. So later they can form their own tunnel, and this tunnel will be deprecated. So we'll see that vbond notify vsmart public, okay, and then provisional. You can see here DTLS TLS tunnel between vbond and vEdge terminated. So this tunnel will be broken down, and what will happen after that we'll see. Again, the mutual authentication will happen. So certificates are exchanged
and mutual authentication take place between vsmart, vmanage, vEdge. Now this vsmart, vmanage validate the vEdge router serial number and the chassis ID against the whitelist. This whitelist they will get from obviously from vbond. Now the vEdge router validate vsmart, vmanage org name, the same thing that was happened with respect to say vbond and vEdge. Now that is happening with respect to vmanage, vsmart and vEdge. Same thing, same process happens, and then they form the permanent DTLS tunnel. After that, you can see here this tunnel is no more here, and we have tunnel from control plane to data plane in terms of vsmart and vmanage. Here again we have some sort of optimization. So you can see that suppose if we have vsmart, so let me draw here. I'll tell you about the optimization and then we'll move. So here in this, I need one blank sheet. Okay, this is okay. So here we can discuss about optimization. So suppose I have vsmart 1, vsmart 2, for the sake of simplicity, say only one vsmart, and I have say one vmanage. Now suppose I have two transport, MPLS and internet, and suppose I have one vEdge. So how many control connection they will form logically? They should form 4. So 2 control connection reaching to vsmart, 2 control connection reaching to vmanage. But when we study, when we are going to do labs, you'll find they are forming only 3 tunnels. So reaching towards vmanage, we'll find only 1 tunnel. Why is this? So here we have active type of tunnel, because all the time because vsmart is the brain, remember, and with help of OMP we'll learn about that. OMP, they are getting the updates, or vsmart is pushing the update to all the vEdge routers. This vmanage device is there only to manage the things, means you have to push the template, you have to push the configuration, all these things. So you don't want active tunnel towards your vmanage, rather you have active and standby tunnel. So suppose if anything happen with this transport, obviously you will find that you have the tunnel over internet or tunnel over MPLS. So at the time, irrespective how many devices you have, how many transport you have, you will find with vmanage you have only one active tunnel. That doesn't mean that if one link will go down, they will not form the other tunnel. Okay, so we have active tunnel towards vsmart, but we have active standby of tunnel towards vmanage, because we don't need that tunnel. Right. Okay, so after that we can check the certificates, we can check the control connections. Once we are bringing up the data plane as well, automatically they are forming the IPsec. For IPsec we have some default configuration inside the device. They are forming the IPsec tunnel, and because this is they are overriding some sort of segmentation concept. So you can see that I have say VPN 10, 20, 30, everything is over VPN 0. We'll see that. I'll cover this thing in more detail in app aware routing, where we'll come to know that how all these segmented VPNs, they are overridden with VPN 0. We'll check that. So everything is because my actual interface is over VPN 0. So this is the architecture. Say I have VH1, MPLS, internet. All these interfaces are inside VPN 0. Then later I created say VPN 10, VPN 20, VPN 30. All these VPN 10, 20, 30, they are going actually inside VPN 0, and then they are going to some other site, they are coming back under IPsec tunnel. So we'll see that more detail in app aware routing, but here small pipes, they are going inside VPN 0. So they will form, yes, yeah. So
VPN 10 2030, they are going through the control VPN, like VPN 0. Yes. Why is that? Like, don't they're supposed to have a separate their own VPN instead of going to VPN 0? Yeah. So you can think this as I say, we have VRF, correct? VRF 1, 2, 3. Yeah, yeah. And I have one router. And this router is going, so let me use only this. Say, sorry, MPLS. So logically we have VRF, correct? VRF 1, 2, 3. Mm-hmm. But physically I have only one interface, say ETH0. Oh, okay. Okay. So the VPN 0 is going through a physical interface, and all those three are also going through one same physical interface. Yes, yeah, that's why. Because physically I have MPLS connected interface, say ETH0 inside Okay. VPN 0. So physical Okay. path will be this, but again we have some micro segmentation, and everything is going inside this. Okay. So VPN 10, 20, 30 will be the data carrying VPN, Yes. So, whereas VPN 0 will be the control VPN. yeah, I think I have one topology that that I'm going to discuss more about in the lab too, but I'll show you that. So see, let me scroll up. Okay. So here you can see logically means physically this topology is just a minute, I'm coming to this topology. This. So physically I have this topology, but I have say VPN 10, 20, 30. Now logically if you see this, again this is a network type of virtualization. So logically if you see this particular section is showing only VPN 10. So I have VPN 10, corporate VPN 10, you can see here on the top, corporate VPN 10, and that VPN 10 is running OSPF, VRRP, OSPF, like that. But inside the same physical infrastructure, I have one IoT VPN 20. So for IoT type of traffic, this is the same infrastructure, but again it is segmented. Again, I have one other VPN, say VPN 40, that is for Wi-Fi or wireless. So here you can see VRRP. I don't have OSPF or BGP anything here. So its logic is different, although it is inside the same VPN 0, because the physical interfaces are inside VPN 0. Okay. So logically you can see that you have different like say Nexus VDC. You have one physical box, you can segment them. So here it's like complete network type of virtualization. That okay, although you have the same physical box, but still you can virtualize in segmentation or segments. I'll cover this. We'll understand more in the. No, I got it. Yeah, I got it. Yeah. Okay, so we'll go that. They will form the IPsec tunnel, and all the time I'm telling that these V-edge routers, say when we are talking about the control plane devices, say somewhere I have my control plane devices. So these control plane devices, suppose I have this internet, and then they are connecting like this. So these control plane devices, they are never forming IPsec. Why they will form IPsec? They are never sending the data. They are never in the data path. So these control plane devices, they are always forming DTLS. That means if I check my V-edge router, I will find that they have two type of tunnels. One tunnel is DTLS, that is used for control, and one tunnel is IPsec, that is used for actual data movement. So the data will flow
from one VPN to other VPN, from one side to other side, but control instruction they will get from the DTLS channel. Okay. Mhm. I got one Yep. question that one of my training, one guy is very knowledgeable person actually. He's dual CCI and he's working for Cisco and he's doing some solution architect and those things. So he asked me one question that, okay, how is it possible that same, say VPN 0, ETH 0 interface. So same VPN 0 can form the DTLS channel and it can form the IPsec channel. Is it possible? The answer is no, it's not possible. That same interface can be used. So how the packet will come, it will determine that I have to go inside IPsec or DTLS. It's not possible logically. Actually, they It did. depends. Yeah. It depends, right? If you have for example a DMVPN, right? All the tunnels are basically coming up to single interface. Okay. So the answer for this is that to form this DTLS channel, the devices they are using their system IP. So I have system IP here and I have system IP here. They'll form the DTLS channel with help of these IP addresses because system IP is over the box and that IP will override all the interfaces. So whatever n number of interfaces or VPNs I have, for everything I have this control traffic. So that's why they are using the system IP. But when we check the VPN or when we check the IPsec tunnels, we'll find that they are using the interface IP. So over the interfaces, we are giving some IP, source and destination, obviously, the source and destination IP from one place to other place. So to forming the IPsec tunnel, they are using the interface IP, but to form the DTLS tunnel, they are using the system IP. So in the some newer version of the iOS, like you can create. I know the regular routers we used to create IPsec tunnel on the physical IP addresses on the interface, but like for example, in the newer model, you can also create VTI, and you create which basically a virtual tunnel interface, and you can create multiple IPsec tunnels on that. Okay. So in this case, means in our SD-WAN Viptela, what I try to tell that inside VPN 0, suppose I have, I don't know, I can create virtual interfaces or not in this, but inside VPN 0, I have ETH 0, and then I can create IPsec tunnel. And with respect to say DTLS channel, I have system IP, Mm-hmm. and then I can create the DTLS like that. So Okay, so there's yeah. yeah, I know this is not a Cisco device actually. Yeah, that's why. Because I know in 4400 series routers, you can create multiple VTIs and create multiple IPsec tunnel on that. So I believe because they're Viptela, so I mean they might not have the VTI kind of thing. Yeah, and other question with this same I got. So the question is now this SD-WAN is supporting ASR and ISR. Mm-hmm. So whatever supported inside ASR and ISR means those features obviously that can be 16.9.1 image IOSXE. So those things will be supported inside this as well, and that's true. We'll see this in the template lab, that inside template, while creating the templates, even we need 18.3 image over all the controllers. Then we'll get these options, means to create the configuration or the templates for these devices. So what I just try to add here, that now these branch edge, they are supported by
ISR and ASR as well. So those things will be possible that we are using with the Cisco devices. It will Oh, okay. take some time. Still, Cisco is also doing, some modification and research on that. So I think it will take 6 months to 12 months to add those features. So what they will do, they will start some image 20.0 and then they will tell, okay, you can use all the features that you used to use with this ISR, you can use with the SD-WAN as well. Mm, Okay, so, that would be good. and in the BFD section, we'll discuss about to check the liveliness of all these channels. We have BFD. I think the timer is 1 millisecond. And 7 millisecond is the hold down time. Means if you not get any information up to 6 seconds, then they will send the message to the vmanage that this particular tunnel is down. You can check this. So they will send some 6 hello packets, the BFD inside the IPsec to They, track they the. must be using they must be using BFD with IPSLA, because I don't think so. You can because BFD is just for the next neighbor, right? Just like a CDP. They have some customized BFD actually. We'll see that. We So have section. We have one complete section for BFD. We'll check that. okay, because I worked on BFD with I know it can only see the next neighbor, like next neighbor interface, but doesn't know up 2 hops after, 3 hops after, right? So for Okay. that, I Okay, have to use okay. IPSLA So on that answer I BFD. can give. So see, in our Viptela fabric, all the devices are only one hop away because everywhere we have point-to-point tunnel. Oh, Everything okay, is one hop okay. because we have full mesh connectivity and everything is one hop away. All the devices, they have independent IPsec tunnel with all the devices. Yeah, but that's good if you, let's say, between V edge to V edge, Mhm. you are passing through, let's say, 5 routers, right? Because 2 or 3 routers on the internet, 1 on your side. Mhm. So if, let's say, a service provider, one of the service provider router goes down, you basically you won't be able to see IPsec tunnel because the router is down in between on your MPLS. So BFD probably will not work at that point because it cannot see 3 or 4 hops away. Okay. So in that case, then you would have to use IPSLA. I believe this is my imagination that you have to use IPSLA. So we will see in the further there if they Yes, are we using can. IPSLA on the BFD or not. Yeah, we'll check that. We'll check that in the BFD. We have a separate section for BFD. We'll check Okay. that use case. Okay, so we'll move. And what's the recommended MTU for the? I believe it's 1400. I saw somewhere. We'll check that as well. The recommended MTU. If you are using VXLAN, then there is different MTU, and Okay. without VXLAN, we have different MTU. We'll see that. By default, MTU is 1500 set in the device. I Mhm. will see that. Those things will Okay. come. Then for BFD session, because as many we have IPsec tunnels, so suppose if I have 6 IPsec tunnel, obviously we will find 6 BFD sessions, and inside BFD session we'll check that. Once we bring up the control and data plane, then we'll go and check all these things. BFD session, IP route, IPsec inbound connection, control connection, everything we are going to check. Mhm. Okay, so that's it. We can do the lab. Will you do the lab or because I So is it have the done. same lab or is it a different one? I want to do you the same lab and we'll see that in the certification process where we have the issue. Sure, that would be a good one. Yeah. I wanted to see why this. All right.
So can you see my, oh, share, okay. You have been presenter screen. Okay, can you see my screen now? Actually, I'm not able to see now. Yeah, I'm able to see. Yeah. All right. So I'll say next here. Okay, this one. So this is the one we have to configure, right? Yeah, for vmanage, so you can copy paste, no problem. You can click to the launch and you can simply copy paste. Yeah. Conf T, you haven't take C, I think. Oh, you didn't. Yeah, you're right. Okay. Yes, done. Configure tolerant representation we manage. Configure tolerant representation E1. Because it took the new IP, so that's why it's Yeah, restart. yeah. In the bottom, you can see the MTU nodes was there. Yeah, that's what I said. 1400 it mentioned. I was going through this. Okay. So Uh, 14. we'll check that. This BFD and MTU, we'll check. So one question I have, like, although it's saying vBond, right? Mm-hmm. To access the vBond orchestrator, go to access device and launch. When I click on launch, it says VH. Yeah, I'll tell you why. So the OVA file for vEdge and vBond are the same. To Oh, okay. convert, to convert vEdge to vBond, we are using that local keyword. So if you paste that configuration, you'll find that in the system there is one line called vBond and then the IP and then local. That means that particular vEdge will become the vBond. Basically, we are changing the host name. Yeah, the last line, the vBond to Oh, okay. 262 and the local. This local keyword will make this as a vBond. As a vBond. Okay. Yeah. Very good. Because I was a little bit confused. I said, what's going on here? Okay, now vBond. All right. Even in the left hand side also you can click, instead clicking next, deploy vSmart is there. Now you can directly click deploy vSmart. The tab is there, left hand side. Left hand side. Say there are, Oh, here. Okay. yeah, Okay. there also you can click and you can reach to that point. Sure. Okay. So we did vBond. Now we're doing this one on the vBond. Yeah. Get a minimal configuration for vSmart. Okay.
So the OVA file would be for vSmart and VH, and there will be no OVA file for vBond, right? Yes. Yes. Okay. Verify. Okay. So to access to the device, go device and launch vManage We device. have already device. Do We not. already have. Yeah. Yeah. So So I'll from just ping yeah. to from vBond. Yeah. So from any of the device, we can check the other device reachability, Right. and we can check 2252. That is the vSmart. vSmart not working. We can check. We can do the troubleshooting. You can go to the vSmart and you can check show run VPN 0. So VPN 0 configuration. Oh, we haven't done the tunnel interface configuration, so we have to do that as well. You can just simply click to vSmart. Or vSmart or vBond? Or vSmart? vSmart. We want up to vSmart. We are good. Okay. The tunnel interface will do the configuration on the top itself. If you scroll up, now this we have done actually. If you go in the top, we have two tabs on the top. One is the system configuration, one is the tunnel interface vSmart. So we have deploy vSmart and then tunnel interface. Yeah. Oh, okay. Because you see, I just clicked on here. That's why. If you click next, I Yes. believe automatically to the next tab. It will go next. Yeah. 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 vSmart, vSmart. So we are changing the VPN. I believe it will. Yeah, it will refresh. Yeah, great. Okay, now we can ping it, right? So from 5.2, right? Yes, yeah. Yeah. And there was another one, 6.2. Yeah, 6.2. Okay. So we have controller reachability. Great. Yeah. Yeah, this one. Yeah. From SHS vSmart. vSmart we already done. What about vManage? We already done. I'll just double check 226.2. And from vSmart, we already done from vManage 7.2. I think so we have done vSmart vManage. Yeah. Okay. Then we can move to next. Okay. Now we have to open up the dashboard. So you can go next. Yeah.
Yeah, you can go to the devices and you can add the devices. Configure and device. Here you can see that this is the dashboard. Yeah. Then Yeah. configure devices. We need to add the controllers. So on the top we have vEdge and controller and add controller. You can click to the add controller. Yeah. Add it. Yeah. 2262. Admin. And you can see here in the bottom that we have option to generate the CSR. That's correct. We'll add. Next time we'll add 2252. That is the vSmart. One difference I want to show you here. So here you can see in the protocol section we have DTLS. If you click there, you'll find TLS as well. Mm-hmm. So that's one difference between vBond and other softwares, that vBond is only supporting DTLS. So by default it is DTLS, it is supporting only DTLS channel. But vSmart and vManage, they are supporting both DTLS and TLS. So we'll leave So DTLS. what port it uses? There's Yeah, no port information. they are using default port number. We'll see that port numbers as well, 1 2 3 4 6. Even the document is also there for the port numbers. So they have some default port numbers. We have one data sheet for the port. I'll share that data sheet, that if these devices are behind the firewall, then what type of ports you need to open inside the firewall to bring up the Right. control connection. Right. Then again we'll go configuration certificate. The same place we'll go to certificate, because we haven't generated the certificate for vManage. So we'll go to the more and we will generate the CSR for the vManage. So we'll generate the CSR. You can go and clear. Think so. I get it here, sir. Maybe I did not click on this. I don't know. Okay, we'll see that. No problem. Generate CSR. Now the CSR has been generated for all these three devices. Later on, we are going to use these CSR values. Okay. Now we can go to the document and we can check that up to which point we have completed. When we did that, we did this. We finished these, right? We have generated CSR for the vBond and vController, but we have not signed the certificate. We will sign the certificate next step. Generate CSR for all controllers to be managed. Now this particular section on the top, you can see that this particular section is very big. So what we have to do, generate CSR, signing certificate, signing OpenSSL, local CA, private local keys, and then verify. So we have 6 tasks here in this section, and we'll do this slowly. Okay. So in this one, we will use self-sign certificate to validate authenticate controllers, right? In this lab, we'll use VM call certify as a root. Okay. So we'll go to certificate here. Yeah, already we have done this, so you can scroll down. Okay. We have generated the CSR for the. Now we have to view the CSR, right? View the CSR. We can check that, but we have already generated. So later on we'll view the CSRs, no problem. Actually, it is telling to generate the CSR in step number 4. You can read that. Select and generate CSR. So we have already generated it. Okay. Yeah, so we can verify the CSR has been generated. Select the configuration screen. Yeah, we can click to view CSR just to verify the CSR is there or not. But we have checked that it is there. Yeah, it is there. Now we are going to open the CA server, and now the Linux skills will come into the picture. That's where I had some issue, I believe. Okay. All right. So let's see where I was the issue. So to sign the certificate, SSH, yeah, we just did that. Become root. And now we have to type sudo super user. Yeah. Okay. Then change the directory. I did that. Okay.
Okay. I did that. And then open the vmanage CSR. I did that as well. Okay, and then it says press I to insert mode. Just hold on. You can go to the vmanage. You can go to the dashboard. Go to the vmanage dashboard. From here, you can copy the CSR for the vmanage. So you can go to the more, view CSR, the first one. Yeah, Control A and Control C will work. Oh no, it picks everything else. Only in the box. If you click in the box and then Control A, yeah, okay. Control C. Yeah, now you can go to here. You press I and then Shift Insert. Shift Insert. Yeah. insert. Yeah. That's a different thing. Okay, shift. Where's insert? Go here. Shift insert. Okay. Or maybe so that's the problem. Okay. Then you can press Escape key. Escape Key and colon WQ. Colon WQ. Yeah. Means write and quit. Yeah. Likewise, So we I will. think so. Yeah, Yeah, I likewise think the we have first to step create was VI VBond CSR and V Smart CSR. So we need to create 3 CSR here. Means we need to okay. VI VBond vbond dot CSR. Yeah. dot You can use CSR. VBond. You can use VBond, not only V. You can Okay. use the full name because we are going to copy paste something. That's why. Otherwise, you can use any name, no problem. Okay. Again, you can go to the dashboard, and this time from the dashboard, Oh, you sorry. can Manage VBond, and view CSR, view CSR first one, yeah. Control A. okay. Copy, close here, I, and then I and then Shift Insert, shift insert, Escape, escape, and then the colon WQ. yes, yeah, correct. Then VI Smart, yeah. Okay. Then again we'll go to the dashboard. Oh, sorry, we manage. Yeah, we manage. View CSR. Yeah. Click here. Okay. Copy. Close. I insert and then Shift Insert, yeah. insert. Yeah. Okay. And then escape. Yeah. Colon WQ. Yeah. Yeah. Now here with help of ls minus LA, we can check that these files are there or not. Yeah, we have these files. We manage, we are correct. Now I want to tell you one thing here. If you go to the dashboard, we manage dashboard. Here, if you already click to VSmart. Okay. Yeah. So once you click to the VSmart, it will become some small yellow type of, it is a small yellow color. Now in the bottom, if you see, it is written 2252 add device, generate CSR, upload certificate, update VBond. So when we complete this process, means if the process is 100% correct and completed, we'll get the green tick mark to all these steps. Okay. And if you click to VBond, then in VBond you'll find some different steps. So if you click VBond, you don't have update VBond. Again, if you click to vmanage, then you have all the steps. So for vmanage and vsmart, we have the similar steps, but for vbond, we don't have that last thing. That is the update vbond. Oh, okay. Okay, we'll go back to the document. Okay. I think we have. Okay, so we have paste the CSR. We did that. Press escape and repeat this process for VBond and vSmart. We done up to here. Yeah. Verify that you have the 3 files, which is ls-lsa. Next. Yeah. Now it says sign the CSR using OpenSSL. Yeah.
First sign the So CSR for vSmart, and then vBond and vManage. yeah, in this step, what we are doing as an input. So you can see the OpenSSL command. In the OpenSSL command, you can see OpenSSL command CA config OpenSSL config input IN for input is from CSR folder vsmart.csr, and output is in the new folder, that is the new cert vsmart.pem. So from CSR we are generating the permanent certificate. So first we'll go to the please do one by one then. Yeah, please. Yeah. So first we'll go to this. You don't need that actually. The CD home Ubuntu. You can copy the second one only. Really? Yeah, yeah. You can Okay. copy the second one. You want to change the, you Yeah, want to go to the root? I'll tell you why. Just copy that. I'll just copy this and go It to will the. be for vSmart. We'll go to the root. Everything is inside the CS server. We'll Oh, go CSR. yeah, Okay. we'll go to the CS server. Do not paste. Here you can type cd space dot dot. Cd space dot dot. Enter. Now we are in the root. Okay. Okay. Now we can paste. And we can check. Yes, you have to click yes. And then again yes. Enter. And then yes. Now here you can see it's very important. In this you can see one thing, that is serial number. So it is telling that serial number is 4096, the second line where we have the certificate details. In the certificate, yeah, on the top, on the certificate, Okay. yeah. The serial number is 4096 and the validity is up to 2024. That's okay. So we are very much good with this particular certificate. Now again we'll go back and we'll repeat the step for the vBond and vManage like that. So second and third line. That's why I'll tell you to give the name vBond. See here also we are using the same name. And you can check the serial number. Say serial number for all the devices are different. So it will start with 1001 and then 1002, 1003 like that. 1000, 1001, 1002. Why it is important? Because vBond is going to check the serial number of vSmart and vManage, and vManage and vSmart will check the organization name of vBond. Okay. Okay, so we are done up to this point. What we can do, we can go to the new cert. Okay, we can follow the document. Yeah, you can go next and we'll check. Load root CA public key So into control. before doing this, let's go back to the root CA. Let's go back to the root CA. You can type cd space new cert. If you type new and tab, it will automatically take that. Enter. Because this is the folder where cd space and new, type new only and then tab. Yeah, enter. The folder name is certs. Then here you can check ls minus la. You should have those three files. If you want to check these files, suppose if you want to check the vsmart file, what you can do, you can type cat and then the vsmart, the tab will work. vsmart, the name is vsmart. Oh, vSmart. Okay. Yeah, if you use tab, it will autocomplete. Yeah. Okay. Enter. So this is the certificate that has been generated. Okay, we can scroll up, we can verify this certificate from here as well. So if you scroll up, you'll see that what is the serial number and all those things. Correct? Right. Yeah. No problem. We'll go back to the document and we'll follow that document now.
So they have given one public key, and this public key now we have to install inside all the controllers. So So this I have to copy this one. Yeah. yes, yeah, I will copy this, and you can go. Even you can copy this to the notepad, because all the time you have to copy this. So better I'll copy this. Yeah. And then we have some steps to follow. So you can go back and you have to log in to the devices. What you have to do? Yeah. Yeah. Ragnesh, can you hold on 1 second? Yeah, sure. Sayed, we can start. All right. So next we have to go inside the devices, individual devices. Even you can copy that command vi/home admin. That command is there, vi/home admin root ca. Yeah. So it says login to controller. Yeah. So controller means to the vmanage. vManage. Yeah. We'll start with vmanage and then we'll go to all the devices. You have to type v. You have to type v. And then you have to type this vshell. First type vshell and then this thing, because we have to go inside the Linux mode. vshell, you mean here? Yeah, yeah, like this? Yeah. Oh. Now we can paste. So this information is there. Yeah, it is there. You can see type vshell. Oh, okay, I missed that maybe. Here we have copied that key. Yes, I Public to key. insert. Yeah. So in I the think notepad, so. I have. in the notepad we have copied. You can copy that from notepad. Yeah. And the same thing, that press I and then shift insert. Yeah. Then escape. :WQ. Okay, now we need to exit from here. Type exit. And then from here we have to do some sort of request. So the command is request. You can type request space root and then tab. Install. So in and tab. And then we have to give this path. So you have to give this, you can copy from there to home. Here it is in the screen itself. Oh, okay. In the screen itself we have the path. In the vmanage, yeah. So the path is, even it will auto complete if you type. Okay. Oh. Enter. It should show successful message. So here it is showing successful message. That means it is installed. If you want to verify, like in document, you can verify, but there is no need to verify this. But if you want, like in the bottom, they have given this HTTPS vmanage IP data service, like that. This is one of the API call. With help of this API call, we can verify this. So you can verify it. Can you give me a minute? I'm getting one call. Sure, yeah. Oh, thanks. I'll pause the recording. So we have said we have done for this vmanage. Please do for vsmart. Yeah. So you have to type v. So you will go to vcell. It will auto complete that. Yeah, correct. And then we have to go inside that folder.
if you type in the notepad, otherwise the folder is vi home admin root ca. Yeah. No problem. I can. It will. It will. I think it will copy. I think it will copy. Yeah, I should copy. Yeah, it will copy. Yeah. Okay. In public key we have. Should insert and then escape. Yeah, we'll type exit and then request root install. Quest. You have to type up to REQ. Yeah, yeah. Okay. Root install. Yeah. Then that same thing we can paste /home admin root ca. It will auto complete. If you type, no, it will take it. Type /home /h tab like that. Then admin tab and then root. It will auto complete. Yeah. Done. Now we'll do this the same for the vbond. So we can go directly to the vbond. Yeah. Then we'll can paste here that vi. Yeah, vsmart also you can take that command. /home. Yeah. Was there? Yeah, home admin root ca. Not this one, right? Yeah, that's one. That's the This path. is one. Yeah. We're doing vbond. vbond. Yeah. Escape. Okay, this is done. Yeah. So now what we can do, we haven't done the request. We have done the request. We have to do the request as well. Just go back to vbond. Yeah, we have to do that request. Yeah, request root install. Install. Yeah. And then we have to give the /home admin root ca. Admin root. It will not, yeah, enter. So everything is perfect. Now we can check the steps and then we'll go to the dashboard. We haven't done this part, right? No. This part, we haven't done this part. So we are here in the certify OK at home. Locate the PM files. This we haven't done actually. We are in the back stage. If you go previous, this is the next that we are going to do. In the same, go down. Oh. You have to re-log in. I think it will not work. Yeah, I re-login doesn't work. Like you have to go back and then. No problem. You type. I'll tell you. Type cr. Only go to the URL. Type cr in the URL.
Yeah. Yeah. Like Control. the way I used to go is back, No problem. right? I'll yeah, simply type CR here. No, 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 Just remove this one, right? no need to even remove. Oh, okay, no problem. Remove. Type Control A on the top. Simply it will select everything. Yeah. You can type CR. Just hold on. See the first link. Criteria is there, na? Criteria. Yeah, take that. Yeah. Just hold on. Yeah. What? Yeah, one. Now we can go to the active one. Yeah, access learning. Yeah. We can directly go to the overlay. Yes, correct. Yeah, overlay. And we have done this, na? Certified signature. Okay, you can go to the I think that next. we have done all these We steps. have already We have, done this thing. Yeah. yeah. We can go to the certified that yeah, here. So here you can click to the local CA on the top. Directly we can go to the local CA. Correct. If you go to up, yeah, local CA, the fourth one, the fourth tab on the top, Oh, okay. local CA. Local. Oh, you mean load CA? Yeah, load CA. Sorry, load Yeah. CA. So this thing we have done. So if you scroll down from here, we can go next. Okay. So we have verified this thing and we have done this. Now we are going to do this thing. So now we have to load. This is actually the final step. Now we have to load the certificates. So we have the certificates in new cert folder. We are already in this folder. So no Mhm. worries. And then we'll do the cat. So first of all, the order is important as it is telling. So first copy vmanage, vsmart and vbond. If you read this, so you'll find that. So no problem. We'll go to the we'll go to the CA, go to the root CA, and Yeah. we are already in new cert. So here we'll do cat vmanage.pem. Cat we manage. Yeah, vm and tab. You will if you type vmanage and tab, uh, 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 type tab. Okay. Automatically it will take. Yeah. Okay. And then Enter. enter, and you have to copy this. So copy this entire file from the beginning, not from here. Scroll up. Oh, yeah. From certificate you have to copy. Scroll up. No. Scroll up. Certificate is there, na? Yeah. Yeah. From here you have to copy till bottom. The birth certificate as well. Yeah. From here everything you have to copy. Just scroll down. Go down till end. Yes. Okay. And Then we'll then go to vmanage. Open the vmanage dashboard. Vmanage dashboard is the good. oh, dashboard. Okay. Yeah. 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 Here. So you have to click. You have to click to just hold on. We are in the same place. Here Mhm. here only. We have to click vmanage. Already clicked. Correct? What I'm Uh, telling that you have already clicked here in the vmanage. It's already yellow. yes. Yeah. Okay. Yes. Now what we'll do in the right hand top, you can see Right. install certificate. Yeah. Okay. And here you have to paste. So whatever we copied, yes. And then we'll click install. So it comes like this, right? Yes, yeah, certificate. Yeah, it is correct. Install, and then it will schedule the job. So on the top side, on the top, you can see there is one cloud. Correct? Cloud is there. One notepad is there. One bell is there. You can click to that page. Oh, it's already installed here. Yeah. So do one thing. Expand this. Greater than sign is there, na? So if you Yeah. want to see what are the things happen behind the scene, you can read these messages. So what it is telling that, okay, we manage with this particular number, serial number I am installing. We manage one, complete processing serial file. We manage push vsmart
list. So it already knows what is the vSmart list. Update controller with new certificate serial number. We know what is the serial number of that. Okay, it is updating. Again, you can scroll down. Yeah. So what is the final 4 points it is telling? So complete processing serial file, done push vSmart, no new update set, successfully synced. Now what we'll do, we'll click to the configuration and certificates. So we are inside configuration, you can click certificates and controllers. Now if you see the vmanage, it is telling that vbond updated, and in the bottom you will find that all these things are green. Right. So next you have to click to vSmart. Then you click to vSmart and then go back to the CA server. CA server, yeah. Here now we will type cat space vsmart.pem. Yes, now we will copy this entire file. Start certificate. Yes, yeah, 100%. Yeah. So here also we can check the messages. So up to which step you have done, say last time? No, we are ahead of that step. I was when no, I did not do this part because this is the final part, right? I did not do this part because initially when I tried to put the command on the certificate server, it was not taking. It took for vmanage, but it did not took vbond and for vsmart. So I know my mistake now. I believe instead of I did not use the keyboard. Like it's like a Linux thingy, right? So I did not use the keyboard. I used the just like you mentioned, shift and insert. Okay. So probably somewhere I made a mistake there. Okay. So this time we'll do the cat for vbond, and we'll copy vbond as well. Yeah. Oh, so what it says? Cat. 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 Yeah. This is one of the lengthy lab, but good thing is that it's manual, so we are understanding that what is happening behind the scene as well. Right. Now again we'll go to the certificate, so configuration certificate, and this time we have to select vbond. So please click to vbond. Yeah. Just hold on. Cancel it. Sorry. Yeah. Sorry, I clicked. Yeah. And then we'll paste that. Okay. Yeah, it's done successfully. You can go back to the certificates, configuration certificate from here itself. Yeah. And we'll check that everything is green or not. So here you can see green, then you can click to vbond. Here it is green. And here also. So everything is okay. Now you can click to the dashboard. See, your control plane is up. So vSmart is 1 now. vBond is 1. vManage is 1. Yeah. Yeah. So our control plane is up. What we can do now, you can go to the vManage, click to the vManage, a CLI actually. Oh, CLI, okay. Yeah. Later we'll learn that how we can check from the dashboard itself. Here you have to type one command, show control connection. Yeah, connection.
Yeah, enter. So it will show you the connection with VSmart, VBond, and these connection you can see they are a DTLS connection. And even you can see they are forming this with the help of system IP. Okay. 172.27 is the system IP. So now what we'll do in this particular lab, we'll continue this lab because otherwise again we have to start from beginning. So we can't just stop here. Right. Now we have to add the V edges. So we'll add only one V edge. The process will be same. Either you add one V edge or four V edge. The process will be the same. So we are going to Okay. add one V edge. Now you can go to the deploy V edge from here. You can click to deploy V edge. Okay. Deploy Yeah, bridge router. The yeah, controller deploy will now deploy bridge router. These routers are located at the perimeter sites in the older network. The lab topology uses routers and perimeters of the receptor branch. They route traffic to and from the sites and overlay network. VH router can either physical hardware router or software exit routers. Okay. So to access the VH router, to go to the access device section, click on device icon. yeah. So we'll click to the launch and parallelly we'll copy the configuration as well. So whatever we have done for VSmart, VBond, the same thing we are going to do. If you scroll down, we'll copy the we want just for DC1 for example. So Okay. we'll take only for DC1. Yeah, because you understand that rest you will do. Yeah. So Right. what I will do here, that will bring up one of the device and still you have 3 hours. So you can Right. complete other things as well. Okay. Yeah, we'll go back because we need to create some static route as well. So go next, scroll down. Now this time we'll copy this portion. Yeah. Here we have conf means VPN 0 configuration and static route. Right. Now this I noticed one is interface with capital G and one with interface with small g. Is there any difference between those two or just it Yeah, doesn't matter? it's a case sensitive. So if it is Oh, capital G means it is taking G. Like in Cisco, if you type a small or capital G tab, it will auto complete. But here it's purely case sensitive. Even if you take G01, it will not work. You have to type GE. That's the So what's thing. the difference between those two interfaces? One with a small letter, one is No, it's just a what? name. Just a Or it's name. just Yeah, or it's just just a name. okay. Yeah. Okay. That's it. I think we'll leave it. We'll go to the VH CLI and we'll ping to all the controllers. 2252. Yeah, 2272. Correct. Yeah, correct only. This is my vmanage. Then 2252. That is my vsmart. And 2262. That is my vbond. Yep, all of them are pingable. Okay. Now we'll do the certification portion. So again, we'll go back to the document. You can go next now. To access a VH router, go to access device. We have already done this. We can go next. We have already Oh, done the okay. verification. Yeah. Yeah. Now we'll do this. Add root CL. So this public key, I hope this will be this. We are already inside the device, so no problem. And the public key, I think the same public key we have. So public key also we have. Go to the DC. Yeah, the device only. DC1, the second tab. Yeah. Type V Oh, okay. to go to vCell. Yeah, the same process we are doing. Yeah. Then we'll go to the VI. Yeah, correct. Yeah.
Then we copy from Notepad. I think in Notepad we have that file. The same, yeah. I and shift insert. Okay. Exit, and then we'll request the request root install. Yeah, we can give /home admin root ca. Install, Oh, install. and then /home root ca. Yeah, correct. That's it. Yeah, root ca. Then type R and tab. Yeah, enter. This should be successful. Yeah, successful. Yeah. Right. Now we'll check the other things. We need to do other stuffs as well. So go to the document. Yeah. And scroll down. This step is done. We'll go next. Already we are here. Do not click here. Already we are in vmanage. So go scroll down. So it is telling to download this file from the you can click this link, it will download. This is the vEdge list where we have the serial number and chassis ID. So where this file is coming from? Yeah, From Amazon? they will give you actually. When you purchase the device, they will give you. Here for the lab purpose, we have some devices. Oh, Okay, they will give you this list. Again, this is the whitelist model that my vBond also know, and they will also provide you. Okay, so please do not click here, just know the location that where is your file, because we need to upload this file inside my vmanage dashboard. So you can open the vmanage dashboard, leave it, it will take it, it is there in the download only. You can go to the dashboard, vmanage dashboard. vmanage dashboard. Yeah, dashboard, vmanage dashboard, the last one. This one, right? Yes, here go to the configuration devices. Yeah, devices. Now we have to upload. No, vEdge. We have already done it. We need to upload the vEdge list. Yeah. Once you click, then it will ask the location where we have downloaded that. File? Yes, that Viptela file where it got downloaded. You have to give that location. Okay, so that will be under data. Yes, yeah. So please wait. Check that. Validate the uploaded vEdge. Otherwise, it will not work. Okay. Yeah. And then upload. Validate upload vEdge list and send to controllers. Okay. Yeah. So it's basically downloaded from the cloud, and now we are pushing it to the vmanage. Yes, vmanage vBond. So okay. Are you sure you want to upload a file? Yes. So once it is uploaded here, you can see the serial number. You can click OK. You can see the serial number and the chassis ID. Go back to devices. Why it is coming like this? Yeah, so here you can see the serial number and the chassis ID. Now you can't copy the serial number, the chassis ID from here. So to copy these things, you have to download. So in the top, you can see one download icon is there. Right hand side top. Download. Okay. Yeah. You download this and open this in Excel format. It is in CSV format. You can open this file. So we'll use. Yeah. Yes. Yeah. Is this fine? Like it's in CSV. Still in CSV. It's open in Excel, but yeah. It's fine. So we are going to use this. Next, we have to go inside the document, and you'll see one small difference is there. So if you go to the document, on the top, on the top,
Document. Oh, okay. Document, yeah. So if you scroll down, so we have done these steps. Scroll down. We have done this. Okay, scroll down. Yeah. We have done this as well. Okay, scroll this. Okay, just scroll up. So the final step for today's lab, what we have to do, scroll up. What you have to do here, that you can copy this command, request vEdge cloud. You can copy this to the notepad. Yeah. So here we need to put the actual chassis number and the token number. So from the Excel file, if you open the Excel file, say I will use number 8 for example. You can use anyone. But suppose I Anyone? will use number 8. If you click to the chassis and the token, so we'll copy the chassis number and the token. Yeah. Click to the chassis number field. Yeah, chassis, only chassis number. Yeah. Go to the number 8 chassis. Yeah. Copy this. And you can paste to the command. So in the notepad, we will remove this chassis to, yeah, the brackets as well. Yeah, you can paste here. Then we'll go back because we need token as well. So in the Excel file, we need token, same serial token number. Yeah, only the number we need. We don't need the token keyword. Okay. Yeah, correct. So we'll put the token number and we can copy paste this command to the CLI. To VHCLI Yeah, here. VSCLI. Yeah. Here we'll paste. Yeah, enter, and we are very much done. Now you can check the document. Once we've done this, that means in the controller you will find that the vEdge will be there. So now if you go to the controller, you go to the dashboard controller. Yeah, our dashboard, where it is. Here it is. Okay, so dashboard, vEdge is showing down. Don't know why, but you can see that this is there. Likewise, Maybe we it's just can. takes some. Yeah, sometimes it is taking some time, but that's the way that you can add. So you can go to the vEdge, just go to the vEdge, we'll check that. vEdge CLI. You can type show control connection here. Show control connection. Say it will come up. It is try to establish. And one very important point I want to highlight here. So if you check the vBond connection, so this connection will be teared down. It is showing 00 as a system IP. So after some point of time, these two vBonds you can't see. You will see only vSmart, vSmart and vManage. Oh, okay. Okay, because they are forming the temporary tunnel with the vBond and then they are forming permanent tunnel with vSmart and vManage. We have one very important thing here to discuss, that what is the SD-WAN recommendation. Here you can see on your screen that for vManage, what recommendation we have. According to Cisco, they are telling that you should have a cluster of 3 vManage. So if you have cluster of vManage, yes. Sorry for disturbing. It is also recording, correct? Recording is started, yeah, already started. So we need 3 vManage. So if you have cluster, that means if anything will happen with any of the vManage, still you have the other vManage in the management plane.
So that is one recommendation. For vBond, the recommendation is that you should install this in DMG. Why? Because you need one public address for this. You have one public IP. You are putting this inside DMG zone. For vSmart, now here we have cluster in terms of vManage, but for vSmart, you may have say at least two vSmart in a redundant manner. So vSmart 1 and vSmart 2, there are some sort of redundant maybe DTLS or TLS with the data plane. And what is the limit? So a single vSmart can support up to 2000 control connection, that is 2000 Tloc. And we know what is the importance of Tloc. A vManage, a particular vManage cluster can support up to 20 vSmart controllers. So what does it mean? That from vSmart you can support up to 2K Tloc. That's the one thing. And from vManage can support up to 20. So vManage, one vManage can support up to 20 vSmart, although one vSmart can support up to 2K Tloc. Now let's see what is the vEdge recommendation. So for vEdge, obviously you will see that what type of data requirement. According to that, you will take say 100 or 1000 or 2000 or 5000 type of vEdge, but a particular vManage server can support up to 2K routers. Okay, so that means one vManage can support 20 vSmart and one vManage can support up to 2K vEdge. Now if we multiply with 3, so 3 will be multiplied everywhere. Means a cluster of vManage can support up to 60 vSmart, cluster of vManage can support up to 6 vEdge, 6K vEdge, and one vSmart can support up to 2K Tloc connection. Okay, so this is just for reference. You can just check the limit. What is the limit? Today we have one lab. The lab name is vManage Dashboard. So today we are going to perform the vManage Dashboard. Although we know about this vManage, so whenever you are opening the dashboard, what are the things you are finding? Whenever we are doing HTTPS to the vManage IP, at that time on the top you will find say vSmart, vBond, vEdge, vManage, reboot, certificate, all these things you will find, correct? In the second line, what you will find? You will find information about say control connection, the control health, the transport health, all these things. Then if you go down, you will find inventory. You will find other things related to inventory. And finally, if you see the bottom, in the bottom page, you'll find application related reports. That doesn't mean that from this particular dashboard you cannot go inside any vSmart, vBond or vEdge. You can go inside that. So suppose if you have 10 vEdge, and if 10 vEdge, say we have 9 vEdges up
and one V edge is down, it will show you up and down arrow. First thing. Second thing, inside this 10 V edge you can click and you can go inside individual dashboard. Say this is vManage dashboard. From this vManage dashboard you can go inside vSmart dashboard, vBond dashboard, vEdge dashboard. So we have various options. What are the options we have? You can check real time. You can go to dashboard. You can check some other status as well. We'll see that. All these things we can see. So when we are talking about dashboard, that means again you will open one other new dashboard. Suppose I can open vEdge dashboard. Again here in the left hand side you will find various things related to transport, related to application health, related to tunnel, related to application flow status, related to real-time configurations or real-time monitoring. Okay, all these things you will find. Not only in vEdge, you can go inside vSmart. So you can go inside vBond, vEdge and vSmart, and you can check all those things inside this dashboard. Apart from that, you can check the status of control plane, the transport, how much bandwidth, inventory, who is valid, invalid, signed, the reboot counters, the certificate validation, etc. And finally in the bottom you can see that what is the health of the application, how it is. Okay, so I'll come back to all these slides. Let us check that. Just a minute, hold on please. I have started a lab. Let me check the lab is started or not. Okay, so here you can see that lab is started, and if I go to vManage login, before that let me show you the vManage widgets, what widgets you have. You can see. So here you can see that on the top you have device pane. It is telling about the status of the devices. Let me change the color. Yep. Device status, then reboot certificate, then controller status, site health, inventory, the transport interface distribution, means less than 10 Mbps, in between 10 to 100, like that. Then inventory, vEdge health, transport health, then finally you have the application counter. So if you see that how many places you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So you have 11 thing, and again you can click to the individual place and you can go inside the individual dashboard. So you can take the PDF or document you want to take. You can check all these definitions. I'll show you one by one in the lab. Let me launch the lab. Admin. Let's go back to our slide as well. So let me go here. Yep. So you can go, you can log in, no problem. You can always log in. Then from the main dashboard you can go inside the individual dashboard. We'll do that. We'll go inside the individual dashboard.
I'll check. So what are the things it is telling you to check? You go and check the individual status. Here you can see the real-time SSH device dashboard. We'll go, we'll log in inside the device. We'll check the interface, ARP, clock, no problem, we'll check. Then we can check the interfaces. You can create users. If you want local user, you can create local user. And we can do all those things. Alright, so we'll check the interfaces, and then on the top you can see here that it is telling you to check vSmart, vEdge, vBond, and finally vManage. So one by one we'll go, we'll check all those things. Interface, ARP, clock. We'll add new interface. Then we'll go here and we'll check. Yes, we can connect with eyes. You can create a user, you can connect with eyes, no problem. It's simply a software. You can do anything that you want. And finally you have the vManage, that is working as a local host where you are already logged in. Then you can check the reboot, you can check the alerts. You can go and check the certificate that we have checked so many times. Then you will come to this place where you can check the control connection. So let me complete the upper portion, then I'll come in the next segment. सब कुछ आएगा अलर्ट में, जो भी अलर्ट में आता है. यस, ओके. बट रिपोर्टिंग के लिए हम लोग के पास ये है वी एनालिटिक. ओके, विल सी. ये रिपोर्टिंग टूल क्लाउड में इंटीग्रेटेड है और क्लाउड पे सारा रिपोर्ट जमा करके निकाल सकते हैं. ऑल्दो यहाँ से भी सब रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं. मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कर सकते हो. विल सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू से vSmart. यहाँ पे आप जाएंगे मोर ऑप्शन में. यू हैव रियल टाइम डैशबोर्ड SSH. आप SSH भी कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है SSH में जाने का. टूल्स में जाके SSH आप कर सकते हैं. सो एक जगह जाने के लिए वी हैव वेरियस ऑप्शंस. डायरेक्टली फ्रॉम द डैशबोर्ड वी कैन गो, and we can go from the tools as well. Show ARP, tabular form, tab means tabular form. Show clock. Okay, so आप CLI related things यहाँ पे चेक कर सकते हैं. Show run भी चेक कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन. फिर आप पूछ रहे हैं कि AAA या आई से इंटीग्रेशन है, तो आप देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं AAA से. लोकल यूजर रेडियस टैकस, यूजर क्रिएट कर सकते हैं. यूजर ग्रुप नेट एडमिन, उसके अंदर जाके फिर आप उसमें प्रिविलेज दे सकते हैं. रीड और जो भी रीड राइट परमिशन है वो. ऑलराइट, सो इसमें जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिस्टम वाइड. देन VPN 0. VPN 0 में इंटरफेस पे IP, स्टैटिक राउट टुवर्ड्स गेटवे और एक VPN 512. सो वेरी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव. ग्रेट. डैशबोर्ड में वापस जाते हैं. इस बार इसके हम लोग vSmart के डैशबोर्ड में जाते हैं. डिवाइस डैशबोर्ड. डैशबोर्ड में जाएंगे तो इस तरह का पेज आपको दिखेगा, जहां पे आपको एप्लीकेशन के अंदर
डीप पैकेट इंस्पेक्शन फ्लोज इंटरफेस के अंदर आपको, अगर इंटरफेस पे अगर आप क्लिक करें तो आप देखिए आपके पास ETH1 इंटरफेस है VPN 0 में, सिस्टम इंटरफेस है VPN 0 में, ETH0 इंटरफेस है मैनेजमेंट VPN में, VPN 512 में। आप चेक कर सकते हैं स्टेटस अप है, डाउन है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर कुछ अप डाउन हो उसके बाद आप रिफ्रेश कर सकते हैं। TCP ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा TCP ऑप्टिमाइजेशन में WAN थ्रूपुट फ्लो टॉप टॉकर्स, ये ज़्यादा रिलेवेंट है VEdge में। VEdge में ये सब चीज़ काउंटर्स आपको दिखेंगे। देन WAN के अंदर Tloc टनल, सारा कुछ आपको दिखेगा VEdge के अंदर। फिर कंट्रोल कनेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कंट्रोल कनेक्शन कहाँ है, आपका कंट्रोल कनेक्शन एक vBond के साथ है, आपका कंट्रोल कनेक्शन एक vManage के साथ है, और नीचे आप देख सकते हैं सारा कंट्रोल इंफॉर्मेशन। सो VH 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 vManage vBond VH VH ओवर इंटरनेट, ओवर MPLS, सिस्टम स्टेटस, रिबूट, मॉड्यूल, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो इसीलिए इसमें आपको पावर स्लॉट, फैन कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर है। इवेंट्स, अगर, हाँ बोले, रिबूट, ये 3 बार रिबूट हुआ है, किस किस टाइम में रिबूट हुआ है वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी काउंटर्स तो बहुत कम है इसमें। फिर इवेंट्स में जाएंगे, इवेंट्स में आप देखिए तो से DHCP एड्रेस असाइंड, माइनर, माइनर, मेजर, आप मोर में जाके और क्लिक करके और इसको देख भी सकते हैं इवेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ऊपर ग्राफ भी है इवेंट का, 1 आवर, 3 आवर, 6 आवर, कस्टमाइज, अब कस्टमाइज करके एक पर्टिकुलर साल, 2 साल का भी डेट ले सकते इसमें। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि इवेंट को PDF में जनरेट कर लूँ, सो दैट ऑप्शन आई डोंट हैव, इंपोर्ट नहीं कर सकते, करेक्ट, एक्सेल या PDF में। तो इसके लिए आपको vanalytic में जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से सिर्फ देख सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, उसके बाद फिर ACL लॉग है, अगर ACL कॉन्फ़िगर है तो उसका लॉग दिखेगा। फिर लास्ट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ट्रबल शूटिंग, रियल टाइम। ट्रबल शूटिंग में जाएंगे हम लोग तो हम लोग के पास ऑप्शन है डिवाइस ब्रिंग अप, कंट्रोल कनेक्शन, पिंग, ट्रेस राउट, टनल हेल्थ, ऐप राउट। पिंग में अगर जाते हैं तो यहाँ से आप पिंग कर सकते हैं। सपोज मेरे को पता है कि एक सिस्टम IP 0.10 और मे बी 27, इंटरफेस सिस्टम IP से कर लेते हैं। आई डोंट नो कि 10 और 12, मे बी 12 कोई IP है VH का। क्लिक पिंग, अगर ये डेस्टिनेशन IP सही होगा तो पिंग या सही है। अब देखिए इस तरह से पिंग कर सकते हैं, मतलब ग्राफिक्स में भी आप पिंग कर सकते हैं और ग्राफिक मोड से भी आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, मीन्स ट्रेस आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली रियल टाइम, लास्ट क्लास में आपको बताया था रियल टाइम में कि आप कोई भी कमांड जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, राउट, डू नॉट फ्रेगमेंट, डू नॉट फिल्टर, और लेट्स सी, शो IP राउट, शो OMP से OMP routes, रिसीव Tlocs से फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इसको भी आप। ARP टेबल जो अभी हम लोग ने देखा था थोड़ी देर पहले, डू नॉट फिल्टर करके ARP टेबल आपको दिखा। तो ये एक मतलब मेथड है। फिर डैशबोर्ड पे वापस जाना है तो वापस जा सकते हैं। लाइकवाइज आप VEdge में जाके इंडिविजुअल VEdge पे जा सकते हैं, ऐसे SSH करते हैं इसको।
इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं, मॉनिटर नेटवर्क, इसमें पूरा नेटवर्क आएगा। से कौन सा है, वी एच ब्रांच 1 सपोज, उसमें जाना चाहते हैं, से वी एच ब्रांच 1 पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट उस डैशबोर्ड में चला गया। वहाँ पे जाके अगर देखना है इंटरफेस, जैसा कि दिया है डॉक्यूमेंट में कि ये सब करिए छोटे छोटे काम, इंटरफेस में जाके एक इंटरफेस ऐड करते हैं, VE branch 1, बट इट शुड बी नॉट मैनेज्ड वाया वी मैनेज, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। एनीवेज, नेक्स्ट टूल्स में जाते हैं, SSH VH branch 1, सो ये है VH branch 1। ये ले रहा, थोड़ा स्लो रहेगा, बट इट विल टेक। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, देखिए VPN 1 में एक लूप बैक इंटरफेस में ऐड करने वाला हूँ। सो लूप बैक से 11 और IP एड्रेस दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 11.11.11/3232, नो शटडाउन, कमिट एंड क्विट। ठीक है, सो VE ब्रांच 1 में ये काम किया हम लोग ने। अब वापस जाएंगे डैशबोर्ड में, से आप जा सकते हैं यहाँ से मॉनिटर से, नेटवर्क VH ब्रांच 1, इंटरफेस देखेंगे हम लोग VH branch 1 का। I should be on the correct interface. You are not able to hear me, Arun? I'm here. My side no issue. Okay, we'll wait. I think he's rejoining. So Ratna ji, means branch को I'm monitoring कर सकते हैं इसमें, देख सकते हैं। कोई भी वहाँ जितने ब्रांच है, 1000 2000 ब्रांच। Okay, now it's okay. Okay, so हाँ बोलिए। वो विप्रो वाला, उसका विप्रो, सीनियर HR का कॉल आया था। okay, okay, I'm recording this, just hold on, रुक जाइए, ये है ना, बाद में फिर रिकॉर्डिंग में आएगा सब। विल, करोना आ गया क्या अभी? अगर करोना आ गया तो कंटिन्यू। हाँ वो आ गया उसने मैसेज के, ओके ओके है कंटिन्यू। ना, विल डिस्कस। ओके, ऑलराइट, सो अभी एक इंटरफेस क्रिएट किया हम लोगों ने, उसको चेक करते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ जाएंगे इंटरफेसेस पे, और आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस दिखेगा, लूप बैक 11, जो हम लोग ने क्रिएट किया। मतलब कहने का मतलब कि ग्राफिकली भी आप उसको देख सकते हैं, है ना। और ये बड़ा अच्छा है कि मीन्स रियल टाइम यू कैन सी द ट्रैफिक फ्लो एंड ऑल दोज थिंग्स। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, इंटरफेस पे जाके शो इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम, फिर उसमें RX TX ये सारा कुछ। बट यहाँ आपको उस डिवाइस को विजुअली आप देख सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन फ्लो हो रहा है, आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, डिवाइस ब्रिंग अप, पिंग, टनल हेल्थ, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू, है ना। तो ये बेनिफिट है इसका। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज दिस, कि कंट्रोल साइट हेल्थ ट्रांसपोर्ट कैसे चेक करें। कंट्रोल में भी आप देखिए, कंट्रोल कनेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कंट्रोल कनेक्शन, और से फॉर एग्जांपल इस केस में कोई एक साइट को डाउन करके भी चेक कर सकते हैं, विल सी दैट। सो VPN 0 में एक लूप बैक को ऐड करके, नो शटडाउन, टनल इनकैप्सुलेशन, एक कंट्रोल कनेक्शन को बढ़ाया। ओके, लेट्स सी दैट क्या बोल रहा है ये। हालांकि हम लोग भी कर सकते हैं कुछ भी।
एक लूप बैक ऐड करके उसको VPN 0 में डाल देंगे फिर से। फॉर एग्जांपल जो बनाया हम लोग ने लूप बैक वही, इनकैप्सुलेशन दे देंगे, कलर दे देंगे ब्राउन। जी है नहीं एक्चुअली, फिजिकली इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, still we'll put inside that, we'll see that what will happen, we'll find कि partial control connection है, मतलब एक आ जाएगा क्योंकि ये है नहीं फिजिकली ये कंट्रोल, बट स्टिल वी आर क्रिएटिंग इट। क्या रीजन दिया है? Once a new interface is added under VPN 0, number of WAN interface on VH changed to 3. VSmart expect a control connection to happen between VSmart and new loopback. Since loopback to IP address not advertised, VSmart does not know how to reach क्योंकि ये है नहीं physically. So I will find that partial loss of connection. We'll see that. हम लोग भी करेंगे ऐसा simulation, no problem. Then you can go and check full connectivity. ये भी control connection ही है, इसमें आप जाके देख सकते हो reachability full और partial. अब VE branch 1 में जाके एक स्टैटिक राउट को डिसेबल कर देंगे, तो फिर से ये यहाँ पार्शियल आ जाएगा। ये दोनों सिमुलेशन हम लोग करेंगे अभी। एक स्टैटिक राउट ऐड करके डिलीट करेंगे और एक स्टैटिक राउट को रिमूव कर देंगे। एक लूप बैक इंटरफेस ऐड करके डिलीट करेंगे और एक स्टैटिक राउट को रिमूव कर देंगे। विल सी दैट। उसके बाद है VH इन्वेंट्री, खत्म हो गया। लेट्स डू इट। सो ये क्या बोल रहा है अभी हम लोग को, व्हाट पोर्शन टू डू, कि हम लोग ने रफली वी हैव चेक्ड दीज थिंग्स, ये चेक किया, ये चेक किया। ऑल्दो मैंने ये नहीं चेक किया, बट सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं ये तो लोकल ही है जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। रिबूट विल चेक, सर्टिफिकेट का कोई वार्निंग नहीं है, बट स्टिल विल सी। इसके बाद इसको चेक करेंगे हम लोग, इसको चेक करेंगे और इसको। सो वन बाय वन इन तीनों को चेक करते हैं। ओके लेट्स डू इट। सो जाते हम लोग वापस लैब सेक्शन में। ये हम लोग का लैब सेक्शन है। बिफोर डूइंग एनीथिंग मैं ऐसा करता हूँ कि एक डिवाइस को रिबूट कर देता हूँ, तब तक वो अपना रिबूट होता रहेगा। रिबूट भी आप कर सकते हैं यहीं पे वी मैनेज डैशबोर्ड में ही। आप देखिए डिवाइस रिबूट ऑप्शन है ना, मेंटेनेंस, ये सूटकेस बना है यहाँ पे, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड और डिवाइस रिबूट है। क्लिक करते डिवाइस रिबूट पे से VE ब्रांच टाइप 2 को ना रिबूट मार देते हैं। देखिए इसको क्लिक किया तो ये चेक मार्क आ गया, ग्रीन हो गया ऊपर। इवन आप देखिए VH कंट्रोलर वी मैनेज सारा ऑप्शन है। हम लोग ने अपना एक VH ले लिया, रिबूट मार दिया, छोड़ देते रिबूट मार के, बाद में चेक करेंगे। वापस आते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड पे। अभी क्या करना है हम लोग को, विल सी। मेन पेज पे जाते हैं हम लोग। ऊपर में स्टॉप शेड्यूल टास्क भी आता है, और आपने रिबूट के लिए बोला है इसको, बट इट इज स्टिल आस्किंग कि शेड्यूल भी कर सकते। यस ओके, सो विल गो टू द मेन पेज। थोड़ा सा स्लो हो गया नेटवर्क, विल सी। और अभी हम लोग हाँ हाँ सॉफ्ट रिबूट करके है, वो सॉफ्ट रिबूट कर सकते हैं डिवाइस में भी जाके। ऑलराइट, सो नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये सब प्रॉब्लम होते हैं यार। ओके लेट्स सी। एक भी इज डाउन हो गया यहाँ पे। ओके तो हम लोग इसको चेक कर रहे थे। लेट्स गो टू टूल्स। ये क्यों हैंग हो गया वी मैनेज? वी मैनेज ही हैंग हो गया। उससे 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके।
कंट्रोल कनेक्शन एक डाउन हो गया, ये फिर अप आ जाएगा। अनटिल अनलेस कि कुछ कोई करे इस पे, ऐसे भी जाता नहीं भी मैनेज। अब देखो पूरा ऑप्शन ही मेरा चला गया, मैं कहीं पे जाके क्लिक नहीं कर पा रहा अभी किसी भी टूल्स में। मेंटेनेंस, मॉनिटर, स्ट्रेंज। But anyways, I'll wait for 2 minutes. एडमिन एक्सेस मेरा चला गया लगता है। ओके नहीं नहीं, ये थोड़ा सा वी मैनेज सिमुलेशन थोड़ा स्लो हो गया है। इट विल कम अप, इट विल कम अप, अदरवाइज आई विल रिबूट वी मैनेज। अभी आ रहा है, देखिए आ रहा है ना। ओके ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू टूल्स एंड एसएसएस टर्मिनल। क्या करते हैं कि वी एज ब्रांच 1 में जाके एक लूप बैक है उसको VPN 0 में डाल देते हैं, ठीक है। उसमें टनल इंटरफेस बनाते हैं। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन पहले तो चेक कर लेंगे कि कौन कौन से हैं मेरे पास इंटरफेसेस। ये लूप बैक 11 ऑलरेडी बनाया हम लोगों ने, तो उसी को लूप बैक 11, ओके। अभी VPN 0 में जाके इंटरफेस लूप बैक आपको पूरा टाइप करना पड़ता है। आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस इससे 11.1.1.1, नो शटडाउन, और इसको बना देंगे हम लोग टनल इंटरफेस। ऑलराइट, ओके। टनल इंटरफेस बना के इनकैप्सुलेशन दे सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली IPsec। कलर हम लोग दे देंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव सो मेनी कलर्स, ब्राउन जैसा उसमें दिया है, ओके। एंड इतना ही करे तो काफ़ी है। शो कॉन्फ़िगरेशन, चेक कर लेते कॉन्फ़िगरेशन। सो VPN 0 में एक ऐड कर रहे हैं इंटरफेस जिसका IP है टनल, इनकैप्सुलेशन कलर ये है, बाकी सारा कुछ डिफ़ॉल्ट है। इसको कमिट कर सकते हैं हम लोग। कमिट करने के बाद डैशबोर्ड पर जाएंगे, रिबूट होके अप आ गया, देखिए यहाँ रिबूट काउंटर 1 दिखा रहा है। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो अभी क्या किया हम लोगों ने, कंट्रोल कनेक्शन जो है एक इंक्रीज करा दिया। यहाँ पे आप देखेंगे एक पार्शियल काउंटर आएगा, I'll see that। फिलहाल हम लोग 2000 है ना, वन, व्हाट इज दैट IP, इधर भी खोल लेते हैं, बार बार जाना पड़ रहा है उसमें, लोकली भी ओपन कर सकते हैं इसको। 243.162, ये होगा ये। एडमिन, एडमिन, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, कौन सा खोला मैंने, ओके। आप देखिए यहाँ पे पार्सल दिख रहा है ना, क्लिक करिए उस पार्सल को। VE ब्रांच 1 मैंने जो ओपन किया कौन सा है, और DC1 है ये, इसके लिए ऐसा आ रहा है, ओके ओके ओके। सो VE ब्रांच 1 में देखिए ध्यान से काउंटर्स को, तो सिस्टम IP, साइट ID, VH। अब ये बता रहा है कि कंट्रोल कनेक्शन टोटल इसके पास 4 कंट्रोल कनेक्शन है जिसमें 2 ही अप है, 2 डाउन है, इसलिए 2 4 है।
इसको और ज़्यादा वेरीफाई करना है कंट्रोल कनेक्शन को, तो हम लोग मोर में क्लिक करके और चले जाएंगे, यहाँ मोर ऑप्शन है, क्लिक करके चले जाएंगे रियल टाइम में। रियल टाइम मतलब ये आपका नीचे वाला रियल टाइम। यहाँ पे जाके अगर करेंगे कंट्रोल कनेक्शन, देखिए कंट्रोल कनेक्शन डू नॉट फिल्टर, तो आप देखिए इसके कंट्रोल कितने हैं। इट हैज़ कंट्रोल विद वी स्मार्ट, वी एस वी बॉन्ड, वी मैनेज। जो कॉन्फ़िगर किया हमने उसके हिसाब से टोटल होने चाहिए 4 बट 2 अप, ऐसा ये दिखा रहा है। बेटर है कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करके चेक करें इसको। देखिए यहाँ एक्सपेक्टेड 4, एक्चुअल 2। कैसे भाई? सो ब्रॉन्ज, देखिए ब्रॉन्ज जो है वी बॉन्ड नहीं जा पाए, रेड है ना यहाँ, क्योंकि ये जो ब्रॉन्ज है वो है ही नहीं फिजिकली, लेकिन गोल्ड के साथ 2 कनेक्शन है, करेक्ट। एक वी स्मार्ट के साथ और एक वी मैनेज के साथ। MPLS के साथ 1 कनेक्शन है, करेक्ट। थोड़ा अगर स्क्रॉल करें नीचे तो आप ये देख सकते हैं कि MPLS, वी स्मार्ट, गोल्ड, वी स्मार्ट, वी मैनेज, बट ब्रॉन्ज जो है बेचारा वो फॉल्स कनेक्शन है। ओके, बैक जाते हैं हम लोग। ये देखिए पार्शियल दिख रहा है, इसको हम लोग को मैं इस पे लॉग इन करता हूँ। वी ब्रांच 1 है ना, विल लॉग इन टू दैट, शो कंट्रोल कनेक्शन। उसका सिस्टम आईपी क्या होगा? आई जस्ट वांट टू नो। शो आई, ओके, किसी भी मैनेज में जाके ऐसा करते तो पता चल जाता। लेट्स न्यू सेशन, क्या आईपी है? वी मैनेज में जाके आप कहीं पे भी लॉग इन कर सकते हैं। 162 वी मैनेज का पोर्ट नंबर 2 9 यस, एडमिन एडमिन। यहाँ अगर आप करेंगे शो कंट्रोल कनेक्शन तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रांच है उसका सिस्टम आईपी क्या है। सिस्टम आईपी से फिर उस ब्रांच में आप लॉग इन कर सकते हैं। सिस्टम आईपी भाई साहब का सिस्टम आईपी कितना है? वी ब्रांच 1 जिस पे हम लोग चेक कर रहे हैं, लेट्स सी वन मोर टाइम। यहाँ पे क्लिक करके सिस्टम आईपी पता चल जाएगा। वी ब्रांच 1 का सिस्टम आईपी है 12। सो हम लोग जाएंगे अपने वी मैनेज में और पहले वी डाल के वी शेल में चले जाएंगे। SSH-L एडमिन, सबका पासवर्ड वही है, ये है आईपी एडमिन। सो हम लोग अभी वी ब्रांच 1 में है। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, एक पार्शियली हम लोग ने डाउन कराया है कंट्रोल कनेक्शन को लूप बैक 11 की वजह से, उसको हटा देते हैं अभी। VPN 0 इंटरफेस से लूप बैक 11, और ऐसा करते हैं कि नो इंटरफेस लूप बैक 11, डन, कमिट। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, ये चला गया। तो ये जो पार्शियल है ना, अब वो फुल आ जाएगा, थोड़ी देर में आपको दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं पार्शियल कनेक्शन और फुल कनेक्शन, सेम टाइप का आउटपुट है। इस आउटपुट में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बता रहा है BFD सेशंस। BFD, रिमेंबर BFD, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्ड डिटेक्शन, इक्विवेलेंट टू IPsec टनल। जितने IPsec टनल होंगे उतने ही BFD सेशंस होंगे। तो ये चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ से भी। इसी में आप देख सकते हैं कि इंटरफेस बैंडविड्थ कितना है। हम लोग के केस में ना सब लेस देन Mbps ही हैं, बट रियल प्रोडक्शन में 10 से 100, 100 से 500, मोर देन 500। यहाँ पे आप परसेंटेज यूटिलाइजेशन भी देख सकते हैं सारे इंटरफेसेस का।
मतलब वो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट इंटरफेस Tloc यूटिलाइजेशन परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है, ओके। फाइनली आप देखिए यहाँ पे आपका है वी एज इन्वेंट्री। वी एज इन्वेंट्री में ना कुछ टर्म्स नए हम लोग के लिए। कौन से? व्हाट इज ऑथोराइज्ड, डिप्लॉयड, स्टेजिंग। तो अगर आप कोई डिवाइस जिसको आप रियल प्रोडक्शन में नहीं डालना चाहते हैं, उसको टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उसको स्टेजिंग मोड में रखिए। आप चाहें तो डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर उसका सर्टिफिकेट साइन हो गया तो वो ऑथराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेटस है। उसके बाद हेल्थ, मेरे पास 4 वी एज है। चारों वी एज का हेल्थ जो है वो बता रहा है कि हेल्दी है। क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसमें सीपीयू, मेमोरी देख सकते हैं। आप चाहो तो सर्च काउंटर है, वहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे वी कुछ आईपी डाल देते हैं 172.27 सॉरी, सो 172.27, मतलब फिल्टर भी कर सकते हैं आप। आपके पास ऑप्शन है फिल्टर का भी। और क्योंकि अगर नंबर ऑफ वी एज बहुत होंगे, सपोज 5000 वी एज है, एक आपको चेक करना है, तो आप फिल्टर करके फिर स्नैपशॉट ले सकते हैं सीपीयू और यूटिलाइजेशन का। वार्निंग एरर नहीं है कुछ भी। फिर ट्रांसपोर्ट हेल्थ। ट्रांसपोर्ट हेल्थ सिंपली मीन्स VPN 0 हेल्थ। VPN 0 इज माई ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आप देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये अगर उसको आप क्लिक करिएगा, पेज ओपन होगा। आप ट्रांसपोर्ट हेल्थ देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस, लेटेंसी, जिटर। आपके पास चार्ट ऑप्शन है, आपके पास डिटेल ऑप्शन है। डिटेल भी देख सकते हैं, चार्ट भी देख सकते हैं। टॉप में 1 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, ये सारा ऑप्शन है। इतना सारा कहाँ फीचर होता है नॉर्मल जो नेटवर्क है। हमको बहुत सारे मैनुअल चीज़ें करनी पड़ती हैं नॉर्मल नेटवर्क्स के लिए। ओके, सो आप देखिए कुछ डेफिनेशन है, आप पक्का इसका नोट्स जरूर ले लीजिएगा कि व्हाट इज मीन बाय ऑथराइज्ड डिवाइस लिस्ट, डिप्लॉयड लिस्ट, व्हाट डज इट मीन बाय स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब होता है the total number of VH router in a staging state. These are routers you configure at the staging state site before shipping them to the actual branch and making them a part of overlay network. These routers do not take part in any routing decision, nor do they are affect network monitoring through the we manage. Yes, कुछ क्वेश्चन? हाँ, स्टेजिंग मोड में, स्टेजिंग टेस्टिंग है। देखिए उसके बाद फिर जाके डिवाइस का हेल्थ देख सकते हैं। और ये आपका ख़त्म हो गया, एंड कर सकते हैं सेशन। ये लास्ट स्लाइड था इसमें। एनीवेज हम लोग बैक जाते हैं और लास्ट के पोर्शन, टॉप एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसमें कुछ ट्रैफिक नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा, बट यू कैन चेक द टॉप एप्लीकेशन। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। इसमें भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए चार्ट ऑप्शन है। चार्ट ऑप्शन में लॉस, लेटेंसी और ऑक्टेट्स, यहाँ पे आपका टाइमर है, वो चेक कर सकते हैं। और अगर डेटा होगा जो हम लोग के मेन लैब है उसमें रहता है डेटा, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए इतना पावरफुल डैशबोर्ड है, सब कुछ देख सकते हैं पूरे विप्टेला फैब्रिक में। किसी भी इंडिविजुअल डिवाइस पे जा सकते हैं, सर्टिफिकेट, रिबूट, ट्रांसपोर्ट बैंडविड्थ, सिस्टम का हेल्थ, डिवाइस का हेल्थ, ट्रांसपोर्ट का हेल्थ, टॉप टॉकर्स, ऐप अवेयर राउटिंग। एक बार में इतना कुछ चेक कर सकते हैं हम लोग। करेक्ट? ओके, सो अभी आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन पे। अलर्ट्स के बारे में आपने पूछा। देखिए यहाँ टॉप पे जाएंगे, अलर्ट है। एक तो आप वी मैनेज डैशबोर्ड का अलर्ट देख सकते हैं। ये वी मैनेज डैशबोर्ड पे ये सारे अलर्ट्स आए हैं। क्लिक करके आप अलार्म डिटेल में जा सकते हैं। तो आपको अलार्म डिटेल मिलेगा, मॉनिटर के अंदर ही मिलेगा ऑब्वियसली। इवेंट्स देखिए, अलार्म है, अलार्म डिटेल यहाँ से जा सकते, इवेंट्स भी है।
मैं इंडिविजुअली भी सब में जाऊंगा अभी एक एक करके, विल सी। अलार्म डिटेल में जाके और आप इसको जितना इसके पास डिटेल है वो बता देगा, ये डिटेल है। ओके, लेट्स मूव हेयर। मैं यहाँ पे जाके देखिए, मॉनिटर के अंदर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं, नेटवर्क देख सकते हैं, अलार्म, इवेंट, ऑडिट लॉग, ACL लॉग। कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग को बहुत करना है आने वाले टाइम में, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, सर्टिफिकेट्स हम लोग ने देखा, टेम्पलेट बना के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पॉलिसीज़ VSmart के थ्रू पुश कर सकते हैं, क्लाउड एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लाउड ऑन रैम्प कर सकते हैं। ये 2 क्लाउड फीचर है, इसको चेक कर सकते हैं। टूल्स में जाके आप SSH, रीडिस्कवर ऑफ नेटवर्क, ऑपरेशनल कमांड। ऑपरेशनल कमांड के अंदर आपको मिलेगा शोटेक, सपोज एक ब्रांच है वी ब्रांच 1, एडमिन टेक मतलब शोटेक, इंटरफेस रीसेट, रिक्वेस्ट हॉप, कलर, रीसेट लॉक टू यूजर। ये 4 ऑप्शन है हम लोग के पास। एडमिन टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आप एडमिन टेक लेते हैं तो क्या क्या ले सकते हैं आप उसमें, लॉग्स, कोड डंप, टेक फाइल ये जनरेट कर रहा है, और ये है कमांड जिससे आप चेक कर सकते हैं। इफ यू क्लोज दिस विंडो यू कैन फाइंड द एडमिन टेक एट शो एडमिन टेक लिस्ट आफ्टर द एडमिन टेक प्रोसेस कंप्लीट्स। ये जनरेट कर देगा, आपको एक मैसेज भी आ जाएगा यहाँ पे कि ये जनरेट हो गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मेंटेनेंस में सॉफ्टवेयर अपग्रेड बहुत इजी है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, आप सेलेक्ट कर लीजिए एक ब्रांच, और अगर वो सॉफ्टवेयर है सिंपली क्लिक करिए एक्टिवेट पे। अगर वो सॉफ्टवेयर है तो क्लिक एक्टिवेट, वो अपग्रेड हो जाएगा सॉफ्टवेयर। दैट्स इट। इन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड आप कर सकते हैं एक बार में। अदरवाइज सिस्को में तो पता ही है कैसे करते हैं हम लोग। डिवाइस रिबूट, ये iOS अपग्रेड है ये। हाँ, ये iOS अपग्रेड ही है। iOS अपग्रेड कर सकते हैं VH का, कंट्रोलर का, vManage का। जब भी iOS अपग्रेड करते हैं कीप इन माइंड कि जो vManage होगा इमेज, यहाँ पे करेंट वर्जन है 17.26 और लेकिन रनिंग है 17.11। इसमें देखना पड़ेगा आपको कि एक्टिवेट कौन सा है। हाँ, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। 17.26 है। ये अच्छा क्वेश्चन है। TFTP में ही रखेंगे, आप चाहे तो vManage में भी स्टोर कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज आपको नया इमेज अपग्रेड करना है, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, इधर से इधर की तरफ मूव करिए ऐसे। आपको क्या करना है, अपग्रेड फॉर एग्जांपल, आप क्लिक करिए अपग्रेड पे। ये बोलेगा भाई ये है आपको vManage के लिए अपग्रेड। वैलिडेशन फेलियर, अच्छा एक ऑलरेडी प्रोग्रेस में। आपको मैं बताता हूँ कैसे कहाँ आप रख सकते हैं, डोंट वरी। यहीं पे पूछता है, जब भी आप अपग्रेड या इंस्टॉल करेंगे ना, ये खुद ही पूछेगा कि ये इमेज आप अपग्रेड करना चाहते हैं। हाँ, अगर नहीं है तो फिर वो लोकेशन पूछेगा, कौन सा लोकेशन में है। ये देखिए टॉप में है ना रिपोजिटरी, यहाँ पे जाके आप, ये वाला पोर्शन है ना, इस पे जाके आपसे पूछेगा। अगर आप चाहते हैं रिपोजिटरी में ऐड न्यू सॉफ्टवेयर, किसके लिए, vManage के लिए, रिमोट सर्वर, VH से vManage। ये मेरे लोकल सिस्टम में चला गया, ये लोकल सिस्टम से ले लिया है ना। इस तरह से आप अपग्रेड पाथ दे सकते हैं। एक बार आपको डालना पड़ेगा, एक बार आपको इमेज को डालना पड़ेगा रिपोजिटरी में। सॉफ्टवेयर URL आप देखिए, अवेलेबल फाइल है मेरे पास 17.26। अगर आपके पास कोई नया इमेज है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर जाके लेटेस्ट है 18.34। हाँ, इसमें लेटेस्ट है 17.26।
ऑलराइट, सो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और फिर फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेटिंग है, मैनेज यूजर्स, क्लस्टर्स, ये देखेंगे हम लोग आने वाले क्लास में। फिर फाइनली वी एनालिटिक, इसके लिए अलग से एक क्लास है, वो देखेंगे हम लोग। तो आप इंडिविजुअली जाके डैशबोर्ड पे सारा कुछ क्लिक करके चेक कर सकते हैं, क्रिएट करके डिलीट कर सकते हैं, वो सारे आप कर सकते हैं। तो ये लैब आप करिए, बहुत आसान लैब है। ठीक है, और कुछ पूछना है आप लोग को पूछ सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है स्टोरी से स्टार्टिंग लैब से एक बार डाउनलोड करके प्रिंट करके सामने आपको करेंगे तो सारा क्लियर हो। ये करना है लैब भाई मेरे, अरे लैब तो करेंगे। ये जो है ना, अभी हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया है क्लास। आप आपका जब लैब नंबर 2 स्टार्ट होगा ना, तो उसमें मैं आपको इमेज दूंगा, आप उसको अपग्रेड डाउनग्रेड जो करना है करना। अभी हम लोग लैब 1 में है, जिसमें 5 लैब है। तो पहले जो हम लोग लैब किए ना उसका पीडीएफ कहाँ से निकाल लेंगे? पीडीएफ कैसे करेंगे आप? आपको पीडीएफ चाहिए? किसका पीडीएफ? ये पीडीएफ चाहिए आपको? हाँ, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है लैब मैनुअल। ओके, तो आप ऐसा करो, यहाँ पे कंट्रोल ए करो, कॉपी कर लो इसको। पूरा कॉपी नहीं होता है, ओके। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, और विन वर्ड पे गया। जस्ट ए मिनट, यहाँ पेस्ट कर दिया। देखते कहाँ तक पेस्ट लेता है ये पेज तो पेस्ट हो गया। ऐसे करके आप मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। स्क्रीनशॉट लेके करें अच्छा रहेगा। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर लंबा पेज है तो कितना स्क्रीनशॉट लोगे? अगर ये इतना सारा पेज एक साथ है तो कंट्रोल ए सी कर सकते हैं आप। एक मिनट देखते हैं, और भी कुछ कर सकते क्या? नहीं, यही मैक्सिमम है। स्क्रीनशॉट लोगे तो थोड़ा अच्छा सा नोट्स बन जाएगा आपके लिए। एक वही वाला पेज आ गया, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार नोट्स बन जाए ना तो मेरे साथ शेयर करना। लेकिन ये अच्छा रहे, नोट्स अगर आप बना के रखेंगे ना तो देन इट्स वेरी गुड, अच्छा रहेगा। आप प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हो उसको। मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दे देता, है ना। आप जैसे जैसे क्लास करते हैं ना, वैसे वैसे आप कर सकते हो। मेरे पास जो है वो ये सब है, पीडीएफ इस टाइप का, तो पीपीटी, तो ये मैं शेयर कर देता हूँ। ये तो कर देंगे उसको दोनों को मिला के बना देंगे। ओके, सो बहुत कमाल का चीज़ है लेकिन जितना हम रियल टाइम फेस कर रहे हैं रिपोर्ट वो रिपोर्ट इससे क्या है ना एक बार वो बैठेगा वहाँ से देखिएगा तो सब कुछ दिख जाएगा क्या है क्या नहीं है। सब कुछ यहाँ, ये अच्छा है, इट्स नाइस। ये काफ़ी सारे क्लाइंट ने बोला बहुत अच्छा, बहुत सारा हेडेक उनका दूर हो गया। एक बार में 1000 साइट को अपग्रेड कर देते हैं वो लोग, अदरवाइज कितना मुश्किल है आईओएस अपग्रेड। सर हम लोग जो VPN में जो IOS अपग्रेड करते थे वॉइस टूल के थ्रू तो उसमें भी ऐसा ही हाँ, मतलब आपको अलग से टूल है ना, लेकिन इसमें एक ही साथ टूल है। हाँ वही बोला सबको इंटीग्रेट कर दिया ना एक ही में कर दिया। हाँ, और BFT का जो कंसेप्ट था अपना पॉइंट टू पॉइंट लिंक या जो कनेक्टिविटी डायरेक्ट था उसमें हम लोग देते थे राइट कि अगर प्रोटोकॉल डाउन होता है तो उससे पहले उसको पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पे IPsec ने भी डाली है BFT को। हाँ बीएफटी, हम बीएफटी, हाँ देखेंगे। ये बीएफटी में काफ़ी सारा ऑप्टिमाइजेशन है जो हम लोग को पता चलेगा अभी आने वाले टाइम में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, जैसे टीसीपी ऑप्टिमाइजेशन भी है। आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टीसीपी कनेक्शन को, कंट्रोल कनेक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और फीचर्स तो हैं बहुत सारे उसमें, तो कोई डाउट नहीं है, अनडाउटली ये है। और मैं अगर रिकॉर्डिंग स्टॉप, पता नहीं क्या है, जैसे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ ना, ऑडियो भी स्टॉप हो जाता है। अच्छा दूसरा क्या है जो छोटे छोटे डीसी होते हैं हम्म। ठीक है तो उस छोटे छोटे जो डीसी होते हैं उसको भी तो VLS ऐड कर सकते हैं राइट। छोटे छोटे क्या होते हैं? नहीं मतलब सब डीसी जैसे हो गया मान लीजिए DR हो गया
अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो उसके साथ साथ बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं हम्म, वहाँ पे अपना बहुत सारा एक्टिविटी चलते रहता है। छोटा मोटा वो भी एक डीसी होते हैं, उसमें बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है जो डीसी को कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट, राइट, ओके सीएसडीआर को। ओके। तो ये जो अपना है एसडी वैन, इसके थ्रू वहाँ का जो लिंक है उसको एज ए ब्रांच समझ के तो कनेक्ट कर सकते हैं ना, व्यू मैनेजमेंट क्यों नहीं कर जो सकते अपना। हैं? विप्टेला फैब्रिक में सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, ये सारा हाँ, कुछ हो जाएगा। वो कर सकते हैं। अगर वहाँ वीएज है और कंट्रोल प्लेन से कनेक्टेड है तो वो भी वहाँ पे भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब 2 GB लिंक हो या 2G, हाँ हाँ कर सकते हैं ना। इसमें जो वी एच 2000 है उसमें 1 GB इंटरफेस सपोर्टेड है, और 5000 में आई थिंक 10 GB सपोर्टेड है, कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे। और मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया था पिछले क्लास का, लेकिन वो जो क्लास था ना, मैंने किसी दूसरे बैच में लिया था, उसमें वो कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन सब कुछ आ पाया था। तो वो आप देख लेना, वो 1 घंटे 20 मिनट का रिकॉर्डिंग है। उसमें और भी बहुत सारे आंसर्स दिए थे मैंने क्वेश्चंस के। ठीक है। बोलिए। ये जैसे करुण ने अभी पूछा था ना हम्म। कि एक ब्रांच और छोटा सा डीसी है, उसको वेब कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही सेम अगर हमारा कोई वीएच डिवाइस है कोई अदर ब्रांच में और उसके नीचे भी सपोज दूसरे 2-3 ब्रांच कनेक्टेड है, ये देखेंगे, तो वहाँ उसको इस चीज़ को चेक करेंगे आने वाले टाइम। अभी क्वेश्चन को होल्ड रखो, आने वाले ना 5-6 क्लास के बाद हम लोग इसको डिस्कस कर पाएंगे। ओके। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे कर सकते हैं, अगर बीच में डिवाइस है तो फिर कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखेंगे। ओके, ऑल राइट। आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करिए लैब 1 और लैब 2, और नेक्स्ट वीक हम लोग क्लास करेंगे सेम टाइम में। ठीक है। ओके देन। ठीक है। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय। Okay. So today our topic is, as you can see here, that objective is to configure any of the VS device with CLI. So जब device configuration की बात आएगी, at that time we'll see that how we can do the how we can configure the devices. So we know that we have one management plane device we manage. Ideally ये है कि जो आपका Viptela fabric है, so either it's a data plane और कंट्रोल प्लेन, आप सारा कुछ जो है वी मैनेज से ही कॉन्फ़िगर करिए। तो आपका सपोज कंट्रोल प्लेन डिवाइस में क्या आएगा, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड तो ऑर्केस्ट्रेटर हो गया, और यहाँ पे आपका आ गया वी एज और क्लाउड बेस्ड वी एज। जो भी डिवाइसेस हैं आपके कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन सब जगह यू कैन कॉन्फ़िगर विथ हेल्प ऑफ वी मैनेज। ये तो हो गया कि वी मैनेज से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, you have option either, so whenever you are configuring the device, either you can use CLI template or you can use some template. We'll see. So template based configuration today we are going to do with help of the CLI template के through हम लोग configuration करेंगे। अब CLI template कहने का मतलब है कि vmanage में आप template बनाएंगे और फिर आप उसको पुश करेंगे VH पे, या फिर आप उसको पुश करेंगे वी स्मार्ट पे। तो कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ किया, यहाँ पे स्टोर किया वी मैनेज पे, लेकिन जब उस कॉन्फ़िगरेशन को आप पुश कर रहे हैं तो आप वी मैनेज से सॉरी वी एज या वी स्मार्ट पे पुश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है इसके लिए समझना कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको हाउ वी कैन डू। सो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, व्हेन यू आर इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन, please mute yourself if you are not talking, because I'm recording. So recording. Okay, thanks. All right. So we'll see how we can do that. हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, टेम्पलेट्स में, और यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, CLI और टेम्पलेट।
जब कॉन्फ़िगर करेंगे ना देन इट विल बी क्लियर. बट आप आइदर CLI कॉन्फ़िगरेशन करें या फिर आप डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करें, यू हैव टू नो अबाउट दी कॉन्फ़िगरेशन. आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. किस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं डिवाइस पे. तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, you'll find, so we have one summary. You have this type of configuration means first of all you have to do configuration say with respect to system. हमने देखा था at least यहाँ पे 5 important CLI things you have to put. So system के अंदर जाके आप host name, system IP, site ID, org name भी बांट देते हैं. उसके अलावा आप GPS लोकेशन, क्लॉक टाइम, AAA मतलब रेडियस है या आइस से इंटीग्रेट करा रहे हैं, आप उसको दे सकते हैं. OMP SNMP सम सिक्योरिटी थिंग्स यू कैन ऐड. तो एक तो हो गया आपका सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन. देन आपका होता है VPN वाइड कॉन्फ़िगरेशन. आइदर इट्स ए ट्रांसपोर्ट VPN या फिर आपका हो VPN 512 या फिर आपका हो VPN 1 से लेके 511 तक. तो ट्रांसपोर्ट VPN हो या सर्विस VPN हो या मैनेजमेंट VPN हो, आपको वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. फाइनली यू हैव सम लोकल पॉलिसी. तो यही मेजर जो है ना, यही 4 कंपोनेंट है. सिस्टम, VPN 0, सर्विस VPNs और लोकल पॉलिसी. जब भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे आइदर वाया CLI और आइदर वाया टेम्पलेट, आपको ये सारी चीज़ें उसमें करनी होंगी. तो बहुत एक्सप्लेनेशन है, इसको देख सकते हैं आप लोग. विल सी. तो सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन टुडे वी आर गोइंग टू चेक ऑल दोज थिंग्स. अगर आप VPN 0 में जाएंगे तो इंटरफेस में जाके उसको टनल इंटरफेस बनाएंगे. क्यों ऐसा? और VPN 0 वेयर वी आर यूजिंग, सपोज आपके पास एक VH डिवाइस है और कुछ ISP है, MPLS ब्रॉडबैंड. VPN 0 में है ये दोनों इंटरफेस से VPN 0. एक जा रहा है, सपोज ये है आपका से ETH 1, सपोज ये ETH 2. MPLS में एक जा रहा है आपका ब्रॉडबैंड में. तो VPN 0 में जाएंगे फर्स्ट, इंटरफेस में जाएंगे सपोज E0, उसको बोलेंगे ओके यू आर द टनल इंटरफेस. यहाँ पे आप अलाउ सर्विस करेंगे. अलाउ सर्विसेज लाइक HTTP, Telnet, SSH. There are so many services that you can allow or disallow. अगर आप बाइंड इंटरफेस कर रहे हैं, अगेन दिस इज रिलेटेड टू सम ब्रिजिंग, तो आप बाइंड और फिर इंटरफेस का नाम यूज कर सकते हैं. कौन सा कैरियर है? सॉरी क्या बोले करो. हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन मार्क देंगे ना. सो यू हैव सो मेनी सर्विसेज दैट यू कैन अलाउ और डिसअलाउ लाइक HTTP, Telnet, SSH उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे. हाँ, बाय डिफॉल्ट कुछ सर्विसेज ऑन रहेंगे. विल सी. कॉन्फ़िगर करेंगे ना तो चेक करेंगे इसको. ठीक है. देन कैरियर में आप डाल सकते हैं MPLS, इंटरनेट, गोल्ड, LTE लाइक दैट. कलर में भी आपका वैसे ही आएगा MPLS. इंटरनेट के लिए इसको ब्रॉडबैंड, गोल्ड, सिल्वर. विल सी. इनकैप्सुलेशन. सो यहाँ पे जो 3 चीज़ें हैं से कलर, इनकैप्सुलेशन और एक सिस्टम IP ऊपर में था. ये 2 एटलीस्ट ये Tloc में यूज होता है. ट्रांसपोर्ट लोकेटर, कलर, इनकैप्सुलेशन. ओके. एक्सक्लूड कंट्रोलर ग्रुप. कंट्रोलर जब भी आए, कंट्रोलर का मतलब VSmart. सो डिज़ाइन क्या है आपके कि आपके पास हो सकता है कि अलग अलग ग्रुप में VSmart हो. तो सपोज ये VSmart ग्रुप 1 है, फिर दूसरे डेटा सेंटर में भी 2 VSmart है, सपोज वो 2 में है. तो कोई भी VH किसी एक को एक्सक्लूड कर सकता है. विल सी. ये आने वाले टाइम में देखेंगे. बट यू कैन एक्सक्लूड ए ग्रुप ऑफ VSmart. फिर ये जो आपका टनल इंटरफेस है, इस टनल इंटरफेस पे हेलो टाइमर, डेट टाइमर आप दे सकते हैं. ठीक है. उसके बाद कोई बैकअप है, वो बैकअप सर्किट आप दे सकते हैं एज ए लास्ट रिसोर्ट सर्किट. अगर सारा प्राइमरी सेकेंडरी डाउन हो गया देन यू कैन यूज दिस बैकअप सर्किट. लो बैंडविड्थ लिंक डिफाइन कर सकते हैं.
मैक्स कंट्रोल कनेक्शन, ये मैक्स जब भी कंट्रोल आए ना दैट मीन्स वी स्मार्ट। तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब सपोज किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 वी स्मार्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई एक वी एज राउटर 20 कंट्रोल कनेक्शन बनाए, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैक्स कंट्रोल कनेक्शन से 3, ठीक है, मतलब 3 एक्टिव कंट्रोल कनेक्शन है। अगर 3 कनेक्शन डाउन होंगे तो फिर वो 4, 5, 6 उस पर जाएगा, मतलब फिर से वो री एस्टैब्लिश करेगा कनेक्शन। बट एक्टिव कनेक्शन जो है आप वहाँ पे लिमिट कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 3। अगर नेट यूज़ कर रहे हैं, नेट रिफ्रेश टाइमर, अगर आपको पोर्ट जंप कराना है, ये सब मतलब यूज़ केसेस हैं। से बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ करता है 1 2 3 4 6, बट इसके बाद आप 500 या 50 ऐड कर दें, इसके बाद आप 1 2 3 9 6 पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं दूसरे कंट्रोल कनेक्शन के लिए, तो आप पोर्ट हॉप करा सकते हैं, पोर्ट जंप करा सकते हैं। वी बॉन्ड एज ए स्टैन सर्वर, अगर आप वी बॉन्ड को एज ए नेट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ये सर्विस। फाइनली वी मैनेज कनेक्शन प्रेफरेंस, वी मैनेज कनेक्शन प्रेफरेंस भी आप उसमें सेट कर सकते हैं, ये वी मैनेज के लिए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे दो कमांड जो है वो वी स्मार्ट के लिए है, दिस इज एक्सक्लूड कंट्रोल ग्रुप लिस्ट, और दूसरा मैक्स कंट्रोल कनेक्शन, ये वी स्मार्ट के लिए है। और एक जो आपका यहाँ पे है कनेक्शन प्रेफरेंस, ये है वी मैनेज के लिए। ऑल्दो ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों की, बाय डिफ़ॉल्ट ये मतलब सपोज ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 है, अगर आपके पास कंट्रोलर ग्रुप में है तभी फिर आप इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। आप क्या करेंगे, VPN 0 पे जाएंगे, इंटरफेस पे जाएंगे, टनल इंटरफेस पे जाएंगे, अलाउ सर्विसेज देंगे, कलर इनकैप्सुलेशन, दैट्स इट, बाकी सारा डिफ़ॉल्ट भी काम करेगा। विल सी। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑलराइट, कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको क्वेश्चन मार्क कर करके ये दिखाऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। ओके, तो एक हम लोग का लैब सेटअप है, इसको मैं शेयर करूंगा आपको आने वाले वीक्स में। उसमें क्या फ्रॉम द वी मैंने ओके, इसमें कुछ इश्यू है इस लैब में, उसको ये टिकट नंबर 1 है एक तरह से, ऐसा हो सकता है आपको भी टिकट आए काम करने के टाइम में, इसको रिजॉल्व करना है। क्या इशू है मैं आपको बताता हूँ। इसमें इस केस में ये हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा सेंटर में 2 डिवाइसेस हैं, तो DC1 DC2 में 2 डिवाइस है, ब्रांच एक जो ब्रांच है उसमें 2 डिवाइस है, 2 VH है, और एक दूसरा ब्रांच है उसमें 1 डिवाइस है, ये डाउन है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये डिवाइस जो है इस ये ब्रांच पे पहुंचा, ब्रांच पे इस डिवाइस के पहुंचने के बाद ZTP यूज करके, जीरो टच प्रोविजनिंग, जो हम लोग पढ़ेंगे इसका थ्योरी आगे, ZTP यूज करके आपको ये साइट को अप करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, विल स्टडी अबाउट ZTP इन अपकमिंग क्लासेस, पूरा ZTP प्रोसेस क्या होता है, बट अभी ये करना है। अभी अगर आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ वी एज कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जब आप डैशबोर्ड में जाएंगे, लेट मी गो टू द डैशबोर्ड, तो आपको वी एज यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 6, लेकिन टोटल कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए। तो ये कैसे हम लोग ब्रिंग अप इसको करेंगे, लेट मी बोलिए। डायग्राम से तो हमको पता चला कि 7 है और कंट्रोल में दिखा कि हमने 6 है, ठीक है। लाइव सिनेरियो बस डायग्राम भी नहीं, ठीक है, मैं मेरे नेटवर्क में हूँ और मुझे कंट्रोलर में वही नंबर्स ऑफ ये दिख रहे हैं एज डिवाइस, अब मुझे पता नहीं उसमें एक्चुअल डाउन कितने हैं और कितने होने चाहिए, तो वो कहीं से हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या कि मेरे नेटवर्क में एक्चुअल इतने इसमें आप अप एरो इसमें डाउन एरो भी रहेगा। अच्छा, तो अभी तो अपने में तो नहीं है, एक आना चाहिए ना डाउन एरो फिर। ये न्यू साइट प्रोविजनिंग है, अच्छा ओके, ये जीरो टच प्रोविजनिंग, मतलब नया साइट आप उसको ऐड कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि रनिंग साइट है और जो डाउन हो गया है, ये नया साइट आप नया राउटर आप ओके। अगर रनिंग रहता तो एक डाउन एरो आता। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा।
नहीं, यहीं पे दिखता है, डैशबोर्ड में दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देख सकते हैं इसको। तो 100 और नोट्स आएगा, अगर 1000 नोट डाउन है तो वो भी आएगा। हाँ हाँ, वी मैनेज डैशबोर्ड पे नहीं, उतना करने की डैशबोर्ड पे ही वो दिख जाएगा डाउन एरो करके। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है वो। ओके, एनीवेज। हाँ, क्योंकि वो ब्रिंग अप प्रोसेस में होना चाहिए, दैट मीन्स कि उसका सर्टिफिकेशंस और वो वैलिड और वो सारा होना चाहिए। अदरवाइज फिर वो कैसे दिखेगा? पहले तो वो वी मैनेज में इनरोल होना चाहिए, है ना? हाँ, VPN जीरो कैसे आप करना चाहते हो मॉनिटरिंग? आप तो मॉनिटरिंग मैनेजमेंट डिवाइस से ही मॉनिटरिंग करेंगे ना? हाँ, आप डैशबोर्ड पे आपको ऐसे तो अलर्ट आएगा, बट आप जैसे डैशबोर्ड पे जाएंगे ना, सो विल फाइंड कि कितने अप है कितने डाउन। अभी यहाँ आपको डाउन नहीं दिख रहा, मैं एक VS डाउन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये इंटरफेस। ओके, मैं आपको ये भी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। ये दो चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ, कि इसको अप करेंगे। ये नया राउटर है, इस पर कुछ बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे है क्या देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक साइट को डाउन किया, मतलब एक डिटैच किया टेम्पलेट को। मैं आपको एक डाउन करके दिखाता हूँ कौन सा डिटैच किया है। ब्रांच 1 VH1, ब्रांच 1 VH1। जीरो 1 and 2 शट डाउन। मैंने क्या किया कि VPN जीरो डाउन कर दिया। ऐसे दूसरे भी मेथड्स हैं, आप चाहें तो OMP भी डाउन कर सकते हैं उसका। VPN जीरो डाउन कर दिया, दैट मीन्स कि अब अगर यहाँ जाएंगे डैशबोर्ड पे तो आपको देखिए दो डिवाइस डाउन दिख रहे हैं। कौन कौन से भाई? लेट्स सी। ब्रांच 1 VH1, ब्रांच 1 VH2 दोनों डाउन दिख रहा है अभी। इसी तरह से दिखेगा जैसे डैशबोर्ड पे जाएंगे ना, विल फाइंड के डिवाइसेस जो हैं वो अप है या डाउन है, रिचेबल है अनरिचेबल है। इवन हो सकता है कि डिवाइस अप हो, मतलब डिवाइस रनिंग में है, बट मेरे वी मैनेज से अनरीचेबल है। देखिए अनरीचेबल, एक डिवाइस अप आ गया, अभी 5.1 दिखेगा आपको। लेट देम गिव सम टाइम, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल गो। अच्छा, आप देखिए आपको एक नया साइट डिप्लॉय करना है जिसका नाम है ब्रांच 2 VH1। इसमें किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है? इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑब्वियसली सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम वाइड में होस्ट नेम वी बॉन्ड, देखिए यही है ZTP सर्वर। ये जो वी बॉन्ड है इसका कहाँ पे है? ZTP सर्वर। आगे मैं आपको बताऊंगा ये प्रोसेस, क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, विल सी। ऑल्दो इट इज़ ज़ीरो टच प्रोविजनिंग, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। ये साइट जो है विद इन 2 मिनट्स अप आ जाएगा, सारा कॉन्फ़िगरेशन भी उसमें चला जाएगा। आपको खाली कनेक्ट करना है डिवाइस को, और विथ हेल्प ऑफ ज़ीरो टच प्रोविजनिंग, ज़ीरो टच डूइंग एनीथिंग इन दिस डिवाइस, ये डिवाइस अप आ जाएगा विथ ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप देखिए कि वी बॉन्ड इसका कहाँ पे है? ZTP सर्वर viptela.com पे। ओके, यहाँ पे देखिए और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे न सिस्टम IP है, न साइट ID है। जो 5 मैंडेटरी चीज़ थे उसमें सिर्फ दो दो दिख रहे हैं, एक होस्ट नेम और वी बॉन्ड। और बाकी कौन कौन से थे? सिस्टम IP, साइट ID, वी बॉन्ड है, ऑर्ग नेम। सिस्टम IP उस बॉक्स पे IP नहीं है,
साइट आईडी नहीं है, ऑर्ग नेम नहीं है, ये सारा कुछ इसको मिलेगा। कैसे मिलेगा ये प्रोसेस बाद में देखेंगे, बट एट द मोमेंट थोड़ा और नीचे जाएंगे, देखेंगे इसका VPN 0 का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि VPN 0 जो है थोड़ा सा करने दो। ओके, VPN 0 अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं IP6 SNMP ऑल दोस बैनर। अच्छा, VPN 0 गिग 00 IP DHCP क्लाइंट, मतलब इसको DHCP सर्वर से IP मिल रहा था अभी। टनल इंटरफेस इनकैप्सुलेशन IPsec, नो अलाउ BGP, जो बाय डिफॉल्ट सर्विसेज अलाउड हैं वो आप देख सकते हैं, DHCP DNS ICMP है। उसके अलावा बहुत सारे सर्विस जो हैं वो स्टॉप्ड हैं, लेकिन ये इंटरफेस गिग 00 ये शट डाउन है। तो मैं कैसे इसको इस पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसको VPN 512 से। जस्ट अ मिनट। रस्ते जी वी में भी अपना डिवाइस मॉडल आता है ना, मींस अलग अलग डिफरेंस मॉडल। VS है ना, VS 1000 2000 5000। तो हाँ, तो जो डिफॉल्ट सर्विस रहते हैं वो भी एज पर मॉडल रहता है कि सब मॉडल में सेम ही रहता है? सेम रहता है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम है। सेम ही रहता है ना, हाँ, मतलब सबका सबका सेम है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, फैक्ट्री डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है किया हुआ इस डिवाइस में। इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करके भेजा गया है ब्रांच में। क्या कॉन्फ़िगर किया है आपने यहाँ पे? आपने यहाँ पे VPN 512, इसको एक मैनेजमेंट IP, जो भी आपके नेटवर्क का मैनेजमेंट आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट IP है वो आपने दिया। क्यों? क्योंकि आप रिमोट लोकेशन से आप इसको SSH कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग ने इसको लोकली SSH किया है और ये अपने गेटवे की तरफ जा रहा है, मतलब ये इंटरनेट या फिर मैनेजमेंट IP कुछ तो होना चाहिए जिससे आप इसको एक्सेस कर सकें। ओके, एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है देखना कि ये जो भी डिवाइस होगा ना, इट शुड बी रीचेबल टू दिस। ठीक है, तो जब ZTP प्रोसेस पढ़ेंगे ना उस टाइम में विल सी कि कैसे ये होता है। बट एट द मोमेंट आप देखिए किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। सो कॉन्फ़िगरेशन को अगर ब्रेक करें, शो रन सिस्टम, पहले तो आपका सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन होता है। सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन में मैंडेटरी थिंग्स, देन AAA कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र लॉगिंग डिस्क, उसके बाद शो रन SNMP, फिर आपने अगर SNMP कॉन्फ़िगरेशन किया है तो वो रहेगा। अगर आपने OMP कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये डिफ़ॉल्ट OMP कॉन्फ़िगरेशन है, इसको पढ़ेंगे आगे। ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है इसमें। अगर कोई पॉलिसी वाइड कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी पॉलिसी इसमें नहीं है। अगर इसमें सिक्योरिटी वाइड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो आपको दिखेगा। और फाइनली आप इसमें देख सकते हैं VPN 0 और VPN 512 का कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की है और इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन इसमें होते हैं। अब यहाँ देखिए VPN 0, अगर ये इंटरफेस शट डाउन है, दैट मीन्स कि इसका ट्रांसपोर्ट इंटरफेस ही शट डाउन है। इसको सबसे पहले हम लोग को नो शट करना पड़ेगा, कमिट एंड क्विट। ओके, इसको नो शट किया हमने। वाइल इट इज़ कमिंग अप, विल वेट। देखिए अपना डैशबोर्ड, एक डिवाइस हो गया ना, डाउन दिखा रहा है। तो जो भी डिवाइस एक्चुअली अनरीचेबल रहेगा ना, वो आपके वी मैनेज पे दिखा देगा। ये 1000 हो, 2000 हो, कितने भी काउंटर्स हो, तो आप डैशबोर्ड देख के ही बता देंगे कि कौन सा जो आपका साइट है वो अनरीचेबल है। फिर आप उस साइट पे लोकली एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि क्या इश्यू है। ऑलराइट, सो तो एक बार आपने वो नो शट किया VPN 0 को। VPN 0 नो शट करने के बाद आप क्या चेक करेंगे? आप चेक करेंगे शो कंट्रोल कनेक्शन। देखिए ये जो शो कंट्रोल कनेक्शन है ये जा रहा है, सबसे पहले किसको कांटेक्ट कर रहा है? वी बॉन्ड को। ठीक है, वी बॉन्ड को क्यों कांटेक्ट कर रहा है? क्योंकि वी बॉन्ड इसको क्या क्या प्रोवाइड कराएगा? वी बॉन्ड इसको प्रोवाइड कराएगा वी मैनेज और वी स्मार्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑलराइट। अभी क्या है कि इसको जैसे ही
192.168.1.10। इसको जैसे ही वी मैनेज का आईपी मिल जाएगा, आई थिंक 198 है आईपी, उसके बाद फिर आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन पुश कर सकते हैं। विल सी, बिहाइंड द सीन इसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। शो रन सिस्टम, ठीक है। एटलीस्ट ये जो डिवाइस है ये इस पर्टिकुलर सर्वर को, मतलब वी वांट को पिंग करना चाहिए। देखिए इसका जो आईपी है वो रिजॉल्व हो रहा है। आपने देखा एक चीज, हैव यू सीन दिस चेंज? अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे? वी वांट, पहले क्या था? पहले जो था वो क्या था यहाँ पे? ZTP सर्वर। अब ZTP सर्वर ने इसको, जो इसका लोकल वी बॉन्ड है उसके बारे में इसको बता दिया, क्योंकि ये जो लोकल वी बॉन्ड है ना, यही लोकल वी बॉन्ड इसको वी मैनेज के बारे में बताएगा, ठीक है। हाँ, हम लोग देखेंगे ZTP प्रोसेस कैसे होता है। चलिए, नहीं खुलेगा ये लगता है। SD-WAN बंद कर दिया सिस्को ने। ओके, सो इतना जब बोल ही दिया है तो ZTP प्रोसेस देख ही लेते हैं, फिर क्यों अब इसको डिले किया जाए ना। देख लीजिए पहले ZTP प्रोसेस। ये अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है। व्हाट इज ZTP प्रोसेस? ये तो नहीं है। शो ZTP vBond request। ये ओके, देखिए ZTP प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, 15-20 मिनट लगेगा इसको समझने में। ZTP प्रोसेस में जीरो टच प्रोविजनिंग। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? द वी एज और गेटवे राउटर एट द साइट where the hardware V edge router is located must be able to reach to public DNS server। जो देखा था ना ztp.viptela.com, तो DNS के पास जाना चाहिए। और अगर ये पब्लिक जैसे गूगल या फिर दूसरे पब्लिक DNS नहीं पहुंच रहा, इट्स ओके। ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल, बट दिस इज मैंडेटरी। मीन्स यू शुड रीच ZTP vbond.ztp.com। ये हो गया। अब देखिए, द वी एज राउटर मस्ट बी एबल टू रीच टू ztp यहाँ पे रीचेबल हो। अच्छा, अलग अलग मॉडल्स में, सो अगर आप यूज कर रहे हैं VS1000, उसमें गिग 0/0 को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क केबल मस्ट बी प्लग्ड। ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट एक इंटरफेस तो प्लग करना ही पड़ेगा। अगर VS2000 है तो गिग 20, अगर VS100 है तो ये सारे इंटरफेसेस को एज्यूम किया जाता है कि ये VPN 0 का इंटरफेस है, ठीक है। और VPN 0 को आपको जो MPLS या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक इंटरफेस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये प्रोसेस क्या है? मॉडल वाइज जो पोर्ट अलग है उसका कुछ है क्या? हमने ऐसा किया हुआ है 0/0 20, सबने 0/0 क्यों नहीं रखा? अगर आप देखेंगे इस मॉडल को ना, तो इसमें 0/0 इंटरफेस ही नहीं है। अच्छा, 2 से स्टार्ट होता है। इसको आप देखेंगे 0/4, पता नहीं, देखना पड़ेगा 0/4 क्यों लिया है।
बट इसमें स्टार्टिंग इंटरफेस, ये इसका स्टार्टिंग इंटरफेस है। अब ये भी 00 होना चाहिए था, ये पता नहीं, हो सकता है इसमें 04 पहला इंटरफेस हो, आपको देखना पड़ेगा हार्डवेयर को, लेकिन ये रिकमेंडेशन है। हाँ, कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ऑलराइट। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका कि आप जो VH डिवाइस है उसको ऑन करेंगे, पावर ऑन, क्योंकि ये जो VH डिवाइस है ये फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा। जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे और आप इसको सपोज ये 1000 है, आपने इसके गिग 0/0 को कनेक्ट कर दिया, वो ऑब्वियसली कहाँ होगा, VPN 0 में। तो ये सबसे पहले इसको एक IP एड्रेस मिलेगा DHCP सर्वर से, और इसका जो है नेम रेजोल्यूशन होगा DNS से, ये दोनों हो सकता है कि एक हो, और ये जो है इवन ये तीनों हो सकता है कि एक ही सर्वर हो, वो हो सकता है आपका ZTP सर्वर। ठीक है, तो आपका जब स्टेप नंबर 1, 2 और 3 होगा, स्टेप नंबर 1, 2, 3 में क्या प्रोसेस होगा, हार्डवेयर पावर ऑन, the router attempts to contact the DHCP server sending DHCP discovery message। DHCP सर्वर अगर है तो उसको IP दे देगा, और उसके बाद आपका जो है the router contact DNS server to resolve the hostname ztp.viptela.com and receive the IP address of the ZTP server। तो ये प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 अभी हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद प्रोसेस नंबर 4 क्या है, the router contact the ZTP server, the ZTP server verifies the VH router and send the IP address of the vBond orchestrator। देखिए ये स्टेप भी हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो we got कि vBond जो एक्चुअल जो लोकल vBond है वो रिजॉल्व हो गया। ये लोकल vBond है जिसका IP है 198.181.21। This vBond orchestrator that is in the same organization of the VH router, ये आपका सेम ऑर्गेनाइजेशन में है। तो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 होगा। उसके बाद जो मेन कॉन्फ़िगरेशनल स्टेप है वो शुरू होगा। The router established a transit connection to the vBond orchestrator and send its chassis ID serial number to the vBond। Okay, at this point the ZTP process, the router does not have the system IP, so the connection established with a null IP address। अगर हम लोग यहाँ जाके देखें शो कंट्रोल कनेक्शन, अब देखिए 000 है सिस्टम IP, नल IP एड्रेस, क्योंकि सिस्टम IP है नहीं। The vBond orchestrator uses these two numbers to verify the router। The vBond orchestrator then sends the IP address of this particular VH to the vManage device। ओके, सो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अभी फिफ्थ में क्या हो रहा है कि जो vBond है वो VH का IP vManage को दे रहा है। The router establishes a connection with the vManage and verify by the NMS। The vManage NMS send the router system IP। That means कि जब आपने स्टेप 1 किया, 2 किया, 3, इसने बताया कि इसका लोकल vBond IP क्या है। अब ये जो लोकल vBond है ये बता रहा है vManage को कि ये VH का लोकेशन क्या है, और VH को बता रहा है कि vManage का IP क्या है। एक बार जब ये VH और vManage कांटेक्ट करेगा, vManage अब इसको एक सिस्टम IP देगा। अब ये जो सिस्टम IP इसको मिलेगा, इस सिस्टम IP से फिर ये रिकॉन्टेक्ट करेगा vBond को, फिर ये एक बार ऑथेंटिकेट करेगा vBond से। ऑथेंटिकेट होने के बाद फिर ये टनल जो है vBond के साथ ब्रेक हो जाएगा, और फिर vManage और vBond के साथ कॉन्फ़िगरेशन होगा। फाइनली ये जो है Viptela फैब्रिक में कनेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी। So the router establishes a connection to the vManage and verify by the NMS। The vManage NMS send the router its system IP। हाँ पूछिए, कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मींस इसलिए वो लास्ट में vBond हो गया था अपना। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक बार जब इसको IP मिल गया, द राउटर री एस्टैब्लिश द कनेक्शन, उसके बाद फिर वो सारा कनेक्शन री एस्टैब्लिश कर लेगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है
कि यहाँ पे लोकल वी वांट के साथ कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका कनेक्टेड है। अभी इस राउटर को जाके और वी मैनेज से कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसका पुश कर देंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको हाइड करके वी मैनेज। मैं आपको चैट विंडो में डाल देता हूँ, कॉपी कर लीजिए। ZTP चैट विंडो पे आप कुछ टाइप करिए, मेरा चैट विंडो ओपन नहीं हो रहा है। ओके, अभी आया। लिंक मैंने आपको पिंग कर दिया, पब्लिक लिंक है ये। मेन जो इसमें लिंक है ना वो है, उस पर जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। मैंने हालांकि पहले दिया होगा ये यूआरएल आपको। ये यूआरएल पे कुछ भी जाके सर्च कर सकते हैं, sdwan-docs.cisco.com। ऑलराइट, सो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से टेम्पलेट में जाके, और टेम्पलेट ऑलरेडी मेरे पास बना है। वैसे आने वाले क्लासेस में हम लोग अपना टेम्पलेट भी बना के पुश करेंगे, आज भी करेंगे। आज एक CLI टेम्पलेट भी बनाना है हम लोग को। अब देखिए, ब्रांच टाइप 2 टेम्पलेट तो अटैच करेंगे ब्रांच टाइप 2 टेम्पलेट में। अभी मेरे सिस्टम को पता है कि इसका चैसिस आईडी सीरियल नंबर क्या है, क्योंकि वी बॉन्ड ने बताया। चैसिस आईडी सीरियल आईडी को डालेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे अभी मेरे को सिस्टम आईपी, होस्ट नेम, सिस्टम आईपी, लैटिट्यूड, ये सारी इंफॉर्मेशंस नहीं है। को ये एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि MPLS Tloc, VPN12, ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अगर हो तो मैं मैन्युअली इसको डाल सकता हूँ, अदरवाइज आपको ये सारा इंफॉर्मेशन अपलोड करना पड़ेगा, जो मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेल सीट में है। तो यहाँ देखिए, अपलोड डाउनलोड दोनों ऑप्शन है। अपलोड फाइल में जाते हैं और ब्रांच टाइप 2 टेम्पलेट उसको लेके अपलोड कर देते हैं। देखिए सारा कुछ फील्ड इसमें फुल हो गया, हम देख सकते हैं। VH नेम, ये अपना जो आप दिखा रहे थे CLI और एक टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट को हमने कंफिगर किया बराबर। ये हाँ, ये CLI टेम्पलेट नहीं, ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग देखेंगे इसको आगे, हम लोग बनाएंगे इस टेम्पलेट को आने वाले टाइम में, कल। आज हम लोग CLI टेम्पलेट बनाएंगे, बट यहाँ आपको ZTP प्रोसेस बता रहा हूँ वाया दिस दिस प्रोसेस, ये भी इम्पोर्टेंट। सो सिस्टम आईपी, साइट आईडी, एड्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ आप देख रहे हैं। ये इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल सीट है एक, डेस्कटॉप पे ही होगा। देखिए है ना, CSV कॉन्फ़िग फाइल, ये CSV फाइल है। अगर मैं इसको खोलूँ, यहाँ पे तो नहीं खुलेगा, इसको कॉपी कर लेता है। मेरे डेस्कटॉप पे काफ़ी कुछ है, जस्ट अ मिनट। ओके, आप देखिए। सो वो CSV फाइल मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, वो जो CSV फाइल जो हम लोग ने अपलोड किया, इस तरह से मेंटेन करते हैं हम लोग। तो डिवाइस आईपी, होस्ट नेम, सिस्टम नेम, ये सारा जो काउंटर है ना, इस तरह से। तो और जो जितने डिवाइस है उसमें हमको CSV फाइल क्रिएट करना पड़ेगा क्या? हाँ, रहते हैं CSV फाइल।
एकदम रहते हैं, ऐसे ही मैनेज करते हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबका CSV रहता है। और वैसे भी आपके पास एक लिस्ट तो सर एक फाइल में सब डिवाइस अगर हमारा 1000 है टोटल, तो एक ही टेम्पलेट में 1000 डिवाइस आ जाता है, वैसा नहीं है क्या? 1000 CSV फाइल क्रिएट करना पड़ेगा? हाँ, 1000 CSV फाइल आपको बना के रखना पड़ेगा। अभी देखिए जो टेम्पलेट हम लोग ने डाला है उसमें होस्ट नेम, सिस्टम IP ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। विल सी। ओके, ऑलराइट। तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। तो अभी इसको हम लोग ने वी मैनेज से पुश करना चालू कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को। एक बार जब ये अप आ जाएगा, विल सी दैट हाउ इट वर्क्स। ओके, इन द मीनवाइल मैं एक और ब्रांच 1 VH1, क्योंकि हम लोग आज CLI टेम्पलेट बनाना है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं। शो रन। कॉन्फ़िगरेशन तो आपको चाहिए, आप CLI टेम्पलेट बनाएं या फिर आप टेम्पलेट बेस्ड टेम्पलेट बनाएं, दोनों केसेस में आपको पता रहना चाहिए कि आपका सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, VPN 0 कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप सिंपली उसको एक फॉर्म दे देते हैं कि ओके दिस इज़ माय कॉन्फ़िगरेशन। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस है हम लोगों के पास। पासवर्ड भी एडमिन ही दे देता हूँ। तो मैं एक टेम्पलेट यहाँ बना रहा हूँ, दैट इज़ CLI टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट हम लोग पुश कर देंगे। बहुत बेसिक टेम्पलेट बना लेते हैं। VPN 0। तो आपको मिनिमम क्या चाहिए? मिनिमम यू नीड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, VPN 0 कॉन्फ़िगरेशन एंड VPN 512 कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इतना कॉन्फ़िगरेशन देते हैं तो आप डिवाइस को ब्रिंग अप कर सकते हैं। बाद में आप ऐड ऑन करते रहिए, नो प्रॉब्लम। बाद में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आप उसमें डालते रहिए अकॉर्डिंग टू योर सिक्योरिटी पॉलिसी और जो भी आपका स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। बट आपको एटलीस्ट सिस्टम VPN 0 और VPN 512 चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए मैंने सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन बनाया। हम लोग एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट से, जिसका होस्ट नेम, GPS लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, सिस्टम IP, साइट ID, कुछ कुछ चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। बट हम लोगों को ऑर्ग नेम चाहिए, vBond IP चाहिए, ट्रिपल डिफ़ॉल्ट है ये। देन वी नीड VPN 0 कॉन्फ़िगरेशन। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी DNS बताया, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। सपोज सेकेंडरी हटा देते हैं हम लोग। देन vBond IP, इंटरफेस IP, इनकैप्सुलेशन। आप देखिए ध्यान से इसका कॉन्फ़िगरेशन, टनल इंटरफेस, IPsec, बट MPLS। तो ये MPLS का IPsec कॉन्फ़िगरेशन है। और नीचे जो है gig 02 टनल इंटरफेस IPsec इंटरनेट, ये इंटरनेट के लिए टनल इंटरफेस। ओके, हमको अभी QoS नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे जब पढ़ेंगे QoS को हटा देते हैं। और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन इसमें डिफ़ॉल्ट भी हैं। शट डाउन। उसके बाद स्टैटिक राउट बने हुए हैं, ठीक है। और फिर फाइनली VPN 512 का एक स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत आपको पूछ सकते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको चैट विंडो में डाल देता हूँ, आप इसको देखिए whenever you are free। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलिए। ये तो अभी आप दे रहे हैं, लेकिन अगर सपोज हम कोई नया साइट क्रिएट कर रहे हैं तो ये सिस्को के साइट से भी मिल सकता है ना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन?
क्यों नहीं मिलेगा? आपको जो मैंने लिंक दिया है ना, उस पर दिया हुआ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ, एकदम। तो ब्रांच टू VH1 देखें कहाँ पहुँचा। देखिए इसका नाम चेंज हो गया। शो कंट्रोल कनेक्शन अगर करेंगे अभी, देखिए अभी अभी ये स्मार्ट वी मैनेज सबके साथ लिंक इसका अप हो गया। शो रन सिस्टम करेंगे, इसको एक सिस्टम आईपी मिल गया, साइट आईडी मिल गया, सारा कुछ जो हम लोग ने पुश किया था कॉन्फ़िगरेशन वो इसको मिल गया। करेक्ट। हाँ, सारा का फुल कॉन्फ़िगरेशन उसका हो गया। अभी मैं एक साइट को कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ अपने हिसाब से, दैट इज़ DCVH1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि जो DCVH1 है वो कॉन्फ़िगर कैसे है। तो डिवाइस टेम्पलेट में जाएंगे, आप देखिए DCVH जितने भी है ना, सब एक टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। जितने भी डेटा सेंटर डिवाइसेस हैं, ऑल आर यूजिंग सिंगल टेम्पलेट। लेकिन मैं DCVH1 को खुद के टेम्पलेट यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। जो पहले जो टेम्पलेट यूज़ कर रहा था उसको हटा सकते हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा डिवाइस कौन सा टेम्पलेट यूज़ करता है? कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस। अगर आप यहाँ आएंगे, आप देखिए होस्ट नेम है सबके, सीरियल नंबर है सबके। थोड़ा सा और अगर इसको ऐसे स्क्रॉल करो तो आप देखेंगे कि जैसे DCVH1 है तो ये डिवाइस टेम्पलेट यूज़ कर रहा है DCVH। ठीक है। फॉर एग्जांपल से ब्रांच 1 BH2 है तो ये यूज़ कर रहा है ब्रांच 1 BH2 टेम्पलेट। अभी हम लोग ने डिटैच किया था एक, इसको तो ऑफ ही कर दिया, ये तो ऑफलाइन है। अभी हम लोगों ने एक डिवाइस को डिटैच किया DCVH1। अभी जब रिफ्रेश करेंगे ना तो ये नहीं रहेगा क्योंकि इसको हम लोग ने हटा दिया है। तो एक बार इसको रिफ्रेश मार देते हैं। सॉरी, रिफ्रेश करना चाहिए था। फिर से जाते कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस में और इसको इधर स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए DCVH1 गया। अभी अभी मैनेज से मैनेज नहीं हो रहा है। अब आप लोकल चेंज कर सकते हैं इसमें DCVH1 में। ठीक है। तो शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन जो स्टिल जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इसको मिला था उस हिसाब से ये चल रहा है। अभी हम लोग इसमें नया कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे जिसमें VPN 1020 नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम लोग ने 10 और 20 डाला नहीं है। तो कैसे बनाएंगे CLI टेम्पलेट? देखिए टेम्पलेट बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा टेम्पलेट के अंदर, क्रिएट टेम्पलेट। आपके पास CLI टेम्पलेट, फीचर टेम्पलेट। फीचर टेम्पलेट कल देखा जाएगा, आज हम लोग CLI टेम्पलेट देखते हैं। आपको देना पड़ेगा कौन सा डिवाइस है। अब इसलिए हम लोग हैं VH क्लाउड में। टेम्पलेट है मेरा से DC टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दीजिए। देखिए आपके पास ऑप्शन होता है, इधर आप सेलेक्ट फाइल करके और जहां आपने फाइल सेव किया वहां से आप कॉल कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नो वरीज। आपने फुल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा और नीचे करेगा आपको पूरा दिखेगा। ठीक है। अब आप इसको क्लिक कर दीजिए ऐड। अब आपने एक टेम्पलेट बनाया, हम लोग का टेम्पलेट का नाम है DC टेस्टिंग। अब इसको अटैच करेंगे हम लोग किससे? DC1 VH1 से। अटैच, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें ना तो आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस और आप देख सकते हैं साइड बाय साइड डिफरेंस। कहने का मतलब कि अभी जो आप कॉन्फ़िगरेशन डाल रहे हैं वो और जो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था वो, उसमें क्या डिफरेंस है। जहाँ भी डिफरेंस है उसको हाईलाइट करेगा ये कि ये ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये न्यू कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख सकते हैं। ओके, फिर क्लिक करते। हाँ, अपना टेम्पलेट एक जो उसमें पहले से था। करेक्ट करेक्ट।
ना हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पुश किया, अगर कुछ भी गड़बड़ी होगा कॉन्फ़िगरेशन में एरर आ जाएगा, ये बोलेगा आई कांट कॉन्फ़िगर, कुछ ना कुछ एरर थ्रो कर देगा और आपको बताएगा भी कि इस लाइन में ये एरर है। ऑलराइट, सो थोड़ा वेट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पुश होने का, और ये दिखा रहा है कि सक्सेसफुली इसने पुश कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। फिर से अगर डिवाइसेस में जाएंगे और देखेंगे कि मेरा जो DC1 VH1 है वो यूज़ कर रहा है टेम्पलेट DC टेस्टिंग जो हम लोग ने बनाया अभी। अब अगर डिवाइस में जाएंगे और देखेंगे शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, आप देखिए VPN 1020 गायब हो गया है ना, 00 और 03 अब नहीं है क्योंकि जो नया कॉन्फ़िगरेशन है उसमें वो नहीं था। शो कंट्रोल कनेक्शन करेंगे हम लोग तो कंट्रोल कनेक्शन तो वैसे ही आएगा जैसे पहले था, लेकिन अभी आपके पास लेस कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपने जो पुट किया वो कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है एक CLI टेम्पलेट में, कि आप CLI टेम्पलेट के अंदर वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो देखिए DC टेम्पलेट जो एक जगह पे अटैच था, यहाँ पे जाएंगे हम लोग क्योंकि हमको एडिट करना है इसको, तो एडिट पे चले जाएंगे। एडिट में आने के बाद आप देखिए किसी भी एक फील्ड को या सिलेक्टिवली आप फील्ड को चूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल, क्योंकि जनरली जो होस्ट नेम होगा वो अलग अलग होगा। तो क्या फ़ायदा है, देखिए ये वेरिएबल बना दिया। जनरली जो सिस्टम आईपी होगा वो भी अलग अलग होगा। सो जो भी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, मतलब जो वेरिएबल है, तो जीपीएस लोकेशन भी अलग होगा लेकिन ऑग नेम सेम रहेगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे। वीबॉन्ड आईपी सेम रहेगा उसको चेंज नहीं करेंगे। साइट आईडी अगर उस साइट के लिए है तो सेम रहेगा, अदरवाइज उसको चेंज कर सकते हैं। अब जीपीएस लोकेशन चेंज कर सकते। वेरिएबल बोले तो आइडियल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हाँ उनको चेंज कर। हाँ, तो आप जैसे लाइक आपका ये आईपी वगैरह डिफरेंट होगा इंटरफेसेस पे, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर एक बार वेरिएबल आपने बनाया फिर आपने अपडेट किया इसको, अब ये क्या है, फिर से पूछ रहा है कि बताओ उस पर्टिकुलर साइट का होस्ट नेम क्या है और सिस्टम आईपी क्या है। सो डीसी सपोज 1 मैं दे देता हूँ टेस्टिंग, ऐसे कि ये काम कर रहा है आपको बताने के लिए, और साइट आईडी 10101। तो अब जब आपने इस तरह से वेरिएबल बनाया ना तो ये अब ये जेनरिक हो गया, मतलब कि ये टेम्पलेट आप 10 VH में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या बदलना पड़ेगा, तो वो चीज़ जो वेरिएबल है, क्या वेरिएबल होंगे, सब चीज़ वेरिएबल नहीं होगी। कहने का मतलब कि AAA कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल नहीं होगा, SNMP वेरिएबल नहीं होगा, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट रहेंगे, सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे लाइंस सेम रहेंगे। क्या बदलेगा, सिस्टम आईपी, आई थिंक ओनली सिस्टम आईपी बदलेगा, बाकी आप सेम साइट पे हो, साइट आईडी सेम रहेगा, सेम ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा, सेम वी बॉन्ड आईपी रहेगा। ठीक है, तो लाइक दैट आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप वेरिएबल बना सकते हो, आगे वो भी मैं आपको बताऊंगा सिस्को क्या बोलता है वेरिएबल बनाने के लिए, लेट्स सी। बट पहले ये जो चेंज हम लोगों ने किया है उस चेंज को देखते हैं। ये जो भी पॉलिसीज है ये ब्रांच इन राउटर के लिए, राइट? अगर किसी का कोई राउटर पे है तो वहाँ पे तो पॉलिसीज चेंज होगा ना, थोड़ा बहुत तो मैनुअली करना पड़ेगा ना। पॉलिसी में आएंगे तो देखेंगे। इस हम लोग पॉलिसी कर नहीं रहे हैं, कुछ भी पॉलिसी नहीं डाला अभी तक। पॉलिसी जो है ना वो आएगा वी स्मार्ट से, तो अगर वो वी स्मार्ट से आएगा तो फिर अभी तो डालने की जरूरत नहीं है, बट विल डिस्कस अबाउट दिस। पॉलिसी रिचेबिलिटी चेक करना है उसमें। पॉलिसी हम लोगों ने डाला नहीं है अभी। यहाँ पे देखिए DC1 टेस्ट। यहाँ पे अभी हम केवल डिवाइस को कनेक्ट करके उसका रिचेबिलिटी लाइक कर रहे हैं। हम्म और यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो वी मैनेज टेम्पलेट मैंने बनाया CLI, वो CLI टेम्पलेट अगर आप चाहें तो जेनरिक भी बना सकते हैं। जनरली जो है ना 95% लोग यही यूज़ करते हैं CLI टेम्पलेट, कोई भी यूज़ नहीं करता फीचर टेम्पलेट। विल सी, अगले क्लास में देखेंगे हम लोग ऑल दो।
तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि CLI टेम्पलेट को भी आप वेरिएबल CLI टेम्पलेट बना सकते हैं। तो जो भी चीज़ें वेरिएबल होंगे जैसे IP एड्रेसेस, गेटवेज, ETH0, इसी को आप खाली वेरिएबल, तो जब आप पुश करेंगे ना उस टाइम आपको मैनुअली उसको डालना होगा या फिर अपलोड कर सकते हैं। बोथ ऑप्शंस यू हैव। आपको मैनुअली नहीं डालना है तो हम लोग के पास अपलोड ऑप्शन भी था, करेक्ट। आप चाहें तो मैनुअली भी डाल सकते हैं। सो एक बार फिर से जाते हैं टेम्पलेट में। ये टेम्पलेट था हम लोग का, सॉरी ये नहीं था, DC था, DC टेस्टिंग, एडिट से इसको बना देते वेरिएबल। वेरिएबल बनाएंगे आप, तो GPN लिख दिया मैंने, GPS लिखना चाहिए था, थोड़ा स्लो हो रहा है। ओके तो आप देखिए वेरिएबल जो है GPN अपडेट करेंगे तो ये पूछ रहा है। देखिए आप अपलोड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ क्लिक करके मैनुअली, अगर आपके पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास है, मेरे पास है एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिखाया था CSV फाइल में, ब्रांच टाइप 2, अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट। अभी भी इसको GPS लोकेशन नहीं मिला, उस टेम्पलेट में GPS लोकेशन नहीं रहा होगा तो मैनुअली दे देंगे। सपोज 55। समझ रहे हैं ना, जब भी आप अपलोड करेंगे ना उस टाइम में काउंटर्स को आप अपलोड करके और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिवाइस को। बट ये जो है ना, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नॉट ऑल द पॉलिसीज। ये पूरा पॉलिसी नहीं है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जो पॉलिसी बनाते हैं ना वो VSmart से बनाते हैं, और वो भी दो तरह का होता है, सेंट्रल और लोकल। तो पॉलिसी ऑब्वियसली आप VSmart से पुश कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि पॉलिसी VEdge के अंदर हो, क्योंकि ये पॉलिसी जो VSmart से आ रहा है वो हम लोग देखेंगे आने वाले क्लासेस में। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ओके सो आपको करना क्या है, एक लैब है टेम्पलेट लैब, जो आपको मैंने लैब शेयर किया है ना, उसमें आप ये टेम्पलेट लैब कर सकते हैं। आप जाइए उसको स्टार्ट करिए, उसमें CLI टेम्पलेट कैसे बनाया मैंने वैसे करके आप करिए, और ये वीडियो मैं शेयर करता हूँ, आप इसको एक दो बार देख सकते हैं। इट्स वेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव, अलग तरह से आप कुछ कर रहे हैं इसमें डिवाइसेस पे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देंगे और कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक मीन्स कल हम लोग डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे विथ हेल्प ऑफ फीचर टेम्पलेट। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे कल देखेंगे। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे हम आएंगे मेन कॉन्फ़िगरेशन पे। ये तो सब बेसिक है, तो ठीक है। पॉलिसी आएगा, धीरे धीरे ही आएगा सब, है ना। एक बार नहीं आएगा। फिर कल लास्ट है ना रत्ना जी, फिर हम छुट्टी पे जा रहे हैं। हाँ हम लोग थोड़ा छुट्टी करते हैं, न्यू ईयर वगैरह है ना, तो हम लोग थोड़ा मना लिया जाए। अरे ठीक, सही है। मैं फिर फिर अब 6 तारीख से मैं आ जाऊंगा वापस। अगर, लेकिन आप बाहर जाने तक बोल रहे थे ना। मैं जाऊंगा, फरवरी में जाना है मेरे को, उसके बाद फिर जाना है, बहुत सारे टूर हैं अभी मेरे नेक्स्ट ईयर, लेकिन फर्स्ट टूर फरवरी से है। तो तब तक तो हमारा शायद खत्म भी हो जाएगा। हाँ अभी आप कोई ब्रेक नहीं है, कहीं भी रहूंगा, क्लासेस लूंगा मैं। ये बस ये अभी का ब्रेक है, अब कभी ब्रेक नहीं रहेगा। हाँ कंटिन्यू 2-2 घंटे क्लास चलेंगे, 3 घंटे भी हो सकती है क्लास, कोई ये नहीं। हाँ आपका नेक्स्ट वीक मत रखिए, नेक्स्ट वीक ना 28 है, नेक्स्ट वीक छोड़ दीजिए, ठीक ना। मैं 6 वापस आ जाऊंगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि अपना क्लास जो है वो कब है, अब नेक्स्ट सैटरडे। मैं देखो मैं 7 तारीख से अवेलेबल हूँ, आपको अगर
वीक डेज में भी पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकेंड आप जैसा बोलो, मैं 7 से अवेलेबल हूँ। अच्छा, तो मेरा जो है ना मॉर्निंग शिफ्ट है सिर्फ 6 बजे से। नाइट में जगूंगा तो फिर सुबह कैसे उठूंगा। मैं जिस क्लाइंट को सपोर्ट करता हूँ ना, वो सिंगापुर क्लाइंट है, वो लोग 2.5 घंटे आगे हम लोग से। तो मेरा शिफ्ट जो है ना 6 से 3 है। तो अगर मैं 10-11 बजे तक भी सोऊंगा तो, अगर आप मतलब 9 बजे 10 बजे करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 10 से 11 कर सकते हैं नाइट में। तो अगर आप वो करते हैं ना तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि 12 से ही क्लास चालू करते हैं, या 11 से चालू करते हैं, 11 से करते हैं। वाई? बिकॉज 12-13 को मेरा छुट्टी रहता है। तो 11 अगर नाइट ज़्यादा भी पढ़ा दिया, मतलब 10 से 12 भी कर लिया, तो 12 तारीख को फिर आप लोग भी कैसे करेंगे, आप लोग उतने, आप लोगों को भी तो सोना है ना। तो ऐसा करो ना, कोई बात नहीं, 12 तारीख को और 13 तारीख को मैं आपको 2-2 घंटे क्लास लूंगा। तो 12-13, उसके बाद वीक डे में फिक्स कर लेते हैं 2 दिन, और उसके बाद 20 और सॉरी 19-20, 20 तारीख तक मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, 20 जनवरी तक। हम्म। कल क्लास, आपको जो मैंने लैब दिया ना, लैब 1 2 3 4, आप उसको 2-3 बार कर लीजिए, वही मेन है। पॉलिसीज तो आप सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट इज। ठीक है, शेयर करिए, कोई बात नहीं, देखेंगे। आपको ना आपका प्रोजेक्ट 60% समझ में आएगा अभी। हाँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, आप अगर इसको समझ लेंगे ना, तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल राइट, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। चलिए, थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं इसी टाइम में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड देन डे 3 वी हैव पॉलिसी, और थोड़ा वो देखेंगे डिज़ाइन, विप्टेला कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और रिडंडेंसी, और एपीआई, जेड स्केलर, ऑप्टिमाइजेशन, और एक आध छोटा छोटा टॉपिक होगा, विल सी। तो इस तरह से मैंने जो कोर्स बनाया था ना, वो 8-8 घंटे का बनाया था, 8+8+8। तो आज हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये और ये बचेगा। तो आप अगर लैब देखोगे, तो लैब में 1 2 3 जो बेसिक हम लोग का चल रहा है, उसमें 1 2 3 4 5 लैब्स है। हम लोग ने 1 2 3 और आज 4 कंप्लीट करेंगे, ये आपके लिए टास्क रहेगा। 5 जो है वो हम लोग यहाँ करेंगे, प्लस जो हम लोग का मेन एक लैब है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लैब नंबर 2, जो डी क्लाउड पे है। उस पे बहुत सारे हम लोग को लैब करने हैं, लाइक उसी पे हम लोग लैब करेंगे क्यूओएस का, ओएमपी उसमें देखेंगे अच्छे से डिटेल से, उसी में एक टीलॉक एक्सटेंशन आएगा, उसी में आपका वीआरआरपी आएगा। तो ये सारे जो 5-6 लैब होंगे हम लोग यहाँ देखेंगे। उसी में आपका राउटिंग पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओएसपीएफ, ये सारा आपका पार्ट 2 में है, यहाँ करेंगे। उसमें 5-6 लैब होंगे। उसके बाद फाइनली जब आएंगे हम लोग सेक्शन 3 में, पॉलिसी, वेरियस टाइप ऑफ पॉलिसी हैं, इसमें आपको लगभग 7 से 8 लैब हैं। इसमें आपको अप्रॉक्स 5 to 6 लैब्स हैं, और इधर 5 तो थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ लैब्स जो है आपके 5 + 6 + 8, इतने लैब होंगे, मतलब 19 और 20 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे प्रोसीड करने वाले आगे, आज इसको कर लिया जाए। टेम्पलेट लैब, तो कल हम लोग ने किया था CLI लैब, मतलब डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू CLI, और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फीचर फीचर टेम्पलेट।
and cat enters into the room. Room was open. Okay. Okay, all right. So CLI तो कल देखा था आपने. C also wants to learn SD-WAN, so all right. तो कल जो हम लोग ने लैब किया था उसमें एक दो चेक हम लोग करेंगे. लेट्स सी दिस पीपीटी क्या बोलता है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव: अंडरस्टैंड द बेसिक विप्टेला पैरामीटर्स बाय रिकॉन्फिगरिंग द वी एज डिवाइस. हम लोग ने रिकॉन्फ़िगर किया था वी एज डिवाइस को. बोलता वन वी एज डिवाइस इज डाउन, लॉग इन टू द वी मैनेज यूजिंग एडमिन एज द यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो वी मैनेज में लॉग इन करिए. वी मैनेज से देखिए कि कौन सा डिवाइस डाउन है. Once the device are identified, build a plan how to bring up. हम लोगों के केस में लेकिन डिवाइस था ही नहीं. यहाँ पे बोल रहा है अगर डिवाइस डाउन है. ओके, हम लोग वी मैनेज पे लॉगिन करेंगे, देखेंगे अगर कोई डिवाइस डाउन है. बिल्ड ए प्लान ऑन हाउ टू ब्रिंग अप द डिवाइस अप. आपको एक प्लानिंग बनाना है. हिंट क्या है, आप दूसरे डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं कि क्या मिसिंग है इस डिवाइस में. SSH into the V edge, build up the device so that it becomes available V manage. SSH करके आप चेक कर लो. सक्सेसफुल डिवाइस जब आ जाए तो उसका कंट्रोल और डेटा प्लेन दोनों अप रहेगा. You'll see. You'll check show control connection और वो देखेंगे. अगर आपको sys log जनरेट करना है या लॉग जनरेट करना है तो कैसे करेंगे डिवाइस पे. आपके पास ऑप्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इनेबल this command debug transport. Then you can go to the Linux cell. You can check var log debug और var log variable log dsyslog vdebug. ये सब ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं. तो हम लोग चेक करते हैं क्योंकि यहाँ तक हम लोग ने किया था पिछले क्लास में. लेट्स गो बैक. डैशबोर्ड को चेक करते हैं हम लोग. डैशबोर्ड पे अगर आप जाएंगे, सी वन ऑफ द VS डिवाइस इज डाउन. कौन सा है अनरीचेबल. ब्रांच 1 VH1 इज डाउन. इसको हम लोग को अप करना है. अब आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते डैशबोर्ड से क्योंकि डैशबोर्ड से अनरीचेबल है. तो आप क्या करो, आप देखो कि लोकल SSH हो रहा है कि नहीं. लोकल SSH हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका मैनेजमेंट प्लेन अप है. तो इस IP एड्रेस से हम लोग इसको SSH कर सकते हैं. करेक्ट. अगर आप चाहो तो अपने लोकल सिस्टम से भी पार्टी से भी आप चाहो तो उसको मैनेजमेंट प्लेन को SSH कर सकते हैं. ओके, तो ये बोलता है कि आप सब जगह का कॉन्फ़िगरेशन देखिए. हम लोगों को याद है कि पिछले क्लास में हम लोग ने VPN 0 को डाउन किया था. तो अगर आप VPN 0 को डाउन कर देंगे सो कंट्रोल कनेक्शंस में आपको कोई भी कनेक्शन नहीं दिखेगा क्योंकि डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन के बीच में कनेक्शन नहीं है. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो भी VPN इंटरफेस को हम लोगों ने डाउन किया था उसको हम लोग अप कर देते हैं. 0/2 no shutdown. Commit and quit. देखिए इसमें आपको पूरा नाम देना पड़ेगा. ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें. विप्टेला डिवाइस में आपको गिग ई लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर. और 0/2 commit and quit. इसको अबॉर्ट कर देते हैं सेक्शन को. VPN 0 इंटरफेस गिग ई 0/0 नो शट. नो शट डाउन भी आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा. गिग ई 0/1 नो शट. गिग ई 0/2 नो shut. Commit and
सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ डिबग ट्रांसपोर्ट इवेंट्स और वी सेल में जाते हैं जो इसका लाइनेक्स सेल है। यहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे से कैट var log syslog, सो कैट var log और दो बार टैब मारेंगे ना तो उसके नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे लास्ट लॉग और क्या क्या कौन कौन से लॉग है हम लोग जो देखना चाहते हैं वो है वी डिबग और syslog। सो अगर syslog देखते हैं, देखिए syslog मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि अभी ब्रिंगअप प्रोसेस में है सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स को देख सकते हैं। इसको स्टॉप करता हूँ। ये आता ही जा रहा है। ऑलराइट, को कुछ ऑफ मैसेज को हम लोग तो कॉपी कर सकते हैं। आप देखिए बता रहा VH1 नोटिफिकेशन क्लाउड एक्सप्रेस सर्विस चेंज सिस्टम IP दिस ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा जितना भी syslog जो सिस्को में आप जनरेट करते हैं वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, ऑलराइट। सो एक तो ये देख सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, डिबग। करेक्ट, तो डिबग मैसेज भी आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट करके शो कंट्रोल कनेक्शन देखेंगे तो आपका कंट्रोल प्लेन अप आ गया। और अगर अब आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे तो आप देखिए सब अप हो गया। ठीक है, ग्रेट। ऑलराइट, सो आज हम लोग को क्या करना है, आज हम लोग को फीचर टेम्पलेट लैब बनाना है, करना है। लेट्स सी, उसका भी थ्योरी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आपको राउटिंग रिलेटेड कुछ देखना है तो इस लिंक पे जाके आप देख सकते हो वो क्या है, क्योंकि ये जो बिहाइंड द सीन है ना, जो भी SD-WAN डिवाइस है सब प्योरली लाइनेक्स है। सो अगर आप लाइनेक्स रिलेटेड कुछ कमांड देखना चाहते हैं, अगर आपको पहले से पता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज से राउट -n, ये सारे कमांड है ना आपको वहाँ पे मिलेंगे। जो लिंक मैंने दिया है ना उसमें 6-7 अच्छे अच्छे कमांड हैं। इवन यहाँ पे इफ कॉन्फिग कमांड चलाते हैं लाइनेक्स में, तो इंटरफेस के बारे में बताता है। तो लाइनेक्स के जो भी कमांड आप चलाते हैं ना, जैसे मैंने अभी चलाया था कमांड दैट वाज कैट, आउटपुट देखने के लिए ls-l, इस तरह के जो बेसिक कमांड्स आप देख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। सो प्लीज कॉन्फ़िगर, जैसे CLI हम लोग ने कल किया था। उसके बाद है टेम्पलेट, कैसे बनाते हैं। तो आप जाएंगे इस जगह पे, here you will get two options. You will get option for CLI template, you will get option for feature template. Remember, template जो है more precisely डिवाइस टेम्पलेट, डिवाइस के लिए जो टेम्पलेट बनाते हैं तो आप बना सकते हैं फीचर टेम्पलेट से, और डिवाइस के लिए टेम्पलेट आप CLI से बना सकते हैं। बोथ ऑप्शंस यू हैव। तो बहुत सारे फीचर टेम्पलेट मिलके एक डिवाइस फीचर टेम्पलेट बनता है, डिवाइस फीचर टेम्पलेट। बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, विल सी। उसके बाद आप एक बार टेम्पलेट बना के उसके बाद आप, हम लोग देखेंगे जैसे टेम्पलेट में जाएंगे ना, तो आपको बताया था कि जो डिवाइस होता है उसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के। उसमें एक पोर्शन होता है सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक पोर्शन होता है आपका VPN 0, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, और मैनेजमेंट में आ जाएगा VPN 512। सो ये हो गया आपका सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन या मैनेजमेंट। फिर सर्विस VPN, मतलब VPN 1 से लेके 511 तक। और फिर फाइनली अगर कुछ दूसरे चीज़ें हैं लाइक SNMP है या फिर से बैनर है या अदर पॉलिसी है, वो एडिशनल टेम्पलेट में आ जाएगा। तो जब भी आप फीचर टेम्पलेट बनाएंगे, अब ये फीचर मतलब ये GUI मोड में कॉन्फ़िगरेशन करना, ये मतलब 4 कंपोनेंट हैं। इन चारों कंपोनेंट को 1 by 1 आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टेम्पलेट में क्या क्या आप कर सकते हैं, क्रिएट ए डिवाइस टेम्पलेट, क्रिएट ए डिवाइस
टेम्पलेट फ्रॉम CLI ये किया था हम लोग ने। टेम्पलेट एडिट कर सकते हैं, टेम्पलेट व्यू कर सकते हैं, टेम्पलेट डिलीट कर सकते हैं, टेम्पलेट अटैच कर सकते हैं, टेम्पलेट डी अटैच कर सकते हैं, टेम्पलेट को कॉपी कर सकते हैं, CLI भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। और जो उसमें इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट फीचर टेम्पलेट, सो बहुत सारे टेम्पलेट ऐसे हैं जो आप बनाएंगे, दैट विल बी कस्टम मेड। और बहुत सारे टेम्पलेट ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। आप चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट भी टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे टेम्पलेट्स जो है ना उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फीचर टेम्पलेट है। मैं दिखाता हूँ आपको अभी, विल सी। बाय डिफ़ॉल्ट फीचर टेम्पलेट कहने का मतलब क्या होता है? तो अगर आप जाएंगे टेम्पलेट में और यहाँ अगर आप जाएंगे फीचर में, तो आप देखिए यहाँ पे टेम्पलेट टाइप जो है वो ऑल, डिफ़ॉल्ट, नॉन डिफ़ॉल्ट। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँ तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, बहुत सारे फैक्ट्री मेड है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फॉर VPN 512, मैनेजमेंट इंटरफेस सिस्टम, सिक्योरिटी, लॉगिंग, AAA, VH, ब्ला ब्ला, ऑल दिस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। अगर आपको कोई टेम्पलेट ऐड करना है, ये फीचर टेम्पलेट, डिवाइस टेम्पलेट नहीं है। आप देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ये लिस्ट जो मैंने आपको दिखाया था ये सारे इनबिल्ट हैं। आप देख सकते हैं इन सारे टेम्पलेट्स को। आप चाहो तो चेंज करके और अपना नाम भी दे सकते हो इसमें, ठीक है। एनीवेज, हम लोग को जो आज टेम्पलेट बनाना है वो हम लोग का खुद का एक टेम्पलेट होगा और हम लोग यूज़ करेंगे से DC1 ब्रांच 1। तो इसके लिए मैं टेम्पलेट बनाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये है ही हम लोग के पास। तो ये एग्जैक्टली ये टेम्पलेट हम लोग आज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो होस्ट का नेम क्या दे देंगे? DC1 VH1। आप चाहो तो GPS हटा सकते हो, चाहो तो दे सकते हो। विल गिव सिस्टम IP, साइट ID, ऑर्ग नेम हम लोग देंगे, वी बॉन्ड देंगे, ट्रिपल। सो ऐसा करता हूँ मैं कि इसको बाहर निकाल के, ओके ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, इसको यूज़ कर लेंगे सारा जो कमांड है। क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फीचर टेम्पलेट। आपको डिवाइस मॉडल देना पड़ेगा। हम लोग का क्लाउड बेस्ड डिवाइस है, सो वी एज क्लाउड है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग से DC1 से टेस्टिंग टुडे, और टेस्टिंग रख देते हैं, DC1 टेस्टिंग, ऐसा कुछ नाम दे दिया। जो भी फीचर टेम्पलेट बनाएंगे ना उसमें मैं टेस्टिंग नाम दे दूंगा लास्ट में, तो पता चलेगा कि हम लोग ने बनाया। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो बोला है सिस्टम। सो पहले बोला है कि सिस्टम वाइड आप या तो डिफ़ॉल्ट बना लीजिए टेम्पलेट या फिर आप अपना बनाइए। तो हम लोगों को तो आज सारे टेम्पलेट अपने बनाने हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ DC1 सिस्टम टेस्टिंग। तो जब आप सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है वो पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगे। आपको 5 मैंडेटरी चीज़ देना है, जैसे साइट आईडी। तो अगर आपको पता है कि साइट आईडी क्या है, फॉर एग्जांपल साइट आईडी है 100, तो इस लोकेशन पे, यही चीज़ यहाँ पे सीखने का, इस लोकेशन पे ये है डिवाइस स्पेसिफिक ग्लोबल। सो अगर आपको पता है देन यू कैन पुट इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट। क्या होगा कि जब आप इस टेम्पलेट को पुश करेंगे उस टाइम में ये पूछेगा कि साइट आईडी क्या है। और सपोज अगर इफ़ यू नो दैट, तो ग्लोबल में भी जाके आप इसको दे सकते हैं, या फिर इसको आप ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। विल सी। तो मैंने क्या किया, ग्लोबल दे दिया, सिस्टम IP लीव इट, देखते हैं। ओवरले लीव इट क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। UTC टाइम जोन छोड़ देते हैं। होस्ट नेम लीव इट, होस्ट नेम। लोकेशन छोड़ देते हैं, लोकेशन भी देखते हैं क्या होता है। कंट्रोलर, कंट्रोलर ग्रुप, ब्ला ब्ला, उसके बाद GPS देंगे।
तो जीपीएस में डिवाइस स्पेसिफिक देना चाहता हूँ से 33, कुछ भी दे देते हैं। इससे यहाँ पे की वैल्यू हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे जाके। डिवाइस का लोकेशन, जीपीएस लोकेशन। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पे ऑप्शन है ना। यहाँ जब आप मॉनिटर में जाएंगे ना, ज्योग्राफी, इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको उसका लोकेशन दिखाएगा कहाँ पे ग्लोब में। मैं आपको दिखाऊंगा इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद। एडिट करना कितना मुश्किल है। Anyways, we'll go and we'll edit this, say 100। चलो ठीक है, ये दे दिया अपना। उसके बाद ट्रैकर बोल रहा है, ट्रैकर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं फीचर को। उसके बाद बहुत सारे चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट हैं, लाइक कंट्रोल, पोर्ट हॉप, डीएनएस, ट्रैकर। सो मैच करते हैं हम लोग यहाँ पे। सिस्टम वाइड में क्या है, होस्ट नेम हो गया, जीपीएस हो गया, सिस्टम आईपी हम लोग ने नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया, साइट आईडी दिया है। ऑर्ग नेम हम लोग को देखना है। सो लेट्स सी वेयर इज द ऑर्ग नेम। idle timeout or all those things are there, tracker, GPS. So where is the org name? इसको org name भी पूछना चाहिए। org name का ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, org name ये by default ले लेगा। We don't have option for org name. ओके, सो ये आपका बन गया सिस्टम वाइड। तो अब इसको सेव करेंगे, तो DC1 सिस्टम टेस्टिंग के नाम से सेव इट। तो अब देखिए, लॉगिंग हम लोग यूज़ कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। NTP यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, आर्काइव यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल AAA यूज़ कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, BFD भी डिफ़ॉल्ट, OMP आप चाहो तो अपना क्रिएट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हो, सिक्योरिटी भी डिफ़ॉल्ट। तो कहने का मतलब कि AAA ये डिफ़ॉल्ट। हाँ हाँ बोलिए। डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हाँ, मतलब डिफ़ॉल्ट को आप एडिट करके यूज़ कर सकते हैं या एज ए डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। ओके, सो ये हो गया, ये पोर्शन आपने कर लिया सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हम लोग मैच कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे है, जो CLI में आपको पता है सारा कंपोनेंट, वैसे ही आप अपना GUI बेस्ड बना रहे हैं। तो सिस्टम वाइड में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका VPN 0। ठीक, VPN 0 में जाते हैं। VPN 0 मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट VPN। देखिए VPN 0, हम लोग पहले अपना VPN 0 का टेम्पलेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाके लिखेंगे VPN 0 सॉरी VPN 0 टेस्टिंग। अब आप देखिए VPN 0 के अंदर कितने सारे चीज़ें, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, DNS, OMP, IPv4, IPv6 सर्विसेज, GRE। हम लोगों का जो VPN है वो है VPN 0। ग्रेट, बाकी तो डिफ़ॉल्ट ही है। DNS हमको देना पड़ेगा। DNS वैल्यू क्या है? DNS ये है प्राइमरी, तो एक ही DNS है प्राइमरी यहाँ पे। अगर आपके पास सेकेंडरी DNS भी है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो सेकेंडरी DNS है .1 फॉर एग्जांपल, ये हो गया, सॉरी 1.1। अब यहाँ पे देखिए न्यू DNS ऑप्शन मांग रहा है। न्यू DNS में जाके होस्ट नेम, और ये कौन सा DNS है? दिस इज दिस।
उसके बाद बोल रहा है इसका लिस्ट ऑफ आईपी देने का। लिस्ट ऑफ आईपी आपका 11 और ये दे दीजिए, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए कहीं बीच में, ये हो गया। क्लिक ऐड, अगर सब कुछ सही है तो ऐड ले लेगा, अदरवाइज एरर थ्रो कर देगा। OMP मैच करते हैं, OMP हम लोग डिफ़ॉल्ट OMP, इसमें कुछ OMP नहीं है। BGP ऑफ है, स्टैटिक। ये OMP जो है वो VPN 0 के ऊपर है। OMP सारा कुछ लीव इट एज डिफ़ॉल्ट। देन IPv4 राउट, ये इंपॉर्टेंट है। आप नीचे में देखेंगे VPN 0 के 2 स्टैटिक राउट हम लोग ने ऐड किया है, एक है 10.0 और एक है 11.0। तो आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। इन शॉर्ट ये है ना कि अगर आपको CLI कमांड पता है ना तो आप अपना टेम्पलेट बना सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। 0.0.0.0/0 नेक्स्ट हॉप ऐड करना है, ऐड नेक्स्ट हॉप क्लिक करेंगे, ऐड पे ऐड नेक्स्ट हॉप। 2 नेक्स्ट हॉप है एक्चुअली मेरे पास, एक 10-10-10 है और एक 11 है, दोनों क्लिक ऐड कर देंगे, ऐड। ये आपका IPv4 राउट आपने ऐड कर लिया। स्क्रॉल करेंगे नीचे, IPv6 है नहीं, उसको मूव कर जाएंगे, सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज इस इंटरफेस पे कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। देखिए VPN 0 के अंदर सर्विसेज, इंटरफेस के अंदर नहीं, इंटरफेस पे अभी हम लोग आएंगे फिर से। तो इस पे हम लोग ने सर्विसेज, आप देखिए VPN 0 के ऊपर कोई सर्विस नहीं है हम लोगों का, लीव इट, सारा कुछ इंटरफेस के ऊपर है, लीव इट। अगर आप क्लिक करें ऐड न्यू सर्विस, सर्विसेज स्क्रॉल करें नीचे, कौन कौन से सर्विस आप डाल सकते हैं। ये मतलब अगर आप ऐड कर रहे हैं सिक्योरिटी डिवाइसेस को तो आप सर्विसेज डाल सकते हैं। GRE हम लोग नहीं बना रहे हैं, दैट्स इट। ये VPN 0 का टेम्पलेट है, सेव करिए। तो हम लोग ने एक और टेम्पलेट बना लिया, दैट इज़ फॉर VPN 0। अभी इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में हम लोग को इंटरफेसेस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 इंटरफेस है हम लोगों के पास, लेट्स क्रिएट आवर इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है वही नाम दे दूंगा मैं, gig E01। VPN 0 gig E0/1 टेस्टिंग। एक बार चेक कर लेते हैं 01, और IP एड्रेस इसका कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ध्यान से, गिग इंटरफेस 01 है, टनल इंटरफेस है, इनकैप्सुलेशन IP/SEC, कलर MPLS रेस्ट्रिक्ट, नो अलाउ सर्विसेज, ब्ला ब्ला। ओके, ऑल आउट। अब आप नीचे आएंगे तो ये इंटरफेस जो है ये शट डाउन मोड में है, आपको इसको करना पड़ेगा नो शट, नो, ये हुआ नो शट। इंटरफेस नेम क्या है, गिग E0/1, ग्रेट। IPv4 एड्रेस, हाँ देंगे इसमें IPv4 एड्रेस, ये है इसका IP एड्रेस। IPv6 नहीं है हम लोगों के पास, DHCP नहीं है, ठीक है, बैंडविड्थ इट्स ओके। टनल इंटरफेस है ये, दिस इज दी टनल इंटरफेस। क्लिक कर देंगे ऑन में, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कलर, we'll see what color it has. कलर है MPLS restrict, encapsulation है IPsec। कलर है MPLS, ठीक है। restrict है, restrict को कर देंगे ऑन। उसके बाद कंट्रोल कनेक्शन, मैक्स कंट्रोल कनेक्शन, वी बॉन्ड, एडजस्टेंस सर्वर, एक्सक्लूड कंट्रोलर, ये सब कुछ छोड़ सकते हैं। फिर आएंगे हम लोग अलाउ सर्विसेज में। तो अलाउ सर्विस DHCP, DNS, ICMP। अलाउ सर्विस, अब देखिए बाय डिफॉल्ट DHCP, DNS और ICMP है, ठीक है, ठीक है।
फिर आपको एक चीज़ इसमें और करना है, दैट इज़ इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन जो है दैट इज़ एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और इनकैप्सुलेशन आप देखिए IPsec बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है तो छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ है। VRRP हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, ACL हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, ARP नहीं ऐड करना है, 8021X ऑथेंटिकेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं। एडवांस में आप MTU और ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1500 है। फ्लो कंट्रोल ऑटो निगोशिएशन है बाय डिफ़ॉल्ट। ऑलराइट, सो वी आर वेरी मच डन। इसको क्लिक सेव कर लेते हैं। आपका एक इंटरफेस जो है कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन हम लोगों को दो इंटरफेस है यहाँ पे। एक जो दूसरा इंटरफेस है वो है गिग E02 और उसमें IP है ये। वो इंटरफेस जो है वो NAT कर रहा है, तो हम लोग एक और इंटरफेस इसमें ऐड करेंगे, VPN इंटरफेस, और हम लोग खुद का अपना एक बनाएंगे टेम्पलेट। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे तो दिखेगा, क्रिएट टेम्पलेट। सो ये जो है दिस इज से VPN 0 और कौन सा इंटरफेस है ये, गिग E से 0/2 होगा। टेस्टिंग, सेम प्रोसेस, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। शट डाउन को पहले तो ऑन करना पड़ेगा, नो शट डाउन। इंटरफेस है गिग E 0/2, रिकन्फर्म करते हैं हम लोग। गिग E 0/2 है और ये IP एड्रेस, तो नीचे आएंगे, स्टैटिक IP है इस पे, IPv6 नहीं है, ब्लॉकर नहीं है। टनल इंटरफेस, ध्यान से देखिए, टनल इंटरफेस तो करना पड़ेगा, लेकिन ये जो इंटरफेस है ना इस पे NAT है। पहले तो NAT को ऑन करा लेंगे, ठीक है। NAT को आपने ऑन करा लिया, फिर टनल इंटरफेस। इनकैप्सुलेशन ये ऑप्शन नहीं है एक्चुअली कॉपी का। दोनों में फीचर्स एकदम अलग है, IP अलग है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन अलग है। कॉपी भी करेंगे तो एडिट करना पड़ेगा सारा कुछ। लेकिन कर सकते हैं क्या? अगर सिर्फ IP अलग है तो सिर्फ IP चेंज कर सकते हैं, एडिट करके, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखते हैं, सपोज लेट्स सी, पहले इसको कंप्लीट कर लेते फिर देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो उसके बाद है टनल इंटरफेस। टनल पे जाएंगे, टनल को ऑन करा देते हैं हम लोग, ऑन। फिर टनल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है, लेट्स सी। कलर, व्हाट कलर इट हैज़, इसका कलर है बिज इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट। सो बिज इंटरनेट, ऑन, और बाकी तो सारा डिफ़ॉल्ट ही है, सो लीव इट, लीव इट, एवरीथिंग इज डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये IPsec है, only on global VPN 0। सो ऑलमोस्ट वी आर डन। इसको सेव करते हैं। ओके, सो हम लोगों ने सिस्टम बना लिया, हम लोग ने VPN 0 बना लिया। अब एक और VPN है, दैट इज़ दी VPN 512। तो VPN 512 के लिए बना लेते हैं हम लोग टेम्पलेट, एंड देन वी आर वेरी मच डन। क्रिएट टेम्पलेट VPN 512 टेस्टिंग। पहले तो आपको VPN का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे IP राउट है, सिर्फ एक IP राउट ही है और तो कुछ है नहीं इसमें। और नीचे जाएंगे, VPN 512 दिया, IPv4 ऊपर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पे राउट को ऐड करना है,
वी हैव वन स्टैटिक राउट, एक डिफॉल्ट राउट है हम लोग का 0 0 0 0/0, ऐड नेक्स्ट हॉप आप ऐड कर लीजिए, इसको आप क्लिक सेव कर लीजिए, ऐड हुआ ना, इसको आप क्लिक सेव कर लीजिए, वन ऑफ द फील्ड इज रिक्वायर्ड, नेम नहीं दिया यहाँ पे, ओके ओके, इसको सेव कर लीजिए। और अब नेक्स्ट टाइम ना हम लोग को इंटरफेस ऐड करना है, इंटरफेस है ETH0 और ये आईपी है, उसको नो शट करना है, दैट्स इट। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, ETH0 कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग इसके इंटरफेस का, तो VPN इंटरफेस को ऐड करिए, क्रिएट टेम्पलेट आएगा, VPN 512 ETH0 टेस्टिंग, इसको कराएंगे हम लोग नो शटडाउन, पहले तो नो शटडाउन, इंटरफेस क्या है ETH0 और इसमें स्टैटिक IPv4 एड्रेस, सेव, दैट्स इट। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा एंड वी आर डन विद द टेम्पलेट। सो अब हम लोग ने सारे टेम्पलेट्स बना लिए, सर्विस VPN फिलहाल नहीं बनाया, एडिशनल टेम्पलेट अगर चेक करेंगे तो आप बैनर पॉलिसी और ये सब दे सकते हैं, SNMP चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज लीव इट। तो आपने जब बना लिया इस टेम्पलेट को, टेम्पलेट का नाम है DC1 सिस्टम, ये नहीं है, टेम्पलेट का नाम क्या है, DC1 टेस्टिंग, ठीक है। अब आप इसको क्रिएट पे क्लिक करिए, आप देखिए DC1 टेस्टिंग किस टाइप का टेम्पलेट है, ये है फीचर टेम्पलेट। इसके पहले जो कल हम लोग ने बनाया था वो कैसा था, CLI टेम्पलेट। किस डिवाइस के लिए बनाया, VH के लिए, VH क्लाउड के लिए। इसमें कितने फीचर टेम्पलेट यूज हुए थे, एक भी नहीं। इसमें कितने फीचर टेम्पलेट यूज हुए, 18, जिसमें कुछ हम लोगों ने बनाया, कुछ डिफॉल्ट है, विल सी। किससे अटैच है, एक भी डिवाइस से अटैच नहीं है, एडमिन ने बनाया है। ये एक डिवाइस से अटैच है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने कितने सारे टेम्पलेट बनाए हैं। आप अगर टेस्टिंग के नाम से सर्च करेंगे, हाँ हाँ बोले, हाँ हम लोग ने अटैच किया है कि नहीं, अटैच किया, अटैच का मतलब कि वो डिवाइस को अटैच किया है कि नहीं, वो डिवाइस पे वो चल रहा है कि नहीं। जैसे वी मैनेज पे एक टेम्पलेट बनाया, उसको इस पे अटैच किया कि नहीं, BH पे, ठीक है। तो हम लोग ने कितने टेम्पलेट बनाए, आप देखिए हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 बनाए, लेकिन टोटल कितना था, 13, मतलब उसमें 7 टेम्पलेट जो है वो डिफॉल्ट यूज हो रहा है ना। तो ये सारे टेम्पलेट्स हम लोग ने बनाए। अब ये टेम्पलेट आप बोल रहे थे इसको कॉपी कर सकते हैं कि नहीं, इस टेम्पलेट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, टेम्पलेट नेम फेल टू क्रिएट टेम्पलेट विच DC1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसको हम लोग डाल देते हैं इसे कॉपी, ये बन गया। अब आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, क्योंकि ये किसी भी डिवाइस से अटैच नहीं है, मतलब डिवाइस टेम्पलेट से अटैच नहीं, डिवाइस से नहीं, डिवाइस टेम्पलेट से नहीं अटैच। ऑलराइट, तो आप टेम्पलेट को कॉपी कर सकते हो, क्या क्या ऑपरेशन आप कर सकते हो, देख सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिवाइस मॉडल चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सो अटैच डिवाइस टेम्पलेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो हम लोग ने टेम्पलेट बनाया, विल गो बैक टू द टेम्पलेट, इसको अब अटैच करना है। इसको किससे अटैच करेंगे, तो अब यहाँ जाके मोर में जाके अटैच डिवाइस पे क्लिक करेंगे। वी वांट टू अटैच दिस विद DC1 VH1,
सो मेरा DC1 VH1 यही है, टेस्टिंग नाम रखा हम लोगों ने इसको, उसमें जाके अटैच करेंगे। इसमें बहुत सारे चीज़ जो है ये मांग रहा है, क्यों? क्योंकि वो सब जो डिवाइस स्पेसिफिक मोड में था, अगर आप उसको ग्लोबल मोड में डालते हैं तो वो नहीं मांगता। और आप देखें ध्यान से, यहाँ दिखा रहा है कि क्या है वैल्यू। तो ये 33, ये 100 और सिस्टम, ओके सॉरी ये होस्ट नेम है, से DC1 न्यू फीचर टेम्पलेट और सिस्टम आईपी रिक्वायर्ड 10.1. से 0.1 इसका सिस्टम आईपी। अपडेट कर दीजिए, नेक्स्ट करिए। आप चाहे तो डिफरेंस भी देख सकते हैं साइड बाय साइड। पुश कर दीजिए इसको, ये जॉब में चला गया, ये शेड्यूलर जॉब है ऊपर में जो कॉपी है। ये पुश कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रोग्रेस में है, विल सी। ये सारा लाइन बाय लाइन उसको कनेक्ट कर रहा है। तो वैलिडेशन जो है, टेम्पलेट सक्सेसफुली अटैच टू योर डिवाइस, सक्सेसफुली अटैच हो गया। तो अब अगर हम लोग जाएंगे DC1 VH1 में, DC1 VH1 में, और आप देखिए ये न्यू FT हम लोगों का जो नाम था। अब अगर करेंगे शो कंट्रोल कनेक्शन, इसको मिल रहा है सारा कंट्रोल। शो अगर हम लोग करेंगे रन इंटरफेस VPN 0, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, कमांड जो भी आप चलाएंगे जैसा आपने कॉन्फ़िगर किया, इट इज़ गेटिंग, बट दिस टाइम दिस इज़ फ्रॉम फीचर टेम्पलेट। तो ये आपका फीचर टेम्पलेट, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप लैब नंबर 4 कर सकते हैं। आपको पहली बार करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, बट कीप डूइंग इट। आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे मिनिमम, देख देख के करने में ऐसे। बट अगर आपको CLI कॉन्फ़िगरेशन पता है देन यू कैन डू इट इजली। ठीक है, ऑलराइट। तो आज इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डे 2। वन टेम्पलेट ओनली अप्लाई वन डिवाइस, और वन टेम्पलेट कैन अप्लाई टू मेनी डिवाइसेस। तो आप देखें यहाँ पे एक टेम्पलेट जो है DCBH1, ये टेम्पलेट है 3 डिवाइस से अटैच है। तो बहुत सारे डिवाइस से अटैच कर सकते हैं टेम्पलेट को। ये जो है VSmart टेम्पलेट 1, ये 2 डिवाइस से अटैच्ड। यू कैन अटैच विथ मेनी डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास क्लोज करते हैं और हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। हाँ हाँ बोलिए। सॉरी क्या बोल रहे हैं? उसमें आप कुछ भी ऐड मत करिए अभी, क्योंकि मेन चीज़ हम लोग ने पढ़ा नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आप डाल सकते हैं, ZTP, और आप डाल सकते हैं वी मैनेज डैशबोर्ड। आप उस पे काम कर सकते हैं। वी मैनेज डैशबोर्ड पे डिवाइस देख सकते हैं, अप डाउन है चेक कर सकते हैं। पिंग और ट्रेस रेट आप कर सकते हैं वी मैनेज से। ठीक है ना। और जो बेसिक कमांड्स, हाँ बेसिक कमांड्स हम डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अभी डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप CLI से, जो यूज़ होता है जनरली, या फिर GUI से। ठीक है, तो ये डाल सकते हैं। जो मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। लाइक राउटिंग कैसे करेंगे, QoS कैसे करेंगे, राउट पॉलिसी कैसे बनाएंगे, OMP क्या होगा, Tloc कैसे होगा। विल सी ऑल दिस थिंग्स।
ठीक है, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और नेक्स्ट हम लोग का क्लास जो है वो होगा नेक्स्ट जो आएगा आपका सप्ताह, दैट इज जनवरी को आएगा। जनवरी को 5th ऑफ जनवरी को करेंगे, सॉरी नॉट 5th, नॉट 5th, सॉरी 12th ऑफ जनवरी को करेंगे क्लास। हेलो, हाँ 12th जनवरी सीधा, हाँ उसके पहले अच्छा ये 2 वीक में आप अवेलेबल तो रहोगे ना, अगर कुछ लैब में मुझे हाँ हाँ एकदम एकदम कॉल करे बिंदास, एकदम कोई टेंशन नहीं। ओके तो हैप्पी वीकेंड। चलिए हैप्पी वीकेंड, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। हम लोग बात करेंगे, ऐसा थोड़ी, मैं ऐसे थोड़ी ऑफलाइन हो रहा हूँ, बस कॉल करिए व्हाट्सएप पे। नहीं मैं 9 तारीख से अवेलेबल हूँ, लेकिन फिर हम लोग का क्लास 12 से है ना, वो दिक्कत है। चाहो तो 10-11 को कर सकते हो क्लास। बस फ्री हो जाओ तो पिंग कर लेना, तो अगर करेंगे कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, हाँ मैं आपको पिंग करूँगा 9 के बाद, आफ्टर 9 आई पिंग। ठीक है, ठीक ठीक, चलिए ओके, चलिए बाय, थैंक यू, बाय बाय। आज जो करेंगे दैट इज राउटिंग। आज हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे। तो राउटिंग वैसा ही है जैसा राउटिंग होता है। राउटिंग के लिए राउटिंग टेबल बनेगा और जो रिब और फिब का कॉन्सेप्ट होता है, बट इसमें एक नया टर्मिनोलॉजी ऐड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं OMP, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, OMP। प्लस आपको एक और टर्म इसमें आएगा TLOC, ट्रांसपोर्ट लोकेटर। और जो IGPs हैं, जो IGPs सपोर्टेड हैं इसके अंदर, वो है OSPF प्लस BGP ऑल्सो सपोर्टेड है और स्टैटिक राउट भी सपोर्टेड है। जब हम लोग बात करते हैं VEdge का, तो 1 by 1 हम लोग देखते हैं इसको। आईजीपी में ये ईआईजीआरपी भी सपोर्ट करता है क्या? आरआईपी ईआईजीआरपी रिप और EIGRP नहीं, रिप और EIGRP नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अपने ये VEdge पे सपोर्टेड नहीं है, हाँ VEdge में सपोर्टेड नहीं है। OSPF और BGP और स्टैटिक राउट सपोर्टेड है। बस तीन ही ईआईजीआरपी, और कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या आरआईपी और इसके लिए सपोर्ट नहीं करते? ये विप्टेला प्रोडक्ट था, सिस्को प्रोडक्ट नहीं था ना, तो और EIGRP सिस्को प्रोप्राइटरी था। रिप तो कोई वैसे भी यूज़ नहीं करता, तो रिप चलाने का कोई मतलब नहीं था, है ना। ओके तो जब आप OMP यूज़ करते हैं, हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी सीखा था कि अगर आप सपोज OMP ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जनरली आपका जो टोपोलॉजी है वह कैसा है, आपका कहीं पे भी तो कंट्रोल प्लेन है, और देन आपका डेटा प्लेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स में डिवाइडेड है। सपोज आपका एक डेटा सेंटर है और आपका ब्रांच 1 और ब्रांच 2 है। नाउ होता क्या है कि जो भी राउट्स है, जैसे ये ब्रांच 1 है ना, सपोज OSPF कहीं से सीख रहा है, देन इस ब्रांच के पास आया, फिर ये डेटा सेंटर इस राउट्स को, सपोज ये राउट है XX, डेटा सेंटर के पास कैसे पहुंचेगा। तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है। ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है सबके ऊपर, जितने भी टनल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टनल है वो TLS या फिर DTLS होगा। और ये जो V स्मार्ट है कंट्रोल प्लेन के अंदर, उसको आप समझ लो कि वो राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट है, जैसा BGP में होता है। तो जो भी राउट्स होता है ब्रांच का, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, V स्मार्ट के पास, विथ हेल्प ऑफ ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और फिर वो V स्मार्ट है एज ए राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, वो दूसरे दूसरे प्लेसेस एडवर्टाइज करेगा। तो कहने का मतलब कि जितने भी ब्रांच या डेटा सेंटर्स हैं, उन सब को लगेगा कि वो एक हॉप अवे है, नेक्स्ट हॉप। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है ना ACI में भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे बोला जाता है ना कि लीफ स्पाइन लीफ स्पाइन लीफ, ये हमेशा जो स्पाइन है ना वो लीफ से एक हॉप अवे है। मतलब सपोज लीफ 1 और लीफ 2 है, तो नेक्स्ट हॉप पे लीफ है, ऐसा है।
इसको क्लॉस फैब्रिक बोलते हैं, CLOS क्लॉस फैब्रिक। लाइक यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि सारा कुछ एडवर्टाइज हो रहा है वी स्मार्ट, जो कि आपका ब्रेन है, जो आपका इंटेलिजेंसी है, और वो फिर क्या कर रहा है, वो राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट है, वो सब जगह एडवर्टाइज कर रहा है, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मीन्स DC1 से भी यहाँ राउट जाएगा और फिर वो ब्रांच के पास जाएगा। तो अगर ये हाँ हाँ एसीआई में तो क्या मींस लिफ्ट टू लिफ्ट कनेक्टेड नहीं रहते, ठीक है, वो स्पाइन थ्रू ही होता है, लेकिन अपने वहाँ तो ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टेड रहता है ना टनल थ्रू, तो फिर नहीं, वहाँ पे भी लिफ्ट टू लिफ्ट कनेक्शन होता है ACI में भी। ACI में भी लिफ्ट टू लिफ्ट कनेक्शन कहने का मतलब कि यहाँ पे भी टनल्स होते हैं, वीटेप वी, वीटेप रहता है, वी, आईओसीवी थ्रू वो करते हैं। तो फिजिकली, हाँ फिजिकली तो आपको लग रहा है ना कि ये मतलब ऐसे कनेक्टेड है, लेकिन लॉजिकली ना ये टनल है। ऐसे टनल है, हाँ वैसे ठीक है। ही, हाँ वैसे ही हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, वो कंट्रोल प्लेन यहाँ है और सपोज डेटा प्लेन यहाँ है और डेटा प्लेन यहाँ है, तो डेटा प्लेन IP से एक टनल बनाता है, लेकिन ये वाया एक तरह से कंट्रोल प्लेन है। मतलब कंट्रोल प्लेन जो है वही तो भेजता है ना की। याद करिए, मैंने बताया था आपको, OMP जो है, सपोज डेटा प्लेन 1 और डेटा प्लेन 2 को IP से एक टनल बनाना है, तो इसको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसको चाहिए लोकल Tloc, रिमोट Tloc, की। ये की कौन देता है, ये की देता है आपका कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन जो है वो एक का की देता है दूसरे को, दूसरे का की देता है पहले को, क्योंकि जब भी आप बनाएंगे IP से एक टनल, ये एक दूसरे को की एक्सचेंज करेगा तभी तो टनल बनेगा ना। लेकिन ये की एक्सचेंज कौन करता है, वाया कंट्रोल प्लेन। क्यों? क्योंकि डेटा प्लेन अपना की जो है वो कंट्रोल प्लेन को एडवर्टाइज करता है, फिर कंट्रोल प्लेन दूसरे डेटा प्लेन को। तो एक बार जब ये की एक्सचेंज करते हैं दोनों को, इवन डेटा प्लेन अपना Tloc इन्फॉर्मेशन देता है कंट्रोल प्लेन को, Tloc फिर कंट्रोल प्लेन Tloc इन्फॉर्मेशन देता है इसको। समझ रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वहाँ पे भी ना जो मेडिएटर है वो कंट्रोल प्लेन ही है। जब ये बनाएगा पॉइंट टू पॉइंट या साइड टू साइड टनल, उस टाइम में इसके पास तो लोकल Tloc है, लेकिन इसको क्या चाहिए, रिमोट Tloc। इसको क्या चाहिए, इसको रिमोट की चाहिए। ये इसको एडवर्टाइज करता है और ये फिर यहाँ भेजता है। लाइकवाइज ये तो ये इसको एडवर्टाइज करेगा। हाँ हाँ ये तो टनल बनने का हुआ, मींस सपोज आईपी से एक बार टनल बन गया, हाँ फिर भी जो मींस डेटा फिर होगा या हाँ। राउट तो बीजीपी जो होगा जब एक बार बन वो गया जाएगा ना, कहाँ? हाँ एक बार बन गया, उसके बाद क्या होता है कि जो भी राउट से, जैसे जो कंट्रोल प्लेन है वो OMP अपडेट भेजता है। OMP अपडेट हमेशा भेजता रहता है, एक्चुअली हर 1 सेकेंड के बाद OMP अपडेट भेजता है। तो सपोज कि इनके बीच में टनल बन गया, ठीक है, और ये राउट कैसे इन्होंने इंस्टॉल किया अपने डेटाबेस में और अपने रिब में, ये जो है ये इनको अपडेट मिला कंट्रोल प्लेन से। कंट्रोल प्लेन ने बोला कि तुमको ये राउट इंस्टॉल करना है अपने डेटाबेस में, ये राउट इंस्टॉल करना है अपने डेटाबेस में। तो इन्होंने वो राउट अपने डेटाबेस में इंस्टॉल किया। सपोज अगर कोई चेंज मिलता है किसको, कंट्रोल प्लेन को, तो फिर OMP अपडेट देगा इसको, तो ये फिर अपना राउटिंग टेबल चेंज करेगा, ये फिर अपना राउटिंग टेबल चेंज करेगा। सपोज OMP अपडेट जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द OMP अपडेट, दैट मीन्स ये दोनों जैसे डेटा फॉरवर्डिंग कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। तो कहने का मतलब कि डेटा फॉरवर्डिंग एज इट इज होता रहेगा अनटिल अनलेस कि आपको कंट्रोल प्लेन से कोई अपडेट न मिले, कोई नया अपडेट न मिले, है ना। तो इसमें भी जैसे लिस्ट में दो टेबल रहते हैं, अपना ग्लोबल और प्रॉक्सी लोकल टेबल, तो वीएच में भी ऐसा टेबल, दो टेबल रहते हैं क्या, वैसे कुछ राउटिंग टेबल? VH में फॉरवर्डिंग टेबल रहेगा, ठीक है, और हम लोग देखेंगे, ये आपको एक्चुअली पढ़ना है, विल सी कि कैसे टेबल बनाएगा। हमारे पास 1-2 स्लाइड है उस तरह का कि कैसे VH अपना राउटिंग टेबल बनाता, तो उस टाइम में देख लिया जाएगा। लेकिन उसको अपडेट मिलता है वहाँ से, और VH में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको 2 टेबल या 3 टेबल हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई VRFs नहीं है VH में। उसके पास एक ही राउटिंग टेबल है, लेकिन वो अपडेट उसको मिलता है कंट्रोल प्लेन से।
ऑलराइट, सो अगर आप OMP यूज़ करते हैं तो OMP यूज़ होता है ऑर्केस्ट्रेशन में। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्विस लेवल राउटिंग, डेटा प्लेन सिक्योरिटी पैरामीटर्स और कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ राउटिंग पॉलिसी। हम लोग देखेंगे ये सारे चीज़ कि कैसे होता है। मतलब की एक्सचेंज करेगा, राउटिंग एक्सचेंज करेगा, सिक्योरिटी लेवल राउटिंग एक्सचेंज करेगा और कम्युनिकेशन करेगा। एक्चुअली जो OMP होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सपोज मेरा डेटा सेंटर है DC1 से ब्रांच 1 है और ब्रांच 2 है, और हमको पता है कि OMP सबके ऊपर ओवरले है OMP। ओके, तो अब अगर ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे, तो इसका अपना एक राउट होगा। सपोज इसका राउट है X, इसका राउट Y। ये जो राउट मैं बता रहा हूँ ना, ये VPN, सपोज ये VPN 10 है, सपोज ये भी VPN 10 है, और यहाँ पे भी सपोज VPN 10 है, सपोज A इसका राउट है VPN 10। तो ये जो आप देख रहे हैं ना VPN 10 राउट, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस लेवल राउट। सर्विस लेवल राउट आप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि सर्विस VPN, क्योंकि जो VPN 10, 20, 30 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस VPN। और VPN 0 जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट VPN। VPN 512 को बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट VPN, है ना? तो ये जो राउट्स हैं ये सब क्या होंगे? हाँ, हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट VPN। तो ये सारे जो राउट्स है इसको आप क्या बोलेंगे? ये सब सर्विस VPN राउट है। ओके ओके, देन दूसरा जो राउट है, क्योंकि जो भी वी एज होता है ना, वो वी एज के ईग्रेस पे, एक तरह से आप सोच सकते हैं इस तरह से कि बाहरी इंटरफेस पे Tloc होता है। मतलब कोई भी वी एज होगा तो उसमें एक Tloc भी रहेगा। Tloc का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये बेसिकली 3 टपल है। वो क्या क्या है? सिस्टम IP, कलर, इनकैप्सुलेशन। सिस्टम IP, कलर, इनकैप्सुलेशन। तो कहने का मतलब कि OMP में एक हो जाएगा आपका सर्विस राउट जो VPN 10, 20, 30 है। OMP में एक हो जाएगा आपका Tloc राउट। और फाइनली OMP में सपोज ये डेटा सेंटर है, यहाँ पे फायरवॉल लगा है, सपोज यहाँ पे IPS IDS लगा है, तो इसको भी हम लोग एक्चुअली सर्विस ही बोलते हैं, सर्विस राउट्स। बट एक्चुअली ये सिक्योरिटी राउट्स है या सर्विस राउट्स है। इसको हम लोग सर्विस VPN राउट, या कभी कभी हम लोग इसको OMP राउट भी बोलते हैं, OMP राउट्स। तो ये 3 राउट होते हैं। कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, विल सी। ओके, तो OMP जो है अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करेगा लूप अवॉइडेंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और ऑल दोज थिंग्स। उसको कैसे समझें? तो OMP में 3 तरह के राउट हैं, OMP राउट, सर्विस राउट, Tloc राउट। ये लोग कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको दिखाता हूँ एक बड़े से डायग्राम में। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राउट हैं। तो ये जो इधर जो राउट है, जो लैन सेगमेंट में आप देख रहे हैं, ये सर्विस VPN राउट है। इसको Viptela राउट बोलते हैं या सर्विस VPN राउट्स। ये VH के नीचे यहाँ देखिए ईग्रेस पे, यहाँ पे Tloc है, ऐसे यहाँ पे भी Tloc है, Tloc है, Tloc है, Tloc है, Tloc है। नीचे में जो है V राउट है, Viptela राउट है। और फायरवॉल राउट, अगर यहाँ पे फायरवॉल है तो फायरवॉल राउट्स है, यहाँ फायरवॉल है तो यहाँ फायरवॉल राउट्स, सॉरी ये भी है राउट, ये फायरवॉल राउट है यहाँ पे। तो इस तरह से 3 राउट होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ कवर कर लेता है ये तीनों। पूरे के पूरे नेटवर्क में जितने भी राउट्स हैं आप उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या क्या आप एडवर्टाइज कर सकते हैं OMP में? कनेक्टेड स्टैटिक BGP OSPF। अब यहाँ से ना आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी ज़्यादा आप डिटेल से समझ सकते हैं OMP को। तो OMP के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से एट्रीब्यूट, जैसे आपने सुना होगा ना BGP में 13 एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे OMP में
आई थिंक 7 या 8 एट्रीब्यूट है, विल फाइंड आउट, आई थिंक 7 या 9, विल सी। सो ओएमपी में एट्रीब्यूट है, कौन कौन से एट्रीब्यूट है ओएमपी में? टीलॉक। अब टीलॉक को हम लोग कैसे याद रखें? टीलॉक जो है वो 3 टपल होता है, जिसमें सिस्टम आईपी, कलर और इनकैप्सुलेशन होता है। बट टीलॉक जो होता है वो बीजीपी नेक्स्ट हॉप एट्रीब्यूट के जैसा है, ठीक है। तो बीजीपी का जो नेक्स्ट हॉप एट्रीब्यूट है, उसी तरह से टीलॉक जो है वो ओएमपी का नेक्स्ट हॉप एट्रीब्यूट है, ठीक है। ओरिजिन मतलब कौन? ओरिजिन कौन है उस राउट का? जैसे बीजीपी में भी आप देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिनेटर मतलब कौन ओरिजिनेट कर रहा है राउट, बीजीपी में भी आप देखते हैं ओरिजिनेटर। कुछ पूछ रहे हैं क्या? ओके, आई और ई वो आप लग रहा है पूछ रहे हैं बीजीपी में जो होता है, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे वैसा नहीं है बट, हाँ यहाँ पे वैसा नहीं है बट, हाँ आप देख सकते हैं उसी तरह का ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब बीजीपी ओएसपीएफ कनेक्टेड, या फिर ओरिजिनेटर हु इज ओरिजिनेटिंग द राउट्स, है ना। मतलब थोड़ा बहुत मिलता है, सब कुछ तो नहीं मिलेगा बीजीपी से। इसके बाद के जो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो बहुत सिमिलर है बीजीपी से। जैसे प्रेफरेंस, हाइयर इज बेटर है हम लोग के केस में। अब किस राउट को आप प्रेफर करना चाहते हैं तो उस राउट का आप डेटा प्रीफिक्स ले सकते हैं और उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ओएमपी के अंदर सर्विस नेटवर्क, सर्विस एसोसिएटेड विथ ओएमपी राउट्स, साइट आईडी हम लोग को पता है क्या होता है। टैग जो है सेम लाइक सिस्को वर्ल्ड, जैसे टैग यूज होता है आपको मार्किंग के लिए, लूप प्रिवेंशन के लिए, सेम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। वीपीएन, जो वीपीएन इसका आइडेंटिफायर है। तो आप 3 4 5 6 7, ये 7 एट्रीब्यूट्स हैं ओएमपी के, ठीक है। तो जो मेन एट्रीब्यूट है, एटलीस्ट आप उसको ध्यान दे सकते हैं। जो मेन एट्रीब्यूट है वो है आपका टीलॉक और प्रेफरेंस। ये दोनों आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। नहीं कोई ज़रूरत है यार, कोई थोड़ी एग्ज़ाम में पूछ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने का। बस 7 एट्रीब्यूट है, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पॉलिसी देखेंगे, जब हम लोग पॉलिसी बनाएंगे उस टाइम में देखेंगे कि कैसे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसको अटैच कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव। लाइकवाइज ओएमपी में भी एट्रीब्यूट होते हैं। ओएमपी अब सॉरी टीलॉक में भी एट्रीब्यूट होते हैं। टीलॉक में अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि सिस्टम आईपी, कलर, कलर मतलब एमपीएलएस, और इंटरनेट लाइक ब्रॉडबैंड, गोल्ड, लाइक दैट। इनकैप्सुलेशन जैसे आपका आईपीसेक या जीआरई। तो 3 टपल होते हैं, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है, इसके अलावा भी इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? तो टी लॉक प्राइवेट एड्रेस, टी लॉक पब्लिक एड्रेस, कैरियर, कलर, कलर के बारे में हम लोग ने सुना है। यहाँ पे भी आपको मिलेगा प्रेफरेंस, इनकैप्सुलेशन, साइट आईडी, टैग, वेट। सो वेट और प्रेफरेंस तो आप इमेजिन कर सकते हैं बीजीपी के जैसा, वेट और प्रेफरेंस। 3 हम लोग को पहले से पता था, इनकैप्सुलेशन, कलर और सिस्टम आईपी। नया क्या है? टैग, साइट आइडेंटिफायर, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स, इसको आप देख लेना, इट्स सेम थिंग जो हम लोग ने पढ़ा है टी लॉक के बारे में। हाँ ये इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि कैसे ओएमपी जो है वो लूप एवॉइड करता है। ओएमपी का लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहले ये चेक करेगा, चेक वेदर द ओएमपी राउट इज वैलिड और नॉट, ये वैलिड राउट है कि नहीं, ठीक है। इफ द ओएमपी राउट इज वैलिड and if it has been learned from the same Viptela device, select the OMP route with lower administrative distance, ठीक है। सो AD वैल्यू आपको पता है कि ये कनेक्टेड से सीख रहा है या स्टैटिक से या OSPF से या BGP से, तो देखेगा कि लोअर AD है उसको प्रेफर करेगा। सेम जैसा राउटिंग टेबल बनता है, सेम चीज़ है। थर्ड, AD डिस्टेंस, अगर दोनों कुछ OSPF से लर्न कर रहा है सपोज, जिसका AD वैल्यू 120 है, तो सेलेक्ट द OMP राउट विद द हायर OMP राउट प्रेफरेंस वैल्यू।
हायर इज बेटर हम लोग के केस में। तो अगर आपने टैग कर रखा है, मतलब जब आपने पॉलिसी बनाया उस समय प्रेफरेंस दे दिया, एक का 20 दे दिया, एक का दे दिया 200, तो 200 वाले को वो ऑब्वियसली प्रेफर करेगा। सपोज अगर आपका प्रेफरेंस वैल्यू भी सेम है तो वो नेक्स्ट क्राइटेरिया पे जाएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? On VH router only, if the route preference value are equal, select the OMP route with highest Tloc और higher Tloc preference। तो वो अब देखेगा Tloc का प्रेफरेंस क्या है। सपोज अगर आपका राउट वैलिड है, सपोज आप एक ही प्रोटोकॉल OSPF से सीख रहे हैं, मतलब अगर AD सेम है, सपोज आपका राउट प्रेफरेंस सेम है, सपोज आपका Tloc प्रेफरेंस सेम है, तो वो नेक्स्ट क्राइटेरिया मतलब 5 में जाएगा। इफ द Tloc preference value are equal, compare the origin type and select one of the following in the order। सो origin type कौन origin है? origin static है, connected है, EBGP, OBGP, सेम है जैसा सिस्को वर्ल्ड में है ना, सेम है सारा कुछ, उस ऑर्डर में सेलेक्ट करेगा। अगर सपोज origin टाइप भी सेम है तो फाइनली सेलेक्ट द OMP राउट विद द हायर राउटर आईडी। ठीक है, तो हायर राउटर आईडी को चेक करेगा। फाइनली इफ द राउटर आईडी आर इक्वल, ए VH राउटर सेलेक्ट द OMP। अगर राउटर आईडी भी इक्वल है ना तो दोनों को इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, वो दोनों को इंस्टॉल कर लेगा अपने राउटिंग टेबल, दोनों राउट्स को। ओके, यहाँ देखिए इस सेक्शन में ए VH राउटर इंस्टॉल एंड OMP राउट इन इट्स फॉरवर्डिंग टेबल। सो एक चीज़ तो हम लोग को पता है कि रिब होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, और जो डायनेमिक टेबल एंट्री है वो है फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। कब ये इंस्टॉल करता है VH? इफ द Tloc टू विच इट पॉइंट्स इज एक्टिव। अगर उस VH राउटर का Tloc एक्टिव है। Tloc क्या है? BGP next hop attribute। For a Tloc to be active, an active BFD session, Tloc एक्टिव कब होगा? जब इस पे एसोसिएटेड BFD है वो एक्टिव होगा। BFD sessions are established by each VH router which creates a separate BFD session with each of the remote Tloc. If a BFD session inactive, the vSmart controller removes from the forwarding table all the OMP routes that points to the Tloc। तो कहने का मतलब कि जो vSmart से जो राउटिंग अपडेट आपको मिला, VH तभी अपने फिब टेबल में डालता है जब उसके पास एक्टिव Tloc हो। एक्टिव Tloc तभी होगा जब एक्टिव BFD सेशन हो इसका दूसरे साइड के डिवाइस के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड था। लेट्स मूव। ग्रेसफुल रीस्टार्ट फॉर OMP, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय डिफ़ॉल्ट के 12 घंटे का होता है ग्रेसफुल रीस्टार्ट। तो ग्रेसफुल रीस्टार्ट क्यों है, वाई? Graceful restart for OMP allows the data plane in the Viptela network to continue functioning if the control plane stops forwarding or unavailable। आपका कंट्रोल प्लेन है और डेटा प्लेन है। सपोज एनी हाउ कंट्रोल प्लेन डाउन हो गया, स्टिल जो डेटा प्लेन है आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में रहता है 12 घंटे के लिए। क्यों? With graceful restart, if vSmart controller in the network goes down or if multiple vSmart controller goes down simultaneously, the VH router can forward the data traffic। They do this using the last known information that they receive from the vSmart। So जो last update इसको मिला था उसी update पे ये 12 घंटे तक forward करेगा data plane को। When a vSmart controller again available, its DTLS connection to the VH router re-established and the VH router then receives update current network information from the controller। इसी में आपको आगे मिलेगा कि वो जो है वो that is हम आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। बस सपोज मेरा एक भी एज है तो उसके साथ मैंने कुछ सपोज 3 घंटा रखा या 1 घंटा रखा तो
अलग अलग रख सकते हैं, आप अलग अलग रख सकते हैं। ये कौन? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो मूव करते हैं, लेट्स मूव ऑन। सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल यूनिकास्ट राउटिंग, हाँ ये सपोर्ट करता है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है बीजीपी को, तो इसीलिए बीजीपी के अंदर जो एड्रेस फैमिलीज है उसको वी एज राउटर सपोर्ट करता है। ठीक है, आप इसको देखना, मैं नोट्स आज शेयर कर दूंगा, इसको आप देखना। ठीक है, इन दो स्लाइड को आप देख लेना। चलिए, कॉन्फ़िगरिंग द ओएमपी, तो कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग ओएमपी? बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें जो है ना वी एज पे रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें एक है ओएमपी। ओएमपी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है, उसमें सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है, लेकिन आप सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ओएमपी इज इनेबल ऑन ऑल द वीज। ओएमपी का मतलब आपका कंट्रोल प्लेन, एक तरह से अगर ओएमपी डाउन कर देंगे कंट्रोल प्लेन भी डाउन हो जाएगा। OMP is enabled on all VH router and VH smart controllers. OMP must be operation for the Viptela overlay network to function. If you disable it, your overlay will be down. कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे कॉन्फ़िगर ग्रेसफुल रीस्टार्ट? बाय डिफ़ॉल्ट जो 12 घंटे का है, मतलब इतने सेकंड का है, आप OMP में जाएंगे उस डिवाइस के और टाइमर्स ग्रेसफुल रीस्टार्ट दे सकते हैं, नंबर ऑफ सेकंड्स। ये 1 से लेके 7 दिन तक आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे लैब में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको राउट्स को एडवर्टाइज कराने हैं, हालांकि आने वाले टाइम में जब हम लोग एडवांस सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल से मिलेगा। ओएमपी में जाके जैसे आप लिखेंगे राउटर ओएमपी, ओएमपी में जाके आपको राउटर, आप सिंपली ओएमपी लिखेंगे तो आप ओएमपी में चले जाएंगे। और सिस्को में हम लोग क्या लिखते हैं, राउटर से ओएसपीएफ, तो हम लोग OSPF मोड में चले जाते हैं, फिर यहाँ पे जाके हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट या कुछ कर सकते हैं। लाइक वाइज फर्स्ट आप OMP में चले जाइए, OMP टाइप करके फिर एडवर्टाइज आप कर सकते हैं BGP कनेक्टेड OSPF स्टैटिक। लाइक वाइज आप VPN में जाके OMP में जा सकते हैं, उसके बाद आप एडवर्टाइज कर सकते हैं एग्रीगेट BGP नेटवर्क OSPF। तो दो जगह है जहाँ पे आप OMP को एडवर्टाइज कर सकते हैं, एक तो ग्लोबली OMP में जाके देखा जाएगा, और दूसरा है कि अगर आप VPN में हैं फिर वहाँ से आप OMP में जा सकते हैं और फिर वहाँ से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। विल सी इन द लैब, लैब में देखा जाएगा इसको। हाँ, आप BGP कनेक्टेड OSPF इन सबको एडवर्टाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OMP और BGP का भी कनेक्शन आप चाहें तो कर सकते हैं। तो VPN से 10 राउटर BGP प्रोपोगेट एस पाथ, अगर आपको BGP का ऑटोनोमस सिस्टम प्रोपोगेट करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, देन यू कैन यूज दिस कमांड। हाँ, आप डायरेक्टली जा सकते आप डायरेक्टली जा सकते हैं OMP में, या फिर आप VPN लेवल पे OMP में जा सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आप डायरेक्टली OMP पे गए, दैट मीन्स कि जितना VPN है सबको आप ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब सारे VPN के लिए आप OMP में जा रहे हैं, और आप चाहें तो इंडिविजुअली VPN OMP जा सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। करेक्ट करेक्ट, बराबर करेक्ट। प्लीज ड्रॉ एन OMP विथ ऑल फीचर।
ओके, तो इसमें जो यूज़ केस है ना, ये यूज़ केस कैसा है आपको मैं बताता हूँ डायग्राम में, तो आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअली बहुत सिंप्लीफाइड किया हुआ है राउटिंग यहाँ पे। ये जो हम लोग का डायग्राम है, आप समझिए ध्यान से कि राउट्स आपके कैसे हैं। तो सपोज यहाँ पे आपके वी एज है, VH1 और VH2। जस्ट मैं चेंज करता थोड़ा सा कलर। सो VH1 और VH2, तो क्या होगा ना, सपोज यहाँ से आप OSPF अगर सीख रहे हैं तो OSPF ये सीखेगा। अब आप क्या करेंगे कि OMP में जाके लिख देंगे एडवर्टाइज OSPF। तो ये जो राउट आप OSPF सीख रहे हैं ये अब OMP में गया। जैसे ही OMP में जाएगा, OMP का मतलब आप कहाँ भेज रहे हैं, VSmart में। VSmart में गया मतलब VSmart फिर इसको भेज देगा ये OSPF राउट यहाँ और यहाँ। तो आपका जो एंड साइड में OSPF था वो ब्रांच से एडवर्टाइज होके कहाँ पहुंच गया, डेटा सेंटर में। अब डेटा सेंटर में इस साइड में वो जा सकता है। अगर यहाँ पे आपने BGP कनेक्ट कर रखा है तो आप OMP के अंदर फिर एडवर्टाइज करा दीजिए BGP। ये BGP जो राउट है वो फिर यहाँ से पहुँच जाएगा यहाँ पे। बहुत सिंपल बनाया हुआ है सारा कुछ राउटिंग इसमें। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितना सिस्को में है ना, वैसा कुछ नहीं है। तो ये यूज़ केस है एडवर्टाइज कराने का। अब सपोज एक तो ये हो गया। दूसरा कि अगर आपने OMP से कुछ राउट सीखा और OSPF में भेजना है तो आप OSPF में जाइए और एडवर्टाइज करा दीजिए OMP को। तो OMP का जो राउट्स था वो इधर जाने लगेगा। तो टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन है आपका, OSPF से OMP और OMP से OSPF, दैट्स इट। या BGP, ये कर सकते हैं, है ना। ऑलराइट, मूव करते हैं। ओके, कॉन्फ़िगर द नंबर ऑफ एडवर्टाइज राउट्स। सो आप कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं राउट को। VH राउटर्स एडवर्टाइज द राउट्स दैट दे लर्न फ्रॉम देयर लोकल साइट। सो मैंने आपको बोला कि आपका ये VH है और आपका लोकल नेटवर्क, सपोज यहाँ OSPF चल रहा है, OSPF से आपने सीखा। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ अदरवाइज इट्स ओके। सो VH राउट्स advertise the routes that they learn from their local site to the VSmart controller। तो आपने क्या किया, आपने जो सीखा आपने OMP के थ्रू किसको भेज दिया, VSmart को। ठीक है। Now VSmart controller redistribute this route to the other VH router in the overlay network. The route advertised are actually a tuple consisting of a route and the Tloc association with the route. A VH router can have up to 6 WAN। ये तो अलग चीज़ हो गया, बट यहाँ पे जो चीज़ है ना बड़ा सिंपल है कि आपने अपने कहीं से भी तो सीखा। सपोज ये थर्ड पार्टी राउटर जहाँ OSPF चल रहा है जो कि जूनिपर है, यहाँ से आपने सीख लिया VH पे। VH ने जैसे सीखा, क्योंकि ये राउट एडवर्टाइज है कहाँ, OMP में। OMP के अंदर हम लोग ने जाकर कमांड चला OMP एडवर्टाइज OSPF। ये एडवर्टाइज किसको कर देगा, VSmart को। VSmart क्या है, आपका राउट रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्ट कर देगा दूसरे VHs को। सिंपल है। यहाँ से सीखा, इधर गया, इधर चला गया। अगर वही वापस अगर चाहिए तो सेम वे में वापस भी आपको मिल जाएगा। अभी एक जो VH है वो 6 डिफरेंट WAN इंटरफेसेस को सपोर्ट करता है। WAN इंटरफेस मतलब ऑब्वियसली कहाँ होगा, VPN 0 में, क्योंकि VPN 0 को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट VPN। सो जितने भी WAN इंटरफेसेस हैं वो सारे VPN 0 में हैं। It's okay. A VSmart controller redistribute the route it learned from the VH routers, advertise each route Tloc tuple. If for example a local site has 2 VH routes, a VSmart controller can potentially learn 8 routes. So ये है कि आपने सीखा और आपने सीख के भेज दिया VSmart को। ओके, इसको भी देखते हैं।
ये अगेन है नंबर ऑफ पाथ जिससे आप सीख रहे हैं राउट्स को. बाय डिफॉल्ट वी एज राउटर्स एंड वी स्मार्ट कंट्रोलर एडवर्टाइज अप टू 4 इक्वल कॉस्ट राउट टी लॉक. सो आपका जो वी एज है या फिर आपका जो वी स्मार्ट है वो 4 इक्वल कॉस्ट राउट टी लॉक टपल्स होता है. मतलब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है. अगर आपका 4 वैन कनेक्शन है तो आप चारों वैन कनेक्शन से राउट्स को सीख सकते हैं. यू कैन कॉन्फ़िगर देम अप टू 6. आप चाहें अब 6 वैन कनेक्शन किसके पास होगा, किसी के पास नहीं. सो बाय डिफ़ॉल्ट 4 है. आप चाहें तो इसको बढ़ा के 16 कर सकते हैं. ये कमांड आप यूज़ कर सकते हैं सेंड पाथ लिमिट. एक तो ये चीज़. दूसरा ये दोनों के लिए है, वी एज एंड वी स्मार्ट. V-Edge route. Install OMP path that they receive from the vSmart controller in their local routing table. By default, V-Edge route install a maximum of 4 unique OMP paths into the routing table. You can modify this. So ECMP number 4. तो आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को कि एडवर्टाइज कराने के लिए आपके पास अप टू 16 राउट्स हैं, और जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं मतलब रिसीव करने के लिए आपके पास टोटल 4 यूनिक OMP पाथ्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू VH. सो VH जो है ऐसे तो 4 बहुत ज़्यादा हो गया. आप चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख सकते हो एडवर्टाइज कराने के लिए 4 और रिसीव करने के लिए 4 OMP पाथ्स. ठीक है. तो OMP पाथ्स कहने का मतलब कि आप जब वैन में जाते हो, जब आप ओवरले में जाते हो तो आप 4 कनेक्शन मतलब 4 VPN 0 ट्रांजिट VPN और VPN 0 4 वैन कनेक्शन आपके हो सकते हैं. सेंड करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट भी 4 है और रिसीव के लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट 4 है, बट सेंड के लिए आप 1 से 16 तक सेट कर सकते हो और रिसीव के लिए आप 1 से 4 तक डाल सकते हो. ये थोड़ा बहुत है कॉन्फ़िगरेशन, बट जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पे ही चलता है सब कुछ. ओके उसके बाद है कुछ टाइमर्स. जैसे OMP में आप चाहो तो टाइमर्स को चेंज कर सकते हैं. लेट्स सी दैट. OMP होल्ड डाउन टाइमर, OMP हेलो पैकेट्स, डेड पैकेट्स क्या होते हैं. OMP होल्ड डाउन टाइमर डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग यू वेट before closing the OMP connection to a peer. If the peer doesn't receive 3 consecutive keep alive within the hold down, the OMP connection of peer is closed. The OMP default hold down is 60 seconds. मतलब कि आप 20 सेकेंड्स के लिए 3 पैकेट भेजोगे और अगर रिप्लाई नहीं आता है दैट मीन्स योर होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर. तो आप फिर आप उसको एक्सपायर कर सकते हैं. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेबल है ये, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इतना है. द कीप अलाइव टाइमर इज 1/3 ऑफ द होल्ड. वही 1/3 का मतलब 20 सेकेंड. सो सपोज अगर मैं इसको सेट कर दूं 6 सेकेंड, जो कि अच्छा नहीं है. 20 सेकेंड ठीक है, 60 सेकेंड सही है. 6 सेकेंड अगर कर दूं तो मतलब जो इसका कीप अलाइव है वो 2 सेकेंड का 3 हो जाएगा, है ना. If you set the hold down timer to 0, the keep alive and the hold down timers to the local device set to be 0. आप 0 सेट कर देंगे तो 0 पे सेट हो जाएगा. The hold down time must at least 2 times the hello tolerance interval set on the WAN tunnel interface in VPN 0. To configure the hello tolerance, use the hello tolerance. तो आपके पास एक और भी ऑप्शन है. तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास 3 चीज़ है. एक है आपके पास keep alive जो बाय डिफ़ॉल्ट 1/3 है, 1/3 ऑफ होल्ड डाउन होल्ड टाइमर. और देन आपके पास एक है हेलो टॉलरेंस. सो द होल्ड टाइम मस्ट बी एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द हेलो टॉलरेंस. मतलब ये कुछ देर तक टॉलरेट भी करेगा. ठीक है. आइदर वी कैन यूज द लेस होल्ड ऑन टाइम और BFD तो अलग चीज़ है. BFD इज डिफरेंट थिंग. BFD जो है दैट इज एसोसिएटेड विथ टनल. BFD is associated with IPsec. ये जो है ये डेटा प्लेन के लिए है. और OMP जो है ना वो DTLS यूज़ कर रहा है, वो कंट्रोल प्लेन की तरफ जा रहा है.
है ना, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉलरेंस भी है थोड़ी देर के लिए, मतलब द होल्ड टाइम मस्ट बी एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द टॉलरेंस इंटरवल। ठीक है, तो अगर 60 सेकेंड्स का होल्ड है टाइमर, तो ये एटलीस्ट 2 टाइम्स इक्वल, सो 30 मतलब 30 प्लस 30 ऐसा होना चाहिए। मतलब आपका 30 सेकेंड का होना चाहिए हेलो टॉलरेंस। टॉलरेंस टाइम भी दिया है इसमें, उतना देर तक ये टॉलरेट करेगा। बट जनरली ये भी डिफ़ॉल्ट, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। आप सिर्फ इसको चेंज करो, टाइमर्स होल्ड डाउन टाइम, और इसी के अकॉर्डिंग कीप अलाइव और हेलो टॉलरेंस सब एडजस्ट हो जाएंगे सारे वैल्यूज। ऑलराइट, सो मूव करते हम लोग आगे। फिर आप देखिए, आप चाहें तो टाइमर्स एडवर्टाइजमेंट इंटरवल उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो OMP में जाके और अगर आप टाइमर्स लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो टाइमर में आपको होल्ड डाउन करना है, या फिर टाइमर्स एडवर्टीजमेंट इंटरवल करना है, या फिर इंड ऑफ रिब। इंड ऑफ रिब क्या है? तो आफ्टर द OMP सेशन गोज डाउन and then comes back, an end of rib, end of routing information base or EOR marker is sent after 5 minutes. After this marker is sent, any routes that were not refreshed after OMP sessions come back and considered to be stale and are deleted from the route table to modify the EOR. एक है, आप एक मार्कर भेज रहे हैं, मार्किंग है end of rib टाइमर का, कि जो भी राउट्स जो है वो स्टेल हैं वो चले जाएंगे। ठीक है, आपने बोल दिया कि अब इसका एंड ऑफ लाइफ हो गया है इन राउट्स का, सो एंड ऑफ रिब टाइमर भेज देंगे। और ऑब्वियसली एक बार जब आपका कंट्रोल प्लेन अप आ जाएगा, दैट मीन्स कि OMP अपडेट भेजेगा और जो आपका फिब है वो फिर से रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे चीज़ हैं, बट ये हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि आपका OMP गया ना, OMP गया इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन था VH के पास, उसी हिसाब से वो डेटा प्लेन फॉरवर्ड करेगा। एक बार फिर से जब OMP अप आया तो ऑब्वियसली OMP अपडेट भेजेगा, और जो भी ओल्ड राउट है उसको रिफ्रेश करके फ्लश करके और न्यू राउट्स को उसमें इंस्टॉल करेगा। उसके बाद OSPF कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लैब में इसको देखेंगे कि OSPF कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसे कि है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। VPN में गए, राउटर OSPF एरिया 0 इंटरफेस को डाला, शट नो शट, विल सी। BGP रिमोट AS जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम लोग देखेंगे। OSPF तो हम लोग को पढ़ना है, BGP भी चाहें तो आप लाइक हाँ सही। यहाँ पे आप देखेंगे OMP जो राउट है उसका AD वैल्यू है 250। बाकी सबका तो आपको पता ही होगा। here you can see VPN राउटर BGP एड्रेस फैमिली, क्योंकि ये सपोर्ट करता है BGP को। ये आप एक बार देखना, मैं शेयर करूँगा डॉक्यूमेंट, इसको आप देख लेना अच्छे से। और अभी एक लैब करेंगे, और आने वाले टाइम में जब एडवांस लैब करेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं, तो उन कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्या करूँ, मैं आपको ये IP भेज रहा हूँ चैट विंडो में। आप रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि आप आपस में शेयर करके यूज़ कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अलग अलग टाइम पे लैब करते होंगे ना। हाँ, ये व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं और करूँ अंदर ट्रेनिंग करके शेयर कर लेंगे। ठीक है, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा ये वाला, है ना, 17339116243 आप कर लेना, है ना। तो मैंने एक लैब ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ OMP लैब। ओके, सो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, एटलीस्ट सीखेंगे हम लोग। और नोट्स आपने अगर नहीं बनाए हैं अब तक तो जाके आप बना सकते हैं। IP राउट, OMP राउट, कितने तरह के OMP राउट हैं बताइए। हम्म, 3 तरह के होंगे ना OMP राउट। एक होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस साइड OMP राउट या विप्टेला राउट। एक होगा आपका
OMP Tloc, और एक होगा सर्विस साइड सिक्योरिटी डिवाइसेस जो होते हैं ना, वो वाला OMP। तो 3 तरह के होते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखिए OMP ग्रेसफुल रीस्टार्ट, स्टैटिक राउट, OSPF राउट, Tloc राउट्स। डिस्कनेक्ट हो जाता है, थोड़ी देर यूज़ नहीं करो ना। ओके, तो ये टोपोलॉजी है यहाँ पे। अब ये टोपोलॉजी जरूर आप लोग ड्रॉ करके अपने नोटबुक में, और ये आपका पूरा डिटेल पोर्ट नंबर, अगर आप इसको SSH करना चाहें, IP एड्रेस, सारा डिटेल है। रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा हूँ मैं इसको, ये वैलिड है बाकी दूसरे भी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, आप चेक कर सकते हैं। Cisco SD-WAN learning. Look like you haven't signed up. कितना साइन अप करेंगे यार हम लोग। उसमें तो फर्स्ट वही बोलेगा 2262 डालने के लिए। ओके, ऑलराइट, लेट मी लॉन्च advance. How much Viptela is charging for lab which we are using here? भाई वो लोग तो चार्ज करते हैं ना, एक्चुअली कंपनीज को लाइसेंस देते हैं, तो उनका कंपनी के साथ ही रहता है टाई अप जनरली, बट अच्छा खासा चार्ज करेंगे वो। ओपन स्टैंडर्ड नहीं है कुछ भी। अभी सिस्को ने ले लिया ना, तो ओपन थोड़ी ही कुछ भी रहता है। जब आप लैब करेंगे ना, तो ये बोलेगा कि सेटिंग में जाके और वी बॉन्ड को आप डाल दीजिए 2262। डॉट कुछ तो स्लो चल रहा है आज सब कुछ। ओके, 2262 सेव। और उसके बाद आप चाहें ना तो मॉनिटर नेटवर्क किसी भी एक ब्रांच में जाके, फॉर एग्जांपल ब्रांच 1, VH ब्रांच 1, क्योंकि आपके पास टोपोलॉजी और नेटवर्क आपको पता है, तो आप उसमें जाके रियल टाइम में जाके और आप देख सकते हैं सबसे पहले कि OMP, अब देखिए OMP Tloc, OMP peer, मतलब OMP peer आप देख सकते हैं, OMP routes, OMP राउट जो है वही सर्विस साइड राउट्स होगा, OMP Tloc, OMP, एक्चुअली ये 3 है, OMP राउट, OMP Tloc, OMP सर्विस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं OMP peer। तो ये पर्टिकुलर जो वी एज है इसका OMP peer इसके वी स्मार्ट के साथ है, वी स्मार्ट के साथ ही रहेगा हमेशा। उसके बाद देखते हैं OMP राउट्स, ये सारा राउट्स ये सीख रहा है, ये सारा का सारा जो है कौन सा है, ये सर्विस साइड VPN राउट्स है। तो आप देख सकते हैं VPN ID 111, इस केस में 111 ही बना हुआ है सब जगह पे। तो सपोज हम लोग कहाँ पे हैं, VH ब्रांच 1 में, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, टूल्स में जाके SSH में जाके VH ब्रांच 2 में चला जाता हूँ।
ठीक है। और यहाँ से मैं VPN 1 में जाके एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, लूप बैक 1। IP एड्रेस एक दे देता हूँ, सो 111.1.1.1/32 नो शटडाउन कमिट। अगर अब आप जाएंगे मॉनिटर नेटवर्क और ब्रांच 1 में जिसमें हम लोग चेक कर रहे थे, आपको एक नया राउट दिखेगा। क्यों दिखेगा वो भी हम लोग चेक करेंगे। आपने तो एक VPN 1 राउट बनाया, और यहाँ पे अगर आप OMP रिसीव राउट्स करेंगे और यहाँ पे अगर आप लिखेंगे 111, देखिए ये आ रहा है। कहाँ से सीख रहा है ये? CIR, ये इंस्टॉल्ड राउट है। कहाँ से है? Tloc इसका 13 से है, जहाँ से हम लोग ने राउट एडवर्टाइज करा है। ये 2 राउट ये सीख रहा है ना। क्यों सीख रहा है 2? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि ये MPLS से भी सीख सकता है, और इंटरनेट इक्वल कॉस्ट जो WAN होता है उससे ये सीख रहा है, क्योंकि 2 WAN कनेक्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट 4 है रिसीव के लिए और अपडेट के लिए। तो ये प्रोसेस कैसा है, ये क्यों ऐसे सीख रहा है? तो इसके लिए अगर हम लोग जाएंगे डिवाइसेस में, सपोज मेरा VH ब्रांच 1 जो हम लोग चेक कर रहे थे, इसमें जाके अगर इसका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो अब देखिए ध्यान से, साइट ID वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, देन इसके बाद इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट OMP का कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए OMP नो शटडाउन, ग्रेसफुल रीस्टार्ट, बाय डिफ़ॉल्ट 12 घंटा। एडवर्टाइज ये क्या कर रहा है? OSPF कनेक्टेड स्टैटिक। सो जो मैंने राउट अभी बनाया यहाँ पे, वो कौन सा राउट में आ जाएगा? कनेक्टेड राउट्स में, क्योंकि VPN 1 के अंदर बनाया हम लोगों ने। सो अगर VPN 1 में आप जाएंगे तो इसमें OSPF चल रहा है। कैसे? VPN 1 राउटर OSPF राउटर ID रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक रिडिस्ट्रीब्यूट OMP। अब देखिए OSPF के अंदर OMP रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और OMP के अंदर OSPF कनेक्टेड स्टैटिक एडवर्टाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है ये भेजा जा रहा है किसको? VSmart को, करेक्ट। और OSPF के अंदर अगर आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से जो डिवाइस इधर कनेक्टेड है डाउन स्ट्रीम में, वहाँ पे आप OMP को भेज रहे हैं, OMP राउट्स को नीचे की तरफ। तो 2 वे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना। ऑलराइट, सो लेट मी क्लोज दिस। अगर हम लोग यही चीज़ जाके देखें VH ब्रांच 1 में, हम लोग ने एक नया राउट भी बनाया था यहाँ पे VPN 1 के अंदर। सो VPN 1 के अंदर हम लोग ने एक लूप बैक बनाया था। ये कौन सा है? सॉरी इसमें देखना, VH ब्रांच 2 इस पे बनाया था हम लोग ने। VPN 1 के अंदर एक लूप बैक हम लोग ने बनाया था, ये है ना। तो ये जो है स्टैटिक है, और ये एडवर्टाइज हो रहा है OMP में। मतलब जो भी डिवाइस पे आप जाके देखेंगे आपको वो राउट 11111 वाला दिखेगा। तो हम लोग ने ये चेक किया, हम लोग ने सारे राउट्स चेक किया। पिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पिंग में। फिर OMP में पीयर आप चेक कर सकते हो, OMP समरी चेक कर सकते हो आप किसी डिवाइस में जाके, और डिवाइस पे भी जाके OMP का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखाया, यहाँ देखिए है। हम लोगों ने दूसरी जगह जाके देखा। आप चाहो तो OMP के टाइमर्स को भी चेंज कर सकते हो।
इसको आप जरूर पढ़ना, ग्रेसफुल रीस्टार्ट। अगर कंट्रोल प्लेन डाउन हो जाता है तो 12 घंटे तक वो रहता है, वो बताया गया है। OMP पीयर हम लोग ने देखा। अगर OMP पीयर का डिटेल देखना है आपको तो वो भी आप देख सकते हो उस पीयर के बारे में। पीयर हमेशा कौन रहेगा? हमेशा आपका पीयर रहेगा वी स्मार्ट। OMP का जो पीयर है, ऑलवेज यू विल फाइंड वी स्मार्ट कंट्रोल प्लेन। सो चलो हम लोग भी किसी एक जगह पे जाके, सपोज VH ब्रांच 1 में जाके और OMP पीयर को चेक कर लेते हैं। हाँ करेक्ट, एकदम सही। एडमिन शो OMP पीयर्स, ठीक ना। और अगर डिटेल कर दें तो डिटेल बता रहा है ये क्या है, टाइप क्या है इसका, वी स्मार्ट है ना। बाकी टाइमर्स भी देखिए, सारे टाइमर्स इसमें दिखेंगे। तो अप काउंट, लॉग इन, वर्जन, होल्ड डाउन बाय डिफॉल्ट 60 सेकेंड, ग्रेसफुल, सपोर्टेड 12 आवर्स, सप्रेस्ड, हेलो सेंड इतना सेकंड पहले, रिसीव इतना सेकंड पहले, हैंडशेक एक, हैंडशेक रिसीव, अलर्ट। सारे टाइमर्स आप देख रहे हैं, अलर्ट, इन्फॉर्म, अपडेट, पॉलिसी, टोटल पैकेट रिसीव। तो आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना आपके कंट्रोल प्लेन के साथ, वो सारा का सारा डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। OSPF में जाके, OMP में जाके एडवर्टाइज कनेक्टेड, एडवर्टाइज स्टैटिक, एडवर्टाइज OSPF जैसा किया हुआ है वो भी आप कर सकते हैं। एक लूप बैक इसमें बनाया जो हम लोग ने ऑलरेडी बनाया, वो लूप बैक को हम लोग ने दूसरे डिवाइस पे जाके देखा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एडवर्टाइज वाला कमांड दिया हुआ है। सो बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ क्यों नहीं काम करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये एडवर्टाइज कर रहा है, इसीलिए आप कुछ भी बनाएंगे तो वो दूसरे पीयर पे ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज हो जाएगा। ओके, अभी इसमें बताया है कि OSPF को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं OSPF में भी कुछ मैनिपुलेशन करके चेक कर लिया जाए। एक लूप बैक बना के OSPF में डाल देंगे, ठीक है, तो वो कर लेंगे। OSPF में आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फिर ये आ गया Tloc पे। Tloc का एट्रीब्यूट्स हम लोग ने देखा था, यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं। रिमेंबर, 3 तरह के नेटवर्क मैंने आपको बताया, 3 तरह के राउट्स मैंने आपको बताया। एक VPN राउट और Viptela राउट, एक है आपका Tloc, और एक है आपका सर्विस, जो फायरवॉल और जो भी है सर्विस राउट्स, ये 3 रहते हैं OMP में। तो लाइकवाइज सेकेंडली ये बता रहा है कि आप Tloc इन टेबुलर फॉर्म वो देख सकते हैं, शो OMP, देन ये एंड सेशन, ये लास्ट ही था, लेकिन मैं आपको तीनों दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी, सो हम लोग लिखते हैं शो OMP, क्वेश्चन मार्क देंगे, तो आप देखिए क्लाउड एक्सप्रेस भी ऐड किया है। पीयर्स देख सकते हैं, राउट्स मतलब OMP, सर्विस राउट्स, सर्विसेज मतलब अगर IPS IDS है तो वो, Tlocs आप देख सकते हैं, Tloc राउट। 1 बाय 1 करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं राउट्स को, है ना। इस राउट्स में हम लोगों को OSPF भी बनाना था, तो मैं 2 डिवाइस ओपन कर देता हूँ, एक और B2 ब्रांच 2, और दोनों डिवाइस में थोड़ा बहुत OSPF कॉन्फ़िगर करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ शो रन VPN 1, क्योंकि OSPF कहाँ चला रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन करके चेक कर लीजिए कितना VPN है। इसमें VPN 1 भी है और इसमें VPN 2 भी है, तो VPN 2 को एक बार देखें, उसमें क्या है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं, सिर्फ एक लूप बैक है। VPN 1 में OSPF ऑलरेडी बना हुआ है,
ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, और VPN1 में फायरवॉल भी एडवर्टाइज करा रहा है, फायरवॉल का एड्रेस। सो VPN1 में मैं एक और लूप बैक बना देता हूँ, लूप बैक से 33 इंटरफेस लूप बैक 33 IP एड्रेस सपोज 33.3.3.3 स्लैश 24 नो शट डाउन। अब क्या करेंगे हम लोग कि VPN1 में राउटर क्वेश्चन मार्क देखिए क्या क्या है, BGP है, IGMP है, मल्टीकास्ट रेप्लिकेटर, OSPF और PIM। OSPF एरिया 0 इंटरफेस, आप चाहें तो इंटर करके भी आप कर सकते हैं, लूप बैक 0 शो कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या किया हम लोग ने, VPN1 में राउटर OSPF और डाल के और हम लोग ने उसको बना दिया। अगर फुल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें कितना सारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया हम लोगों ने, फुल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने एक लूप बैक इंटरफेस बनाया, उसको VPN1 के अंदर जाके डाल दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे कमिट करें, कमिट करने से पहले शो OSPF नेबर VPN1, शो OSPF नेबर, इसका कोई OSPF नेबर नहीं, में भी इसका OSPF नेबर डेटा सेंटर के साथ है। लेट्स सी, इसका OSPF का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं एक बार कमिट करने से पहले। ओके, सो OSPF रिडिस्ट्रीब्यूट OMP। सो OSPF के अंदर जो भी चीज़ है आप उसको OMP के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। इसमें गिग 00 है और गिग 00 है 2292। सो अगर मैं यहाँ जाके और देखूँ शो OMP राउट्स 2292, और ये तो OMP राउट है ना, लेकिन आप फिब मोर प्रिसाइजली आप बोल सकते हैं रिब राउटिंग टेबल शो IP राउट, जैसे सिस्को में होता है 2292। आप फोकस करें 2292 पे। कैसे सीखा, OMP से। क्यों? क्योंकि आपने OSPF को कहाँ एडवर्टाइज कराया है, OMP के अंदर, है ना। सो आपका जो OSPF था यहाँ पे, उसके अंदर जो इंटरफेस था उसको आपने किस में भेज दिया, OMP में। तो ये चला गया VSmart में, और VSmart से दूसरा साइट का डिवाइस सीख रहा है। तो ज़्यादातर आप देखिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या है इसमें, या तो कनेक्टेड या स्टैटिक है या OMP है। सब कुछ ये ओवरले से सीख रहा है। जितना भी राउट है ये सारा कहाँ से सीख रहा है, ओवरले से, है ना। इसका कोई भी खुद का OSPF पीयर नहीं है। और देखते हैं कहीं एग्जाम्पल में अगर OSPF पीयर बनाया होगा तो, मतलब ये लॉजिक है। ये मतलब क्या बोलता है कि आप जब भी बना रहे हैं तो आप ऐसे बनाइए कि सब कुछ एडवर्टाइज हो OMP में, और OMP से वो जाए दूसरी जगह पे, है ना। सब कुछ ऐसे ही है, redistribute connected OMP advertise OSPF। तो OSPF peer, हाँ, अगर OSPF peer आपको देखना है तो वो कैसा उसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जो आपका सर्विस साइड VEdge है, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आपका VEdge है अगर ये कनेक्टेड है जूनिपर से या सिस्को से, और यहाँ OSPF आपने क्रिएट किया, देन ये OSPF चला जाएगा इस पे, फिर OMP के थ्रू ये चला जाएगा VSmart पे, फिर यहाँ से ये चला जाएगा दूसरी जगह, है ना। ऑल राइट, सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कमिट कर देते हैं इसको,
हम लोग ने एक लूप बैक बनाया, दैट इज 33 कमिट करके, और जब हम लोग यहाँ आएंगे राउट में इंक्लूड 33 चेक करेंगे, देखिए आया ना, ये इंटरनेट को प्रेफर कर रहा है, VPN 1 से एडवर्टाइज हो गया। तो इस तरह से आप OSPF में एडवर्टाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ओके, नहीं तो 5 मिनट और। सो शो OMP, इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, Tloc से टेबुलर फॉर्म में। तो ये पूरा का पूरा आपको Tloc का डिटेल दिखाएगा। Tloc कहने का मतलब कि BGP नेक्स्ट हॉप, जो भी चीज़ आपके बाइंडेड हैं नेक्स्ट हॉप पे। जब भी आप Tloc एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो हमेशा ये डायग्राम आप अपने ध्यान में रखिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं ये इस लोकेशन की, दिस लोकेशन। Tloc यहाँ पे रहेगा, सर्विस राउट्स कहाँ रहेगा, पीछे, Tloc यहाँ, और फायरवॉल तो फायरवॉल का जो लोकेशन है वो रहेगा। तो ये Tloc के लोकेशन को अगर चेक करना है तो शो OMP Tlocs के थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं। तो जैसे मैं हूँ 13 में, तो इसको 10, 11, 12, क्योंकि आपको लोकल Tloc पता है, आपको रिमोट Tloc का इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लस इसके साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इनकैप्सुलेशन, फ्रॉम पीयर, स्टेटस की, पब्लिक की, पोर्ट, ये सारे Tlocs के एट्रीब्यूट हैं, सारा कुछ। तो आप Tloc भी देख सकते हैं क्योंकि ये है नेक्स्ट हॉप। और फाइनली आप क्या देख सकते हैं, शो OMP सर्विसेज, ये फायरवॉल का है। ये सर्विस VPN कहाँ से है, तो इसका पीयर है 0000, मतलब सेल्फ ओरिजिनेटेड राउट बता रहा है कि इसका सर्विस है। अगर मैं चला जाऊँ डेटा सेंटर में, फॉर एग्जांपल DC1 में, ओह 10 इज क्लोज्ड। दूसरे DC में जाते हैं, एक डेटा सेंटर डाउन है। शो OMP सर्विसेज, इसका भी सेल्फ ओरिजिनेटेड है राउट्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एडवर्टाइज हो रहा है सर्विसेज के अंदर इस केस में, मतलब कोई फायरवॉल नहीं है मेरे नेटवर्क में। ओके, दैट्स इट। तो ये था आज का क्लास, और आप इसको देखिए। हम लोग ऑब्वियसली और भी देखेंगे इसको, OMP को, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और पूरा पूरा जो बिग कॉन्फ़िगरेशन है डेटा सेंटर का, वो सारा हम लोग समझेंगे आने वाले टाइम में। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आ रही है क्या आपको? हेलो। अच्छा, कोई इधर है साथ में और क्या? ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आज यहीं पे आप रोकिए क्लास, और कल पढ़ना है या फिर सैटरडे को? नेक्स्ट क्लास कब करेंगे? आप फ्री हो? हाँ तो फ्री हो, फ्री हो तो अच्छा है ना, कल करेंगे फिर। हाँ वो लिख रहा है फॉर दिस वीक, हाँ लिख रहा है। तो ठीक है, कल हम लोग क्लास करेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिसी, और कल हम लोग बहुत सारा थ्योरी पढ़ेंगे। 4 PM, 4 बजे से करना है। 4 बजे से आप कर पाओगे नरेश? हम्म। ओह, ओके ओके,
तो कल कितने बजे करेंगे क्लास? मॉर्निंग में मेरा शिफ्ट है यार, मॉर्निंग नहीं कर पाए, मेरा ऑफिस है सुबह में। हाँ ठीक है सैटरडे रख लो फिर, बेटर है फिर। हाँ 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 हाँ, सैटरडे संडे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, 6 to 8 करेंगे सैटरडे संडे, 6 to 8, 6 to 8। लैब का यूज़र नेम मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। यूज़र नेम तो कुछ नहीं है, एडमिन एडमिन ही रहेगा सब जगह पे। आप जैसे वो यूआरएल आप डालोगे ना, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ मैं रिकॉर्डिंग हाँ अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आप देख लेना। ठीक है, ओके चलिए, ओके बाय। यस हाँ करुण बोलो, कुछ काम है क्या? 1 मिनट, कॉल कर लो करुण, ठीक है ना, मैं मीटिंग एंड करता हूँ। ओके ऑल राइट, सो टुडे we have to start this Viptela policy, and it will take some time to complete this policy. It's very interesting, and we know that who is defining the policy in the Viptela. So that's the responsibility of vSmart. vSmart is the intelligent plane inside Viptela fabric where you have to do all this policy. Now because everything is managed via vmanage, that thing we know, that we have to manage everything from vmanage if we are in the SD-WAN fabric. So what does it mean then? How this vSmart will come into the picture? Because everything, all the policies will come from vSmart only. So the order is this, that from vmanage you can create security template, then you have to push that security template to vSmart, and then vSmart will push that template to the vEdges. We'll see that this flow as well, but at the moment we will create our policy at the level of vSmart, and from vSmart we'll push to the vEdges. Later, once we understand this flow, then I will create templates at the level of vmanage, and from vmanage it will go to vSmart, and then it will go to vEdge. But for the moment we are going to do via vSmart only. Okay, so what type of policies we have? You can see here the chart. Policy we have control policy and data policy. Inside control policy also you can see that you have centralized and you have localized. Inside data policy also you have centralized and localized. So what does it mean by all these policies? So it means that let me draw here. Whenever we are telling that it's a control policy, that means that policy will be at the level of vSmart, correct? Means you are making that policy at the level of vSmart, like vSmart. Whenever we are talking about data policy, there are chances that you create that policy at the level of vSmart, but data policy means it's executed at the level of vEdge. Okay, and data policy, if it is localized, that means you are creating that policy at the level of vEdge only. So what does it mean? Let me show you one chart first and then we'll move. So this is the chart. Now when you are preparing or when you are creating the policies, so at that time, let me change the color so it will be visible. Yeah, you have to remember this word CAE, configure, apply, execute. So
if you are configuring the policy at the level of vsmart, if you are applying the policy at the level of vsmart, those policies are, and if you are executing the policy at the level of vsmart, that is CAE, configure, apply, execute, those policies are control policy, VPN membership policy, and we'll see some other as well. But whenever you are doing everything at the level of vsmart, those are termed as a control policy, and control policy is nothing but routing policy. That means you are doing some change in the routing. Now the second option, whenever you are configuring C and A, configure and apply the policy at the level of vsmart only, but if it is downloaded or if it is executed at the level of VH, at that time that policy will be data policy. So what are the examples of data policy? Data policy examples are app route policy, cfloat. Cfloat is nothing but net flow. Net flow is Cisco name, cfloat is industry standard name. So app route policy, cfloat policy, and the data policy. These policies are data policy. That means you are configuring and executing at the level of vsmart, but you are applying, or sorry, you are executing at the level of VH. So configure, apply at the level of vsmart, executing at the level of VH. We'll come to know about this, that what does it mean by execution. Execution means that although you are preparing the policy at the level of vsmart, but it will be downloaded. It will be downloaded at the level of VH. But whenever we have the control policy, it is not downloaded at VH. It will be there at vsmart level. Even if you type show policy inside VH, you can't see that control policy inside VH. Now let us go back here. Now again here you can see that we have centralized control policy, we have localized control policy, we have centralized data policy. All these three things we are applying CAE. That means if it is CAE at the level of vsmart, this is centralized control policy or localized control policy. But if it is a CA at the level of vsmart but E at the level of VH, it will be centralized data policy. Then what is localized data policy? Localized data policy, everything you are doing at the level of VH. Means you are logging to the VH device and you are doing some local change, like access list, like QoS policy, like port monitoring or a span. So those things are the examples of localized policy, but all these policy we'll see in the upcoming sections. Okay, so how we can understand this policy completely? Although we are telling, okay, we have control or routing policy, data policy. In terms of CAE, we can understand those things. But how I can understand the policy construct, that what is list, what is policy application control, blah blah, all these things. So for that you need to understand that in SD-WAN fabric everything is very simplified. In Cisco we know one policy, say route policy for example. Here also we'll learn about route policy. So whenever we are creating the route policy or any other policy, what we are doing, we are matching something, say match address something. If condition match, then
do or take action, better I'll give take action 1 or action 2, else default. Like this, we have the route policy in Cisco, that in route policy, say ABC, we are matching some addresses or we are matching some conditions. If condition match, then do action 1 or 2, otherwise you have one default. Correct? The same type of thing here also you'll get, but it is in the simplified manner. So here you don't have n number of things. Everything will go inside policy. Everything. So you have policy, you have only two part. You have built the policy, so you are building the policy, and secondly you are applying the policy. Whenever you are applying the policy, that apply policy always with respect to site list or site ID. We'll see that. Just like QS, yes, it's very much similar, even in QS also. Okay, so policy, whenever you are inside policy you have everything. Means policy is the framework. So inside policy you have to define list. Inside policy you have to define type of control policy or data policy. So what type of policies we have? Either we can have control policy, or we have data policy, or we have cFlow policy, or we have app route policy, okay, or we have VPN membership policy, or we have service chaining. We'll see that. We have extranet, that will also come into the control policy. So we have at least these many policy, but we have some more as well. Inside list, what type of list you can create? You can create list with respect to site. It's a branch list. You can create list with respect to prefix list. Like we are creating in Cisco IP prefix list. So here you have prefix list. So with respect to data, with respect to control list. Then you can create a VPN list. Then you can create color list. Then you have other list as well. So inside policy you have to define list. Inside policy you have to define policy. Once you go inside policy, any of the policies, say data policy. Say I am inside data policy called ABC. Then what you have to do? You have to match and you have to take action. That's it. And finally you have default action. Once you will create your policy, then what you have to do in phase 2? You have to apply that policy. Okay, so let us see this thing in the slide. Everything will be inside. These two things will be inside policy. That will be part 1. Second part is apply policy. So first of all you have to build the policy with respect to say data prefix list, site list, Tloc, VPN. Then what policy you want? Either it's app route policy, cFlow, control policy, data policy, VPN member policy. And then finally you have to apply that policy. Okay. Now here one minor difference in data prefix list and prefix list. So why these are two times? Suppose if you are using data policy, at that time only you have to use data prefix list. In all the other cases you have to use prefix list. Okay, so if you are applying data policy, then only you will use data prefix list. Otherwise you will use prefix list. It's very much like access list or IP prefix list in Cisco. Then site list, Tloc, VPN. We'll see one by one. You'll understand all these things. Okay, so far
what we have understand so far, we have understand that policy has two things. One is control, one is data. In control also you may have centralized, you may have localized. In data also you may have centralized, you may have localized. When we are talking about control policy, CAE, configure, apply, execute at the level of vSmart. When we are talking about data policy, CAE, configure, apply at the level of vSmart, but execution at the level of vEdge. Then we studied about policy. Inside policy, you can think this as a one, and then you have to apply policy. You have to create policy, build policy, then you have to apply policy, always with respect to site list. Always. Now, in policy you have to define list, and then you have to define policy. Then in policy, whatever policy you have to match the condition and you have to take action. Okay, so these things we have studied. Let's study more on this. Now, in which direction you are applying the policy? So whenever I am talking about apply policy, you can see here you have to apply the policy with respect to site list. Then obviously you should give the direction. So while we built our policy, at that time you will understand that this direction, either you are applying traffic going towards vSmart or vSmart is exiting that thing. So either you can apply in the ingress or egress. Both has some plus and minus, but 99% we are applying policy in outward direction. Very less number of times we are applying the policy in the inward direction, because if you apply the policy in the inward direction, means towards going inside the vSmart, that means vSmart will edit those things while getting this information, means vSmart will not advertise those policy to other devices. Now, if you apply that policy in the outward direction, that means vSmart has to take decision to apply this to the selected V edges. So that means that if you are applying the policy inside the inward direction, that means most of the things you are restricting, but in the outward direction you are not restricting most of the thing. Only whatever outbound V edge list you have, there you are applying the policy. So most of the time the policy direction will be out. Very less number of times they are in inward direction. We'll see that when we study about policy, when we build our policy, then we'll see configure and executing the vSmart policy. We'll see that this thing we have already discussed. These are the list, and this also we'll see when we build our policy, just like the bandwidth, traffic engineering. Okay, yes, you can tell that. Alright, so we'll see all these lists, but inside policy you have to create the list, and inside policy also you have to define the policy. Now here you can see that what you have to do, that you have to match and you have to take action, then you have default action. Okay, we'll see that. We'll see that in one of the example today. Policy application, you can apply that policy. So today I am going to show you one example for the policy. So here we have one example. So today we have to perform a lab, say called hub and spoke. Say hub and spoke. What does it mean? So suppose if I have two data center 1 and 2, and 2 branch. So I have DC1, DC2, branch 1,
branch 2. We know that by default Viptela is full mesh, correct? Means each node has each tunnel to each branches, each data center. So suppose if I have 4 sites, that means total number of tunnels will be 4 into 3 by 2, that means 6. Now suppose if you don't want this full mesh, this is full mesh, by default it is full mesh. You want this topology to behave like hub and a spoke. So what you want? You want that DC will become your hub and the traffic that is going from branch 1 to branch 2, it will go via DC. Okay, so how we can achieve that target, that we are going to discuss today lab. So what we can do here, first of all I have to go inside policy. So I'll go inside policy, and inside policy I'll go inside list. Inside list I will create one list. Same in my case I will create all branch, all BR. There I will take say in our topology data center 1 has site ID 100, data center 2 has site ID 200, branch 1 has a site ID 300, branch 2 has a site ID 400. So in my case I will take site ID say 300 comma 400. Okay, Tloc list prefer site list Tloc. So what I am going to do, in this example they are showing that okay, they have created one site list, they have created one Tloc list, they are preferring something. But in my case, in my small example, I am not going to use this Tloc list. Then once I create the list, secondly inside policy I will go and create control policy. So control policy, my control policy name is hub and spoke, for example. Then sequence number 10, if whenever you are talking about control policy is nothing but routing policy. Okay, so in control policy either you can match route or you can match Tloc. In my case I will match Tloc. To whom I will match this Tloc? Say I will match Tloc with site, for example 300. Action I will reject, for example, and then these things I will not use. So sequence number 10. What I'll do, I'll go to sequence number 20. Then again I will match Tloc, site ID 400, action reject, and then finally default action accept. So once I'll create 1 and 2, then I have to go here in 3. Site ID is all branch, policy name is a hub and a spoke in the outward direction. Okay, so I'm going to create one policy like this. Now you have to understand this. What does it mean? What I am doing here, that I'm matching the Tloc 300, rejecting it. Why? That is very important. So what is the default behavior? Suppose without any policy, default behavior is that VSmart if we have even 5,000 sites, what we can do, we are applying the policy with respect to site. So we can create one site list, say 100 to 5,000, because all the branches they are tagged with the site ID, so it will cover something 4,900 sites you are applying. So single policy you can apply to 5,000 sites. That's the power of that. You don't need 5,000 policy. Single policy
You can apply. Why? Because you are creating the policy at the level of vSmart. You are not creating the policy local to the V edges. So once you have policy here, you can push to n number of places. Okay. All right. So what is the default behavior that vSmart by default without this policy, they are learning the Tloc, and then because they are route reflector, they are reflecting to other sites. Now if vSmart will learn this 3, so see, it is learning this 300, but in the outward direction it is rejecting it. So where it is rejecting? In the branch, in our case 300 400. So it is rejecting here, but it is learning in this data center. Likewise the 400, it is learning, but it is rejecting in the outward, because where we are applying the policy? Out. So it is rejecting. That means 300 will not learn the Tloc of 400, 400 will not learn the Tloc of 300. So that means what will happen? They will not form point to point tunnel, but they will form the tunnel from here and from here. Means they will learn the route via what type of policy is this? Control policy. Control policy will not download it by, you can understand that control policy is not downloaded by VH. So if it is a control policy, configure, apply, execution at the level of vSmart. If it is a data policy, you are doing configure, apply at the level of vSmart, but execution at the level of VH. This is a control policy. It will not downloaded by VH. It's a routing policy. Now we know this thing that vSmart is taking the decision for routing. That means vSmart is sending something called OMP update, and in that OMP update they are giving the routing update to V edges. V edges who are associated with the tunnel that is tracked with active BFD or active Tloc. At the time of making the fib, they are checking Tloc active tunnel associations, and then they are forwarding packet from one place to other place, that they are getting update from vSmart. So that's the reason that you don't need that entire routing things installed inside the V edges, and that you can save the buffer, routing buffer for the V edge devices. Okay. So we need to VS redundancy. Yes, we have so many VS. Yes, we have. So we have redundant vSmart and we have cluster of vmanage. So at least 3 recommended and at least 2 vSmart required for that redundancy. So everywhere we have redundancy in each places. Redundancy at the level of control plane, redundancy at the level of ISP connection like MPLS internet, redundancy in terms of VRRP. Everywhere you have redundancy. Redundancy in terms of data center 1 and data center 2. So you have 2 data center, you have multiple controllers, you have multiple transport, you have multiple V edges at branches. Everywhere you have redundancy. Okay, so let's do this task and then we'll move further. Okay, so I have this is the new lab setup and I'll share this lab with you guys. Let me open the vmanage.
and I have to log into VH1, VH2, DC1, DC2. Everywhere the username and password are admin. I think DC2 is down. These DCs are, site is down, I think. Let me reconnect. Okay, no problem. We'll check this inside the dashboard. It is showing that 6 vEdge are up, and if I click here, you can see your data centers are up. Branch 1 is up. There is no branch 2. So I need to bring up the branch 2. I'll bring up that. Let me check DC as well, DC2. Okay. So I'll go to branch 2 VH1. This is branch 2 VH1, and I know what's the issue here. So let me fix that issue. I'll go to VPN 0. No shutdown. Commit and quit. Commit. Okay. Then I'll go to my vManage dashboard. I'll go to the template. I'll push one template for branch type 2 template. Yeah. So we'll go here. I'll attach devices. I have one serial number here, serial number chassis ID. That is for that particular branch. I need to give the host name, system IP, all these things that I have already there in my CXV file. So branch type 2 template. Yes, I want to upload. Then you can see it has taken everything. Yes, I want to configure this device. Now it is system IP and all these things are gone. Anyways, we'll wait. So we'll wait for this particular device to come up. In the meanwhile, I will detach the vSmart. Successful. So I'll go back to templates, and if you see here the vSmart on the top, two are attached. So it is attached with obviously the vManage, means it is my vManage is handling these vSmarts. So what I'll do, I'll detach this to vSmart because I want to do some local configuration change. Later we'll do via vManage, but first of all we'll learn with respect to local configuration. So let me log into these particular vSmart. 1. I think 12 and 22. So I'll copy this thing.
Okay, so one of the VSmart, I just want to say, you can see here you are asking about some redundancy in VSmart. You can see I have two VSmarts, correct? So one of the VSmart, just for the sake of simplicity, I can remove, but no problem. I'll show you that part as well. So suppose if you are doing change, if you are doing configuration, you have to do the same policy configuration in all the VSmarts. Otherwise you have inconsistency in the network. So suppose if you are doing any thing here in the VSmart 1, you have to do the same thing inside VSmart 2. That is not the case if you are doing with respect to vmanage, because if you are pushing the policy from vmanage, automatically vmanage will push to 10 or n number of VSmart. But if you are doing this manually like I am doing, so you have to copy paste the configuration to both the VSmarts. Okay, so I'll do that, no problem. If my configuration is correct, you can see now its vEdge name has been changed. That means if I check show control connection, now you can see this control connection here. Let me auto hide this. Auto hide. Okay. So what I try to say here, that now my branches are up in my topology. How my topology is, my topology will look like this, that I have color is there. Okay, okay, let me draw here. Say I have a DC1 with site ID 100, DC2 with site ID 200, branch 1. In branch 1 I have 2 VH, but I am taking only one for simplicity. Branch 2 site ID 400. Now if I do ping or trace route, you'll find that I have direct tunnel, but if after applying the policy, it will go first to any of the data center and then it will go here. So this is one that I'll show you now, and after applying the policy it will go via 2. Okay, so if I go here in the branch 1, if I do show interface description, I just want to check any of the IP, say for example VPN 10. So 10302, and if I go to branch 2, if I check show interface description, in VPN 10 I have 10.4.254.10. So what I'll do, I'll go here, I'll do the trace route with respect to say VPN 10 here. Now you can see it's only one hop away, it is going directly, correct? So number 1 is correct, it is going directly. Now let's build our policy. So I'll go to VSmart. This time we have to build our hub and spoke policy. For everything you have to go inside policy. If you go inside policy, if you type question mark, then you will find app route, cfloat, control policy, data policy, policies, that is with respect to QoS, SLA class, VPN membership. SLA class we will learn in the app route policy. But you can see here you have list of policies and then you have list as well. So first of all, what we have to do, we have to create a list. So if I go inside list and type question mark, we have app list, color list, data list, prefix list, site list, Tloc, VPN list. But what list I want to create here? I want to create site list whose name is say all branch. Now it will ask, either you can press enter or here also you can carry on. So what site you want? You want site 300. If you want, you can give complete range. So it will take from 300 up to
400, or you can press enter. If you want only 2 site, you can give 300 and 400. Now if you do show configuration, it will show you what configuration you have done so far. So I have created one list called all branch where site 300 and 400. Okay. Now I'll exit. Now I am inside policy. I want to create what type of policy? Control policy. What's the name of control policy? Hub and spoke. Now it is telling simply one thing, either default action or sequence. So first of all, I'll go inside say sequence number 10. Even if you carry on, you will get match action. So even you can press enter as well. So what you want? I want to match, because control policy is what? Routing policy. You have only 2 options, either match Tloc or route. Now once you match the Tloc, what you want to do? Obviously you have to take action. I want to reject, but match Tloc with certain site ID I want to do. So whenever I match Tloc, I just want to add site ID 300, and then I will exit. I will come to the action, reject. Likewise, I'll go to sequence number say 20. This time match Tloc with site ID 400, site ID with 400, and action I will take reject. I'll go to default action, that means in the top. So here default action I want to take accept. So what I have done so far, let me show you. Okay, so we created the list, then control policy, sequence 10, match Tloc, site. So what it will do, that everything is going towards VSmart, correct? So it is going towards VSmart, but we are going to apply the policy in the out direction. Simply this rejection means that 300 will not learn 400, and 400 will not learn the Tloc of 300, but they will learn from upstream, from other places. They will not learn directly. Alright, and then you have the final, that is the default action. So they will learn via default, they will not learn directly. Once you do this policy, then what is the final step? You have to apply this policy. So apply this policy always with respect to site list. The policy name is what? Hub and spoke in the egress direction. That's it. Let me show you the full show run policy. Oh, I need to commit this, so let me commit this policy. Show run policy, show run apply policy. I am copying pasting this configuration to the chat window. Please save this policy, it will help you later on. Even I am going to share this lab, you can copy from this as well, but what I am doing in the class, that after making one policy, again I create other policy, so I delete the old one. That's why please save this configuration. I just ping in the chat window. So step by step you can save all these policies, so you can refer these policy later on whenever you need it. So once I apply this policy to one VSmart, I need to apply this other VSmart as well. Otherwise some inconsistency will happen. So I'll go to other VSmart.
and then I have to apply as well. Alright, so apply policy and then commit. Now this policy will take effect. Now if you go to the branch, if you do the same trace route, say first it is going to watch the data center and then it is going to the next hop. Now if you check show IPsec inbound or outbound connection, that is your tunnel. Now you will not found a direct tunnel from branch 1 to branch 2. But if I remove that policy, we will find direct tunnel from branch 1 to branch 2. What does it mean? So whenever we are talking this, actually I need to, just a minute, need to decrease the font size a bit. So let me decrease little bit, let me make this 10. So this output will come in single line. Okay, alright. So now you can see that 10. Now you need to understand this IP schema as well. Where is 10, where is 12, like that. Okay, but you can check with this IP, this system IP. If it is 10.1, this is data center 1. 10.1, data center 1. 10.2, data center 2. 2, data center 2. If it is 10.3, branch 1. If it is 10.4, branch 2. So now it is telling that I am in branch 1, that is 10.3. So I have tunnel from branch data center 1 to branch 1, data center 1 to branch 1, data center 2 to branch 1, data center 2 to branch 1. So I have tunnels directly to data center 1 or 2. You can see here 10.1 is data center 1, 10.2 is data center 2. I don't have tunnel to branch 1 to branch 2. So that's why the traffic first it is going to watch the data center and then it is going to watch the other branch. Now if I go here and if I remove this policy, if I do no policy, no apply policy, if I copy paste this thing here in the commit, okay, so we have removed the policy. Okay, now if you go single hop, now if you check the tunnel, you will find 3 has tunnel with 4. You will find this, see, 3 has tunnel with 4, 3 has tunnel with 4. It was not earlier, correct? Because of that rejection of Tloc, they are not able to form the direct tunnel. So I think this makes sense, and let me go back to the slide. Yeah. So this way you can apply the policy, build the policy, you can apply the policy. Now let us understand the processing of these policy, how the policy processing happening. The policy processing means that whenever you are doing this policy, you are matching. Inside match you have sequence number 10. It's very much like QoS policy in routers or route map policy in routers. First it will match sequence 10, then 20, then 30. Finally it will come to the default. The same thing here written in this. By default the action is reject. Okay. So it will match in sequence order and finally it will come to the end where it has to by default it is reject all, but you can make this accept or reject. It's up to you. Now one very important thing here to understand about control policy and data policy. Control policy is unidirectional, data policy is bidirectional. What does it mean? So it means that whenever you are dealing with control policy,
if you want the traffic direction from in to out, you have to create one control policy. From out to in, you have to create one control policy. But if you are creating data policy, those are bidirectional. So because those are bidirectional, you don't need two policy, in, out, out, in. Only one policy will work. But control policy is unidirectional. If you want the traffic flow in both the directions, you have to create two policies. One is from in to out, other is from out to in. Okay. VS Smart Policy example and lab. We have just seen one of the lab called as Control Policy Lab. Control policy, as I told you, very important point, that if you are dealing with control policy, those policy will not downloaded by VH. So not downloaded if it is a control. If it is a data policy, it will be downloaded. We'll see. So far we have done one control policy. Let me show you what does it mean by download. So if I go back to the policy, and if I apply this policy one more time, this is my policy. Alright, and then if I apply this policy, commit. Now if I haven't applied to other VH, it's okay. If I go here, if I do the trace one more time, that's why it is preferring from VS Smart 2. So now we have inconsistency in the I need to commit it, na? Commit. I have done commit. Show run policy. Let me copy paste to the other as well. Then apply policy. Top. Apply policy, all branch control policy, hub and spoke. Out. Commit. So now if we see here, this policy is applied. So what does it mean if you check show policy from VS Smart? Nothing is there, correct? No int is there because it's a control policy. It is not downloaded by your VH. Now let me go back and remove these policies. Now I will show you an example with respect to data policy, and then you will find that it is downloaded via VH. No apply policy. Let me remove this policy. Commit from both the places. Alright, now let's go back to our slide where we are checking the theory here. So now I will show you one example with respect to data policy, and all these things I am going to cover, like service chaining, cFloat, convert VH into NAT, that I am not going to do. But service chaining, cFloat, we'll see. cFloat example I am going to show you because this is very easy. cFloat is data policy, it's a net flow. Application aware routing, we have complete one class for application aware routing where it is doing everything with respect to SLA class monitoring, and I have 30 slides for that. So complete one class we have for app route, so don't worry about app route. We'll see in coming second or third class. We have that lab. So today I'm going to cover cFloat template. cFloat template is nothing but NetFlow.
Now when you are doing the net flow, what you are doing, you have some collector where you are collecting all the net flow information, correct? So you are analyzing the data flow and you are redirecting those data flow to some server, correct? So for that you have to create cFlow template, means what is the flow activity, what is the inactivity, where you are sending. Okay, so that will be one portion. But as I told you, all policies are very much similar. So first of all, you have to go inside policy. You can create a list. Okay, so here I have VPN list, for example. It is not shown here in the slide, but you have to create a list. I'll show you in the lab section. You have to create one list, VPN list. Say in my example, I will take VPN 10. Okay, so once you create that list, then you have to go inside data policy. Suppose cFloat, this is the name, cFloat data. The VPN 10, sequence 10, match protocol 17 is UDP. Protocol 17 is UDP. Protocol number 6 is TCP. So suppose I am analyzing the UDP protocol. So I need to match protocol 17. Action except cFloat. cFloat is the keyword, not a name. Default action drop. So very simple policy, you can see only 4-5 line policy, that's it. But here we have one cFlow template as well, where I am defining the flow activity, flow inactivity, and what is the collector, where I am collecting this information. I am using this loopback address. I don't have any server, but I can use any pseudo IP address, any proxy IP address. So collector VPN, in my case this is 10. Address I will also take 111. This is port number reserved for net flow or cFloat. Transport is UDP. If you are using 6, then you have to use TCP, correct? Finally you have to apply this. So site list, so you have to create two site lists, site list 100, site list VPN. Alright, how you are applying it? Data policy cFloat data. Say here you are not giving in or out, correct? Once you apply this policy, it is applicable for both the direction, both in and out. And then you have to give this cFloat as well. So this you are calling here, plus this you are calling here. Two functions you are calling inside apply policy. Let me show you in the example in the lab, so you will understand this. Okay, so first of all we'll go inside policy. I'll go inside list. I'll create, say, site list, say all branch, for example. And this time I'll take site ID from, say, 300 to 400, just to show you that you can take range as well. Then I will create one more list called VPN list. Name I'll give VPN 10, that is VPN 10. I'll go to top just to show you what configuration I have done. Show configuration. You can see 10. I have created two lists, very easy. I can create it, no problem. Then I'll create cFloat template. So then what I'll do, before doing more here, I'll go here and I'll create cFloat template. But for that also you have to go inside policy, and then you have to create cFloat template and then the name. So you have to go here. First of all, go inside policy, cFloat. See, cFloat template is there. You give name, say CFLD TEMP, any name. Now flow activity timeout, say I type question mark just to see, and then flow inactivity timeout, say 60. By default is 600. 600 seconds means I think 10 minutes. I make that as 1 minute. Then flow, I need to give the collector information. If I type question mark,
Then I have this option collector, where I want to collect inside VPN 10. The address is, for example, 111.1.1. Port is, I want to use this default port, means this RFC recommended port. Transport, you can see here you have transport, UDP and TCP. I want to use UDP only. If you use source interval, leave it. If you use TCP, then you have to use protocol 6. In this example, I am going to use 17. Show configuration. You can see here policy flow in active time, because active is by default 60, so that's why it is not showing here. So I have created one template, I have created the list. Then what I will do, I will create data policy, because cfloat is a data policy. CFLD POL, any name you can give. Now what I want to do here, I want to apply this policy with respect to VPN 10. Just a minute, hold on. With respect to VPN 10, and inside VPN 10, what I want to do, see sequence number 10, match what you want to match, any site, any VPN. Let's see what's the configuration. Match protocol, and then action, accept, default, drop. So match, you can see here protocol. You have these options, exit, then action, action, accept, cfloat, count, drop, log, redirect, DNS, TCP optimization. Our is cfloat. Exit, go to the top of the sequence, default, action, reject. Drop is there. So I don't have a default action called reject. I have default action as, sorry for that, I have default action as drop. Okay, correct. So 100% we are correct. So I'll go to top, I will do show configuration. This is the final configuration. Data policy will call VPN 10, match all these protocols. Action by default, see, default action is drop. I need to make this accept. I'll make this as accept. Cfloat, default action is drop. Okay, so I'll go back this place. Even I have to go up to sequence number 10. Action is accept, not drop. I'll go to top, show configuration. Now action is accept. Alright. So now we need to apply this policy, apply policy always with respect to site. This is the data policy. The name of data policy is cfloat template. That's it. You don't need to give the direction in, out. Simply this. Then again you have to apply this template as well. So cfloat template is cfloat. That's it. I'll do commit. Show run policy. Yeah, I have to type show running conf, then only it is taking. And show run apply policy. So these things also I am pasting here in the chat window. Please copy this. Alright. So I need to apply this in the other VSmart as well.
policy is already there, I have removed or not, but no problem, we'll see that here. Okay, here also commit and quit. Alright, so both places I have committed. If I have any issue, it will throw an error, otherwise it is good. Now if I go to any of the branch, if I do show policy from VSmart, because this is data policy, you can see it has been downloaded. You can go to all the branches, say irrespective of branches, only one policy is applied to all the branches because you have mentioned the site ID, correct? So show policy from VSmart, correct? From VSmart. Apart from that, you can check like this: show policy question mark service path VSmart, from VSmart data policy app route. All these things we'll see. Any other way that I can check this cfloat? There is no other way to check that, but I'll show you the output as well. So this is the way that you can just check inside the VH that these things are downloaded or not. Now you want to check the result, how you can check the result. So for that you have to do show app cfloat. You can see, so app cfloat, and then you have collector flow flows. The important things are flows and statics. So I'll go to statics, and in the tabular form you can check. Then you can go to flows. In the tabular form you can check. So this is the complete flow of traffic that is happening. You can see here from where, how much packets I am getting, which type of packets I am getting. Let me simply show you first flows in this format. So who is the source, who is the destination, ICMP, total bytes, packets, when it is coming, which type of packet is coming, CPU packet, interface packet, egress interface, from where it is coming, all informations you have. Apart from that, if you check, because this is SD-WAN, correct? So here you have so many other options as well. If I go here and if I go to DPI and if I check the applications, you can see what applications are running. I'll show you all the application. In Cisco, is it possible that we can see all these things? It's not possible in Cisco devices. And DPI flows, you can see there are so many things that we can verify. So far, any problem in this? Okay, so I'm going to stop here, and because this is a bit difficult topic, so I'll go slow in this, and tomorrow I'll cover 3-4 more policies. So far, if you have any doubt, you can ask. ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ 5:30 में, बट 6 o'clock भी अच्छा टाइम है. 6 o'clock ही रखते हैं, बेटर है ना, संडे भी है. 6 to 8 कल करेंगे, क्योंकि आज पहला क्लास था पॉलिसी का, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ. बट टुमारो 6 to 8. टुमारो आई विल कंप्लीट दिस पॉलिसी, कंप्लीट जितने भी हैं. वी हैव टोटल 8 पॉलिसी आई थिंक. सो आज हम लोग ने 2 किया, कल नहीं करेंगे कंप्लीट, कल हम लोग 4 कर लेंगे. 3 क्लास में करते हैं इसको, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक दिन में. बट वीक डेज में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना. वीक डे में कम से कम 2 वीक डेज अगर आप दे दो ना, तो अगले संडे तक मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा. अभी मैं अपलोड कर, वो तो पहले वाला तो अपलोड कर दिया मैंने उसी टाइम. अभी 2 घंटे में ये अपलोड हो जाएगा, और ये पीपीटी भी मैं अपलोड कर दूंगा विद इन 2 hours.
ठीक है, चलिए कल 6 बजे मिलते हैं. Okay then, thank you then, thanks, bye. We have some more policies. So today's the policies are, what policies we have, let's mark it here. So yesterday we studied two policy. One is hub and spoke, other one was sieve load. Today we are going to study about route leak. Say whenever we are talking about routing, yes Naresh? मैंने व्हाट्सएप में कर दिया मैसेज ना. ओके. Okay, all right. So we study about hub and spoke, sieve load. आज हम लोग route leak करेंगे. Then we'll do service chaining. We'll see what is service chaining means. उसके बाद फिर हम लोग traffic engineering करेंगे. Okay, so today we have to do these three important policy: route leak, service chaining and traffic engineering. तो जब कभी भी राउटिंग से रिलेटेड चीज़ है, राउटिंग सिंपली मींस कंट्रोल पॉलिसी. तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कंट्रोल पॉलिसी हो जाएगा, राउट लीक भी कंट्रोल पॉलिसी, इवन सर्विस चेनिंग वो भी कंट्रोल पॉलिसी हो सकता है, बट डेटा पॉलिसी भी हो सकता है. बोथ वी कैन यूज एज अ सर्विस चेन. सो लेट्स सी वन बाय वन. तो सबसे पहले करेंगे हम लोग राउट लीक. राउट, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है. सबसे पहले हम लोग करेंगे राउट लीक. राउट लीक का मतलब क्या होता है कि सपोज आपका डेटा सेंटर 1 है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डोंट वरी, अपलोड कर दूंगा 2-3 घंटे के बाद. ओके, सपोज आपका एक डेटा सेंटर और एक ब्रांच है, और हम लोग को पता है कि डिफरेंट वीपीएन होते हैं. जैसे वीपीएन 10 है, वीपीएन 20 है. सपोज यहाँ पे भी वीपीएन 10 और यहाँ पे भी वीपीएन 20. अब विप्टेला फैब्रिक के अंदर ये जो VPNs होते हैं, these VPNs are not communicating with each other, but VPN 10 across the fabric communicate करेगा, VPN 20 across the fabric communicate करेगा, but inter VPN communication नहीं होगा कहीं पे भी. ये नहीं होगा इंटर VPN 10-20 से कम्युनिकेट नहीं करेगा. उसके लिए आपको राउट लीक करना पड़ेगा. समथिंग लाइक BGP में ऐसा है, BGP V4 एड्रेस फैमिली के अंदर जहां पे आपका VPN V4 और VRF के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराना पड़ता है. लाइकवाइज यहाँ पे VPN 10 और VPN 20 के बीच में राउट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, तभी जाके ये आपस में कम्युनिकेट करेगा. ठीक है. सो हम लोग देखते हैं अपने टोपोलॉजी में कि मेरे पास शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, और हम लोग जाते हैं डेटा सेंटर में शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे भी 10-20 है, देखिए 10 और 20 है, और यहाँ पे भी 10 और 20 है. So, अब अगर मैं ऐसा करूं, शो IP राउट VPN 10, तो VPN 10 में जो यहाँ पे जो VPN 10 होगा, इस VPN 10 में क्या है, 10.2.0.2.1.1. सो यहाँ पे अगर आप जाके और इंक्लूड करेंगे 10.2 फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए 10.2 का नेटवर्क दिख रहा है, क्योंकि VPN 10 और VPN 10 सब जगह मिलेगा. लेकिन VPN 10 के अंदर आपको VPN 20 का नेटवर्क नहीं मिलेगा. अगर आप सर्च करेंगे 10 to 20, क्योंकि जो क्रॉस VPN है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करता है. तो सपोज 10 to 20 करें, कोई भी फाइंडिंग नहीं है, नल है.
दैट मीन्स कि हम लोग का जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि आप इस 20 को 10 के अंदर और 10 को 20 के अंदर भेजें, करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रानेट पॉलिसी बनाएंगे। मैंने वी स्मार्ट 2 को डाउन कर दिया है, सिर्फ एक ही वी स्मार्ट पे पॉलिसी बनाएंगे और वो रेप्लिकेट कर जाएगा सब जगह पे। कैसे करेंगे? कल हम लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले ना आप पॉलिसी लिस्ट बना लो, ठीक है। सो मैं बना रहा हूँ VPN 10 और इसका जो आईडी है वो 10 है। लाइकवाइज एक और बनाएंगे, उसको दे देंगे हम लोग 20 नाम, क्योंकि 10 और 20 के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन कराने वाले हैं, है ना। फिर एक और लिस्ट में बनाऊंगा, क्यों? साइट के रिलेटेड। इसको मैं सारे ब्रांचेस में अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो साइट लिस्ट से ऑल ब्रांच और साइट आईडी जो है वो 300 से 400। क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हम लोग ने? शो कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे VPN 10 बनाया, VPN 20 बनाया और एक लिस्ट बनाया, वो लिस्ट नहीं दिख रहा है। मे बी वो लिस्ट ऑलरेडी होगा यहाँ पे शो रन, क्योंकि पुराने पॉलिसी इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। नहीं, कमिट करने के बाद ये कमिट में चला जाएगा, वो ऑलरेडी है। वो जो पुरानी पॉलिसी है ना वो ऑलरेडी है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको कमिट कर लूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप करेंगे शो रन पॉलिसी लिस्ट, तो वो ऑलरेडी है यहाँ, देखिए, है ना, जो कल हम लोग ने बनाया था इसके लिए। तो हम लोग जो ओल्ड पॉलिसी है ना उसको डिलीट कर देते हैं। सो नो पॉलिसी, हम लोग ने सी फ्लोट बनाया था ना, नो पॉलिसी चला गया वो लगता है। अभी अगर देखेंगे हम लोग शो रन पॉलिसी लिस्ट, लिस्ट है हम लोग के पास। शो रन अगर पॉलिसी देखें हम लोग, पॉलिसी अब नहीं है, शो रन, हाँ पॉलिसी है एक्चुअली। आप देखिए सी फ्लोट है, तो सी फ्लोट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने देते हैं सी फ्लोट को। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ सी फ्लोट टेम्पलेट। ओके, सो हम लोग अभी कंट्रोल पॉलिसी बनाने वाले हैं। कंट्रोल पॉलिसी अब बनाएंगे। ओके, ये जो कंट्रोल पॉलिसी हम लोग बनाएंगे, इसका नाम दे देते हैं सपोज राउट लीक, ठीक है। अब इस राउट लीक में हम लोग को मैच करवाने हैं इन और आउट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस में चले। सीक्वेंस नंबर 100, पता है कि कंट्रोल पॉलिसी में आइदर Tloc होगा या राउट होगा। तो इस टाइम हम लोग Tloc ले रहे हैं, सपोज VPN लिस्ट VPN 10। अभी क्या करेंगे, अगर आप क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पे, तो साइट लिस्ट भी है और VPN भी है हम लोग के पास। शो कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट अ मिनट, विल सी कहाँ तक हम लोग हैं। तो अब देखिए VPN 10 के अंदर एक बार आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए। हम लोग सीक्वेंस नंबर 10 पे हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं से एक्सेप्ट, देखिए है ना, एक्सपोर्ट टू VPN लिस्ट। मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे बहुत इजी काम हम लोग एक्चुअली। VPN 20 एग्जिट एग्जिट शो कॉन्फ़िगरेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग VPN 10 में जा रहे हैं,
उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं VPN 20 में। लाइकवाइज हम लोग सीक्वेंस 200 मैच राउट VPN 20 में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हाँ करेक्ट, 100% करेक्ट, और एक्शन लेंगे एक्सेप्ट एक्सपोर्ट टू VPN लिस्ट VPN 10। एक डिफॉल्ट एक्शन जो है रिजेक्ट का, उसको एक बार और एग्जिट कर दीजिए, डिफॉल्ट एक्शन ले लेते हैं एक्सेप्ट। क्या किया हम लोग ने, शो कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा काम। सीक्वेंस नंबर 10 में गए, VPN 10 को भेज दिया 20 पे। सीक्वेंस नंबर 200 में गए, VPN 20 को भेज दिया 10 में, और डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट ऑल। दैट्स इट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक VPN को लिया दूसरी जगह, दूसरे VPN को लिया एक जगह भेज दिया, है ना। ओके, तो फाइनली हम लोग को क्या करना पड़ता है, इन सब को आपको अप्लाई करना पड़ता है ना साइट लिस्ट में। सो अप्लाई पॉलिसी साइट लिस्ट, हम लोग का जो कंट्रोल पॉलिसी है उसका नाम क्या रखा हम लोग ने, राउट लीक। और ये जो एक पॉलिसी है ना राउट लीक पॉलिसी, इसको इनवर्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। कमिट VPN लिस्ट, हाँ हाँ इनवर्ट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब कि जो आपका VA स्मार्ट है उसके इनवर्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जनरली जो पॉलिसीज हैं उसको बाहर निकलते हुए लगाते हैं, ये हम लोग यहाँ इन में लगा रहे हैं। सो एक हाँ एक्सटर्नेट पॉलिसी एक्चुअली इनवर्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, राउट लीक पॉलिसीज इनवर्ट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, क्या एरर है, बोल रहा है कि पॉलिसी कंट्रोल सीक्वेंस 100 एक्शन एक्सपोर्ट टू VPN लिस्ट। बोल रहा है कि ये VPN है नहीं, क्यों ऐसा देखते हैं। शो रन, एग्जिट ही करना पड़ेगा यहाँ से। तो क्यों ऐसा बोल रहा है ये, हम लोग टॉप पे जाके चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लिस्ट कहाँ है इसके पास, वेयर इज द लिस्ट। लिस्ट तो हम लोग ने ऑलरेडी बना रखा है, नो प्रॉब्लम। शो रन पॉलिसी लिस्ट। और देखिए अब मैंने क्या किया है, VPN की जगह नाम आप देख रहे हैं क्या दिया मैंने, VNP किया है, ठीक है ना। नो वरीज, VPN 20 अगर बना दे, VPN 10 करेक्ट है, ठीक है, एक VPN 20 बना देते हैं। सो पॉलिसी लिस्ट और VPN लिस्ट VPN 20 VPN 20, ठीक है, इसको कमिट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे कि हम लोग के पास पॉलिसी तो ऑलरेडी बना है, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर से। यहाँ से ये पॉलिसी, तो जब भी पॉलिसी है ना आप उसको वैलिडेट कर लीजिए अप्लाई करने से पहले। तो जब आप वैलिडेट करेंगे और ये अगर सही आ जाएगा दैट मीन्स कमिट हो जाएगा ये, है ना। तो अब अगर आप जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाएगा आपका VH के पास, वहां से फिर ये लर्न करके और आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाएगा VA स्मार्ट के पास। सो आप जो पॉलिसी लगा रहे हैं वो VA स्मार्ट के पास जाएगा, फिर VA स्मार्ट उसको एडवर्टाइज कर देगा दूसरे ब्रांचेस पे, ठीक है। तो थोड़ा सा तो टाइम देंगे, और अगर हम लोग करेंगे शो IP राउट से फॉर VPN
10 देखेंगे कि ओके लेकिन हम लोग ने पॉलिसी लगाया कहाँ पे है 10 और 20 पे सो वी शुड चेक ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 जो हम लोग ने पॉलिसी अप्लाई किया है दैट पॉलिसी इज देयर इन ब्रांचेस करेक्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक इन ब्रांच अगर यहाँ देखें शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन दूसरे ब्रांच में ब्रांच 2 में तो 10/4/20 यहाँ अगर आके और चेक करें 10/4/20 देखिए आया ना ये 20 का है नेटवर्क 10 के अंदर आपको 20 मिल रहा है लाइकवाइज अगर आप 20 यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं तो यहाँ अगर आप 10 में जाएंगे या फिर 20 में जाएंगे तो 20 में 10 आएगा करेक्ट सो इसका जो 10 का नेटवर्क है वो एक बार देख लेते हैं इसके 10 में है 10.3 है ना तो यहाँ अगर जाएंगे और करेंगे शो आईपी राउट VPN 20 पूरा देख लेते VPN 20 फर्स्ट 10.3 चाहिए हम लोग को देखिए 10.3 कहाँ से सीखा OMP से ये एडवर्टाइज हुआ VSmart को VSmart फिर सामने भेज रहा है ठीक है तो ये राउट लिख मतलब पॉलिसी तो इट्स वेरी इजी आपने देखा पॉलिसी 10 में 20 को मैप करा दीजिए 20 में 10 को मैप करा दीजिए मैं वो पॉलिसी का ना जो नोट्स है वो भेज दूंगा मेरे पास पूरा बना हुआ पॉलिसी का लिस्ट और पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन आपके रेफरेंस के लिए ओके ऑल राइट सेकेंड पॉलिसी करते वो भी बहुत ही आसान है दैट इज सर्विस चेनिंग सर्विस चेनिंग सर्विस चेनिंग का मतलब क्या है कि जनरली क्या होता है कि आपका जो ब्रांच का ट्रैफिक है वो MPLS या इंटरनेट होते हुए सपोज डेटा सेंटर की तरफ चला गया लेकिन सपोज डेटा सेंटर में अगर फायरवॉल है कहीं पे किसी भी लोकेशन में तो आप क्या चाहेंगे कि पहले ट्रैफिक फायरवॉल के पास जाए और फिर कहीं पे जाए तो एक तरह से ट्रैफिक रीडायरेक्शन है टुवर्ड्स सर्विस सर्विस का मतलब होता है कि फायरवॉल है IPS IDS है VPN है इस तरह का कोई सर्विस है ना तो सर्विस चेनिंग भी पार्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी में या फिर डेटा पॉलिसी भी हो सकता है मैंने कल आपको बताया था कि कंट्रोल पॉलिसी और डेटा पॉलिसी में क्या डिफरेंस है अगर कंट्रोल पॉलिसी बनाते हैं तो वो यूनिडायरेक्शनल है आपको दो जगह लगाना पड़ेगा लेकिन अगर आप डेटा पॉलिसी बनाते हैं दैट विल बी बाई डायरेक्शनल आप एक जगह लगाएंगे और काम हो जाएगा ठीक है तो हम लोग करते सर्विस चेनिंग उसके लिए भी आपको VPN और लिस्ट बनाने पड़ेंगे है ना ऑलराइट सो सबसे पहले तो हम लोग पॉलिसी में जाके और एक लिस्ट बना लेते हैं फॉर एग्जांपल साइट लिस्ट ऑल ब्रांच इसमें साइट आईडी ले लेते हैं से 300 से 400 इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं वेरी इजी ओके अब यहाँ से एक कंट्रोल पॉलिसी बनाते हैं से सर्विस चेनिंग और SCHAIN सर्विस चेन कोई भी नाम दे सकते हैं नाम में क्या रखा है ना सीक्वेंस में जाना पड़ेगा जैसे सब में आप करते हैं और आपको पता है कि कंट्रोल पॉलिसी में सिर्फ दो चीज है मैच राउट मैच ट्लॉक मैच राउट मैं करता हूं हाँ कंट्रोल पॉलिसी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है जब आप बनाएंगे तो इन के लिए अलग कंट्रोल पॉलिसी आउट के लिए अलग डेटा पॉलिसी बाई डायरेक्शनल है दोनों तरफ है बाई है बाई मीन्स दोनों साइड हाँ यूनि हाँ ठीक है सो मैच राउट और साइट लिस्ट क्या नाम हम लोग का से ऑल ब्रांच
एक्शन अगर लेंगे एक्सेप्ट, देखिएगा ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे कहाँ की तरफ, सेट पैरामीटर में मेरे को चाहिए फायरवॉल सर्विस है, देखिए ना फर्स्ट ऑप्शन फायरवॉल, और भी ऑप्शन है वीपीएन है, अगर किसी पर्टिकुलर वीपीएन को रीडायरेक्ट करना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। एक बार और डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट, डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट, मैं दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी। आपने क्या किया, एक लिस्ट बना लिया ब्रांच का, क्यों, क्योंकि यहीं पे आपको अप्लाई करना है पॉलिसी। कंट्रोल पॉलिसी है सर्विस चेन, वहाँ सारे राउट्स जो हैं जो ब्रांच के हैं उसको मैं फायरवॉल की तरफ भेज रहा हूँ। तो ये जो फायरवॉल है, अगर आप यहाँ जाके देखेंगे शो रन से VPN 10, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस दिया है सर्विस फायरवॉल FW फायरवॉल एड्रेस, इस लोकेशन में फायरवॉल है, ठीक है। तो फायरवॉल ऑलरेडी डिफाइन है हम लोग के कॉन्फ़िगरेशन में। अभी क्या करेंगे, हम लोग को अप्लाई पॉलिसी, साइट लिस्ट, ऑल ब्रांच, कंट्रोल पॉलिसी नेम, क्या नाम रखा हम लोग ने, सर्विस चेन, आउट, वैलिडेट कर लेते पहले। ऑलराइट, सो अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ, और याद है आपको ट्रेस राउट किया था हम लोग ने पिछले क्लास में, DC2 में जो नेटवर्क है, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, ये है आपका, ये याद है आपको, ये डायरेक्टली गया था कल, लेकिन अभी ये कैसे जा रहा है, ये फायरवॉल से होते हुए जा रहा है दूसरे ब्रांच में, ठीक है। और अगर मैं DC1 में जाऊं, कल तो लॉगिन नहीं हो रहा था, आज अप है एडमिन, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे DC1 का नेटवर्क, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, तो आप देखिए ध्यान से, ट्रेस राउट 133211 133211 ये गया सबसे पहले DC1 की तरफ। और अगर यहाँ देखेंगे शो रन VPN 10, DC1 में इसका फायरवॉल ये गेटवे है 130.1, सो 133 से गया गेटवे जो फायरवॉल के पास, फिर फायरवॉल से गया यहाँ पे, फिर यहाँ गया डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सर्विस चेन पॉलिसी सिंपली, आप देखिए अगर आप यूज करेंगे नॉर्मल सिस्को डिवाइसेस, कितना मुश्किल है उसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग और रीडायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो पॉलिसी आज हम लोग को पढ़ना है वो भी मैं बताता हूँ आपको, बट लेट्स सी आवर थ्योरी। सो कल हम लोग ने सी फ्लोट तक किया था, उसके बाद जब आप कंट्रोल पॉलिसी में आते हैं तो कंट्रोल पॉलिसी के अंदर जैसे आपको मिलेगा सर्विस चेनिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एक्स्ट्रानेट VPN, सर्विस एंड पाथ एफिनिटी, आर्बिट्री VPN टोपोलॉजी। तो सर्विस चेनिंग करने का मतलब कि हम लोग के पास स्लाइड्स है, लेट मी शो यू इन द स्लाइड, कि आप जो नेटवर्क है ना उसको, ट्रैफिक को आप फायरवॉल की तरफ भेज रहे हैं, फिर फायरवॉल से ये दूसरी तरफ या फिर कहीं तीसरी तरफ जा रहा है, तो आप ट्रैफिक को एक तरह से रीडायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स फायरवॉल, ये सर्विस चेनिंग का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद ये तो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने भी किया है। अभी सिंपली क्या करें, मैच राउट सेट टुवर्ड्स फायरवॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिटर्न ट्रैफिक के लिए भी रूल बना रहे हैं तो आपको बताया था कि कंट्रोल पॉलिसी 2 आपको बनाना होगा, एक अंदर से बाहर की तरफ
और एक बाहर से अंदर की तरफ। दो दो आपको पॉलिसी बनानी होंगी। रिटर्न ट्रैफिक के लिए भी एक पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये हम लोग ने किया। उसका ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग ने किया एक एक्चुअली एक्स्ट्रानेट पॉलिसी, ये हम लोग ने फर्स्ट किया। एक्स्ट्रानेट पॉलिसी अगर आप लीक कराना चाहें, देखिए VPN 1 है, VPN 2 है, आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि हम लोग vSmart पे एक एक्स्ट्रानेट पॉलिसी बनाएं ताकि VPN 1 को एक्सपोर्ट कर दें 2 में, 2 को एक्सपोर्ट कर दें 1 में, तो फिर अक्रॉस द फैब्रिक ये आपस में कम्युनिकेट करेगा, है ना। और एक्स्ट्रानेट, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जिसको भी आपको कम्युनिकेट कराना है उसके लिए रूल बनाना पड़ेगा ना, है ना, अदरवाइज कैसे पता चलेगा एक दूसरे को। ठीक ना, ओके। तो चलिए, आज जो हम लोग का लास्ट पॉलिसी है वो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है। यूज केस क्या है कि मेरे पास DC1 है, मेरे पास DC2 है, ऑब्वियसली ओवरले है जो भी आपका OMP। मेरे पास ब्रांच 1 है, मेरे पास ब्रांच 2 है। मैं क्या चाहता हूं कि ब्रांच 1 का ट्रैफिक DC1 को प्रेफर करे और ब्रांच 2 का ट्रैफिक DC2 को प्रेफर करे। उसके लिए आपको रूल बनाना है ना। अनटिल अनलेस, अदरवाइज क्या होता है कि फुल मेस है, कोई भी ट्रैफिक कहीं से भी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। लेकिन अभी क्या है कि स्ट्रिक्टली हम लोग बोल रहे हैं कि तुम DC1 से जाओ, इसको स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि तुम DC2 से जाओ। तो उसके लिए आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि ये जो है ना, साइट 1 से जाए और ये साइट 2 से जाए, अगर आप इस पढ़ेंगे नोट्स को। और लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो DC1 और DC2 के थ्रू किया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाए से ब्रांच 1, ब्रांच 2, DC1, DC2, 4 लिस्ट बना लिए। ओके, कंट्रोल पॉलिसी, 2 कंट्रोल पॉलिसी बना रहे हैं हम लोग। एक कंट्रोल पॉलिसी प्रेफर DC1, मैच राउट DC1, एक्शन सेट प्रेफरेंस हायर इज बेटर। बाय डिफॉल्ट सपोज 0 है, प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है, एक्चुअली 0 नहीं बोल सकते, बाय डिफॉल्ट कुछ प्रेफरेंस नहीं है, सेट कर रहे हैं प्रेफरेंस 100। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए रूल कितना सिंपल है कि प्रेफर DC1 सीक्वेंस 1 मैच राउट DC1। अब जब इसको लगाएंगे ना इस रूल को, क्योंकि देखिए 2 कंट्रोल पॉलिसी है, तो इसको लगाएंगे ब्रांच 1 पे, DC1 को लगा देंगे ब्रांच 1 पे, लाइकवाइज DC2 को लगा देंगे ब्रांच 2 पे। सेम इंस्ट्रक्शन है, सेम है। फिर अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, आप देखिए अप्लाई पॉलिसी क्या है कि ब्रांच 1 को लगा दिया DC1 के साथ, ब्रांच 2 को लगा दिया DC2 के साथ। दैट्स इट, इतने में काम हो जाएगा आपका, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बनाएंगे। 2 कंट्रोल पॉलिसी, अगर एक आपने सक्सेसफुल बनाया दूसरा भी इजीली बन जाएगा। सीक्वेंस नंबर 10 मैच राउट साइट, देन एक्शन एक्सेप्ट प्रेफरेंस। सो लेट्स डू इट, इसको करते हैं। ओके, होपफुली कि हम लोग के पास कोई पॉलिसी नहीं है, और शो रन पॉलिसी मैं रिमूव कर देता हूँ। नो अप्लाई पॉलिसी, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पॉलिसी लिस्ट साइट आईडी ब्रांच 1, सॉरी ब्रांच 1, और इसका जो साइट आईडी है वो क्या है, ब्रांच 1 जो है वो है 300। ओके, सो ऐसा करते हैं ना, DC1 से ही बना लेता हूँ मैं, तो फ्लो में रहेगा। DC1 साइट आईडी है 100, DC2 साइट आईडी है साइट
आईडी है 200, फिर है आपका ब्रांच 1, साइट आईडी है आपका 300, है ना। फिर ब्रांच 2 है जिसका साइट आईडी है 400। टॉप पे जाके आपको दिखा देता हूँ शो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। सिंपली साइट लिस्ट बनाया 100, 200, 300, 400, ब्रांच 1 2 3 4 5। फिर पॉलिसी में जाके कंट्रोल पॉलिसी, सपोज ट्रैफिक इंजीनियरिंग, लेकिन यहाँ पे हमको प्रेफर 1 और 2 करना है तो 2 बनाना पड़ेगा। तो बेटर आप ऐसे नाम दे दें से प्रेफर DC1, तो ध्यान में रहेगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस नंबर में जाना पड़ेगा। तो से सीक्वेंस नंबर फॉर एग्जांपल 100, मैच राउट, किसके साथ मैच राउट कर रहे हैं, किसका, तो भाई हम लोग साइट आईडी तो नहीं लेंगे, लेट्स सी, साइट लिस्ट हम लोग ने बनाया वो ले लेंगे। DC1 का राउट मैच करेंगे। ओके ऑलराइट, एंटर, एग्जिट करके इस पे एक्शन लेना होगा। एक्शन एक्सेप्ट सेट प्रेफरेंस से 555 फॉर एग्जांपल 555। ओके ऑलराइट, एक बार चेक कर लेते हैं। सो मैच राउट DC सेट प्रेफरेंस इतना, डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट। सो यहाँ से एक बार एग्जिट करेंगे, एक बार और एग्जिट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देंगे डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट। टॉप पे जाएंगे ताकि आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकूं। देखिए सीक्वेंस नंबर 100, मैच राउट DC नंबर 1, DC1 मतलब साइट आईडी 100, गिव दैट DC1 एज ए प्रेफरेंस ऑफ 555, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट। लाइकवाइज एक बार और पॉलिसी में जाएंगे, लेकिन इस बार जो पॉलिसी रहेगा हम लोग का वो होगा प्रेफर DC2। यहाँ पे DC1 के, हाँ हाँ, जैसे हमने देखिए ये मैच राउट किया हमने हम्म, साइट लिस्ट DC1 मींस जो भी DC1 के लिए राउट रहेगा वो 55 लेके DC1 की तरफ निकल जाएगा, बराबर। एक मिनट। ब्रांच में तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, हम लोग की जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जो हम लोग ने पढ़ा था DC1 और DC2। अभी क्या है कि हम लोग के पास टनल है इधर जाने के लिए भी और इधर जाने के लिए भी, और अभी क्या सब कुछ है बाय डिफ़ॉल्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो जब अपना बेस्ट राउट सेलेक्ट करेगा तो उसमें देखेगा कि AD वैल्यू क्या है, देन प्रेफरेंस वैल्यू क्या है, देन OMP प्रेफरेंस वैल्यू क्या है, Tloc प्रेफरेंस वैल्यू क्या है, ऐसे करके सब चीज़ देखता जाएगा। अभी क्या है कि ये दोनों डेटा सेंटर एक ही ISP अबे, वन हॉप अबे, आप सोच सकते हैं कि क्या है, ब्रांच है, फिर MPLS है फॉर एग्जांपल, और डेटा सेंटर है। तो आपका जो राउट है ना अभी इक्वल कॉस्ट है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो जो ट्रैफिक नीचे से आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल पाथ है, तो इधर भी जा सकता है इधर भी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ वैल्यू दे दें 555 प्रेफरेंस वैल्यू, किसके लिए, ब्रांच 1 के लिए, तो जब ट्रैफिक यहाँ पहुंचेगा, जब ये इसको डिसीजन लेना होगा, तो ये बोलेगा नहीं इसका प्रेफरेंस वैल्यू क्या है 555, तो इधर से चलो। लाइकवाइज जब ब्रांच 2 है वो देखेगा अच्छा अभी इस साइड में प्रेफरेंस वैल्यू क्या है, तो इस साइड में इसको 551 मिलेगा, तो बोलेगा इसको प्रेफर करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये लिंक नहीं है या राउट नहीं है तो ट्रैफिक जो है वो इससे नहीं जाएगा, वो जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस इसको है ना। आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, वेरी मच सिमिलर टू BGP, कि आप एक वेट और या एक लोकल प्रेफरेंस ऐसा दे रहे हैं ज्यादा, है ना। तो अभी दूसरे में क्या करेंगे, एक्शन एक्सेप्ट सेट
प्रेफरेंस सपोज 999 चेंज के लिए, एग्जिट एग्जिट, और एक डिफॉल्ट एक्शन हम लोग दे देंगे एक्सेप्ट। टॉप पे जाएंगे, शो कॉन्फ़िगरेशन, दो पॉलिसी बना है, एक DC1 के लिए, एक DC2 के लिए, ठीक है। अब आपको इसको लगाना पड़ेगा। सो अप्लाई पॉलिसी ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू साइट, साइट लिस्ट जो है वो है हम लोग के पास ऑल। ओके, अब ध्यान देखिए, अब इसको लगाएंगे ब्रांच 1 के लिए, कंट्रोल पॉलिसी के, हाँ DC1 हम लोग दे देंगे यहाँ पे, तो DC1, हालांकि आप क्वेश्चन मार्क देंगे तो बताएगा, प्रेफर DC1, ठीक है, आउट। एक बार और, एक बार, यस करेक्ट, 100% करेक्ट, प्रेफर DC2, आउट। इसको एक बार वैलिडेट करेंगे, B1 ने, इसको प्रॉब्लम, हाँ इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली, B1 DC2, B2 DC1, या अलग अलग ग्रुप बना के साइट आईडी का उसको ऐसे मैप करा सकते हैं। मान ले साइट आईडी 135 हो जाएगा DC1 से, साइट आईडी 9 11 16 33 हो जाएगा उससे, वो भी सब कुछ भी कर सकते, ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक एरर ये दे रहा है, B1 में इसको कुछ प्रॉब्लम है, सो लेट्स सी, कुछ मैंने अगर, अच्छा BR1 और BR2 दिया है क्या, BR1 और BR2 दिया है, DC1 और DC2 दिया है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो हाँ कोई बात नहीं, नो अप्लाई पॉलिसी साइट B1 B2, अप्लाई पॉलिसी साइड, बेटे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ब्रांच 1 है, और कंट्रोल पॉलिसी क्वेश्चन मार्क दे देते, प्रेफर DC1 दे देते, आउट, अभी सही है। एक बार एग्जिट करके साइट लिस्ट ब्रांच 2 कंट्रोल पॉलिसी प्रेफर DC2, आउट। एक बार वैलिडेट कर लेते हैं इसको, कमिट, ओके। सो अब जो प्रेफरेंस है इसका DC1 और DC2 है, तो मुझको एक ऐसा राउट चाहिए जो कि दोनों में कॉमन हो। DC1 ऐसा कोई है नहीं वैसे, बट नो प्रॉब्लम, विल सी। शो OMP राउट डिटेल। तो DC1 के तरफ जाने के लिए आप देखेंगे प्रेफरेंस वैल्यू, प्रेफरेंस को आप चेक करें, प्रेफरेंस एक एट्रीब्यूट है, ये देखिए, ये कौन सा, ये DC2, अगर 10-2 रहे ना तो DC2 रहेगा, 10-1 मतलब DC1। तो मैं जाता हूँ 10-1 में, देखिए ये 10-1 है, ये DC1 है, देखिए प्रेफरेंस सेट हो गया 555। लाइकवाइज अगर आप ब्रांच 2 में जाएंगे और आप चेक करेंगे शो OMP डिटेल, शो OMP राउट डिटेल, DC2 में प्रेफरेंस वैल्यू, सो ये DC1 दिखा रहा है यहाँ पे, DC2 देखेंगे, 10-2 का नेटवर्क देखेंगे हम लोग, 10-2 ये यहाँ पे है। सो 10-2 के नेटवर्क में प्रेफरेंस सेट हो गया 999, है ना। तो ये अभी प्रेफर करेगा DC2 को, और ब्रांच 1 जो है वो प्रेफर करेगा DC1 को, ठीक है। और अगर आप इसको देखेंगे इस तरह से, शो OMP राउट टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ आपको टैग वैल्यू देखना है जो हम लोग ने लगाया है, होपफुली टैग वैल्यू हम लोग को दिखे, ये देखिए टैग यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टैग आपको दिखेगा 555 टुवर्ड्स, देखिए डेटा सेंटर 1 है, 10-1 मीन्स डेटा सेंटर 1। इवन आप चाहें तो इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, इंक्लूड 555
ठीक है, अब देखिए ये सिर्फ 555 वाले टैग आपको दिख रहे हैं और DC1 सब DC1 दिख रहा है, सब DC1 को प्रेफर कर रहा है। देखिए फ्लो जो है ना, डेटा फ्लो जो है ना, वो ब्रांच टू ब्रांच है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जो ट्रैफिक का फ्लो होता है ना, वो ब्रांच टू ब्रांच होता है। कंट्रोल प्लेन से ना आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिलता है। जो डेटा फ्लो है अभी, डेटा फ्लो IPsec टनल के अंदर इधर ही होगा, लेकिन जो पॉलिसी अपडेट है वी स्मार्ट भेजेगा आपको OMP अपडेट, और उस अपडेट में इसको पता चलेगा कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है नीचे से उसको प्रेफर करना है 555 टैग लगा के भेजना है DC1 से, ऐसा। लेकिन ये अपडेट मिलेगा OMP से, लेकिन एक्चुअल जो मूवमेंट है डेटा का वो IPsec टनल के अंदर साइट टू साइट है। करेक्ट। सो एक, हाँ हाँ बोलिए। DC2 के थ्रू कैसे जाएगा? अगर हम लोग इसको यहाँ प्रेफर कर रहे हैं, हाँ DC1 के थ्रू जाएगा। अगर सपोज आप इसको भी पिंग करते हैं या ट्रेस राउट करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये 10.2.0.1 और 10.2.0.2 है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेस राउट करता हूँ DC2 को। अब देखिए ट्रैफिक कैसे मूव होता है। ठीक, तो DC, हाँ हाँ, इसके पास तो दोनों राउट है ना, इसके पास दोनों राउट है, हाँ दोनों राउट है, लेकिन उसको प्रेफर कर रहा है, उसको प्रेफरेंस की वजह से उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है। राउट तो दोनों है इसके पास। सो अगर आप यहाँ से जाके ट्रेस राउट करें से VPN10, और ये DC डेटा सेंटर 2 का IP है। ठीक है, देखिए डायरेक्टली नहीं गया, ये इधर से होते हुए जा रहा है। ये, हाँ मतलब ये डेटा सेंटर 1 होते हुए ही ये जाएगा। एक्चुअली इसका टेस्टिंग करने के लिए ना आपको एक राउट चाहिए था बिहाइंड दी DC1, यहाँ पे कुछ चाहिए था। तो हम लोग यहाँ से जो ट्रैफिक भेजते हैं ना, तो पता चलता कि इधर जा रहा है। ओके, लेकिन आपने देखा टैग वैल्यू सेट हो गया, और टैग वैल्यू जब सेट होता है तो जहाँ उसको प्रेफर करना हो उस डायरेक्शन में उसको प्रेफर करता है। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए ये तीनों पॉलिसी, आज हम लोग को यही 3 पॉलिसी करने थे। अगले क्लास में हम लोग के पास 2 पॉलिसी और है, ऐप राउट पॉलिसी और लैब नंबर 5 करना है हम लोग को। जो आपको एक IP एड्रेस शेयर किया, उसमें एक लैब नंबर 5 बचा हुआ, मतलब जो पॉलिसी हम लोग ने किया उसको GUI से कैसे करेंगे। तो ये 2 लैब करेंगे तो हम लोग का पॉलिसी सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर छोटे मोटे चीज बचे हैं, लाइक क्लाउड इंटीग्रेशन, हाई अवेबिलिटी, ये सब तो विल सी, हम लोग देख लेंगे उसको। ठीक है, आज रहने देते हैं। आज वो भी नहीं है, उसने ज्वाइन किया क्या? नहीं ज्वाइन किया, तो आज रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है, मैं अभी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। आपको कैसे एक्सेस करना है पता है ना? नहीं, अगर पता है वो इंस्ट्रक्शन भी मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। आपको क्या करना होगा ना कि सबसे पहले आपको एनी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो मैं URL दूंगा उससे आप एनी कनेक्ट में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड देके। आपके पास एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं है क्या आपके लैपटॉप में? ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा आपको एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे एनी कनेक्ट करने के बाद फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड मैं पिंग करूंगा। उसको करने के बाद आपको RDP करना पड़ेगा। आपको
ये 198.1.8 ये मैं डिटेल भेज दूंगा, इसका यूज़र नेम पासवर्ड, तब आपका जो हम लोग का पेज खुल रहा है अभी वो ओपन हो जाएगा। उस पर सारा लैब एज इट इज़ है, कल भी हम लोग ने यूज़ किया था, आज भी किया। मैं अभी विद इन 5 मिनट आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिए आज, ठीक है ना। और मोस्ट प्रॉब्ली वी हैव क्लास ऑन ट्यूसडे, अगर आप और दोनों रेडी होंगे तो ट्यूसडे को क्लास करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। ओके, कब आ रहे हो वापस जॉब पे? अभी घर पे ही है ना? अच्छा अच्छा, वापस आ गए, बैक टू मुंबई। चलिए, तो बुलेट ट्रेन से आए क्या वापस? बुलेट ट्रेन बन रहा है ना अहमदाबाद से, उसके लिए कैंसिल है क्या यार, कुछ करने ही नहीं देते मोदी को ये लोग, तो गजब है यार, इंडिया कभी तरक्की नहीं करेगा। यही हाल रहा है ना हम लोगों का, देश का, कभी तरक्की नहीं करेगा, ऐसे ही सब भूखे नंगे रहेंगे जिंदगी भर। समझता है यार, सब लोग समझता है, वो खाली गलत मीडिया में वो सब कर रहे हैं। अभी जो इलेक्शन हारे ना, वो ऐसे भी हारने वाली थी, जैसे राजस्थान में ना बहुत खराब हालत था उसका, वसुंधरा राजे का। और एमपी में तो 15 साल था, 15 साल का तो होता ही है ना एंटी एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, वो होता ही है, छत्तीसगढ़ में हर साल होता है, हर साल सरकार चेंज होती है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, लोग अगर नहीं सुधरेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता देश का, वैसे ही रह जाएंगे सब लोग। पहले तो यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई एक रूल बनाना चाहिए। इंडिया का पता है, मेरे को लगता है ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो है पॉपुलेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। कोई देखना ही है, कोई अगर कुछ बोलेगा बस उसमें भी फिर हल्ला करने लगेगा, कैसे है, ये है, वो है। लोग यहाँ है ना, क्या बोले यार, बहुत कंजर्वेटिव है, ओपन माइंडेड नहीं है लोग यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, ओके, विल सी, मैं आपको सारे डिटेल्स भेजता हूँ और रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ। पैकेट वाइज ट्रैफिक इंजीनियरिंग तो नहीं आएगा, आप चाहो तो अब मैं लैब शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप चेक कर सकते हो जो आपको करना है चेक। हाँ वो, हाँ 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 वो आएगा, वो आएगा, यस करेक्ट, हाँ वो है। उसके लिए मैंने एक पूरा एक सेशन सेव रखा है, अगले क्लास में आएगा। ऐप राउट पॉलिसी उसको बोलते हैं, कि अगर आप चेंज कर देते हो लेटेंसी या जिटर, तो वो इंटरनेट की जगह एमपीएलएस से जाएगा, एमपीएलएस की जगह इंटरनेट से जाएगा, वो हम लोग को करना है। उसको हम लोग ऐप राउट पॉलिसी बोलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हम लोग करेंगे अगले क्लास में। ओके, ऑल राइट, विल सी, चलिए मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू देन। ओके, थैंक्स। I'm going to cover Tloc extension reporting in terms of vanalytic and then the API call. So let's start with Tloc extension. What does it mean by Tloc extension? Now when we are talking about Tloc extension, if you see your control connection at the moment, and let me draw as well. Here you can see the control connections that we have. I am here in VH branch 1, so how it look like. Let me draw here. I am in say VH1 branch 1, and then I have two ISP, say MPLS and internet, and then I have my VS Smart, vManage, vBond, all these control devices or control plane devices. Now here you can see that to reach to VS Smart, because I have two VS Smart, so I can go over MPLS internet, MPLS internet, and then I can finally reach to the vManage as well. That means here I have total, if I remove any of the VS Smart, so let me remove one of the VS Smart.
or okay, no problem. We can think this as a 1, 2, 3. So here I have 2 control connection, here 2, here I have 1. Means I have total 5 control connection. That is with respect to what? That is with respect to VH1 branch edge 1. Now if I see the interfaces, so let me quickly show you the interfaces as well. If I type show interface description, and interfaces over VPN 0. So inside VPN 0 you can see that I have 3 interface. One is system, so exclude that. I have 3 interface, but these 2 interfaces, gig 01 and gig 02. So let me draw one more time. So it's very interesting that inside branch I have say V edge 1, I have say V edge 2, but the connection they have, the connection is something like this connection is going towards, say if this is MPLS, and this is going towards say internet. This IP here is 172.168.3.2, and this interface is gig 00. So physically I have only one connection going towards MPLS. Here also if I go, that is my branch 1 VH2 or VH2. If I type show interface description, you can see here I have interface, 3 interface, gig 0, 0, 1 and 2, and if I draw that, then you will find that this is gig 0, 0, IP is say 100.64.3.2, sorry for that, but it is 100 say 64.3.2. It's like something like that. 100 means internet, 172 means private MPLS IP. Now here you can see that one physical interface going towards ISP, and I have 2 interfaces, say gig 01 and gig 02. Actually they are back-to-back connections. So here I have gig 01 going to gig 01, gig 02 going to gig 02. It's like that. Now what is the configuration here? But if you see the show control connection, you will find that is still you can reach via 2 control, although physically you have only one connection. But if you check show control connection, you'll find that no, you have 2 control connection to reach to any of the control device. So how it is? It is possible that virtually we are extending internet control towards MPLS, and virtually we are extending MPLS control over internet. And for those, so for one control connection I am using gig 01, one extension of control connection I am using gig 02. Okay, and these are the back-to-back connection. Now suppose if you have only one interface, at that time you can create some sub interfaces as well, like 10, 20. Okay, so those things are also possible. So here you can see that you are paying for one link, but still you have reachability over 2 links. That is the Tloc extension. How it can be configured, let us check that. So if I go here and if I type show run, because my interesting interfaces are 01 and 02, where I am doing the Tloc extension. So you have to type gig E0/1, otherwise it will not take. Now here you can see that this is the interface. I am giving the IP address here. I don't have any configuration for Tloc.
But if I go to 02, so how the IP addresses are configured? Say, let's see that VH1, VH2, two connection. They have actually three. One is going to ISP. We are on branch 1 VH1, and gig 01 is having IP set 10, 20, 20.2. So obviously here we have 1, here we have 2. We'll check that. And here we have 10, 10, 10. Here we have 1. Here maybe we have 2. We'll check that. So we have IP 10, 20, 20. We have IP 10, 10, 10, 1. And obviously here 172 something, here 100 something. This is the IP schema here. Now, over gig, so this is say gig 01 and this is say gig 02. So over gig 01, I am simply giving the IP address. Nothing is there, correct? But over gig 02, what I am doing, I am extending the Tloc. So whatever control I have over this interface, that is gig 00, I am extending this from 02. Okay. So what does it mean? That MPLS control you are extending towards this internet. Now likewise, if you go here to 01, you will find I am extending the Tloc over 01, like that. So let me go to this device and see the gig 0/1 configuration. So I'll go here and will verify show run VPN 0 interface gig E0/1. See, now suppose if I remove this, for example, suppose if I go here and if I remove this, then what will happen? That means from here you are not extending the control. That means if I go here on VH1, if I type show control connection, it will show only one control connection. That means it will show one control connection towards vSmart 1, one towards vSmart 2, one towards vmanage, and that control will be over MPLS. So let me do that. I'll go here, I'll go to VPN 0 interface, say gig E0/1, and I'll do no Tloc extension gig E0/0, commit and quit. Now here if you check show control connection, here it will show you all 5 connection. Why? Because I am sending the control from 1 to 2. So here you have everything, say 1, 2, 3, 4, 5. But if you go to branch 1 VH1 and here if you type show control connection, here you will get only 3. 1, 2, 3, 4. Let me clean the, it will tear down. 1, 2, 3, 4. Still they are going to connect because we have removed one of the control, so it is updating the vbond and then it will update the VHs. So to reach to 12, 12, 12, how can I go? Internet. This should not be there. This should go, because now I am removing the Tlocs from the internet. Now because we have some sort of OMP from vSmart 2 as well, that's why it is showing. So what I will do here,
I will remove one of the VSmart. Okay, I'm going to remove one of the VSmart. So far I hope that you understand this concept, how to extend the Tloc or how to remove the Tloc. Any doubt in that you can ask. Okay, so let me detach the VSmart. So we'll not get any control from 1 to 2. Even VSmart can also share the control connection to other VSmarts. But here you can see that other VSmart we have only one control connection. It is directly over the physical interface, that is the MPLS. Okay, so let me log to VSmart number 2 198.168.1.22 SSH. This is the VSmart number 2. If you want to remove the control plane, simply you can type no OMP. If you disable the OMP shutdown, if you disable the OMP, obviously your control will go. So still they have the last known configuration, and once they update the database, then we'll find that it is not there. Let me clear the control connection, and then still it is on the way. But you can see that the number of control connection has been reduced. It should not show this 22, because 22 we have removed actually. Anyways, let me do VPN 0 and interface ETH0, shut down, commit and quit. I completely disabled. So you can see here the difference in this output and in this output. Okay, so once the database converges, then we'll find that clear control connection. Here we have extended the Tloc, but on the other side we have less connection. Show control connection. So 1, 2, 3. vBond we can exclude. And show control connection. Just a minute. Okay, so MPLS. You understand here, na? It's okay. So if we see show run, say VPN 0 interface gig 0/1 0/2. So from here we are not extending the Tloc, but from here we are extending the Tloc. So likewise we have this output. Anyways, this should not show because now the VSmart is completely down. If you just want to clear the connection, you can do clear control connection just to clear the connection.
and then you can check the show control connection. Wow. It is re-establishing the connection. So first of all it will authenticate with vBond and then it will go to anywhere. So here you can see only MPLS. Now we don't have any internet connectivity. Okay, so let's move further, and the next topic is actually very easy. That's the vanalytic. How we can take the reports inside the Viptela fabric. For that we have, let me show you here, that if you go to the vManage dashboard, if you go to the settings, administration and settings, then you will get one option to enable the vanalytics. See here I have option, I can click edit, I can click enable, and whatever password username you have you can give that, and then it will enable that. So but this password is something that you will get. How you will get? Let me show you. So to get that username and password, you have to send one email to support@viptela.com, and that is the first requisite. Second requisite is that you should have DNS configuration inside VPN 0. That means you can reach to the cloud, because this vanalytic is not hosted in our environment, it is hosted in the cloud. Okay. Now there are some. Okay. So is it mandatory to have that DNS? Yes. Or it will not work? Yes, it will not reach to the cloud. So Okay. that's the requirement. Okay. So likewise you can go here and in the reporting the last, and then you can launch the vanalytics. It is telling some pop-up blocker. I want to allow. So if I click here, it is going to sign in somewhere, but I'll show you. I have vanalytic. Maybe from here we are not able to open. Demo. Okay, I log into other vanalytic. So likewise you can enable and you can start. It will ask you your corporate username and password to open that. Now we have some limitation in vanalytic that I got one question actually from one of my colleague, that can we get the app wise utilization report, can I get the service based utilization reports such as PLM, video conferencing, telephone, IP based, can I import export basically in MS or PDF format, percentage utilization for the traffic, the minimum graph output, means in short, can I get the robust information? The answer is no. We have some limitation in such type of report. So that's why generally companies, they are integrating with Live NX, this tool, where you will get all sort of reports. Here I taken from the Live NX book. You can see here all these reports you'll get from Live NX. Apart from that, long-term email notification, custom dashboard, all those options are there with this Live NX, and now they have successfully integrated with the SD-WAN as well. Initially it was integrated with iWAN, now it is integrated with SD-WAN as well, and this is some other company, Live NX company, who is doing all sort of reporting type of things. So you have very robust reporting tool, Live NX. Now what we can do with vanalytic, we can have the applications, network health, network availability. That means we have only these three options: to check the applications,
to check the network health and availability. So I have one vanalytic. Let me log in here. Okay, so if I go here to the launch vanalytic, it should log in. Then we can check the reports. You can see it is redirecting to Analytics Viptela dashboard, and this is the dashboard where you have, say, network availability, application. Inside network availability itself we have WAN performance, so we have three things, correct? The availability inside network, you have availability and health, and then application. We'll drill down all those things, we'll check everything. Okay, so say inside network you can see health, availability, correct? And then you have, just a minute, let me, now they have made it actually good. What version we have? This is actually one of the recent one dashboard where we have a 10333. Not only we have VH but we have ISR as well. Okay, alright. So in, let's refer our PPT as well because I made like this. So you can check the application health and availability, no problem on that. How we can create, you have to send the mail and you need to set the DNS value. If you go to the dashboard, obviously like any dashboard, so here you can see in the dashboard on the top you have this menu option where you can check the network health, availability, bandwidth, performance, and anomaly, top utilization forecast. And in the top itself you can go inside network application forecast. You can change the theme. Okay, and here you can see I'll come to everything one by one. Let's go back. 5 slides will cover here and then I'll come back. So you can see here now they have changed a bit. It was 17 dot, this particular snapshot is 17.2 dot something. Now we are checking inside 18.33. Okay, so you will get the network availability, the applications, the WAN performance, all those things. So I'll go one by one to all those places. We'll click, and then say in terms of loss latency jitter, it is termed as a Viptela quality of experience, QoE. Index is from 0 to 10, and this is something that you can check your application performance. So in the bottom you can see that the 6 or 7 is not good, 8 is good, 9 is very good, 10 is excellent. Like that they have quality of experience indexes in between 0 to 10. 0 means very bad, 10 means very good. Then you can generate the report, say in terms of PDF. We'll check that as well. You can check who is the top talker, who is the least talker, so those things are there. You can check the anomalous application families. So let's go back and let's check one by one. Oh, wow. So let me go to the dashboard first. You can press escape, so you can come here.
We are inside network. Inside network, what option I have? Network health, network availability. Now, inside network health, you can see carrier, V-edge, tunnel. So I can click here to carrier. I can scroll. You can see here performance by V-edge. So I have various V-edge devices and the performance is showing there. The carrier performance. So carrier, V-edge, tunnel. Then we have loss, latency, jitter. So very much like you can click and you can check. I'll share this credential with you. You can also check from yourself. Then you can go to the availability. Inside availability also you can see the site ID, days, number of hours. So here also we have VH, circuit, past week, month. If I click here to the V edges, you can see here the name of the V edge. So AWS remote site, AWS Azure. These are the host name. This is I think the different. But anyways, we are checking the reports here. You can see that it's very much that you can go click, you can check health availability, then you can go to the applications. Let me go back to the application as well. So in the application, what are the things that I can check? I can go and check the least performing application, who is taking the most bandwidth, the anomalous families. So let's go back. I'd say one of the easy thing that you can do. Okay, so you can see that. Then here you have the performance. Then here you have the anomaly. File server has some anomaly. Okay, past week, 4 hour. Let me go back to the slide. Like that you can just go on, click, check all those things. On the top also you will get the option to download the report. Here we may not get that because this is a type of demo environment. Yeah, it's actually the demo that we are checking here, but on the top you will get the download option, so you can download that. Okay, let's go back. So apart from network health, network availability and the applications, you don't have other options. So you can check the network health like this, loss, latency, jitter you can check. Then you can check the availability as well. Okay, I'll share this particular document. You please just have a look. Maybe in future if you have to generate a report, you can take a reference from this, and there are some limitations that you can check just for your hands-on, or just you want to familiarize with the dashboard. You can go to this particular site and you can check all those things. Yeah, sure. I'll take a look. Okay. Okay, so we'll move. It was one of the easiest topics, so I thought cover it. I will upload all these documents today, and we'll discuss about that later on if you have any doubt. Okay, let's move to the next topic. This is also very easy. This will also take less amount of time. This is something like API calls. Now in a bigger environment, we can do n number of things with the API. So first of all, let me discuss that how exactly this API is built, what is the architecture of API,
if you know about the RESTful or REST APIs, the same thing that we can do with our Viptela MNS as well, NMS as well. So we can integrate the vManage with the RESTful API, third-party software from where we can send the instruction, and with that API is called whatever. Whatever means say certificate management, configuration, inventory management, monitoring, real-time monitoring, troubleshooting. All these things we can do with help of API. Now suppose if you have not integrated with the third-party API, so we have option that inside that Viptela vManage itself, it has n number of APIs. Okay, and from where we'll get, I'll show you that from where we can check all those APIs. Before that, let's quickly discuss about how this API works. Even if you see any of the HTTP calls, they are using get, put, post and delete. So these are the methods for the API. Get means you are retrieving some information, put means you are updating some information, post means you are creating new object, delete means you are removing the object. So it's very straightforward actually. Get, you are getting, post you are creating, delete you are deleting, put you are updating. So actually in general we are doing only these 4 operations for any infrastructure. That means what generally we are doing, so we are updating the database, we are getting some information from database, we are creating new objects inside the database, and we are deleting. So it's like you can think object life cycle, something that you can update the object, you can get some information, like whenever we are opening new page, how it is happening. So whenever you are typing say HTTP something XYZ, we are sending the GET request to the web server. Web server means we are getting only this web page, but behind the scene they have some applications running, and behind the scene they have the database where everything is stored. So if you post something, new element inside the database will be created. If you put something, means you are updating the object inside the database. If you delete, you are deleting something from the database. It's like that. So likewise the APIs will work. We'll see that today, that how we can do all these things. Okay, so inside API some terms are there, and what we can do with the API in Viptela, we can do administration, certificate management, configuration, monitoring. All these things we'll do. I'll show you the example. We can do the real-time monitoring, troubleshooting as well. This is again the structure of database. So we have a scalar, array, object. These are the methods. We'll see that all these methods. Okay, so if you want to open the API document inside your Viptela fabric, then you have to go to your dashboard and you have to put the vManage IP here, and then the port number. If any proxy is there, you can use that port number. Otherwise simply you can give the vManage IP and the API docs. This is the folder inside vManage, say API docs. If you go there, it will open all the APIs. Okay, once the API will open, then we'll see that we have data services. So suppose if I am using this particular API just to request the information, so list all the network devices, not from the vManage, from API. How I can get? I can use this API, say data service / device, health status of hardware, data service, device. These are the API calls. Okay, so data service, device, hardware, like that. Likewise you can see that we have list here.
status of device, interface stats, DTLS control status, OMP control status, all these things we can see. So I'll show you all these examples. We can do the REST call, and we'll see this. I'll show you all these things. We can do all sort of stuffs with help of API. So let me call, I'll build some of the API, how you can build that. So suppose I want to check, let me go back to the list. So I want to check all the devices. Let me copy this data service / devices. I'll scroll down here. So you have to give the command from here, https 198.7.8.1.10 / data So your API will start like this: https, then the vmanage IP, then the data service device, like this. So up to vmanage data service you have to give, then only your API will work. So I can go here as well, and here also you can see, but I'll come back to all these things, the APIs. I want to list the devices inside the vmanage. Now once you do this, this will not give you that format that we are using. So what format output you have? So if you give the input, your output will be in the JSON format or some other web browser format. So if you check this document, you'll find somewhere I have mentioned that in which format you will get the output. It is in JSON format or some HTML format output you will get. So I am giving this input, I am giving one API call, and this API call will generate the output. Even here also I can give that, because in my VPN is connected. So here you can see that JSON raw data header, and it is listing, it will list you all devices, but obviously it is in this format only. It is showing you VH 1000, 2000, 100. Now if you want to send this particular output in some other format, so for that some programming skills required in your organization. Some programmer, they will make this in some other format of reporting. They can take this as a input and they can generate some other sort of output. Okay, so let's generate 2-3 more API call, and then we'll discuss more about that. These are only the outputs that we are seeing here. Suppose if you want to see the orchestrator summary, this is the CLI equivalence, this is the API equivalence. Suppose if you don't have CLI access, you can use the API things. So OSPF calls, I have some OSPF. So what I want to do show IP OSPF database, for example. Here I have to give the vmanage IP. Let me give the vmanage IP. Say 198.168.1.10, and then device ID you have to give the system IP. So what's the system IP? I know that data center 1 is running OSPF, so I have given the system IP of DC1. I can go here and I can paste the output. It will give you show IP OSPF database. You can see here the VPN, the area, LSA, all those things. Obviously it is in some other format than the CLI output, but you will get all those information. And
and the alarms, and there whatever you can do with CLI you can do with the API calls as well. Now let me go back to this particular place where I have the API doc. Now this is the document that you can refer. So suppose if you have to do, if you want to do some configuration, here you can see that we have the document for say SSH, telnet management, device actions, then configuration, all sort of configuration, then monitoring, then certificate, then troubleshooting, then real time, then administration. So suppose if I want to see some monitoring stuff, like suppose let's take an example for monitoring. So events, I want to check the events. So API for the events or say interface stats is very easy. So let's check this first, interface stat. Now here you can see that we have method. If you want to get the information, you can click here get. You will get the interface status. Obviously you have to give the system IP. If you want to create some new, you can post get post like that. So with respect to interface, we have interface, page, aggregation, CSV, do count, all those things are there. Let's check this get first. So I'll go here, I'll click to get. I want to query say 10.1.0.1. it's one of the VH data center VH. Try it out. Now here you can see carefully that it is showing the equivalence data service of this particular query, correct? So I can copy this, I can paste here, and then it will show you okay, invalid, okay, then it will show you the output. Otherwise if I scroll down, it's denied. So it is this particular output is not working, but likewise we can get those outputs. So let me go through some other easy one. So suppose I want to check about OSPF. I can type OSPF here, click explore. It's not that helpful, correct? It's Control F you can do all the time. Just a minute, it's a bit slow. It's a bit slow. It is loading. Okay, so you can ask anything if you have in between, although this is the place from where you can get the API. Real-time monitoring, say OSPF. I have get OSPF routes. I can click here. It's showing you what's the schema it has, how the program look likes. It's the same. It's the same interface in the in ACI or any of the SDN who is supporting RESTful configuration. So I can give the device ID here, say 10.1.0.1, and then I'll click try it out. It will generate the URL for me. I'll copy and I can paste it. Here the response code also we can see. I can go back here, paste. It is showing this. Okay, so this was the API. These are the small things I just wanted to highlight. I'll share all these documents and the recording. Okay. Yeah, sure. And if you have anything related to REST API documentation also, can you forward that? Because I'm very new to this topic. Okay, no problem. So REST actually generally people are using if they have very large infrastructure.
Otherwise, we manage is self-sufficient. Even some clients having more than say 5000 BH, they are not using the REST APIs. It's something like if you have very big infrastructure you can use, but still we have to study this REST API because everywhere these APIs and calls are in use, so we have to learn this as well. Okay, I'll share the document, although I do not have document for REST API, but I will try to get and I'll share that. These things I'll upload, the PPTs and the videos for sure. Okay, tomorrow we have class. Tomorrow actually I have one. Hello. Yes, Ratnesh. Yeah, tomorrow we have one major activity in the morning. So tomorrow I cannot guarantee at the moment that we can have class. Is it okay? Yeah, sorry, I was on mute. Yeah, it's okay. It's okay. Now. If anything is there, I'll update 50 minutes prior to that. Okay, no problem. Because the next topic is also very easy. You don't need any anything, any lab or something like that. So I just want to cover QoS, quality of service, and access list. These are very similar to Cisco. So I will update before 30 minutes. If things will settle down, I'll message before 30 minutes that we can do the class. Okay, yeah, no problem. Okay, thank you then. I'll upload all these things. Okay, thank you. Bye bye. Sure. Thanks, Ratnesh. कोई भी तो कुछ तो बोल रहा है, आवाज जो है वो रुक रुक के आ रही है. म्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, सो अपने साइड से म्यूट कर लीजिए. रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने. हाँ श्योर. ऑलराइट, फिर करेंगे Tloc एक्सटेंशन. उसके बाद अभी तक हम लोग ने जितने भी पॉलिसी बनाए वो सारे CLI से बनाए हैं. आज हम लोग उसी को GUI से, ग्राफिकल इंटरफेस से कैसे बनाते हैं वो देखेंगे. और फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐप राउट पॉलिसी. ठीक है, तो ये सारे काम हम लोग आज करने वाले हैं. ऑलराइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राउटिंग और उस पॉलिसी से. फिर Tloc एक्सटेंशन और प्लस एक ऐड और कर रहा हूँ यहाँ पे VRRP. जैसा हम लोग ने सिस्को में पढ़ा है उसी टाइप का इसमें भी होगा. सो VRRP भी करेंगे. 5 टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहले करते हैं राउटिंग, Tloc और VRRP. फिर से हम लोग आते हैं ऐप राउट पॉलिसी और दूसरे पॉलिसीज में. आपको मैं शेयर करूंगा लैब क्रेडेंशियल कि आप लैब कर सको, और दूसरा चीज कि आप इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको आप अपने पास सेव कर लो डाउनलोड करके. वो आपको आगे चल के काम आएगा. ओके, सो ब्रांच 1, ब्रांच 2, DC1 इतना काफी है राउटिंग समझने के लिए. राउटिंग और OSPF पहले आपको समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो मेरे पास ब्रांच 2 है. ब्रांच 2 को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ब्रांच 1 के बाद. सो मेरे पास ब्रांच 1 VH1, ब्रांच 2 VH1, ब्रांच 2 VH1 और DC1 VH1 है. अगर हम लोग जाएंगे ब्रांच 1 में और देखेंगे शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, तो आप देखिए VPN 0 के अंदर 3 इंटरफेस है, गिग 0, 01, 02 और एक सिस्टम भी VPN 0 के अंदर है. ओके, सो VPN 0 के अंदर जो इंटरफेसेस हैं 00, 01 और 02, आपको लगेगा कि ये आईपी तो ठीक है 172, बाकी ये दोनों जो आईपी हैं 1010 और 1020 ये दोनों Tloc एक्सटेंशन में यूज हो रहे हैं. सो व्हाट डज इट मीन? अगर मैं जाऊं शो रन VPN 0 इंटरफेस गिग 0/0, हाँ VPN 0 के अंदर सब WAN आईपी है, करेक्ट.
आपको गिग ई लिखना पड़ता है 0/0 क्योंकि ये केस सेंसिटिव है और सिस्को जैसा नहीं है। तो आप देखिए गिग 00 जो आपका एक इंटरफेस है वो किधर जा रहा है, वो आपका जाएगा MPLS के अंदर या इंटरनेट के अंदर, वो हम लोग चेक कर लेंगे। MPLS के अंदर जा रही है। तो हम लोग का जो डायग्राम है उस हिसाब से, जैसे ब्रांच 1 VH1 और ब्रांच 1 VH2, हाँ इसका मतलब है वो प्रेफर कर रहा है VH2। सो ब्रांच 1 VH1 और ब्रांच 1 VH2 ये दो VH है, MPLS है और इंटरनेट है कनेक्टेड। इसमें इंटरफेसेस आप देखिए गिग 000102, तो ये इंटरफेस है आपका गिग 0/0। इस पे जो आईपी है वो कौन सा है, वो है 172.168.163.2। मतलब यहाँ पे जो डिवाइस होगा वो 3.1 होगा क्योंकि /30 है। ये MPLS और प्रेफरेंस कितना दिया हुआ है 200। इनकैप्सुलेशन है IPsec, करेक्ट। सो ये सारे पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा दो इंटरफेस और है यहाँ पे, गिग 01 गिग 02, उसको देखते हैं वो कहाँ पे है। सो इसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे और अप एरो करके गिग 01, ध्यान से देखिए गिग 01 का कॉन्फ़िगरेशन। गिग 01 नेटेड आईपी है क्योंकि आप अपना जो प्राइवेट एड्रेस है उसको डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कर सकते इंटरनेट पे, करेक्ट। आप उसको नेट करके डालते हैं। तो ये जो आईपी है गिग 0/1, ये नेटेड आईपी है 10.20.20.2। इसमें भी प्रेफरेंस 200 है, इसमें भी 200, मतलब दोनों सेम प्रेफर हो गया। अगर इसको 400 कर देते तो ये ज्यादा प्रेफर होता। इसमें भी प्रेफरेंस 200 है, लेकिन ये क्या है, इंटरनेट है। लाइकवाइज एक और इंटरफेस है 02। 02 में आप देखिए 02 जो है वो यूज हो रहा है Tloc एक्सटेंशन में। तो इसका क्या मतलब है, पहले 01 को ड्रॉ करता हूं फिर 02 पे चलते हम लोग। सो एक और इंटरफेस है आपका गिग 0/1 जिसको नैट करके डाला गया है। इसका जो आईपी है वो है आपके पास 10.20.20.2। ये जा रहा है इंटरनेट की तरफ। दोनों पे प्रेफरेंस 200 है, इस पे भी 200 है प्रेफरेंस। लेकिन एक और आईपी है यहाँ पे, वो आईपी क्या है, ये कनेक्शन है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये इस डिवाइस VH1 और VH2 के बीच में एक कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इंटरफेस है गिग 0/2, इधर भी रहेगा गिग 0/2। गिग 0/2 पे जो आईपी है वो है 10.10.10.1। इस साइड में देखेंगे, जब इस पे लॉग करेंगे तो इस साइड में देखेंगे 02 पे क्या आईपी है। ओके, सो तीन इंटरफेस है, MPLS 172 समथिंग, इधर है आपका 1020, यहाँ पे किया हुआ है नेट। इस तरह से हम लोग का एक जो आपका ब्रांच है वो सेट है। ऑलराइट, सो अब अगर हम लोग यहाँ पे जाके चेक करेंगे शो कंट्रोल कनेक्शन, अब देखिए वी स्मार्ट, क्योंकि एक ही वी स्मार्ट है मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, दो वी स्मार्ट था, एक मैंने डाउन कर दिया है। आप छोड़ दीजिए वी बॉन्ड के साथ परमानेंट कनेक्शन नहीं रहता है। तो मेरे पास कितने कंट्रोल कनेक्शन है, वी स्मार्ट और वी मैनेज के साथ समरी करके होता है कनेक्शन, ठीक है। तो एक वी स्मार्ट के साथ, एक वी स्मार्ट के साथ, एक इंटरनेट के ऊपर और एक MPLS के ऊपर, दो कनेक्शन है। इंटरनेट के ऊपर है और एक MPLS। आपसे वी स्मार्ट के साथ कनेक्शन देखिए, तो दो कंट्रोल कनेक्शन है, एक इंटरनेट के ऊपर और एक MPLS के ऊपर।
अभी अगर मैं यहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ तो कुछ डिटैच कर देता हूँ। ब्रांच 1 VH1 अटैच है टेम्पलेट। फॉर द मोमेंट इसको डिटैच कर देते हैं। फिर से जाते हैं हम लोग टेम्पलेट में, ब्रांच 1 VH2 को भी डिटैच कर देते हैं। अदरवाइज हम लोग कुछ भी लोकल शट नो शट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी मैनेज होगा तो नहीं हो पाएगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे एक और कंट्रोल कनेक्शन है अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, ये है Tloc एक्सटेंशन। तो Tloc एक्सटेंशन पे आने से पहले हम लोग जाते हैं, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम लोग, ब्रांच 2 VH, ओके ब्रांच 1 VH1। अभी हम लोग जाएंगे ब्रांच 1 VH2 पे। ये 2 बार लगता है मैंने ओपन कर दिया। ओके, खोलेंगे ब्रांच 1 VH2, एडमिन, ओके ओपन हो गया। साइड बाय साइड ले लेते हैं, ब्रांच 1 VH2 को यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, अभी अगर करेंगे शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, अब देखिए इसमें भी वैसे ही जैसे ब्रांच 1 VH1 में है, इसमें भी इस तरह से 3 इंटरफेस है। सिस्टम इंटरफेस को अगर छोड़ दे तो एक जो है 164, जो हम लोग करेंगे शो रन VPN 0 gig E0/0 इंटरफेस gig E0/0। तो ये बोल रहा है कि 00 ये जा रहा है 100, एक्चुअली इंटरनेट की तरफ जा रहा है, नेट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो एक इंटरफेस जो है इसका दैट इज gig 0/0, ये किधर जा रहा है, इंटरनेट की तरफ। आईपी क्या है, 100.64। ध्यान रखिए अगर 172 आईपी है हम लोग के इसमें, तो वो MPLS के लिए यूज हो रहा है। अगर 100 से शुरू हो रहा है आईपी तो वो इंटरनेट के लिए यूज हो रहा है। ऑलराइट, सो ये इंटरनेट के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ 100। ऑलराइट, अभी हम लोग जाएंगे 1 पे। 01 यूज हो रहा है Tloc में, तो यहाँ पे 01 है। ओके, विल सी, ये 02 ही रहेगा। यहाँ पे एक और 01 इंटरफेस है, तो ऐसा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये है गिग 00, ये है आपका 01 और ये 02 इस इंटरफेस पे। ओके, देखते हैं डायनेमिक नेट है, ये बात तो सही है डायनेमिक नेट है, क्योंकि स्टैटिक नेट का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऑलराइट, विल सी दैट। सो 02 और इधर भी 02 ही रहेगा। एक 01 पे कौन सा आईपी है, 10.20.20.1। एक और इंटरफेस है इसमें, वो चेक करते क्या है। 02 किधर जा रहा है, टनल इंटरफेस MPLS की तरफ जा रहा है। आईपी क्या है इसका, 10.10.10.2 10.2। सो काफी सारा, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं बड़ा सा, तो पता चले कि क्या हो रहा है। करेक्ट, सो ध्यान से देखिएगा, ये VH1 है और ये VH2 है, कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो मेरे पास जो पहला जो था नेटवर्क, वो था हम लोगों के पास MPLS से रिलेटेड। सो लेट अस सी वन मोर टाइम, ध्यान से। सो 172
मीन्स MPLS, और 100 अगर रहेगा 164 मतलब इंटरनेट के लिए है वो। 0 0 MPLS की तरफ जा रहा है। ओके, देन 0 1 एक्चुअली में क्या है ना कि ये ऐसा कनेक्शन है 0/1 0/2। क्यों है ऐसा मैं बताऊंगा आपको, जस्ट होल्ड ऑन। मैं सबका आईपी लिख दूं। सो 0 1 पे क्या आईपी है 10 20 20.2, और 0 2 पे क्या आईपी है 10 10 10.1, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 0 0 जो जा रहा है आपका इंटरनेट की तरफ, उस पे आईपी है 10, सॉरी उस पे आईपी 100.64। ये आपका गिग 0 0 0/0। उसके बाद 0 1 और 0 2। सो 0 1 पे क्या आईपी है इस साइड में, 0 1 पे आईपी है .1, करेक्ट। 10 20 यहाँ पे है .2 और यहाँ पे क्या है .1, ठीक है। ओके, 0 2 पे क्या आईपी है, ध्यान से देखिए 0 2 पे आईपी है .2। सो कहने का मतलब कि मेरे पास दो नेटवर्क है, एक है 10 20.20 और एक है मेरे पास 10 10.10। इधर है आपका .1 पहले वाले पे, दूसरे वाले पे है .2। ओके, सो यहां आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि आपके पास कितना फिजिकल वैन कनेक्शन है। सो ये सब जो है वो कहाँ पे है, VPN 0 के अंदर। मेरे पास जो एक्चुअल में वैन की तरफ कनेक्शन है वो है एक, ठीक है। और एक जो है कनेक्शन वो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। कहां से एक्सटेंड कर रहा हूं, इंटरनेट से वो जा रहा है MPLS की तरफ, इंटरनेट से MPLS की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। दूसरा जो एक कनेक्शन है वो एक्सटेंड हो रहा है MPLS से इंटरनेट की तरफ, और उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं Tloc एक्सटेंशन का। सो गिग 01 वो भी यूज हो रहा है Tloc एक्सटेंशन में, गिग 02 वो भी यूज हो रहा है Tloc एक्सटेंशन में। कैसे, अब देखिए यहाँ पे गिग 01 में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, Tloc एक्सटेंशन यहाँ पे। सो होता क्या है एक्चुअली कि जब दो डिवाइस होते हैं, ध्यान समझिए, पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ फिर समझ में आ जाएगा, लैब भी करेंगे, कुछ चेंज करेंगे इसमें। अगर आपके पास सिर्फ एक ही कनेक्शन है, इधर MPLS है और इधर इंटरनेट है वैन साइड में, तो आप या तो दो कनेक्शन कर दीजिए बैक टू बैक, या एक कनेक्शन का दो सब इंटरफेस बना लीजिए। जैसे गिग मान ले 1 है तो एक 1.1 और एक 1.2 बना लीजिए। एक कनेक्शन जो है वो MPLS से इंटरनेट की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, और दूसरा जो सब इंटरफेस है वो इंटरनेट से MPLS की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो डिवाइस, दो कंट्रोल प्लेन, मतलब आप एक तरह से कंट्रोल प्लेन को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज करेंगे इस चीजों को, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो लेट्स चेंज इट। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी इस केस में कि मेरा यहाँ से यहाँ की तरफ जो एक्सटेंशन था उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर बाद में इनेबल कर लेंगे, और इस साइड में जो एक्सटेंशन है उसको रहने देंगे, ठीक।
तो हम लोग जाएंगे ब्रांच 1 VH1 में गिग इंटरफेस 0/2 से VPN 0 इंटरफेस गिग E0/2 shutdown commit and show control connection। ठीक है, मैंने क्या किया 0/2 को डाउन कर दिया और अब अगर यहाँ देखेंगे शो कंट्रोल कनेक्शन, ध्यान से देखिएगा आप तो आपको पता चलेगा। आपका कंट्रोल चला गया, एक सिर्फ इंटरनेट है। मैंने क्या किया चेंज, मैंने अपना जो एक्सटेंशन था मतलब ए से जो बी की तरफ जा रहा था उसको मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन ये रिसीव कर रहा है, ये बी से ए की तरफ आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल दिख रहा है वी स्मार्ट के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो कंट्रोल दिख रहा है आपको। लेकिन दूसरे साइड में जो डिवाइस है उसका एक कंट्रोल डाउन हो गया। लाइकवाइज अगर हम लोग जाएंगे इंटरफेस गिग E0/1 VPN 0 इंटरफेस गिग E0/1, अगर इसको भी हम लोग शट डाउन कर देंगे तो आप देखिएगा कि अब इसके पास भी जो है एक ही कंट्रोल बचेगा। अब दोनों साइड से जो कंट्रोल था उसको हम लोगों ने डाउन कर दिया। अब ये पूरे की तरह डिपेंड हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ MPLS कनेक्शन पे। ठीक है, देख रहे हैं आपको सिर्फ MPLS दिख रहा है क्योंकि जो इंटरनेट से एक Tloc एक्सटेंशन था उसको हम लोगों ने डाउन कर दिया। ऑलराइट, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से Tloc एक्सटेंशन करते हैं। सिर्फ एक कीवर्ड है Tloc एक्सटेंशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको, और आपका Tloc जो है वो स्टार्ट हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा काम करना। कोई नहीं, मैं अभी और भी एक्सप्लेन करूंगा इसको, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे इसको तो और क्लियर होगा। ओके, सो ये जो न्यू फीचर है हम लोग का SD-WAN के अंदर, उसमें क्या बता रहा है कि आपके पास दो VES डिवाइस है, एक ही फिजिकल कनेक्शन आप लीजिए, एक ही सर्विस प्रोवाइडर लीजिए, इधर फिजिकली एक ही कनेक्शन है, लेकिन आप इस फिजिकल एक कनेक्शन को दो कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो आप दो बैक टू बैक कनेक्शन ले लीजिए, सिर्फ 01 और 02, और ये जो कनेक्शन है इस पे आप MPLS इधर भेज दीजिए, और ये जो कनेक्शन है इस पे आप इंटरनेट इधर भेज दीजिए, बाई डायरेक्शनल। अगर किसी एक को भी मैंने बंद किया तो आपने देखा कि एक जो कंट्रोल है वो चला गया एक डिवाइस से। मतलब अगर आप चाहें तो इसको बंद कर दें तो भी इस डिवाइस पे ब्रांच 1 पे आपको दो कंट्रोल प्लेन दिखेगा। ठीक है, दोनों को बंद कर देंगे तो एक एक ही दिखेगा। तो ये एक फीचर जो है वो बहुत एडवांस फीचर आप एक तरह से कह सकते हैं, वो है SD-WAN का Tloc एक्सटेंशन। ठीक है, अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे कि कौन सा नेट यूज कर रहे हैं। ये दो ब्रांच के बीच में ना कुछ नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट ए P2P कनेक्शन। ठीक है, ऑलराइट। सो दूसरा जो क्वेश्चन था वो नेट से रिलेटेड था कि नेट VXLAN
VXLAN में तो आप UDP के अंदर इनकैप्सुलेट करते हैं पैकेट्स को, और आप सारा कुछ जो है वो UDP के अंदर होते हैं। यहाँ पे तो दो कनेक्शन है, फिर दो फिजिकल कनेक्शन है, इसमें तो कुछ भी इनकैप्सुलेशन नहीं, दो कनेक्शंस है, तो फिर यहाँ पे कैसा है जब, हाँ P2P कनेक्शन है ना। ऑलराइट, सो देखते हैं अभी ब्रांच 2 VH, सॉरी ब्रांच 1 VH2, इसको नो शट कर देता हूँ, आप आ जाएगा। और ब्रांच 1 में भी जाके कौन सा इंटरफेस था हम लोग का, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, सॉरी 02 को डाउन किया था। VPN 0 इंटरफेस की 0/2 नो शटडाउन कमिट एंड क्विट। सो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि इसके गिग E00 पे शो रन VPN 0 गिग E0/0 पे शो रन VPN 0 इंटरफेस गिग E0/0 पे नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये जो नेट है, शो IP नेट इंटरफेस फिब IP आपको बताता हूँ कैसे नेट किया हुआ इसमें। इंटरफेस स्टैटिक्स, मेरे को फुल डिटेल चाहिए उसके बारे में। सो ओके, या फिल्टर, ऑलराइट, खुद में ही सब चला जा रहा है, एडमिन। ओके, फिल्टर। अब देखेंगे यहाँ पे नेट को, तो आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कैसे ये नेट कर रहा है। टैब, ओके, हम लोग का जो नेट है वो सोर्स, प्राइवेट सोर्स एड्रेस, प्राइवेट डेस्टिनेशन एड्रेस, जो भी प्राइवेट एड्रेस है 10 का, वो कन्वर्ट हो रहा है पब्लिक एड्रेस 100 में। तो ये डायनेमिक नेट यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 2 वे कन्वर्शन दिखा रहा है इसमें। जो एस्टेब्लिश्ड है नेट वो ऊपर के 4 हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द नेट है वो क्लोज स्टेट में, नीचे में ही। ये अभी जस्ट री एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इंटरफेस को अप किया ना, तो वो री एस्टेब्लिश हुआ कनेक्शन। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग बेनिफिट उठाते हैं दूसरा, और आपको VRRP बताता हूँ। इसमें VRRP कैसे कॉन्फ़िगर है। तो अगर हम लोग VPN 10 में जाएं, VPN 10 में कौन सा इंटरफेस है, गिग E0/3, VRRP configuration as it is Cisco. So gig 00 ये MPLS, ये इंटरनेट, दो इंटरफेस 01 02, और एक जो इंटरफेस है वो आपका कॉमन है गिग 0/3। ओके, इस गिग 0/3 पे हम लोग यूज कर रहे हैं VRRP, वर्चुअल राउटिंग रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। और इस VRRP में जैसे ये नेटवर्क है 10.3.0.0 का, no, Viptela is not supporting HSRP. HSRP is Cisco proprietary. VRRP is a standard. Okay, so VRRP है जिसमें VRRP का जो नंबर है वो है 10,
से प्रायोरिटी यूज कर रहा है, हायर इज बेटर होता है 200। GLVP भी सिस्को का प्रोप्राइटरी है, बोथ आर सिस्को प्रोप्राइटरी। GLVP इज ए फेलियर, ये फेलियर है सिस्को का। क्यों फेलियर है, अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। ये मैक बेस्ड लोड बैलेंसिंग करता है, जिसकी जरूरत हालांकि नहीं है राउटर्स के अंदर। HSRP और VRRP ये फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है, एज ए रिडंडेंसी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। अगर आप आइदर आप यूज करें VRRP HSRP, एक ही चीज है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है दोनों में। ओके, और कुछ डाउट है? कुछ पूछ रहे हैं क्या? साउंड आ रही है पीछे से? ऑलराइट, सो अब देखें ध्यान से, तो जैसे VRRP में होता है, अभी इस डिवाइस पे मैंने VRRP इनेबल करा है, तो हम लोग के पास एक ऑप्शन होता था ट्रैक इंटरफेस और देन डिक्रीज प्रायोरिटी। तो सपोज ये VRRP का एक्टिव है और सपोज ये मास्टर है और ये स्लेव है, जो भी टर्म हो, मास्टर स्लेव एक्टिव पैसिव वॉटेवर। सपोज ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है VRRP का, और अगर ऊपर के इंटरफेस में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप उसको ट्रैक कर रहे हैं ट्रैक कमांड से, तो ये ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा आपका मास्टर और ये बन जाएगा स्टैंड बाई, अगर फेलियर होता है तो वो ऑप्शंस हैं हम लोग के पास। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं उस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि दोनों में, मतलब स्विच 1 और स्विच 2 में, राउटर 1 और राउटर 2 में VRRP प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। शो VRRP VPN 10, ध्यान से देखिए 10301 जो इसका वर्चुअल आईपी है, वर्चुअल मैक है, इसका प्रायोरिटी ये राउटर नंबर 1 जो कि मास्टर बता रहा है, ये मास्टर है। अगर हम लोग इस पे जाएं और लिखें शो VRRP VPN 10, तो ये बता रहे हैं बैकअप है। मास्टर और बैकअप ये दो स्टेट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रायोरिटी जो है वो 100 है इसके लिए। तो अभी अगर मैं कॉन्फिग में जाके VPN 10 इंटरफेस gig E0/3 में जाके इसको बोलूं VRRP 10, योर प्रायोरिटी इज 201, तो अभी क्या होगा कि इसका प्रायोरिटी हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो ये मास्टर हो जाएगा और सामने वाला हो जाएगा बैकअप। देखिए ये मास्टर हो गया, क्यों? क्योंकि इसका प्रायोरिटी है 201, और ये हो जाएगा बैकअप क्योंकि इसका प्रायोरिटी जो है वो है 200। लेकिन मास्टर दिख रहा है क्योंकि प्रिंट कमांड इनेबल नहीं होगा उसके लिए। तो ये चीज है आपको ध्यान में रखनी होगी, जो सिस्को में भी था, प्रिंट इनेबल कराना। कोई बात नहीं, हम लोग सॉरी फॉर दैट, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करते कि VPN 10 में जाके इंटरफेस गिगी में जाके VRRP 10 प्रिंट का ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आपके पास यही ऑप्शन है, प्रिंट ऑप्शन नहीं है। प्रिंट ऑप्शन सिर्फ सिस्को में ही है सिम्स। कोई बात नहीं, विल सी। ओके, बाय डिफॉल्ट में भी, यस बाय डिफॉल्ट। इसको थोड़ा सा टाइम लगा, आई थिंक इट टुक सम 3 सेकेंड्स, इसको सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगा। अभी देखिए बैकअप हो गया।
है ना। बट एनीवेज हम लोग के पास जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है, आप वर्चुअल आईपी दे सकते हैं, IPv4 देके प्रायोरिटी दिखा सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं, ट्रैक OMP और ट्रैक सम सबनेट्स। सो ये फीचर्स जो है वो आप कर सकते हैं VRRP। VRRP में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो इस यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ओके, थैंक यू। ओके, सो फुल कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप अब इसका, हम लोग को पूरा का पूरा समझना है। तो हम लोगों ने सिस्टम के अंदर मैंडेटरी कमांड्स बहुत इनिशियल क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, और वी बॉन्ड जो है उसका DNS का IP दे दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ एक IP देने से अच्छा है कि अगर उस पर्टिकुलर DNS में 3-4 IP है तो उसको वो रिजॉल्व कर लेगा। फिर आप AAA का कॉन्फ़िगरेशन जैसे सिस्को डिवाइसेस में देते हैं, एज इट इज आप दे सकते हैं। आप लॉगिंग इनेबल करा सकते हैं, और आप चाहें तो लॉगिंग सर्वर के पास से रीडायरेक्ट करा सकते हैं सारे लॉगिंग। BFD हम लोग देखेंगे आज, BFD को छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए। BFD हम लोग को पढ़ना है ऐप राउट पॉलिसी में। देन SNMP कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज जैसा सिस्को में है, थोड़ा सा सिंटेक्स आपको अलग मिलेगा। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। OMP हम लोग ने पढ़ा था, बाय डिफॉल्ट OMP में कनेक्टेड और स्टैटिक रहता है। आप चाहें तो BGP और OSPF भी एडवर्टाइज करा सकते हैं। ये जो सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन है ये डिफ़ॉल्ट रहता है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि जैसे ही आप डिवाइसेस को अप करते हैं ये ऑटोमेटिकली IPsec कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। क्यों ये कर लेता है? क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी IPsec और उसके बाद की वैल्यू, ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन हेडर शाह HMAC, इसके वजह से ये IPsec कनेक्शन बना लेता है। आप चाहें तो बैनर बना सकते हैं। उसके बाद VPN 0 के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने देखा था जब हम लोग ने टेम्पलेट्स को पढ़ा था। QoS हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, QoS छोड़ सकते हैं, QoS आप छोड़ दीजिए। क्लाउड एक्सप्रेस भी हम लोग देखेंगे आने वाले क्लास में, उसको भी छोड़ दीजिए फिलहाल। ओके, सो थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आता है VPN 0 का। VPN 0 कहने का मतलब कि आपका कंट्रोल कनेक्शन। सो जो आप VPN 0 को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपके पास अगर एक फिजिकल इंटरफेस है, गुड। अगर आप Tloc एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो ये जो है आपका, आप देखिए ये gig 01 और gig 02। सो gig 02 को हम लोग एक्सटेंड करा रहे हैं, और gig 01 पे आप कह सकते हैं कि हम लोग रिसीव कर रहे हैं। ये आपका एक तरह से रिसीवर है और ये आपका सेंडर है। यहाँ से आप Tloc को एक्सटेंड कर रहे हैं और इसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं Tloc एक्सटेंशन को लेने के लिए। ये इनवर्ट डायरेक्शन में है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका इंटरनेट, और दूसरे साइड में जो फिजिकल कनेक्शन है वो इंटरनेट। सो इंटरनेट को आप Tloc से एक्सटेंड करा रहे हैं। स्टैटिक राउट्स हम लोग को पता है कैसे बनाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करेंगे। ओके, उसके बाद VPN 10 जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस VPN, क्लाउड एक्सप्रेस हम लोग देखेंगे आने वाले क्लास में, इस पर पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेस लिस्ट आज देखेंगे हम लोग, एक्सेस लिस्ट भी रहने देते हैं। एक्सेस लिस्ट हम लोग देखेंगे QoS, जब क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब कल QoS में आपको मैं बताऊंगा एक्सेस लिस्ट। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे VRRP का कॉन्फ़िगरेशन देखा, और एक को हम लोग ने मास्टर, दूसरे को बैकअप बनाया। हायर इज बेटर होता है, अगर ज़्यादा रहेगा तो वो मास्टर बनेगा, अदरवाइज वो बैकअप रहेगा। उसके बाद एक और सर्विस VPN है VPN 20, इसमें भी VRRP लगा हुआ है। फिर एक और सर्विस VPN है VPN 40, इसमें भी VRRP लगा हुआ है। डिफॉल्ट गेटवे VPN 0 की तरफ है, ठीक है।
और उसके बाद लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट, ये मैं आज आपको बताऊंगा। राउटिंग पॉलिसी, राउट पॉलिसी आज डिस्कस करेंगे। राउट पॉलिसी के बाद ये सारा क्लास मैप और क्यूएस मैप हम लोग कल पढ़ेंगे। क्लास मैप, क्यूएस मैप, क्यूएस शेड्यूलर, ये सारा हम लोग कल देखेंगे। जो भी क्यूएस पार्ट है वो बाद में देखेंगे, मतलब कल देखेंगे। तो ये आपका फुल कॉन्फ़िगरेशन है। ये अच्छा स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या नहीं हम लोग ने पढ़ा अभी तक, तो इसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। बीएफडी देखेंगे, क्यूएस, सॉरी, क्यूएस और एसीएल देखा जाएगा। स्टक हो गया पेन। ओके, सो बीएफडी, क्यूओएस, एसीएल, क्लाउड एक्सप्रेस, ठीक है, इसको छोड़ दें, इसको आज करेंगे, इसको हम लोग कल देखेंगे, कल परसों आने वाले क्लासेस में। बीएफडी को पढ़ेंगे हम लोग राउट पॉलिसी आज हम लोग को देखना है। थोड़ा सा मैं आपको ओएसपीएफ बताऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे ऐप राउट पॉलिसी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बीएफडी, ठीक है। सो देखते हैं, सबसे पहले राउट पॉलिसी देखते हैं। राउट पॉलिसी कैसे काम करता है। एश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ जो है, एवरीथिंग, ये पॉलिसी के अंदर आता है। तो जब मैंने एश्योरेंस पॉलिसी किया तो ऐप विजिबिलिटी और फ्लो विजिबिलिटी, ये भी बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ऐप विजिबिलिटी, फ्लो विजिबिलिटी, क्योंकि हम लोग क्लाउड बेस्ड वीएच, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो इसके लिए क्लाउड क्यूएस कमांड है यहाँ पे, और क्यूएस में देखा जाएगा आने वाले टाइम में। ओके, अगर आपको कोई भी लिस्ट बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं। आप पहले जाते हैं पॉलिसी के अंदर, और मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, पॉलिसी के अंदर ही सब कुछ है। लिस्ट बनाइए, ये हो सकता है साइट लिस्ट, ये हो सकता है वीपीएन लिस्ट, ये हो सकता है प्रीफिक्स लिस्ट, ये हो सकता है डेटा प्रीफिक्स लिस्ट, ये हो सकता है टीलॉक लिस्ट, ऐसा करके पूरा लिस्ट है। देन इसी के अंदर आप डिफाइन करते हैं पॉलिसी। पॉलिसी कहने का मतलब कि ये कंट्रोल पॉलिसी होगा, डेटा पॉलिसी होगा, ये सी फ्लोड होगा, ये ऐप राउट पॉलिसी होगा, ये वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी होगा, एंड फाइनली आप उसको लगाते हैं अप्लाई पॉलिसी, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू साइट लिस्ट, इन और आउट या बोथ। अगर डेटा पॉलिसी है तो बोथ, और कंट्रोल पॉलिसी है तो आइदर इन या आउट, आप इसको लगाते हैं। अगर आप लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट के अंदर हम लोग बना रहे हैं प्रीफिक्स लिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर राउट। इंफ्रास्ट्रक्चर राउट मैंने आपको बोला कि अगर 100 है तो आप समझ लीजिए कि वो 100 जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, आईपी एड्रेस, और 172 अगर आईपी है तो वो हम लोग यूज कर रहे हैं एमपीएलएस के लिए। और आप चाहें तो कुछ प्राइवेट एड्रेसेस भी बना सकते हैं, जैसे 10 का या फिर 192.168, ये प्राइवेट एड्रेसेस यूज होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। 172.168 ब्ला ब्ला, ये 3 रेंज होता है एबीसी का। हम लोग के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर राउट है, एक 100 का और एक 172 का प्रीफिक्स। तो हम लोग ने लिस्ट बनाया, प्रीफिक्स लिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर राउट 100 और 172। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर राउट है, इसको हम लोग एक राउट पॉलिसी के अंदर, ध्यान से देखिए, राउट पॉलिसी डिनाई इंफ्रा राउट, सीक्वेंस 10, मैच एड्रेस, कहां से लिया, ये वाला एड्रेस, एक्शन रिजेक्ट, डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट। सो क्या ये राउट पॉलिसी कह रहा है कि अगर आप एक वीएज राउटर हैं तो आप 172 और 100 के राउट्स को एक्सेप्ट नहीं करिए, क्योंकि ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर राउट है, आपका खुद का राउट है। आप इसको एडवर्टाइज करिए नो डाउट, बट आप इसको रिसीव मत करिए, यही ये पॉलिसी बोल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका राउट पॉलिसी, छोटा सा है यहाँ पे, बट इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये वी स्मार्ट से पुश किया हुआ नहीं है, ये पॉलिसी आपने क्या बनाया है, वीएच पे लोकल,
तो आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज माई लोकलाइज्ड डेटा पॉलिसी। लाइकवाइज जब हम लोग कल पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये सब आप कहाँ बना रहे हैं? ये सारा आप बना रहे हैं वी एज के अंदर, जो सी ए और ई है, मतलब कॉन्फ़िगर, अप्लाई, एग्जीक्यूट, वो आप सब कहाँ कर रहे हैं? वी एच पे। इसलिए वो लोकलाइज्ड डेटा पॉलिसी है, लोकल टू डिवाइस, 100% करेक्ट। हाँ ठीक है, ये है। और दूसरा एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो है VPN 10। वो OSPF का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो वो OSPF कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली डेटा सेंटर पे किया है। ध्यान से देखेंगे, OSPF राउटर आईडी और redistribute OMP इंटरफेस। और पिछले क्लास में हम लोगों ने एक बार ऐड भी किया था। आप चाहो तो कोई भी एक नया लूप बैक बना के उसको OSPF में डाल दो, जैसे डालोगे आप वो सब जगह ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज हो जाएगा। तो IGP कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत आसान है। ठीक है, यस बाय OMP करेक्ट, 100% करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग का जो टारगेट था आपको कुछ कुछ टॉपिक बताने का, उसको देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो हम लोग ने देखा कि, सॉरी फॉर दैट, Tloc एक्सटेंशन क्या होता है, VRRP का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होता है। फिर मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन इसमें बताया, काफ़ी कुछ मिसिंग है, वो पढ़ेंगे आगे चल के। फिर हम लोग ने देखा कि आप राउट पॉलिसी, सो ROUTE पॉलिसी कैसे बना सकते हो। इसके अंदर हम सबसे पहले पॉलिसी के अंदर जाएंगे, लिस्ट के अंदर जाएंगे, लिस्ट को डिफाइन करेंगे, फिर पॉलिसी के अंदर, राउट पॉलिसी के अंदर उसको अप्लाई कर देंगे। तो ये तीन चीज मैंने कवर किया। अभी नेक्स्ट जो मैं कवर करने वाला हूँ, टॉपिक नंबर 4 होगा, वो होगा कि GUI से आप कैसे बनाएंगे पॉलिसी, और देन फाइनली हम लोग पढ़ेंगे ऐप राउट पॉलिसी। सो ये दो टॉपिक मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो GUI से एक पॉलिसी बना के 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। Please confirm one thing, if OMP is already used, क्या है भाई क्वेश्चन? If OMP is already uses, then why Tloc is required? I think I missed something. Okay. OMP Tloc vSmart, the control plane, data plane. So OMP जो है वो आप कम्युनिकेशन कराता है, वो आपका ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। OMP का एक पार्ट है, OMP के 3 पार्ट होते हैं। OMP का एक पार्ट होता है सर्विस राउट्स, मैं इसको लिखता हूँ VPN राउट्स। OMP का एक पार्ट होता है अगर नेटवर्क में कहीं पे भी फायरवॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विसेस। सो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लिख देता हूँ फायरवॉल राउट्स। और OMP का एक पार्ट है Tloc। ओके, सो VPN राउट, फायरवॉल राउट और Tloc राउट मिला के OMP बनता है। सो OMP जो है वो आपका, जैसे नीचे का जो एंड पॉइंट्स होगा, कहीं पे भी बहुत सारे एंड पॉइंट्स, इस सब एंड पॉइंट्स के ऊपर ओवरले है। आपका जो अंडरले है, उस अंडरले का एट्रीब्यूट क्या होगा? उस अंडरले का एट्रीब्यूट होगा VPN राउट, उस अंडरले का एट्रीब्यूट होगा Tloc राउट। लेकिन जब वो अंडरले जाएगा ओवरले के अंदर, तो वो कैसे टच करेगा, कौन टच करेगा उसको? OMP। तो इसके लिए OMP अलग है और Tloc अलग है। ये तो एक यूज है आपका Tloc का। Tloc का दूसरा यूज मैंने आपको बताया था कि अगर दो साइट है,
ये दोनों साइट जो है अपना की एडवर्टाइज करेगा OMP के थ्रू वी स्मार्ट को। वी स्मार्ट उस की को एक्सचेंज करेगा दोनों तरफ। तो इसके पास लोकल टीलॉक था, इसको रिमोट टीलॉक मिला कहां से? फ्रॉम वी स्मार्ट। लोकल टीलॉक, रिमोट टीलॉक मिला फ्रॉम वी स्मार्ट। तब जाके ये एक दूसरे पे टनल बनाएगा। ठीक है, तो ये मतलब दोनों अलग चीज है। OMP एकदम अलग है, टीलॉक एकदम अलग है। अब जब हम लोग बात करते हैं टीलॉक एक्सटेंशन की, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल को एक्सटेंड कर रहे हैं। कंट्रोल को एक्सटेंड कर रहे हैं कहने का मतलब कि आप कंट्रोल को एक्सटेंड कहने का मतलब कि कंट्रोल प्लेन से डेटा प्लेन के बीच जो रीचेबिलिटी है उसमें आप रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। मतलब फिजिकली आपके पास एक ही पाथ था जाने के लिए, लेकिन आप इंटरनेट होते हुए भी जा सकते हो। फिजिकली आपके पास एक ही पाथ था जाने के लिए, लेकिन आप MPLS होते हुए भी जा सकते हो। तो ये हुआ टी लॉक एक्सटेंशन इस लेवल पे, डिवाइस लेवल पे। ये अंडरले कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और OMP का जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो हो गया आपका ओवरले कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट? ओके, सो अभी हम लोग एक लैब करेंगे, सिस्को नेक्सस 3D DNA। ओके, एक लैब हम लोग को करना है, वो लास्ट लैब था हम लोग का। उसमें हम लोग को एक पॉलिसी GUI के थ्रू आपको एक पॉलिसी बनानी है। रिमेंबर वी हैव डन वन थिंग, हब एंड स्पोक। तो हब एंड स्पोक पॉलिसी, कंट्रोल पॉलिसी हम लोग करने जा रहे हैं किसके थ्रू? GUI के थ्रू। ग्राफिकल मोड से आप उसको कैसे कर सकते हैं? वाओ, कहाँ है IP? ये कौन सा है? SD-WAN विप्टेला। एक मिनट में उसको फिर से कनेक्ट करता हूँ, वो कनेक्शन चला गया। कुछ तो भी IP एड्रेस था 172 समथिंग। लेट मी चेक। ऑलराइट, वन 173.39। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था इसको कि हम लोग लैब कर सकें। तो हब एंड स्पोक लैब करने वाले हम लोग इसके थ्रू, GUI के थ्रू। आप इसको लॉन्च कर दीजिए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और देन विल डू। ओके, सो क्या करना है आपको इस लैब में कि आपको जाना है पॉलिसी के अंदर और देन यू हैव टू क्रिएट द पॉलिसी। इसके पहले इसमें जो बोला है वो आप कर सकते हो, अप टू यू, उसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। तो हम लोग का टोपोलॉजी, आपको ये टोपोलॉजी याद है, बहुत सिंपल है। एक डेटा सेंटर डिवाइस है, एक ब्रांच डिवाइस है। पहले आप ट्रेस राउट करके देख लो। अगर आप इनिशियली ट्रेस राउट करोगे तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली चला जाएगा। लेकिन हब एंड स्पोक लगा के करेंगे तो पहले डेटा सेंटर के पास पैकेट जाएगा, फिर वो दूसरे ब्रांच पे जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगर पॉलिसी में जाके उसको बनाएंगे। तो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। सबसे पहले कितने डिवाइसेस है मेरे पास? अब देखो 172.27.0.12 तो कैसे 10 12 13 11 12 ऐसे है ना। 10 11 12 13 ये चार डिवाइसेस हैं। ब्रांच 1 है
12, DC1 है 10, DC2 है 12, अच्छा ऐसा है, 10 से स्टार्ट है, DC1 से स्टार्ट है, 10, 11, 12 और 13। तो सपोज अगर मैं जाता हूँ ब्रांच 1 पे जो कि है .12 और उससे ट्रेस राउट करता हूँ ब्रांच 2 को जो है 13, सो 12 से 13 पे जाते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप जा सकते हैं, आप चाहो तो मॉनिटर नेटवर्क और उसके बाद आपको जाना है 12 पे, आप जा सकते हो वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रबल शूटिंग सेक्शन में जा सकते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, ट्रेस राउट, कहाँ से कहाँ करना चाहते हैं आप ट्रेस राउट, यहाँ से आपका जो गिग VPN 0 इंटरफेस है वहाँ से, सिस्टम से कर लेते हैं, सिस्टम से हम लोग करना चाहते हैं ट्रेस राउट। आपका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, मेरा डेस्टिनेशन है पे 172.27.0.13, स्टार्ट। तो ये बता रहा है कि सिस्टम टू सिस्टम रीचेबिलिटी नहीं है, वेरी गुड। VPN 1 से जाएंगे फिर, थोड़ा सा स्लो है बट इट्स ओके, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको। ओके, अनरीचेबल है ना, सो देखते हैं VPN 1 है नहीं, इस सारा VPN 0 इंटरफेस ही ले रहा है, तो हम लोग एक बार इसको हटा देते हैं और यहाँ से VPN 1 चूज करते हैं। VPN 1 के अंदर ये इंटरफेस है और यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं, ये भी अनरीचेबल, आप देख रहे हैं, इस तरह से अगर आए ना तो अनरीचेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक कि कौन कौन से राउट्स हैं VPN 1 में। सो ब्रांच 1 में जाके, रियल टाइम में जाके, मीन्स वाले नहीं 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 ऐसा नहीं है, विल सी, मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी। राउट, IP राउट, VPN 1 के चाहिए मुझको राउट्स, ओके। सो मैं हूँ 12 पे और 13 पे जो राउट्स हैं वो चाहिए, तो कौन सा एक दिखा रहा है, एक दिखा रहा है 12.20.100.0, 12.20.100.0 एग्जैक्ट ऐप ही चाहिए हम लोगों को। सो हम लोग जाएंगे ब्रांच नंबर 2 पे, we need exact IP for trace route, admin शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। VPN 1 के अंदर जो एग्जैक्ट है वो क्या है आपका 12.20.100.2, 12.20.100.2 है ना, इसको हम लोग याद रखेंगे 12.20.100.2। तो अब हम लोग जाएंगे मॉनिटर नेटवर्क और जो रियल टाइम था ब्रांच 1 का ट्रबल शूटिंग सेक्शन में, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग ट्रेस आउट में। सबसे पहले VPN 1, मेरा जो डेस्टिनेशन है वो है 12.20.100.2 ट्रेस राउट। देखिए
एक हॉप दिखा रहा है, इस ओनली वन हॉप अवे, है ना, क्योंकि ये फुल मेश है। अब हम लोग पॉलिसी लगा के इसको बना देंगे पार्शियल मेश। तो क्या होगा कि यही जो ट्रैफिक है वो वाया जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, है ना। सो डीएनए एंड पॉइंट को वाया हैवेनेस, हाँ पहले हब पे जाएगा फिर स्पोक पे जाएगा, करेक्ट। एक और ओपन कर लेते सेशन। सो इधर कर लेंगे सारा कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस लर्निंग। एक और वी मैनेज ओपन कर लेता हूँ, मैं को ये ओपन करना चाहिए था। एक और वी मैनेज शैल ओपन। अब हम लोग को पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसीज में जाएंगे। ये ग्राफिकल मोड से आप बना सकते हैं। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज में जाएंगे। ओके, इसको कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉलिसीज। ओके, सो सेंट्रलाइज पॉलिसी, लोकलाइज पॉलिसी। हम लोग का जो पॉलिसी है वो सेंट्रलाइज पॉलिसी है, क्योंकि हम लोग कंट्रोल पॉलिसी बनाने वाले हैं। ओके, सेंट्रलाइज पॉलिसी आप देखिए काफ़ी कुछ है, बट बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है ये, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो आप पॉलिसी बनाना चाहते हैं वो पॉलिसी एप्लीकेशन के लिए, कलर के लिए, डाटा प्रीफिक्स पॉलिसी, साइट क्लास, टीलॉक, क्या है ये जो सेंट्रलाइज पॉलिसी है। गो बैक, कस्टम ऑप्शन भी है, एप्लीकेशन लिस्ट भी है, उसके लिए भी पॉलिसी आप बना सकते हैं। वो सब नहीं है, हम लोग का जो पॉलिसी है ना वो एक टीलॉक बेस्ड पॉलिसी है, जिसमें जो रूल है, मैं पहले आपको रूल लिख देता हूँ यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगी। ब्रांच जो है हम लोग का, उसका एक बार साइट आईडी देख लेंगे ब्रांचेस का, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांच के साइट आईडी है दोज आर डिफरेंट। ओके, कोई बात नहीं, फिर इस जगह आके एक बार कर लेंगे टी शूट। अब ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे साइट आईडी ब्रांच। सो ब्रांच 1 है 20, ब्रांच 2 है 30, डेटा सेंटर है 10, 10, 20 और 30 है मेरा ब्रांच का आईडी। एक साइट लिस्ट में बना लेता हूँ सबसे पहले से, हम ऑल ब्रांच, साइट कौन सा है 20 और 30, ये दो ब्रांच है मेरा। सेव हो गया ये, नेक्स्ट जाएंगे। जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वो आपका हब एंड स्पोक है, करेक्ट। आप चाहें तो हब एंड स्पोक सिंपली ले सकते हैं, और हम लोग एक कस्टम कंट्रोल पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें हम लोग राउट और टी लॉक को यूज करने वाले हैं। इसका नाम हब एंड स्पोक, हब एंड स्पोक। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई सीक्वेंस नंबर 10 और 20 आपको देना है। तो जो पॉलिसी था याद है आपको कैसे हम लोगों ने बनाया था, जब CLI से बनाया था, तो हम लोग पॉलिसी के अंदर गए थे, एक लिस्ट बनाया था, साइट लिस्ट ऑल ब्रांच समथिंग, जिसमें हम लोगों ने 100 और 200, 300 और 400 लिया था यहाँ पे, लेकिन 20 और 30 है दो ब्रांच का साइट आईडी। देन हम लोग गए थे कंट्रोल पॉलिसी, नेम दिया था हम लोगों ने हब एंड स्पोक। फिर हम लोग गए थे सीक्वेंस नंबर 10, मैच टी लॉक, एक्शन रिजेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ सीक्वेंस नंबर मैच टी लॉक एक्शन रिजेक्ट। फिर हम लोग गए थे सीक्वेंस नंबर 20,
मैच Tloc एक्शन रिजेक्ट, और डिफॉल्ट एक्शन में हम लोग ने दिया था एक्सेप्ट। ऐसा करके एक पॉलिसी बनाते, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने साइट भी दिया था, से साइट 20 साइट 30। तो साइट 20 मैच Tloc रिजेक्ट, साइट 30 मैच Tloc रिजेक्ट। हम लोग के केस में ना 300 और 400 था। अगर आप देखेंगे ध्यान से रिकॉर्डिंग पिछले, तो आपको पता चलेगा। बट इस तरह का पॉलिसी हम लोग ने बनाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देना है, सीक्वेंस नंबर। ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। मैच, क्या मैच कराना चाहते हैं आप? सो मैच में कराना चाहता हूं साइट, क्या है भैया साइट मेरा 20, यहाँ पे लिख देते हैं साइट 20। सिलेक्ट वन और मोर साइट्स, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ डाउन नीचे। सो साइट है मेरा 20, देखिए नीचे साइट है, देखिए साइट लिस्ट का नाम है। अगर नाम नहीं है ना आपके पास, देन यू कैन सिंपली गिव 20, दैट्स इट। सो क्या करें हम लोग, साइट 20 ले लिया। एक्शन, देखिए एक्शन आइदर एक्सेप्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट है। आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। एक और सीक्वेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं प्लस करूंगा। मेरे को दो सीक्वेंस चाहिए, सीक्वेंस 10 और सीक्वेंस 20। सीक्वेंस रूल मैच साइट आईडी 30, एक्शन रिजेक्ट है बाय डिफॉल्ट। ओके ग्रेट, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे। फिर डिफॉल्ट एक्शन है मेरे पास। डिफॉल्ट एक्शन क्या है? एक्सेप्ट है हम लोग के केस में। एडिट करेंगे एक्सेप्ट। तो दो Tloc मैंने बनाया, मतलब सीक्वेंस दो है, और डिफॉल्ट एक्शन रिजेक्ट है। आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में क्या कर रहे हैं हम लोग। सो हब एंड स्पोक रेफरेंस काउंट एडमिन, ये बोल रहा है कि क्रिएट कर रहा है इस पॉलिसी को। वाओ, पॉलिसी नेम है हब एंड स्पोक। ओके, अब क्या है, फाइनली आप क्या करते हैं, उस पॉलिसी को आप अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों के पास जो है ऑलरेडी वो है, और आप कहाँ लगाना चाहते हैं, आउटबाउंड साइट लिस्ट, प्रीव्यू, invalid policy cannot say policy add VPN list or the site list। एक्चुअली यहाँ add बटन थोड़ा सा ये ऊपर नीचे रहता है, ये add बटन है ना, पहले इसको add पे क्लिक करिए। और हम लोग लगा रहे हैं इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको ना डायरेक्शन को एक क्लोज कर दीजिए। देखिए अभी ठीक है, ये प्रीव्यू करेंगे। जो पॉलिसी हम लोग ने बनाया, ध्यान से देखिए, पॉलिसी कंट्रोल पॉलिसी का नाम क्या है, हब एंड स्पोक। डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट, ये तो खैर नहीं है, ये तो गलती है, ऐसा नहीं रहेगा। लिस्ट, ये सही है एटलिस्ट। अप्लाई पॉलिसी, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ये जो पॉलिसी हम लोग ने बनाया ना, इस पॉलिसी में साइट 10 मैच Tloc रिजेक्ट वो नहीं है, वो आना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग उसको एडिट कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि एडिट का ऑप्शन है यहाँ पे, लेट्स सी। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिसी बने, एडिट ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास, तो मैं फिर से बना देता हूँ कोई पॉलिसी। साइट ये रहेगा, आपको ऑडियो मिल रही है? ओके, साइट है, नो प्रॉब्लम, वी हैव साइट। यहाँ पे जाके आप ले लो ये, एंड देन गिव द नेम हब एंड स्पोक।
सीक्वेंस में आप ले लो Tloc, सीक्वेंस रूल मैच साइट 20, थोड़ा सा नीचे न करके ये सेव भी करना पड़ता है, अदरवाइज ये सेव नहीं होता है। रिजेक्ट सेव, ठीक है, यही प्रॉब्लम हुआ लास्ट टाइम ना, हम लोग ने सेव नहीं किया था। 30 एक्शन रिजेक्ट सेव, देखिए अब ये आपको 2 सेक्शन आ गया। हाँ सेव 10 आ गया, 20 आ गया, रिजेक्ट रिजेक्ट आ गया। डिफॉल्ट एक्शन में जाएंगे, एक्शन जो है वो एक्सेप्ट है, सेव, ठीक है। अब ये फाइनली आपका सही है पॉलिसी। अब यहाँ पे दिखा रहा है ऑप्शन सेव कंट्रोल पॉलिसी, ये आपका कंट्रोल पॉलिसी सेव हो गया। नेक्स्ट में जाएंगे, इसको आपको अप्लाई करना है। न्यू साइट लिस्ट, देखिए आउटबाउंड डायरेक्शन में है, सिंपली वन इन आउटबाउंड डायरेक्शन, इसको ऐड कर लीजिए। प्रीव्यू करिए, अभी आपको फाइनल जो है वो दिखा देगा। प्रीव्यू, देखिए यही बनाना चाह रहे थे हम लोग। सो पॉलिसी नेम हब एंड स्पोक, सीक्वेंस 10 मैच Tloc, साइट आईडी 20 रिजेक्ट, मैच Tloc, साइट आईडी 30 रिजेक्ट, डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट, अप्लाई इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, सेव दिस पॉलिसी। पॉलिसी हो गया, बन गया इजिली। अब हम लोग जाएंगे अपने नेटवर्क पे और ब्रांच 1 पे। Actually it's very easy if you do via GUI। ट्रेस राउट करेंगे और VPN 1, ये है डेस्टिनेशन आपका क्या है, 12, देखिए 12.20 समथिंग स्टार्ट। अभी भी डायरेक्ट ही जा रहा है, मीन्स समथिंग रॉन्ग इन दी पॉलिसी। तो पॉलिसी में जाएंगे, पॉलिसी जो हम लोग ने बनाया है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ध्यान से, जब आप पॉलिसी बना लेते हैं ना, देन अगेन हाउ वी कैन गो, कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी, यहाँ पे आ जाएंगे। पॉलिसी में जाकर ना आपको ये क्लिक करना पड़ेगा एक्टिवेट। अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो टूल्स में जाके आपको मैं दिखाता हूँ एक्टिवेट नहीं करने से क्या प्रॉब्लम है। आपका जो वी स्मार्ट है, क्योंकि पॉलिसी कहाँ पे पुश होगा, पॉलिसी जो वी मैनेज से जाएगा वी स्मार्ट पे, वी स्मार्ट से वो इफेक्ट करेगा VH को, जो इसका ऑर्डर है। सो अब अभी अगर हम लोग यहाँ जाके और देखेंगे शो रन पॉलिसी, कुछ भी नहीं है, करेक्ट। सो कहने का मतलब कि आपको ना पॉलिसी को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे पॉलिसी को एक्टिवेट करिए, तो ये पूछेगा कितने सारे वी स्मार्ट पे हैं, लगा रहे हो, इन प्रोग्रेस। अगर कुछ भी रॉन्ग है पॉलिसी में तो यहीं पे एरर थ्रो हो जाएगा, और अदरवाइज अगर सही आपने पॉलिसी लगाया है तो पॉलिसी यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये पॉलिसी आ गया, और अब जाएंगे नेटवर्क पे फिर से एक बार, और ब्रांच 1 T-shirt, fresh route 12 स्टार्ट। अब ये डायरेक्ट नहीं जा पा रहा, अब ये वाया जाना चाह रहा है आपके हब राउटर से, लेकिन इसको राउट नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो ये था आपका हब एंड स्पोक पॉलिसी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। बट आप क्या करना, आप आपके
आप जब ये लैब करोगे ना, आप अपने लेवल पे इसको टेस्ट करना। मैंने बता दिया अपने वे में, बट इसमें सारा स्टेप रहेगा, ठीक है। इसमें सारे स्टेप्स रहेंगे, आप उसको फॉलो करिए, और इसमें फिर वो टेस्टिंग के लिए भी बताएगा। सीक्वेंस टेंस, मैच टीलॉक, साइट ब्रांचेस, एक्शन रिजेक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, है ना, फ्रॉम योर साइड, और आप नोट्स भी बना लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऐप राउटिंग पॉलिसी। ये ऐप राउटिंग पॉलिसी है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसी में आपको पता चलेगा कि अगर एक लिंक डाउन होता है तो दूसरे लिंक से राउट्स। अच्छा ब्रेक है ना, सो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। ओके, विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक। तो अभी जो है ना 6:35 हो रहा है, हम लोग मिलते हैं 6। आवाज आ रही क्या? हेलो, ऐप अवेयर राउटिंग, it's a very important topic. So far what we have done, we study about various policies. So we know that policies are say centralized policy or localized policies. So these things we studied. In the upcoming section we are going to study about access list and QoS as well. Now where this particular app route policy fits in, where we are using it. So app route policy is a type of, you can say, that data policy. Why? Because app route policies we are applying to the applications inside service VPN, maybe VPN 20, maybe 30, like that. Now if we are using app route policy efficiently, then we can optimize the network, we can enhance the performance, we can reduce the network cost. Yes, and application performance can be increased. Okay, recording is started already. So these things we can achieve if we have this app route policy. Now there are various things inside app route policy that we need to understand. Now when we are talking about application aware routing policies, at that time we need to take three things in our brain. What are the three things? So first of all, now this is how we can apply the policy, but let me go to the next slide and then I'll come back. So what are the things you need to remember or categorize? Say here, the main goal is application, how they can perform with respect to, say, loss, latency, and jitter. Now we may have so many applications, n number of applications. So with n number of applications, you have to create something called a SLA policy, service level agreement policies. So for application HTTP, I can't bear loss of 3%. If we have loss of 3%, then my SLA will be breached. Then you can go via path 1 or 2. So this type of policy that we need to measure, we'll see that in the lab section. So how you can define these policies, what are the elements you have? First of all, define application of interest, define policy to map application to SLA requirement, push policy to VH. Application of interest is what is your application. So what? First of all, you have to define. Then measure one way and round trip loss. Measure one way and round trip latency. You have to measure the loss. So second is SLA measure either one way or round trip.
So this is what type of policies, what type of traffic you have, what traffic you have, and second is SLA measure. Third one, map application to a specific tunnel based on loss and latency measure, maintain a history of loss and latency. So third one is to apply or change, auto change of the policy. So that means first of all you have to define. So for example, I'm defining HTTP as a traffic class. Then I am defining say loss less than 3%, jitter less than 2%. Second, and third, I apply this policy in a way that prefer MPLS, fallback, internet. So these are the three things that we need to measure. What is the interesting traffic, what is the SLA class, and how we are applying the policy. Now if I go back, so same thing, 1, 2, 3. First of all, what is your interested traffic? So what is your traffic T? What is your SLA? That is S. SLA in terms of loss, latency, and jitter, and then how you're applying. So you can remember like TSA, traffic, SLA, and how you're applying. Now when we are talking about that, okay, you have to measure this in terms of loss, latency, and jitter. It's not that simple, because how you will measure the loss, latency, jitter inside tunnel, because we know that data is moving from one VPN to other VPN. That means we need to track the VPN as well. We need to track the tunnels as well. For that we have something called BFD, bidirectional forward detection. Now here we are using BFD in three ways. So what are the ways we are using BFD? First of all, you can see that BFD hello packet. So suppose I am sending one application from tunnel A to B. This is my application. It is going from this location to this location. First of all, I need to check the liveliness of this tunnel. That will be measured by BFD hello packet. That timer is 1 second. Okay, so once you measure the BFD hello packet, then because you have to measure the loss, latency, and jitter, so let me change the color as well so you can see this. Okay, so loss, latency, and jitter, and you have to check the average of that. What you are doing for loss, latency, and jitter, you have some average value. How you are getting this average value? So what you are doing, that you are collecting the samples, that is Paul interval. So what I am doing here exactly, that BFD periodically pulse at the tunnel on the edge router to collect packet latency, loss, jitter, and other statistics for use by application aware routing. At each pol interval, application aware routing calculates the average. So you are calculating the average after 600 BFD hello packet. 600 BFD hello packets means after 600 seconds means 10 minutes. So you have pol interval of 10 minutes. So now we have hello timer of 1 second. We have BFD pol interval of 600 seconds, that is equivalent to 10 minutes. But we have this pol interval in a bucket. That means we have, actually here we have 6 buckets. That means we are taking the average value inside 6 buckets. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of 10 minutes. That means 1 hour.
and that 1 hour is nothing but your multiplier. So let me give you the summary here. This is the summary. So we have hello timer. You can change this command. If you want to change the hello timer, you can use this command VFD color and then this. Then you have poll interval of 10 minutes. Then you have multiplier of 6. So everything is in the factor of, you can think that 1 second, 10 minute, 1 hour. This is the way of measuring the statics or measuring the SLA in terms of tunnel liveliness, in terms of sampling the data that is going towards the tunnel. Okay, so we have hello packet, poll interval and multiplier HPM. 1 second, 10 minutes and 600 seconds. Now this is the only policy which is positive, means if the policy is not matching with anything, by default allow everything. Other policy by default is delete, by default is deny. But this is the only policy which will allow everything by default. Now how you can build the policy, how you have to create the policy inside the VS Smart. So for that, this is the best example. So what you have to do here, first of all, go inside policy, create the list. Now here you will find some new type of list as well. We have app list. Okay. So prefix list we know, site list we know, VPN list we know, but this is the new thing. All applications. So whatever applications you will use the policy, it will use your SLA condition, rest will go by default. But use the policy for all the applications. Why not? Whenever you are using QoS, you are using for all the traffic. Likewise, yes. So you can use, means standard is that you know your policy first of all, how many policies you have, and then use this rule for all the policies. That will be the best practice. Otherwise, whatever policies you will use, it will go under your SLA parameters and rest will go by default. Okay, so we'll see that how we can create the app list. Then new thing here is that you have to define the SLA class. Inside SLA class, suppose SLA class for HTTP, for voice, for bulk, for whatever traffic, there you can define latency, loss, jitter, everything. Now, the other new thing we have here, this app route policy. App route policy call the VPN match action count log, and this is the new thing here. So SLA class say preferred MPLS backup internet, like that you can give. Then default action, obviously allow all, then you can apply the policy, because this is a data policy, so this should be bidirectional. Let me show you the, yes, 100%. So let me show you the practical example. Before that, what is the application list? So at the moment, Viptela is supporting 2300 applications. Those application list including say HTTP, audio, video, voice, all these things they are supporting. So if you do question mark now, you'll come to know how many applications are there that is supported by the Viptela VS devices. Alright, so I should have one example here by the end of this. No, it's not that actually. I don't want to miss anything. That's why I created separate document. This document you can refer all the time. I covered each and everything in this document related to app route policy. Now once you see this practical example, this is the example here. Now it will be very clear, and once I show you in the lab, then it will become 100% clear.
So what I'm doing here, you can see, I'm creating one policy. The policy name is say SLA class, web SLA. So for web SLA, I am giving latency 100, for example. So for web, the latency is 100. Then I am creating one voice video. So suppose for voice, the latency is 50. I will give jitter and those things as well. So latency is 50. So these are my two SLA. Then app route policy, my VPN, say in my case, latency 100, it is for WAN link latency. Yes, WAN link latency, correct. Obviously we are sending traffic over WAN only. Alright, so VPN 10, in our case I'll take VPN 10. Sequence number 10, how match the SIP app. So I'm matching one application called SIP app. Application list SIP app. You can see this thing. This is actually very important. So for SIP traffic, for voice traffic, backup is internet, primary is MPLS. So backup is internet, primary is MPLS. Likewise, if you see the app list HTTPS, preferred is internet, backup is internet. Likewise, this is an example. So for SIP app, the primary is MPLS, secondary or backup is internet. So for example, for HTTPS traffic, the primary I taken as internet and secondary also internet. Yes, we can create our customized applications. That option is there. Alright, and what is the default behavior here? Default that everything will go via MPLS and fall back to internet. So MPLS and then internet. If you have LTE or if you have any mobile backup, something like that, then you can use all those things wisely. Okay, so configuration is straightforward, correct? So what are the things you have to create here? I will create like this only. Okay, so I'll come back and I'll take the reference for these configuration. So first of all, how I'll start, I'll create a list, one VPN. So in my case, how I'm going to configure, I'll create VPN 10 inside list. Then I'll create, say, site all branch. I'll take 300 to 400. Alright, then I'll create app list, inside list only. App list what? App family web. So app list what is there? HTTPS. I'll match web and web mail. Then I have app list called SIP app, where I'll match audio, video. Okay, so first of all, I'll create this much list. Apply policy is always very easy. I'm going to use this policy only for branches. So this I'm not going to use, but if you have branches as well, same policy you can apply to data center as well. I'm going to use only the branches. Alright, so let's create VPN list, site list, HTTPS and SIP app list. Let me go to my RDP is gone. Oh, it is there. Okay. Sorry for that. It is here. Okay, so I'll go to my vSmart and admin. I'll create first of all the list. So policy list, say VPN list, VPN 10. I'll match 10.
VPN 10. Then I'll create some site list. Say all branch site ID, say 300 to 400. Exit. So I can show you the list of app. We have app list. I can give a name, say HTTPS. Okay, and then app family. So I'll press enter here so you can see what are the things there in the HTTPS, either app family or. So inside app family, what I want to add web and webmail. Yes, it is different because here we have to classify the applications as well, correct? So it's a bit different. Then I'll create one other app list, say for SIP app, for example, for voice, SIP app. And here the app family is video, voice, whatever, audio, video. So we have audio, video. I will go to top so you can see here what I have done so far. Show configuration will show you this. So we have done, we have created VPN, two app family. One is HTTPS, one is SIP app, and then the branches. Okay. Now, what I'll do next, that I can go inside policy and I can create two SLA class, web SLA and video voice. Okay, so for web, let's go back. So inside policy, you can see here SLA class. So this is web SLA. Web SLA means this is for HTTPS. You can see jitter, latency loss. Latency I can give say 100. Jitter say 33. If I type jitter question mark, it will show you this is in millisecond. Okay, then I'll create one more, say audio, video, something like that, where I have latency is less, say 50. Show configuration. You can see here now SLA class, I have two SLA class, one is audio video, one is the web SLA. Then I'll go and create the app route policy inside policy. So app route policy, match the VPN sequence 10, match the SIP, then the action. So we'll go back, policy, app route policy. This is my alright. So okay, I'll start. So app route policy, and the app route policy we can give say SLA based something, any name you can give. Now inside app route policy, what you want to do, you want to match the VPN 10 and the sequence number 10, for example. You want to match what you want to match, the app list, say HTTPS. I press enter so we can go state by state, and then we can check the question mark and we can check. So I can match the app list for VPN 10, say let's do in our way. Okay, so I'm matching the HTTPS, and then for that I have to take action, correct? So action, you can see clearly here, action SLA class. For HTTPS, what is the SLA class? Web SLA. Preferred class is MPLS. And
Backup preferred color is BIS internet. Show configuration. You can see the configuration. It will be very straightforward. So app route policy, VPN 10, sequence 10, match, HTTPS, action, say backup is internet, primary is MPLS. Okay, backup is internet, primary is MPLS, like that. So both the policies, I'm going to use the same thing. So for my sequence number, say 20, app list match app list is say zip app. Action I'm going to take, say backup is obviously internet only, and SLA class, that SLA class for this audio video, preferred is MPLS. Exit, default action, SLA class, let's see. I need to set default action, otherwise everything will be allowed. But if you want, you can give other sequence and you can just give the action without any match. So sequence number, say 4000, action is preferred, say backup is internet, BIS internet, and SLA class, let's see, leave it, backup is internet. So let me show you the full configuration first. So what we have SLA class for audio video and HTTP. Now for that, for say HTTP, primary is MPLS, backup is internet. For SIP or for video or voice, the primary, so for both, primary is MPLS, backup is internet. And then what is the default? Backup is internet. All right. So we are very good at the moment. We need to apply this policy with respect to all branch. This is app route policy, SLA based. That's it. Validate this policy, commit. So how we can verify it? So let me show you that how you can verify. Verification is very interesting. Show policy, service path, VPN 10, interface is gigi02, sorry. Source IP, we know that for this particular branch, the system IP is 10401. Destination IP is, say, I'm going from 1 to 2, for example, 1030.1. From branch 2, I'm going to branch 1. Protocol, say I'm using SIP UDP protocol, and application is, say, SIP. CAE, what is the CAE? Okay. Configure, apply, and execute. So because this is a data policy, we have configure and apply at the level of vsmart, but it will be executed at the level of vh. So if I go here and if I check show policy map from vsmart, you will find that policy is downloaded by the vh. So here you can see that policy is as it is downloaded by the vh, whatever site list, yes, where we have created the policy. Here, this is my vsmart, and where it has been executed or applied to the vh. Okay, so now we are checking that the traffic is going via MPLS.
correct? Okay, very good. Now I just want to check show app. I want to show you the other things as well because it's very important. So how many buckets we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, correct? So here you can see you have 6 multiplier. For all the multiplier, obviously they will take the recent one. You can see, say, just focus on this. So it is telling the total packet 5, loss 0, latency 1. It has very less latency. So if latency is less than 50, how it will go? If latency is more than 50, it will prefer internet. Correct? That is our rule. But before that, I want to show you something more. I'll go to BFD app route multiplier, say 1. Commit is managed via, let me detach from here. Okay, so template branch type to detach. Okay, it is sensitive. Okay, it will detach. Then I'll show you that what will happen with this command. But at the moment you can see that it is going via, how it is going? The SIP application is going via MPLS because the latency is normal. Now what I'll do, I'll go to the emulator and I will increase the latency, say from 50 to say 200. 200. Apply. I apply that. Now if I go back and now if I check, it is going via internet. Okay, so this is the this is actually our simulation. So in this particular topology that we have, let me draw here so you can understand. We have WAN emulator. So whatever branches, here we have VANum. With this VANum, I can increase the loss latency jitter on this particular interface. This is a software developed from TCS, and you can check this document. We go to about a new release, you can see. You can go to WAN analyzer. Nothing is free nowadays. If it is free, then no use. For us, it is free, so you can use it freely. But let's go through it. As a WAN analyzer, you can change the, you can do some testing with help of this emulator. Okay, alright, so because I'm sharing this lab now, so you can go through it. I'll do this commit. Now you can see I have only one bucket. Why? Because I changed the multiplier to 1. Okay, and now if I show you this thing, that is tab, you can see here after increasing the latency, now it is becoming 400. So because this is 400, so that's why it is preferring the path to internet. Now if I go back to VANum,
Last 3 classes, what you are telling? Who is this? Please confirm OMP. Last 3 classes links to each other. If I make this 0, 0, 0, 0, and if I apply the settings, now because the latency is now normal, so it will prefer MPLS. See? So route now is going via MPLS. Okay, so this is the app route policy for you. If you have any doubt, you can ask. Please go through it. I'll upload this document to the share folder. And please go through the video as well. It's a very interesting video today. We have a study, I think, for 2 hours first time. So I covered a lot. All right. Let me stop the recording.